Hello friends, I welcome you in this particular session and we are going to talk about the important formulas for your upcoming GATE 2026 examination, and all the subjects are going to be covered in this particular session. And it's not just me, all the faculty members, the whole team electrical from Geeks for Geeks. So all the faculties are going to cover all the subjects and we are going to discuss the important formulas for your, just give me a moment. Yeah, perfect. So before we start the session, everybody just quickly confirm that audio, visual, everything is clear so that we can start with the session. So the very first subject that we are going to start with is power system. We are starting with the core subjects first because definitely you all are worried about the technical subjects, and after that we are going to cover rest of the subjects. So we are starting with power system. So I will be taking power system, and after me you will be having 𝐂𝐤𝐬𝐿 sir, who is going to start machines. So everybody just quickly tell me in the comment section, audio, visual, everything is clear so that we can start with the session. Hello everyone, good morning. Just quickly tell me, are you ready for this session? Are you ready for this session? So we are going to discuss all the important formulas for GATE 2026 for electrical engineering. I am starting with power system. So before I start, let me just brief you my background. So my name is Ashutosh. As you can see on the screen, I have more than 14 years of teaching experience. I am from IIT BHU. I completed my MTech in 2010, and since then I have mentored many students for various examinations like GATE, PSUs and engineering services examination. Basically, I deal with the course electrical subjects and some of the technical subjects like engineering ethics. So today we are going to talk about first power system. Now if you see, in power system, the very fundamental concept is the concept of single phase and three phase power. If you see in GATE 2024 also, there were two direct questions from single phase and three phase power. So we are starting with single phase and three phase powers. So if we talk about the single phase power, okay, and suppose this is the circuit, this is the circuit, this is the generator, or you can say the source, and suppose we want to know if this is the current, that is the instantaneous current, and this is the instantaneous voltage. So if we want to know that what is the instantaneous power in this particular circuit, this is the terminal voltage where we are going to connect the load, This load may be any type of load. This load may be any type of load. Okay. So we can simply multiply the instantaneous voltage and current, and that is how we calculate instantaneous power. So you must be knowing that for this particular given circuit, if I want to write the instantaneous power, I can write it P1 minus cos 2 omega t minus Q, and this is sine 2 omega t. So this is the instantaneous power for a single phase circuit. Now I can tell you that this year there is a high possibility that you will be having a question on this. Okay, you will be having a question on this, that is the instantaneous power in a single phase circuit. Now what is this P and Q? You all must be aware that this P and Q are simply going to be Vi cos phi, and Q is going to be Vi sin phi. These V and I are RMS values. And what is this phi? Phi is the power factor angle of the load. Phi is the power factor angle of the load. So if you just want to see the power triangle, then you can draw it. Suppose
this is the voltage and this is the current. So the power factor angle is the relative angle between the voltage and the current phasor. This is how we are defining it. Is it clear? Everybody just tell me in the comment section. Tapan, how are you? Welcome to the session. Everybody just please quickly confirm in the comment section that are you ready for this particular session. Now if you see this particular equation and I want to calculate what is the average power, average of this instantaneous power. So how I'm going to calculate it? How I'm going to calculate it? The average instantaneous power. So what is going to be the average value of this instantaneous power? Now if you see the equation, now the average value of a sinusoidal quantity for a complete cycle is always going to be 0. So these two components, cos 2 omega t and sin 2 omega t, they will become 0, and what you get is only the real power. What you get is the real power. What you get is the real power. And this average value of the instantaneous power in a single phase circuit, this is P is equal to VI cos phi. So depending upon the nature of the load and the RMS values of the voltage and current, you can say that this power is going to be constant. This power is going to be constant for a given load. If the load is given, if the load is fixed, then this power is going to be constant. Now let us talk about the power triangle as I told you. So if this is the real power and this is the reactive power, this is the real one and this is the reactive one. So the total power or the apparent power we are defining as S. This angle we are defining as phi, that is the power factor angle of the load. So from here you can relate that P is going to be S cos phi, or you can say Q is equal to S sin phi, or even you can relate P and Q and you can write that Q is equal to P tan phi. P is equal to Q tan phi. Is it clear, everyone? Just quickly tell me in the comment section. Are you able to follow? Are you able to follow this? So now let's talk about, I want you to focus on this particular equation. This particular equation you see in GATE 2024, there were 2 direct questions out of this equation. So if the real power is given or if the reactive power is given, directly you can relate real and reactive power by using this equation. There is no need to calculate the apparent power, or whatever is required you have to calculate. Now let us talk about the 3-phase power. Now let us talk about the 3-phase power. Three-phase power, if I have to write, that is the instantaneous value of the 3-phase power. So I have to simply add the instantaneous values of the power in different phases. That is power in A phase, power in B phase, and power in C phase. So you can write like this, but if you put the values and solve it, you will be surprised to know that the instantaneous power that you are getting in a 3-phase circuit is nothing but 3 times the real power in one phase, 3 times the per phase real power, where we are defining P as VI cos phi. And what are these V and I? These V and I are per phase RMS values. Per phase RMS values of the voltage and current. Is it clear, everybody? And the instantaneous power in a 3-phase circuit is a constant one. It is a constant one. Okay. Now after this, let us talk about the transmission line quickly.
Let us, because we have only 1 hour. Because we have only 1 hour, within 1 hour only. Good morning, good morning. Within 1 hour only, I have to discuss the important formulas. So I'm directly jumping towards the transmission line. Now, every year you are getting questions from the performance of transmission line, and most of the time what they're asking is the voltage regulation. What they're asking is the voltage regulation. So whatever type of transmission line you are going to have, whether it is a short transmission line, medium transmission line, or long transmission line, if you have to calculate the voltage regulation, I'm going to give you a generalized formula. So suppose I represent my line by using a two-port network and by using the ABCD parameters. Why we are using the ABCD parameters? Because ABCD parameters are the best parameters to use if you have a cascade connection. What is cascade connection? When the output of one circuit or one network becomes the input for the next. Good morning everyone. Input of the next circuit. So suppose I represent my transmission line like this. This is the sending end voltage and current, and this is the receiving end voltage and current. This is the receiving end voltage and current. So if I have to write the sending end voltage and current in terms of receiving end voltage and current, so I can simply write Vs is equal to A VR plus B IR. Please keep in your mind that when you talk about ABCD parameters in case of networks or circuit theory, then the direction of current is opposite. So that is the reason you take a minus sign there. Okay. But the very fundamental nature of ABCD parameter is that they are used in the cascade connection. As you see in the different compartments of a train. Are you getting this? Say yes or no. Are you getting this? Yes. Electronics is going to be tomorrow. So we have Sanjay sir in the session. Hello Sanjay sir, how are you? So today, the whole day, approximately you can say from 10 a.m. in the morning, somewhere around 8 to 9 p.m. in the evening, you will be having all the subjects covered for electrical, and we are going to discuss the important formulas. Definitely, we cannot discuss the whole subject in 1 hour, but definitely we are going to touch the important areas, related formulas, and we are not going to just give you the formulas, but the underlying concept. Because if we simply give you the formulas, that is not going to help you in the gate examination. If you understand the formula, if you understand the concept, then it is going to be useful for you in the gate examination. So I'm writing the sending end current as CVR plus DIR. Now, if I have to calculate the voltage regulation for this transmission line, and I told you already that it may be a short, medium or long transmission line. What is the difference between this analysis, short, medium and long transmission line? We'll discuss after this. So if I have to calculate the voltage regulation, how we are writing the voltage regulation? We are writing the voltage regulation as the magnitude of the no load voltage minus magnitude of the rated full load voltage with respect to the rated full load voltage. If you multiply it with 100, you get the percentage voltage regulation. If you don't multiply, you get the per unit value of the voltage regulation. Now from these two equations, you know that if I'm going to have open circuit, if the line is open circuit, it means the no load is connected. So you can say the receiving end current is going to be 0. If you put the receiving end current is equal to 0, Vs becomes AVR and Is becomes CVR, and this is VR no load. This is VR no load. I hope it is clear. इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सेशन कल होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम 14 तारीख को है. तो आज दिन भर हम इलेक्ट्रिकल का करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का हम कल करेंगे दिन भर. ठीक है? Is it clear? Okay. So from here you can write
that the no load receiving end voltage you can write as the sending end voltage divided by the A parameter. And if I have to take the magnitude of the no load receiving end voltage, then it is simply going to be the magnitude of Vs divided by the magnitude of A parameter. From here you can put the value of no load receiving end voltage here, and you will get the voltage regulation as magnitude Vs upon magnitude A minus full load receiving end voltage divided by full load receiving end voltage, multiply by 100, you will get the voltage regulation in percentage. Now for calculating the voltage regulation, irrespective of the type of line, what all you need to do is to find the A parameter value. So if you know the parameter, if you know the A parameter for any transmission line, directly you can find the voltage regulation by using this formula. I hope it is clear for everyone. I hope it is clear for everyone. Now, just see this equation. I want you to focus on this equation. Sometimes they are also asking the charging current. They are also asking the charging current in the line. So how you are going to calculate the charging current in the line? And that is also, you have a generalized formula. The charging current in the line. First you understand what is charging current. Suppose if this is your transmission line. Suppose if this is your transmission line. Okay. I am representing my transmission line by using some parameters. Those parameters are R, L, G, or you can say C. Suppose this is the sending end voltage. This is the sending end current. This is the receiving end voltage. And this is the receiving end current. Now you see, we are representing our transmission line by using a series branch and a shunt branch. So whatever current is being carried by the series branch, that we are calling as the line current. And whatever current is going in the shunt branch, it means this current IC is not available. This current IC we are calling as charging current, and it is not available at the load terminal. It means it is not reaching to the load terminal. Are you getting this? So because of the very nature of the transmission line equivalent circuit or model, the current which is not reaching to the receiving end, it means it is coming from the sending end, but it is not reaching to the load end. That current we are defining as charging current, and it is because of the capacitive nature of the transmission line. So if you want to write here, you can write that sending end current is a combination of receiving end current plus the charging current. It means if we talk about the open circuit condition, it means if we talk about again the open circuit condition, for open circuit condition you can say the current which is received at the load end is going to be 0. So you can say the sending end current when it is open circuit or no load condition is going to be same as the charging current. And this is the reason, if you see this equation, IS is equal to AVR no load or open circuit. So this current IS is nothing but the charging current. So if you have to calculate the charging current for medium transmission line, or you can say the long transmission line, the shortest way that you can find it is to find the C parameter. You find the C to find the C parameter.
to find the C parameter. If you have the C parameter, just simply multiply it with the no load or open circuit receiving end voltage and you will get the charging current. Is it clear? So you can calculate the voltage regulation and charging current for any transmission line. Now let us first talk about the short transmission line. If you talk about the short transmission line, generally how we are defining the short transmission line? We are defining the short transmission line if the length of the line is less than 80 kilometers, if the operating voltage is less than 20 kilovolts, and the parameters we are using is lumped RL series network to represent our short transmission line. This is how we are representing our short transmission line. So in the most simple way that you can define your short transmission line is like this. So this is R, this is L. If you combine it, you can call it Z, that is R plus J omega L. This is Vs, this is Vr, this is sending end current and voltage, and this is receiving end current and voltage. So I have to, if I have to write the ABCD parameters for this line, how I'm going to write? Simply, you can write the ABCD parameters of the short transmission line as 1 Z 0 1. So what is the A parameter? 1. If A parameter is 1, then you can say that in case of no load or open circuit condition, you can say Vs is simply going to be Vr. Vs is simply going to be Vr. Important conclusion for short transmission line, very frequently asked. Okay. Now if you check the conditions that A is equal to D, if A is equal to D, it means it is symmetrical. This circuit or this model of the line is symmetrical, and AD minus BC is equal to 1. It says that the network is reciprocal. Reciprocal means it has only passive elements. It does not have any active element. Is it clear? Everybody just tell me in the comment section. Are you able to follow this? Now for this short transmission line, if I have to write the voltage regulation, so it is simply going to be the magnitude of Vs, magnitude of A minus magnitude of Vr divided by magnitude of Vr. But as you know that A parameter is 1. So for the short transmission line, how you are writing the voltage regulation is magnitude of Vs minus magnitude of Vr divided by magnitude of Vr. Directly you can find it. Now this is going to be the exact, please take my words very seriously. A lot of people, they are doing this mistake in the examination. When you have to use the exact equation to calculate the voltage regulation and when you have to use the approximate equation. Right now what we are discussing is to find the exact value of the voltage regulation. So if the RL values are mentioned, you treat it simply as a series RL network. You treat it simply as the series RL network. Just write the KVL equation, relate Vs and Vr, and from there you can find the exact value of the voltage regulation for the short transmission line. This is going to be the most accurate one. Okay, but if you see that the nature of the question is that they are asking the approximate expression. So what is the approximate expression? This is going to be the exact, or you can say accurate value of voltage regulation. If you have to write the approximate value of the voltage regulation, then how you are writing it? R per unit cos phi r plus minus x per unit sin phi r. This is the general expression.
we are using the positive sign. We are using the positive sign for lagging load, and we are using the negative sign for the leading load. Or you can simply remember one formula, that R per unit cos phi r plus X per unit sin phi r. And if you have to use it for the leading case, then simply replace phi r with minus phi r. That also you can do. To remove the confusion, just I am saying. Now, there are some important conclusions which you can draw from this particular equation. What you can do? Suppose I want to know the condition for maximum value of the voltage regulation. Maximum value of the voltage regulation. So for the maximum value of the voltage regulation, the condition is you are getting phi is equal to theta. Sir, what is this phi and what is this theta? Please understand. You have to draw the impedance triangle for the transmission line and the impedance triangle for the load. Impedance triangle for the line and impedance triangle for the load. Suppose this I am writing for the impedance line. So this is R line, this is X line, this is Z line, and this is theta. What is theta? The impedance angle of the transmission line. Now if you draw the impedance triangle of the load, so it is going to be like this. So it becomes R load, it becomes X load, it becomes Z load, and this angle is the power factor angle of the load, you can say. Yes or no? So for getting the maximum value of the voltage regulation, the condition is that the power factor angle of the load is equal to the impedance angle of the transmission line. If you want to write this relation in terms of the X by R value, then you can write that the X by R value of the load is equal to the X by R value of the line. So this is the condition for getting the maximum voltage regulation for the short transmission line. If you want to calculate what is the voltage regulation, maximum voltage regulation value, after power system we have electrical machines, okay, that Ashu sir is going to start, Ashu Jhangra sir. Okay, so one part of the electrical machine, that is the transformers and synchronous machine, Ashu Jhangra sir is going to discuss. And after Ashu Jhangra sir, again I will come and I will discuss the DC and the induction part. So the maximum value of this voltage regulation you are getting is Z per unit. Z per unit. Now if you want to calculate the voltage regulation at X times full load. X times full load. What does it mean? It means the current you are having, suppose I write IR, it is X times the full load value of the load current or receiving end current. So we are defining this X as the loading or the amount of current in percentage with respect to the full load current. So if you want to calculate directly the voltage regulation at X times the full load, it simply becomes X times the voltage regulation at the full load. So if you have the voltage regulation at full load, you can calculate the voltage regulation at X times the full load. If you want to calculate the maximum voltage regulation at X times, then you have to simply write it X times the full load voltage regulation maximum value. The same formula, just if they are asking the maximum value, then you can just simply write it like this. Is it clear, everybody? The second condition that we want to know is the zero voltage regulation. So for zero voltage regulation, you can understand as the maximum voltage regulation can only occur if it is going to be a lagging load. Why? Why lagging load is going to be there if we have to
calculate the maximum voltage regulation? Because voltage regulation is simply the change in the magnitude of the receiving end voltage when the load is being varied from no load to full load. Say yes or no. So if the load is going to be lagging, then the difference in the sending end and receiving end voltage is going to be higher. Yes or no? So that is the reason the possibility of getting maximum voltage regulation can only occur if it is going to be a lagging load. So we are using this lagging load equation. But if we want to calculate the zero voltage regulation, so for getting the zero voltage regulation, we can talk about the leading load condition. Because if you write the leading load voltage regulation equation, it is going to be R per unit cos phi R minus X per unit sin phi R. That you have to put it to 0. So the only possibility that voltage regulation can become 0 is only possible when it is going to be a leading load condition. So if you calculate the zero voltage regulation condition, the condition is that your power factor of the load becomes 90 minus theta. Or if you have to see from the impedance triangle of the line and the impedance triangle of the load, then you can write in terms of X by R ratio that X by R ratio of the load is equal to the R by X value of the line. R by X value of the line. Is it clear? So this is the zero voltage regulation condition. Now just see this particular equation. Sometimes they are asking question from this. If you are calculating the voltage regulation for the short transmission line, suppose we are discussing the lagging load condition. So for the lagging load condition, I want to draw the graph for the variation of voltage regulation. I want to draw the graph between the voltage regulation and the power factor angle. Because the only parameter that we can vary or change is the power factor angle of the load. So if you see the variation, what are the different possibilities? Can you tell me? Suppose if I put phi r is equal to 0. If phi r is 0, cos phi r is going to become 1, sin phi r 0. So simply voltage regulation becomes R per unit. If phi r is equal to 90 degree, so cos 90 is 0, sin 91, simply voltage regulation becomes X per unit. Now when in between this 0 and 90, phi r becomes equal to theta, it means the maximum value of the voltage regulation. So what you are getting as voltage regulation is Z per unit. Z per unit. By using these values, I am going to draw the graph between voltage regulation and the power factor angle. So if I draw this variation, something like this. Suppose this is the voltage regulation and this is the power factor angle. Now this is for the lagging case. When phi r is positive, it is lagging case. And when it is minus phi r, it is the leading case. It is the leading case. So we have just seen when the voltage power factor angle is 0, phi r is equal to 0. What is the voltage regulation you are getting? R per unit. Suppose this is R per unit. Now when this phi r value is 90 degree, what you are getting is in terms of voltage regulation is, suppose somewhere here, X per unit. And you know that for transmission line, X by R ratio is very high. It means for transmission line, X by R ratio is going to be very high. It means X value of the line is always going to be more than the R value. So we are just writing X per unit here. So this is X per unit. Okay. Now in between this phi r 0 and phi r 90, somewhere when phi r is equal to theta, the voltage regulation is maximum, that is Z per unit. So suppose it is going to happen somewhere here. Phi r is equal to theta. So you are getting it
somewhere here. Z per unit is going to be more than R per unit and X per unit. So the critical points you are having is R per unit, maximum value of the voltage regulation, Z per unit and X per unit. So it is something like this. It is something like this. Okay. Now if you go to the leading side, you are getting voltage regulation 0 somewhere here. Suppose you are getting voltage regulation 0 somewhere here. So it is phi r is equal to 90 minus theta. Theta is the impedance angle of the transmission line. Now if you go beyond this point in terms of the leading load, so at some point phi r is equal to 90, phi r is equal to, minus 90, you are getting the negative side, the maximum possible value of the voltage regulation, and that is going to be simply minus X per unit. Now please understand, the X value can never become negative. You are getting it negative because we are drawing this graph for lagging load. Yes, R per unit cos phi r plus X per unit sin phi r. So what you are getting is minus X per unit. This minus X is not related to X. This minus is related to the leading case. So the actual graph is going to be something like this. Something like this. This graph, you can make number of questions. And even in GATE examination, they have asked very good questions out of this concept. Now please understand one important conclusion. That if you are in the leading case, or if you are in the lagging case, this is the leading case and this is the lagging case. For any value of the lagging case, the voltage regulation is always higher than R per unit. The voltage regulation is always higher than R per unit. Yes or no? Always higher than R per unit. So you can write it here that for lagging case, voltage regulation is always higher than R per unit. And for leading case, voltage regulation is always less than R per unit. This is important conclusion. Can be asked in different ways in your examination. Is it clear? Say yes or no. Say yes or no. So this was about the short transmission line. Now let us talk about the medium transmission line. If you talk about the medium transmission line, please understand, when you talk about the short transmission line, the line charging current IC is neglected. IC is neglected. Line charging current we are ignoring, and that is the reason for short transmission line representation we don't have a shunt branch. We don't have a shunt branch. Yes, Vivek, you're right. Now for medium transmission line, how we are defining it and how we are writing the ABCD parameter. Let us do it little more quickly. So I'll be getting more and more faster. So when the length of the line is between 80 to 160 kilometers and the voltage is 20 to 100 kilovolts, and you are using RL series and shunt capacitive branch to represent the transmission line, and this we are using as the again lumped parameter model. Charging current is included here. It is not too high, but it is present. Charging current is present. Charging current is present. So there are some possible configuration for getting the medium transmission line. What is the first one? Sending end capacitor model. Sending end capacitor model. It means you are connecting the capacitor shunt branch at the
sending end, something like this. So this is going to be C, R, L, or you can say this is Z, or you can say this is Y. Okay. How you are writing the ABCD parameters? Directly you can write A, B, C, D. Now if you see this circuit, there is one important conclusion that you have to understand. This is the sending end current, this is the charging current, and this is the receiving end current, or you can say the line current. Now you see, for getting the Ferranti effect, there were two conditions. If you remember, then okay. If you don't remember, you can write it down. There are two conditions to get the Ferranti effect. What is Ferranti effect? That during the no load or light load condition, the magnitude of the receiving end voltage becomes higher than the sending end voltage magnitude. So for getting the Ferranti effect, there are two conditions. Number one, that the line current should be capacitive in nature. That is the first condition. And the second condition was that line current, which is capacitive in nature, must pass through the inductive element of the line. Inductive element of the line. So if you see, the current which is present in the line is not capacitive, because whatever capacitive current or charging current was there, it is directly bypassed. It is not going to the line. It is not going to the inductive part. It means Ferranti effect is not possible. Ferranti effect is not possible. And if you check it with ABCD parameters also, then also you can write, because A parameter becomes 1. The moment A parameter is 1, then you can understand Vs is equal to AVR. Yes or no? If A parameter is 1, it means Vs is equal to VR. So VR magnitude is not going to become higher than Vs. It means what? It means Ferranti effect is not possible in this condition. So this is 1. Okay. This is 1. This is Z, this is Y, and this is 1 plus YZ. These are the ABCD parameters for this line. From here you can easily see that A is not equal to D. So this is not symmetrical. From just observing the circuit, you can see that it is not symmetrical. Now if you write AD minus BC is equal to 1, AD minus BC is equal to 1, then you can say it is not okay, it is coming 1. So it is reciprocal. So it is reciprocal. And if you know the ABCD parameters, you can calculate whether the charging current is required or whether the voltage regulation is required. The second model that we are having is receiving end capacitor model. Receiving end capacitor model. For receiving end capacitor model, it is something like this. I have to go a little faster. Okay. So we are connecting the capacitor near the receiving end. This is Z, this is Y. So directly I am writing the ABCD parameters. Please note it down. It is going to be 1 plus YZ, ZY, and D parameter is 1. Again you see A is not equal to D, and AD minus BC is equal to 1. Okay. Then we have nominal T model. How you are representing nominal T model? It looks like the alphabet T. That is why we are calling it nominal T model. So it is nothing but a combination of sending end capacitor model and receiving end capacitor model. We don't have that much time, so we cannot go into details. You must have read it. Just quickly write it down. So this is Z by 2, this is Z by 2, this is Y. How you are writing the ABCD parameters? It is going to be 1 plus YZ by 2. This is going to be Z, okay, and this is 1 plus YZ by 4,
it is y, and this is again 1 plus yz by 2. How to remember this, sir? How to remember? You just observe the model. Z you have divided, Y you have not divided. So what you have not divided, you have to write it as it is. Actually, ABCD parameter, C represents the admittance part and B represents the impedance part. So impedance you have divided. So you have to write it like this, Z1 plus YZ by 4. Y you have not divided, so just write it as it is. Now for the nominal pi model, nominal pi model, it is going to be something like this. We have very less time, so I have to be little faster. So please bear with me. Now Z you are not dividing, Y you are dividing, Y by 2 and Y by 2. So the ABCD parameters are, now you can write 1 plus YZ by 2. Z you are not dividing, so write Z as it is. Y you are dividing, write it like this, 1 plus YZ by 4. And this is again 1 plus YZ by 2. I hope it is clear. So if I write now for the long transmission line, this was medium transmission line. If I am writing for long transmission line, for long transmission line, the ABCD parameters you have to write like this. This is cos hyperbolic gamma L. B is ZC sine hyperbolic gamma L. What is C? It is 1 upon ZC sine hyperbolic gamma L. And what is D? It is again cos hyperbolic gamma L. Now when you write the ABCD parameters of a long transmission line by using the hyperbolic term or by using this formula, then it is called the exact model. It is called the exact model. And if you want to write the approximate model, again ABCD parameters you can write as 1 plus YZ by 2, D also 1 plus YZ by 2. How I am writing B and C? Just see. This is approximate model. Approximate model means if you expand the cos and sine hyperbolic terms in the form of infinite series and you ignore the higher order terms. Okay. So for calculation purpose, sometimes we are using the approximate model also. B parameter I am writing as Z 1 plus YZ upon 6. How we are writing the C1? Y 1 plus YZ by 6. Just keep it in your mind. Important one. This is the approximate model. If you want to write the equivalent model, now please understand, when you write the equivalent model for the long transmission line, actually it is the exact model. Actually it is the exact model, just you are representing your line like a medium transmission line, that is equivalent T and equivalent pi. Okay. So if you are writing the equivalent T model, what does it mean? That it is exact analysis of your long transmission line, but you are simply representing the line as if it is a medium transmission line. As if it is a medium transmission line. So this is equivalent T model. This is Z dash by 2, this is Z dash by 2, and this is Y dash. How you are calculating Y dash and Z dash?
Y dash is Y sine hyperbolic gamma L divided by gamma L. Z dash by 2 is Z by 2 tan hyperbolic gamma L by 2 divided by gamma L by 2. Please note it down. This is equivalent T model. Similarly, you can write the equivalent pi model. Equivalent pi model. Equivalent pi model is going to be something like this, like your medium transmission line. So this is Z dash, this is Y dash by 2, this is Y dash by 2. How you are writing it? Z dash is Z sine hyperbolic gamma L divided by gamma L. What is Y dash by 2? It is Y by 2 tan hyperbolic gamma L by 2 divided by gamma L by 2. Now, whatever we have discussed in terms of the performance of transmission line, this year you may expect a question on this. Is it clear? Everybody just tell me in the comment section. Are you getting this? So I have a lot of things to discuss, but 1 hour it is not possible to discuss all the things. So important things we are just discussing. So let me just see whether Ashu sir is ready. Accordingly, I am going to conclude my part. Okay, so Ashu Jangda sir is ready with electrical machines. After this, he is going to come. So just some important inputs I want to give, and that is the reason I have taken the snapshot of some of the important formulas, because we don't have enough time. So let me just give you some points about this equation. What is this equation? Just quickly understand. This year you may get a question on this. So this is the equation for a steady state power transfer equation. Steady state power transfer equation. Sir, what do we mean steady state power transfer equation? Please see this. Suppose this is the situation, this is your generator, and this is the load. This is the load. So this is the receiving end voltage. We are treating it as the reference, and this is the sending end voltage. Suppose this is angle del, and suppose this is the line, and this line is having the ABCD parameters like this. This line is having the ABCD parameters like this. A, B, C, D. So by using these two equations, you are writing the receiving end real and reactive power. I hope you are able to see the equation. This is called the exact equations, exact power transfer equations. Now here, A parameter we are writing as magnitude A angle alpha. B parameter we are writing as magnitude B angle beta. So you see that alpha is very small, approximately 0, and beta is very close to 90 degree. Beta is very close to 90 degree because X by R ratio is going to be very high for the transmission line.
So this equation you have to use if you have to do the exact analysis of the power transfer to the receiving end. There are different important conclusions which can be asked in various ways. For example, they may ask you that what is the condition when you get the maximum real power transferred? So the condition for maximum real power transferred that del is equal to beta. Del is equal to beta. But if you go for this condition, that is the condition for maximum real power transferred, for this condition if you calculate QR, this QR comes out negative. This QR, or the reactive power received at the load, comes out negative. Why it is coming negative? Because the reason is, if you want to have the maximum real power dispatched, that is actually the derivation part. Okay, you have to differentiate it with respect to del and then put it 0, the condition you put for getting maximum value of anything. That is the derivation part. We don't have that much time. But understand the concept what I am trying to say. For getting the maximum real power dispatched to the load, it is not possible without local reactive power compensation. Are you getting this? Are you getting this? Now the equations you have just seen are the real and reactive power received at the load. Sometimes in gate examination they may confuse you if they talk about the sending end power. So for the sending end power, the equations you are having are this. These are the sending end real and reactive powers. Sending end real and reactive powers. You can see the equations. These equations are quite similar. If you see the receiving end or the sending end powers, these are quite similar, a little bit of difference. Here instead of A you are using D, and this D is D magnitude angle del. Okay, D magnitude angle del. Again they may ask you the condition for getting maximum real sending power. Maximum real sending power. What is the condition for this? What is the condition for this? Del is equal to 180 minus beta. Del is equal to 180 minus beta. Are you getting this? So these two equations I wanted to discuss. And I have one more equation. Now please understand this equation, when you can apply this. When you can apply this. Okay. So suppose this is the load. Okay. This is the receiving end. This is the sending end. And suppose this is the lossless transmission line. So we have only the reactance part. We have only the reactance part. Now when you write the receiving end voltage in terms of the sending end voltage and the reactive power, please understand this equation, very important. It gives you a lot of conclusions. What we are assuming is that whatever real and reactive power you are sending from the sending end, from the generator side, whatever real and reactive power you are sending, this power reaches the receiving end without any disturbance. This power reaches the load end without any disturbance. We are assuming it. This is assumption. So if this assumption is available, if you can take this assumption, then only you can write this equation. Then only you can write this equation that the receiving end voltage is Vs minus XQS. QS means the reactive power supplied by the source upon mod Vs. Then only this equation you can apply. Is it clear?
So this year you may get a question on this also. Are you getting this? So 2 important points again I'm going to mention. So it is 11 exact. So I'm asking Ashu sir whether he's ready. Whether he's ready or not. If I get 5-10 minutes more, I wanted to discuss some important conclusions out of this equation. But anyways, so if you have any doubt, please don't forget to reach out to me. This is my Telegram channel. This is my Telegram channel, Ashutosh Sir, or you can also find Ashujina. You can join it. Okay, so I think Ashu sir is ready. So he's going to come with the first part of electrical machines. He is going to talk about transformers and synchronous machines. After Ashu sir, again I will join and I will talk about DC machines and induction part. So you will have a magic. For just a moment, I will be gone. I'm going, and suddenly you will see out of magic Ashu sir. So be ready for Ashu sir. I'm just leaving. I will join again. Hello everyone, good morning. Thank you Ashutosh sir. So guys, I hope you enjoyed power system with Ashutosh sir. So now we'll revise all the formulas for electrical machines, at least some part of the machine, because first part I am taking and the second part Ashutosh sir will revise, okay? And I am taking transformer and synchronous machine part. The remaining part will be taken by Ashutosh sir, okay? So let's start the session guys. Good morning. So guys, I think it's time to start. Let's not waste the time. Okay, so you ready? You guys ready? Tell me. Buffering. Okay, I think buffering issue will be. So the first thing in the transformer is ideal transformer. Okay, ideal transformer. Now what is ideal transformer? जिसमें कोई losses ना हो, ठीक है, ना कोई core loss, ना कोई ohmic loss, ठीक है, उसको हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं. तो ये हमारे पास कोर है जिसकी परमेबिलिटी जो है वो इनफाइनाइट है. फाइन. यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे दूसरी कॉइल है. एक तरफ मान लो हाई वोल्टेज कॉइल है, एक तरफ लो वोल्टेज कॉइल है. कॉइल में भी कोई लॉस नहीं है, ठीक है. एक तरफ N1 टर्न्स हैं, दूसरी तरफ N2 टर्न्स हैं. अब मान लीजिए मैं इधर सोर्स लगा रहा हूँ, तो जैसे मैं सोर्स लगाऊंगा इसको मैं प्राइमरी बोलूँगा, और यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ तो इसको मैं सेकेंडरी बोलूँगा. अब सबसे पहले डॉट को समझिए. डॉट मैंने आपको बताया था, जो वायर कोर के ऊपर से होता है वहाँ पे डॉट लगाओ. एक तरफ वैसे पहला डॉट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, तो दूसरी तरफ जो डॉट आएगा ऑन द अदर साइड, द डॉट विल बी ऑन दैट साइड वेयर द वायर इज ऑन द कोर, ठीक है. बिकॉज इस साइड पे जहाँ पे हमारा वायर कोर के ऊपर था वहाँ पे हमने डॉट लगाया, तो दूसरी साइड भी वहाँ पे डॉट लगाइए जहाँ पे वायर जो है वो कोर के ऊपर हो. फाइन.
तो यहाँ पे डॉट आएगा। अब डॉट हमें पोलैरिटी को बताएगा, प्लस माइनस। अगर आप जिस इंस्टेंट पे इधर हायर होगा इधर से, उसी इंस्टेंट पे इधर हायर होगा इधर से। ओके, एंड लेट्स कॉल दिस एज E1 एंड दिस एज E2, एंड लेट्स से दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2। ओके, नाउ इफ आई टेक द रेशियो E1 अपॉन E2, तो आइडियल ट्रांसफॉर्म में ये होता है N1 बाई N2 के बराबर, और यही चीज I2 बाई I1 होती है। ये रेशियो पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि E1 की पोलैरिटी डॉट पे दोनों तरफ क्या है, सेम है। इधर भी प्लस है, जिस इंस्टेंट पे इधर हायर है इधर से, उसी इंस्टेंट पे इधर हायर है इधर से। क्योंकि डॉट पे दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, इसलिए ये रेशियो पॉजिटिव होगा। करंट के रेशियो में कैसे देखोगे आप? अगर आप कॉइल करंट को देखते हो, जो कॉइल करंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द डॉट। डॉट इज ऑन द अपर साइड, सो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द डॉट, एंड इस साइड पे जो करंट है, यू कैन सी दैट द कॉइल करंट इज मूविंग टूवर्ड्स द डॉट। डॉट की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, व्हेनेवर ऑन वन साइड करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द डॉट एंड ऑन द अदर साइड द कॉइल करंट इज मूविंग टूवर्ड्स द डॉट, तो करंट का जो रेशियो होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और वो इस तरह से होता है। मतलब इसका ये भी है कि E1 एंड E2 विल बी इन सेम फेज। अगर आप E1 को इधर दिखा रहे हो तो इधर ही आपको E2 को भी दिखाना होगा। एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन N1 एंड N2, ठीक है? तो जिधर आप E1 दिखाओगे उधर ही आप E2 को भी दिखाना होगा। सिमिलरली जिधर आप I2 दिखाओगे उधर ही आपको I2 को भी दिखाना होगा। I1 I2 विल ऑल्सो बी इन द सेम फेज। ओके, अगर ये रेशियो पॉजिटिव है तो। बट अगर ये रेशियो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कब होगा? जब इस तरफ E1 का प्लस है डॉट पे और इस तरफ E2 का माइनस है डॉट पे, तो डॉट पे सेम पोलैरिटी नहीं है दोनों तरफ, तो उस केस में E1 एंड E2 के बीच 180 डिग्री का फेज होगा। सिमिलरली अगर दोनों तरफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड करंट डॉट से लीव कर रहा हो या डॉट में एंटर कर रहा हो, मतलब ऑपोजिट ना हो, एक तरफ डॉट से लीव और एक तरफ एंटर कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन ना हो, दोनों तरफ डॉट से लीव कर रहा हो या दोनों तरफ डॉट में एंटर कर रहा हो, देन इन दैट सिचुएशन I1 अपॉन I2 का जो रेशियो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, मतलब उनमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप ये कह सकते हो, ये केवल आइडियल के लिए एप्लीकेबल है, नॉन आइडियल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है? अब आप बोलेगे सर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर जरा देखिए। नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लॉसेज होते हैं। कौन कौन से लॉसेज होते हैं नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर? तो फटाफट रिवाइज करते हैं मेन चीज़ों को। नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है जिसमें लॉसेज होते हैं? अब लॉसेज कौन कौन से हैं बताइए? लॉसेज आपके कोर लॉस हो गए, कोर लॉस हो गए, दूसरा आपके ओमिक लॉस हो गए, ओमिक लॉस हो गए। कोर लॉस में फर्दर दो तरह के लॉस होते हैं, एक आपका हिस्ट्रेसिस लॉस और एक आपका एडी करंट लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस होता है KHF BM टू द पावर x। x क्या होता है? स्टेनमेट्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम जनरली 1.6 लेते हैं। एडी करंट लॉस क्या होता है? PEF स्क्वायर BM स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपका एडी करंट लॉस होता है। ओमिक लॉस तो आपका I स्क्वायर R लॉस आपका होता है, ठीक है? तो इसको अगर आप प्राइमरी साइड पे देख रहे हो तो I1 स्क्वायर इंटू R इक्वलेंट लिखना है आपको। रेफर्ड रजिस्टेंस, नेट रजिस्टेंस को रेफर कर लो प्राइमरी साइड, और उसमें आप लॉस निकालो। जो वाइंडिंग के अंदर लॉस होता है उसको ओमिक लॉस बोलते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले इनकी बात करूं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एडी करंट लॉस एंड हिस्ट्रेसिस लॉस, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो BM है उसको अगर हम समझें कि BM क्या होता है, तो उसके लिए हम वापस एक बार आइडियल ट्रांसफॉर्मर पे चलते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ये जो वोल्टेज होती है ये होती है N1 d∅dt। फाई इज फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है वो हमारा फाई है, ठीक है? तो N1 d∅dt को मैं E1 लिख सकता हूँ, एंड फाई को चलिए मैं साइनोसॉइडल मान लेता हूँ। फाई जो है उसको मैं मान रहा हूँ φm साइन ऑफ ओमेगा टी। एक मिनट के लिए ऐसे मान लेते हैं। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो E1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी N1 φm ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी। सही है जी, इस तरह से बनेगा। अब ध्यान से देखिए, ये है इसकी पीक वैल्यू। अगर मैं इसको √2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास RMS वैल्यू आ जाएगी, और जब मैं एक कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं तो इसका मतलब RMS वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो फिलहाल ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी E1 की, ठीक है? तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 φm ओमेगा डिवाइड बाय √2। ओमेगा की वैल्यू 2πf रखोगे, देन इट विल बिकम √2 πf N1 φm। सो दिस इज द
वैल्यू ऑफ E1, RMS वैल्यू ऑफ E1। ऐसे आप E2 भी निकाल सकते हो, E2 में बस यहाँ पे N2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो E1 एंड E2 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स की हम यूज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स को आप BM की टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो आप ये कहोगे E1 विल बी इक्वल टू √2 पाई एफ N1। फ्लक्स क्या होता है? BM इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आप BM को अगर आप देखते हो, क्योंकि BM का एक्सप्रेशन हम आगे इस्तेमाल कर रहे हैं ना कोर लॉसेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप यहां से BM को देखते हो तो BM की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? वो बनेगी E1 डिवाइड बाई √2 पाई एफ N1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो है ये तो सब कांस्टेंट होता है, √2 पाई एफ तो चलो कांस्टेंट नहीं है, एफ को तो हम वेरी कर सकते हैं। तो √2 पाई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और N1 ये तो कांस्टेंट है, इनको तो हम वेरी नहीं कर सकते। हम यहां से अगर किसी चीज को वेरी करना चाहें तो किसको वेरी कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, या वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को वेरी कर सकते हैं, ये सब चीजें है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा E सम K0 टाइम्स ऑफ E1 बाई एफ। जो कांस्टेंट है उसको मैंने K0 में लिख दिया, ठीक है, और इसको लिख दिया E1 बाई एफ। इसका मतलब है जो फ्लक्स डेंसिटी है, जो BM है, BM इज प्रोपोर्शनल टू E बाई एफ, यू कैन से। अगर आप प्राइमरी साइड देख रहे हो तो E1 बाई एफ कर दो, सेकेंडरी साइड देख रहे हो तो E2 बाई एफ कर दो। तो BM जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी होगा, वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब सुनिए, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज को वेरी कर रहा हूं कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा? तो BM वेरी करेगा, क्योंकि मैं वोल्टेज को वेरी कर रहा हूं बट फ्रीक्वेंसी को वेरी नहीं कर रहा हूं, तो फिर BM जो है वो वेरी करेगा। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की जो इनपुट वोल्टेज है उसको भी वेरी करूं और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी प्रोपोर्शनली वेरी करूं, मतलब जितना वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, वोल्टेज को मैं डबल कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी को भी अगर मैं डबल कर दूं तो उससे क्या होगा कि BM मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे दो केसेस बनेंगे, जो दोनों केस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों केस पता होने चाहिए, ठीक है। एक केस क्या है? एक केस है जिसमें BM जो है वो मेरा कांस्टेंट है। BM कांस्टेंट का मतलब E बाई एफ कांस्टेंट है। जितना मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही मैं फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज कर रहा हूं। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? इन दैट सिचुएशन जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा दैट विल बी, इसको आप कांस्टेंट कर दो भाई, हिस्टेरेसिस KH प्राइम एफ। KH प्राइम क्या है बताओ? KH इंटू BM रेज टू द पावर x को मैंने KH प्राइम लिख दिया, ठीक है। और जो एडी करंट लॉस होगा वो क्या बन जाएगा? KE प्राइम एफ स्क्वायर। नहीं, इसको जब आप E बाई एफ करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? ये F पे डिपेंड नहीं करेगा। जरा देखो, एक मिनट रुको भाई, मैं फिर से करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने सही लिखा था। KH प्राइम एफ बन जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना भाई, इस कांस्टेंट को आप इसके अंदर मर्ज कर दो ना, ठीक है। सिमिलरली ये कांस्टेंट है, इसके अंदर मर्ज कर दो, KE प्राइम एफ स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई, अगर अगर BM कांस्टेंट है तो, ठीक है। नंबर 2 आइए। नंबर 2, अगर मैं बोलूं कि BM जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब हम ऐसा कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं कि E बाई एफ कॉन्स्टेंट है, E को भी चेंज कर रहे हैं और F को भी चेंज कर रहे हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे? आप BM को ऐसे रिप्लेस कर दो, BM इज इक्वल टू K0 E बाई एफ, जो हमने अभी अभी निकाला ना, K0 E बाई एफ। इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो BM को। तो अगर मैं इस तरह से रिप्लेस करूंगा तो PH जो बनेगा वो क्या होगा? वो बनेगा KH F इंटू E बाई एफ रेज टू द पावर x कर दूं, ठीक है। और एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा? KE F स्क्वायर E बाई एफ का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा KH0, इसको मैं KH0 बोल देता हूँ, E टू द पावर x को भी KH के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना, KH0, और यहाँ पे क्या बन गया? या चलो KH को KH ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, KH E टू द पावर x F1 माइनस x, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे देखो F स्क्वायर से F स्क्वायर कट जाएगा, कुछ इस तरह का आएगा। मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हो दैट एडी करंट लॉस आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडी करंट लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होंगे अगर मैं E और F को इंडिपेंडेंटली वेरी करूंगा, या एक को वेरी करूंगा एक को वेरी नहीं करूंगा, मतलब मैं BM को कांस्टेंट नहीं रख रहा हूं। तो अगर आप BM को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो इन दैट सिचुएशन एडी करंट लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होंगे, एडी करंट लॉस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका मतलब है अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो टोटल जो कोर लॉस हैं वो डिक्रीज होंगे यहाँ पे। क्यों? अगर आप BM को वेरी कर रहे हो, BM को कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो,
तो एडी करंट लॉस तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना भाई, एडी करंट लॉस तो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट हो गए। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर जो है वो डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ। एक्स की वैल्यू 1.6 रख के देखो ना भाई, तो ये नेगेटिव पावर आएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होंगे, तो ओवरऑल लॉस पे क्या फर्क पड़ा, ओवरऑल लॉस डिक्रीज हुए। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में बीएम कांस्टेंट है। अगर बीएम कांस्टेंट है और अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब आप ई को भी इंक्रीज कर रहे हो प्रोपोर्शनली, तभी तो बीएम कांस्टेंट होगा। तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ हिस्टैरिसीस लॉस भी इंक्रीज होता है, एडी करंट लॉस भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब जो टोटल कोर लॉस है वो भी इंक्रीज होगा। तो एक केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ कोर लॉस इंक्रीज होते हैं और एक केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ कोर लॉस डिक्रीज होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जब बीएम कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे आप एक कर्व को भी याद रखिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है पीसी बाई एफ, और इधर है एफ। तो पीसी बाई एफ और एफ का अगर आप देखोगे तो इस तरह का ये हमें कर्व मिलेगा। अब इसका स्लोप क्या बनेगा इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ये हमारा होता है 𝐂𝐻 टू द पावर x, ये वाला पॉइंट, और इसका जो स्लोप होता है दैट विल बी 𝐂𝐸 मतलब जो एडी करंट वाला जो कोफिशिएंट होता है ना एफ का, एफ स्क्वायर का, वो यहाँ पे स्लोप बन जाएगा। और जो एफ को अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा 𝐂𝐻 टू द पावर x, वो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो पीसी बाई एफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पीसी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कर्व बनेगा जो आपको याद रखना चाहिए, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लॉसेस की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट्स की। ठीक है, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है और एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। अब देखो, थोड़ा सा मैं जानकारी दे रहा हूं फटाफट। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, हम आरसी एंड एक्सएम को फाइंड करते हैं, और इसमें जो वॉट मीटर की रीडिंग होती है वो आपके कोर लॉस को बताती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम R1 XL1 R2 XL2 इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम ये फाइंड करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से हम ये फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें जो वॉट मीटर की रीडिंग होती है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम वॉट मीटर की रीडिंग लेते हैं, वो आपको ओहमिक लॉसेस को बताती है बस, ये आपके ओहमिक लॉसेस को बताती है। हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब रेटेड कंडीशन पे हम ये कर रहे हैं। जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में हमें रेटेड वोल्टेज अप्लाई करनी होती है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें रेटेड करंट को रखना होता है। तो रेटेड करंट रख रहे हो तो रेटेड ओहमिक लॉस आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, और इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेयर कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा आपको बता दिया कि जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी हमेशा एक्टिव पावर की टर्म्स में देखी जाती है, आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइड बाय इनपुट एक्टिव पावर। तो आउटपुट एक्टिव पावर क्या होगी ट्रांसफार्मर की? V2I2 cos ऑफ θ2। cos θ2 क्या है? लोड का पावर फैक्टर एंगल, V2 और I2 के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये तो आउटपुट पावर होगी इन एक्टिव टर्म्स, और इनपुट पावर क्या होगी? आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ये होगा भाई। अब लॉसेस में दो चीजें आती हैं, एक आपका कोर लॉस और एक आपका ओमिक लॉस। ठीक है, इस तरह से आप जो है एफिशिएंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कब होगी, तो उसके लिए आपको एक कर्व याद रखना है। ये हमारा लोड करंट है, जब लोड वेरी करोगे तो लोड करंट वेरी करेगा, और इधर है हमारी एफिशिएंसी। तो जब इसका कर्व देखते हो आप एफिशिएंसी का, तो वो इस तरह का होता है। ठीक है, वो इस तरह का होता है। जहां पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, वहां पे जो लोड करंट की वैल्यू होती है वो होती है रेटेड करंट इनटू रूट ऑफ पीसी अपॉन पी ओमिक रेटेड, इसके बराबर होती है। जिस करंट पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, वो करंट की क्या वैल्यू होती है? वो करंट की वैल्यू होती है आई रेटेड, जो भी रेटेड करंट है वो, इनटू दिस टर्म, और ये टर्म क्या है बताइए? रूट ऑफ पीसी अपॉन पी ओमिक रेटेड। ठीक है,
पीसी का मतलब कोर लॉसेस, और पी ओमिक रेटेड का मतलब रेटेड ओमिक लॉस। तो इस तरह से आप जो है I2 की वैल्यू को निकाल सकते हो। एक्चुअल में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है ना, वो होती है जहां पे ओमिक कोर लॉसेस जो हैं वो बराबर हो जाएं ओमिक लॉसेस के बराबर। कोर लॉस और ओमिक लॉस, वो करंट जहां पे कोर लॉस और ओमिक लॉस बराबर हो जाए, रेटेड ओमिक लॉस नहीं, यहां पे देखो एक्चुअल ओमिक लॉस लिए मैंने वो कंडीशन जहां पे कोर लॉस और एक्चुअल ओमिक लॉस जो है वो बराबर हो जाएं, तो समझ लो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, और अब आप यहां से ये कंडीशन भी अचीव कर सकते हो। आप कह सकते हो करंट की ये वैल्यू जहां पे, मतलब करंट की इस वैल्यू पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और आपको एफिशिएंसी भी मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात जो मैक्सिमा की वैल्यू है, एफिशिएंसी के जो मैक्सिमा की वैल्यू है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अगर आप पावर फैक्टर को सोचिए, यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी है, यहाँ पे पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है। एक मिनट, अगर आप पावर फैक्टर को थोड़ा सा पुअर करोगे तो ऐसे कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि जो मैक्सिमा की वैल्यू है वो हम आएगी इसी पोजीशन पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी कंडीशन पे आएगी, लेकिन जो मैक्सिमा की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी पावर फैक्टर पे। अगर पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, और मैक्सिमा की जो वैल्यू आएगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रहेगा भी पॉइंट मेरा। अच्छा, जिस टाइम ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा होगा तो उस टाइम उसकी जो केवीए, जो जिस केवीए पे वर्क कर रहा होगा वो होगा रेटेड केवीए इंटू रूट ऑफ पीसी अपॉन पी ओमिक। इस केवीए पे वो वर्क कर रहा होगा, इस केवीए पे। जरूर नहीं है तो रेटेड केवीए पे ही वर्क कर रहा हो। जब वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है, ट्रांसफॉर्मर जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि वो रेटेड केवीए पे वर्क कर रहा है, वो इस केवीए पे वर्क कर रहा है। समझ आया भाई? मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट आइए वोल्टेज रेगुलेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उनको रिवाइज करा रहा हूँ भाई। वोल्टेज रेगुलेशन, अब वोल्टेज रेगुलेशन में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है वी नो लोड माइनस वी लोड अपॉन वी लोड, ये होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए लोड रेटेड है तो आप यहाँ पे लोड रेटेड कर दो, यहाँ पे भी लोड रेटेड कर दो, और इसकी जो वैल्यू होती है, और ऑब्वियसली इंटू 100 करेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है उसको अगर आप देखते हो तो उसको आप लिखिए एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बता दूंगा। एप्सिलॉन आर कोस थीटा 2 प्लस एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एक्स साइन थीटा 2, ये होता है भाई। ये एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है? ये पर यूनिट वैल्यू है ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट। और थीटा 2 क्या है? लोड इंपीडेंस एंगल, सॉरी लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, लोड का जो पावर फैक्टर एंगल है वो है थीटा 2। एप्सिलॉन आर क्या है? पर यूनिट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और एप्सिलॉन एक्स क्या है? ये है पर यूनिट वैल्यू ऑफ एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट की पर यूनिट वैल्यू है और ये एक्स इक्विवेलेंट की पर यूनिट वैल्यू है। ठीक है भाई, और थीटा 2 क्या है? लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, अब सुनिए ये जो पर यूनिट वैल्यू निकाली है कौन से बेस पे निकाली है? ऑब्वियसली जेड बेस से किया होगा ना भाई। अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगा? आर इक्विवेलेंट, चलिए रेफर टू सेकेंडरी साइड है, लोड साइड हमने रेफर कर रखा है, तो उस साइड हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, डिवाइड बाई जेड बेस, तभी तो आएगा। और जेड बेस क्या होता है? जेड बेस होता है वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस। ये जो वोल्टेज की जो बेस वैल्यू लेनी है कौन सी लेनी है? लोड वोल्टेज की बेस वैल्यू नहीं, रेटेड नहीं। जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है उसको बेस अपने को ट्रीट करना है, उसके बेस पे हमने जेड बी निकाला है। ठीक है, ये गलती सबसे ज़्यादा करते हैं लोग, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, फिर यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, अब ये याद होना चाहिए भाई। ठीक है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगी बताओ जरा? इसको जीरो कर दो, जीरो करोगे तो क्या बनेगा? टेन थीटा 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, जरा देखो, एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन एक्स। ये बनेगा भाई। तो थीटा 2 यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, नेगेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन एक्स। ये जो कंडीशन है
इस पे 0 वोल्टेज रेगुलेशन आएगी। अब आप सोचो ये नेगेटिव आ गया, θ2 जनरली लैगिंग होता है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब θ2 कैसा है, लीडिंग। इसका मतलब हमारा जो लोड होना चाहिए वो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करना चाहिए। कितने पे लीडिंग पावर फैक्टर, ये लोड पावर फैक्टर एंगल आ गया, और इसको आप लिखो tan इनवर्स ऑफ एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन x। लीडिंग लिख दो बस, आप नेगेटिव साइन मत लिखो, इसको लिख दो कि लीडिंग। इतना एंगल जो है वो लीडिंग होना चाहिए आपका, ठीक है। तभी हम क्या बोलेंगे, तभी हम उसको बोलेंगे कि भाई जो है जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 है। तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन हमने बता दी। नेक्स्ट अब आइए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन। मैक्सिमम के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसको 0 करना पड़ेगा। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, बस अगर ये एक याद है तो दूसरा भी याद है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव लेना होगा। तो उसमें tan θ2 क्या बनेगा, सुनिए, वो इसका उल्टा बनेगा, एप्सिलॉन x अपॉन एप्सिलॉन r। चेक करके देख लो बेशक, और पॉजिटिव भी आएगा। तो यहाँ से θ2 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, मतलब जो लोड पावर फैक्टर एंगल आएगा वो लैगिंग ही आएगा, लैगिंग ही बनेगा। ये पॉजिटिव आ गया ना, तो इसका मतलब लैगिंग लोड पे ही आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो इस लोड पावर फैक्टर एंगल पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगी। बोलिए भाई, समझ आया क्या? ये बफर कर रहा है क्या? वीडियो सही चल रहा है भाई? बोलिए एक बार बताओ यार, सही चल रहा है? ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होती है और 0 वोल्टेज रेगुलेशन कब होती है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, उसमें एक तो कनेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसमें कनेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि उनमें कुछ खास फॉर्मूले हम यूज़ नहीं करते हैं। मतलब जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से हम क्या करते हैं, हम ऑटो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से हम ऑटो में कन्वर्ट करते हैं। तो कनेक्शंस जो है कई तरह के बनते हैं। जैसे मान लीजिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, तो डिपेंडिंग ऑन डॉट किस साइड आप कनेक्ट कर रहे हो और सप्लाई आपकी किस साइड है, उसके बेसिस पे इसके कनेक्शन बनते हैं। जैसे ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, अब अगर आप इसको ऑटो बनाओगे तो मल्टीपल तरीके हैं। आप सप्लाई को इधर रखो, ठीक है, सप्लाई को जो ये प्राइमरी साइड थी N1 साइड उसी पे रखो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर डॉट है ना इसका। दूसरी जो N2 है ना, N2 को आप सीधा ऐसे कर लो, मतलब इसका विदाउट डॉट वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दो और ये यहाँ पे कर दो, ठीक है। इस तरह से आप बना दो। तो ये आपका एक कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन में क्या होगा, आप ऐसे रखो, उसको उल्टा करो, डॉट वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर दो। देखो अब इसका जो डॉट वाला पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। फिर आप इधर सप्लाई रखो, सप्लाई को इधर रखो N2 की तरफ, ठीक है। और जो N1 वाली साइड है उसका विदाउट डॉट यहाँ पे कनेक्ट कर दो और ये सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। N1 है, N2 है। इसका फिर दूसरा जो विदाउट डॉट वाला नीचे किया था ना, अब विद डॉट वाला नीचे कर दो। तो ऐसे 4 कनेक्शन पॉसिबल है, जिनमें से एक कनेक्शन जो है वो आपको दिक्कत देगा। आप देख लेना कौन सा है। अब ऐसे में क्या पूछते हैं, आपसे पूछते हैं बताओ केवीए रेटिंग नई क्या बनेगी, नई केवीए रेटिंग क्या होगी, आपसे ये पूछ लेते हैं, ठीक है। वो आपको निकालनी होती है। दूसरा आपसे ये पूछते हैं कि दूसरा आपसे इसमें पूछेंगे कि ट्रांसफॉर्म्ड पावर क्या होती है और कंडक्टेड पावर क्या होती है। तो ट्रांसफॉर्म्ड और कंडक्टेड पावर कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं एक सिचुएशन लेता हूं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सोचिए कि ये सिचुएशन है हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिए लोड लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, ठीक है। मान लीजिए लोड ले रहा है 400 VA, इतना पावर ले रहा है। ये N1 है, ये N2 है, ठीक है। आपको बताना है इसमें ट्रांसफॉर्म्ड पावर कितनी है, ट्रांसफॉर्म्ड पावर कितनी है और कंडक्टेड पावर कितनी है। आपसे ये पूछते हैं कि जो पावर ये ले रहा है इसमें ट्रांसफॉर्म्ड पावर कितनी है और कंडक्टेड पावर कितनी है। तो आप क्या करोगे, सुनिए भाई, आपको ये वोल्टेज पता है कितनी है, तो आप यहाँ से करंट निकाल लोगे। भाई आपको V2 पता है तो I2 निकाल लोगे अपेरेंट पावर से। बोलिए भाई, I2 माने ये करंट आ गया, ये करंट आ गया, तो ये करंट भी आ जाएगा इसका। मैं मान रहा हूँ कि ये डॉट इधर है, एक में डॉट में एंटर कर रहा है तो दूसरे में डॉट से लीव करेगा।
I2 आ गया तो ये वाला करंट I1 भी आ जाएगा, सही है। तो अब आप ये देखो कि कोई भी एक कॉइल उठा लो, चाहे तो ये कॉइल उठा लो, चाहे ऊपर वाली कॉइल उठा लो, इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है बताओ? V1। और करंट कितना है इस कॉइल में? I1। तो V1 इंटू I1 जो होगी वो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड पावर होगी, वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जा रही है। कॉइल के क्रॉस निकाल लिया करो पावर कितनी है, एक कॉइल कितनी पावर एब्जॉर्ब करे, चाहे तो ये कॉइल देख लो चाहे ये कॉइल देख लो। आप बोलोगे सर इस कॉइल में कैसे देखें? भाई इस कॉइल में वोल्टेज बताओ इसके क्रॉस क्या है? करंट तो I2 है, इसमें वोल्टेज क्या है? टोटल वोल्टेज है V2, उसमें से V1 हटा दो तो क्या बचेगा? V2 माइनस V1। इसके क्रॉस ये वोल्टेज है तो V2 माइनस V1 इंटू I2 कर दो, ये इस कॉइल के क्रॉस पावर है। तो ये पावर ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जाएगी, इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड पावर बोलेंगे, ठीक है। और कंडक्टेड पावर क्या होगी? इसमें से माइनस कर दो बस ट्रांसफॉर्म्ड पावर को, कंडक्टेड पावर आ जाएगी। वो जो के वाला रूल होता है ना, एक टर्न रेशियो निकाल के और उससे करते हैं, ओ भाई भूल जाओ उसको, बेसिक तरीके से ध्यान रखो, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना इसमें, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर को ध्यान रख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट आइए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पैरेलल ऑपरेशन में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है और वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है इक्वल वोल्टेज रेशियो, जो पैरेलल में हम ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करते हैं ना, उनका वोल्टेज रेशियो इक्वल लेते हैं। और एक केस में अनइक्वल वोल्टेज रेशियो लेते हैं, अनइक्वल वोल्टेज रेशियो। जब आपका इक्वल वोल्टेज रेशियो होता है और जब आप उनको पैरेलल कनेक्ट करते हो तो आपका सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो करता, ठीक है। इक्वल वोल्टेज रेशियो बहुत आसान होता है, उसमें कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाऊं ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड, तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम होता है। ये आपका E2 हो गया और E2A हो गया और ये Z2A हो गया। ऐसे ही ये आपका Z1A हो गया और ये आपका E1A हो गया, ठीक है। दिस इज E1A और इनको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है और ये नीचे वाला पॉइंट भी एक जगह कनेक्टेड है। और अब मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि हमारा E2A और E1A बराबर है, क्योंकि टर्न रेशियो इक्वल है, पहले केस को बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपस में कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं करेगा। IC की वैल्यू आएगी 0, कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से जो करंट है वो मान लीजिए I आ रहा है और यहाँ से जो करंट है वो IB आ रहा है और दोनों का मिल के जो करंट आएगा वो I0 आएगा। अब सुनो, यहाँ की वोल्टेज है V0 मान लीजिए या V2 मान लो, तो टोटल पावर जो लोड को मिली है वो है V2 I0। अब इसमें से ट्रांसफॉर्मर A कितनी शेयर कर रहा है? ट्रांसफॉर्मर A शेयर कर रहा है V2 इंटू IA, V2 इंटू IA। और ऑब्वियसली इनका रियल पावर निकालनी है ना, एक्टिव पावर निकालनी है, तो एक्टिव पावर के लिए कोस ले लो इनके बीच का, ठीक है। V2 और IA के बीच का कोस देख लो, उसका वो कर लो। अगर अपेरेंट निकालनी है तो सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये जो पावर है ये शेयर्ड बाई ट्रांसफॉर्मर A है और ऐसे ही पावर शेयर्ड बाई ट्रांसफॉर्मर B क्या होगी? V2 इंटू IB। ये जो है ये पावर शेयर्ड बाई ट्रांसफॉर्मर B होगी। अब IA एंड IB को I0 की टर्म में लिख सकते हो पैरेलल डिवीजन के हिसाब से। मतलब देखो ये दोनों वोल्टेज बराबर ही हैं तो इनको भी आप एक जगह मिलमैन थ्योरम से आप ऐसे दिखा सकते हो भाई। अगर आपको सर्किट याद है ना तो आप सब कुछ कर लोगे, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज सेम हैं तो इनको आप एक ही जगह दिखा दो, इनको सीधा सीधा आप E2 दिखा दो बस, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास लोड है और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है हमारे पास V2। ये Z2A है, ये Z2B है, ये आपका IA है और ये आपका IB है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया? हमने इनको पैरेलल दिखा दिया और ये दोनों जो हैं बराबर करके E2 में दिखा दिया, सही है। अब सुनिए, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई अगर आपको सर्किट याद है तो फटाफट आप कर लोगे। दूसरी बात, यहाँ पे IA और IB को इन टर्म्स ऑफ I0 दिखा सकते हो और IA और IB को इन टर्म्स ऑफ S0 भी दिखा सकते हो। S0 क्या है? ये वाली पावर, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं SA इज पावर शेयर्ड बाय ट्रांसफॉर्मर A, तो क्या बनेगी? वो बनेगी S0 टोटल पावर जो इसको मिल रही है इनटू Z2B डिवाइड बाई Z2A प्लस Z2B, ये बनेगा दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए और ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट लेंगे भी, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स पावर की टर्म में दिखा रहे हैं तो ऐसे होगा। और अगर आप अपेरेंट पावर दिखा रहे हो तो इनका मैग्नीट्यूड लेना भाई, ठीक है, ये ध्यान देना, नहीं तो इसमें बड़ी मिस्टेक होती है।
एस बी बनेगा एस नोट इंटू Z1A, क्या लिखा मैंने, Z2A, टू मतलब सेकेंडरी साइड पे देख रहा हूँ मैं सारा ये ना, Z2A प्लस Z2B। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो पावर शेयर्ड बाय ट्रांसफार्मर ए है वो प्रोपोर्शनल है Z2B के, मतलब दूसरे ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस के प्रोपोर्शनल है। अगर उसका इंपीडेंस ज़्यादा होगा तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, ए वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक मिनट रुको, ये Z2A मैंने गलत लिख दिया क्या, ये ए है ये बी है, तो Z2B करो भाई यहाँ पे, और यहाँ पे भी Z2B करो। हाँ जी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो ट्रांसफार्मर है ये कब पावर शेयर ज़्यादा करेगा, जब Z2B ज़्यादा होगा, जब ये वाला ज़्यादा होगा। अगर इसका इंपीडेंस ज़्यादा है तो ये वाला ट्रांसफार्मर ज़्यादा पावर शेयर करेगा, और अगर ये इंपीडेंस ज़्यादा है तो ये वाला पावर शेयर ज़्यादा पावर शेयर करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे SA एंड SB को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको S नोड मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जोड़ते टाइम इनका अपना एक एंगल होगा, अपना एक फेज होगा, फेज के साथ जोड़ना है। और फेज कैसे निकालोगे, जब आपने पावर निकाली है ना, अपेरेंट पावर, तो आपने सिंपल इनके RMS वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया, आप इनके फेज को भी देखिए, ये असल में कॉम्प्लेक्स पावर है भाई, ये असल में कॉम्प्लेक्स पावर है। तो कॉम्प्लेक्स पावर है तो ऐसे का जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, S नोट की वैल्यू पुट करो और फिर यहाँ पे इंपीडेंस की वैल्यू पुट करो और उसका कॉन्जुगेट लो, उससे इनका एंगल निकल के आएगा, और एंगल से आपको फिर ऐड करना है, तब जाके आपके पास टोटल पावर आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है सुनिए, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में S नोट और ये दोनों तो बराबर ही है, डिनोमिनेटर इसका और ये S नोट, ये बराबर, सिर्फ Z2B है, यहाँ पे Z2A है। अगर मैं ये बोलूँ कि Z2B का जो एंगल है वो Z2A के एंगल के बराबर है, और मैग्नीट्यूड वाइज भी बराबर है, भाई वोल्टेज तो पहले ही हमने बराबर कर दी ना। अब मैं इंपीडेंस की बात कर रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर है और फेज भी बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि SA और SB दोनों बराबर आएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज भी और फेज वाइज भी। इसका जो फेज होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सिमिलरली इसका जो फेज होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो दोनों बराबर होंगे। सही बात है। तो आप क्या कर सकते हो, टोटल अपेरेंट पावर को एल्जेब्राइक एडिशन से दिखा सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई एक ज्यादा है दूसरे से लेकिन उनका फेज बराबर है, फेज बराबर है तो हमेशा याद रखिए एल्जेब्राइक एडिशन कर सकते हो, टोटल पावर निकालने के लिए एल्जेब्राइक एडिशन कर सकते हो अगर फेज बराबर है तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है भाई, जैसे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो पावर डिफरेंट आएगी ऑब्वियसली, बट उनका जो फेज आएगा वो बराबर आएगा, तो आप टोटल पावर निकालने के लिए उनका एल्जेब्राइक एडिशन दिखा सकते हो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आगे चल के बात करते हैं, और वो अनइक्वल वोल्टेज रेशियो की बात करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, फेज बराबर नहीं होता, यहाँ पे फेज भी बराबर नहीं है और मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो जो SA एंड SB है उनका एंगल भी बराबर नहीं आएगा और मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं आएगा, तो टोटल पावर निकालने के लिए फिर आपको वेक्टर एडिशन, फेजर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अनइक्वल वोल्टेज रेशियो की, तो चलिए अनइक्वल वोल्टेज रेशियो को भी एक बार देख लेते हैं। अनइक्वल वोल्टेज रेशियो में आपको एक दो फॉर्मूले हैं वो याद रखने पड़ेंगे, और वो मैं आपको करवा देता हूं। अनइक्वल वोल्टेज रेशियो, वैसे ये पूछते नहीं है, अनइक्वल वोल्टेज रेशियो वाला कोई ज़्यादा खास कभी पूछा नहीं गया, इक्वल वोल्टेज रेशियो वाला ज़्यादा पूछते हैं। तो अनइक्वल वोल्टेज रेशियो में आप ये दो ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, यह E2A, यह E2B, Z2A, Z2B, ये इसमें क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये वोल्टेज बराबर नहीं है तो यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है IC, ये टोटल करंट है I नोट। अब I नोट जो करंट है उसमें ऑब्वियसली ये करंट भी आ रहा है और ये करंट भी आ रहा है, दोनों मिलके आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये करंट है IA और ये करंट है IB जो इसमें शेयर हो रहे हैं, IA प्लस IB, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है सुनिए, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे ना I एंड IB में, तो आपको ट्वाइस ऑफ IC नजर आएगा। आप बोलोगे सर क्यों, भाई आप खुद सोचो कि भाई नहीं, ये भी थोड़ा ठीक नहीं है, सही बताऊं तो
जरा आप देखिए, मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। देखो जो सर्कुलेटिंग करंट है ना, ये इसमें उसी डायरेक्शन में जिसमें ये लोड करंट भी जाएगा, उसी डायरेक्शन में सर्कुलेटिंग करंट है। जबकि इसमें देखो, इसमें जो सर्कुलेटिंग करंट है वो जिधर लोड की पावर जा रही है, लोड का करंट जा रहा है, उसके ऑपोजिट है। तो एक में सर्कुलेटिंग करंट ऐड होता है एक ब्रांच में, और एक ब्रांच में सर्कुलेटिंग करंट सब्ट्रैक्ट होता है। इसलिए करंट दोनों के इक्वल नहीं होंगे। पहली बात तो अगर मैं सर्कुलेटिंग करंट की बात करूं तो वो बनेगा, मान लीजिए E2A बड़ा है E2B से, तो ये जो होगा ये हमारा सर्कुलेटिंग करंट होगा एट नो लोड। एट नो लोड, अगर कोई लोड नहीं लगा रखा, हमारे पास कोई लोड ही नहीं है, ZL ओपन रखा हुआ है, उस केस में सर्कुलेटिंग करंट ये होगा। लोड लगाने से सर्कुलेटिंग करंट बदल जाएगा। नया जो सर्कुलेटिंग करंट आएगा वो क्या आएगा, पहले मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले IA, इसका फॉर्मूला याद रखिए भाई IA का, ठीक है। IA की जो वैल्यू होगी वो होगी टोटल करंट I नोट इंटू, जो ये करंट है I नोट, इंटू ZEB डिवाइड बाई ZEA प्लस ZEB। E मतलब यहाँ पे 2 लिख लो, कुछ नहीं करना, ठीक है। 2 मतलब सेकेंडरी साइड मैंने निकाला है, ठीक है, ये कर लो भाई। अच्छा, प्लस क्या लिखोगे, EA माइनस EB डिवाइड बाई, ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, एक दूसरा एक्सप्रेशन होगी, रुको भाई, ये मैंने, चलो ये भी लिख लो बिकॉज ये भी ठीक है, लेकिन ये इससे आप वो नहीं निकाल सकते हो, तो वो एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। IA की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी EA डिवाइड बाई ZEA प्लस ZL, ZEA प्लस ZL प्लस ZL इंटू ZEA, E की जगह 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई ZEB प्लस EA माइनस EB डिवाइड बाई ZEA प्लस ZEB प्लस ZEA ZEB डिवाइड बाई ZL। ये ध्यान रखना है, हालांकि कभी पूछा नहीं गया, ठीक है, कभी पूछा नहीं गया। ये है एक्चुअल में सर्कुलेटिंग करंट। तो देखो जब नो लोड होगा तो ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी और सिंपली यही आपका बन जाएगा नो लोड पे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोड लगाओगे तो सर्कुलेटिंग करंट भी बदलेगा। लोड पे कैसे डिपेंड कर रहा है सर्कुलेटिंग करंट, देखो आप ये ZL आ रखा है डिनोमिनेटर में, तो लोडिंग कंडीशन में सर्कुलेटिंग करंट अलग होता है, ये होगा टोटल IA। ऐसे आप I भी लिख लो भाई, जहाँ पे ZEA है वहाँ पे ZEB कर दो बस, और जहाँ पे ZEB है वहाँ ZEA कर दो, ZL को यूँ का यूँ रखो बस। तो सेम एक्सप्रेशन इसमें हम यूज़ करेंगे, एक ही जगह B कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। E बोलो या 2 बोल दो, यहाँ पे 2 मतलब सेकेंडरी साइड है ये, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना भाई, ये आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सर्कुलेटिंग करंट निकाल सकते हो कि भाई कितना सर्कुलेटिंग करंट होगा और टोटल करंट कितना शेयर करेगा। ये टोटल करंट कितना शेयर कर रहा है, ये टोटल करंट कितना शेयर कर रहा है। इस टोटल करंट में सर्कुलेटिंग करंट भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। इस टोटल करंट में ये वाला पार्ट जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मर में जा रहा है, ये वाला पार्ट जो है सर्कुलेटिंग पार्ट है, क्योंकि वोल्टेज रेशियो इक्वल नहीं ना है, तो कटेंगे नहीं। सही है भाई, समझ आया। तो ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है। वैसे इसके ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इक्वल वोल्टेज रेशियो पे, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर का एक तरह से पूरा रिवीजन। अब आइए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या पूछते हैं, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन, और उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको बस डॉट कन्वेंशन फॉलो करना है, डॉट कन्वेंशन फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। मतलब एक तरफ दे देंगे स्टार, एक तरफ दे देंगे डेल्टा। आपको बस एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या है जरा देख लीजिए, वो थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। और यहाँ पे कोई लोड लगा देंगे, ठीक है, कोई लोड लगा देंगे और आपसे इधर का करंट पूछ लेंगे कि बताओ इधर का क्या करंट आएगा, ठीक है। हाँ जी सर, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो सर्किट बना के, अगर फॉर्मूला याद ना रहे पैरेलल ऑपरेशन का, तो सर्किट बना के KVL KCL लगा के सर्किट बना के सोल्व कर लो भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। सर्किट बना के KVL, अनइक्वल तो खैर पूछते नहीं, इक्वल पूछते हैं, तो आप इसको सर्किट डायग्राम बना लो बस, और उसके बाद सोल्व करते जाओ, उसमें कुछ है ही नहीं, नेटवर्क थ्योरी आनी चाहिए बस आपको, ठीक है। जरा देखिए भाई, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है, जैसे ये डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर आ गया।
अब हमने यहाँ पे लोड लगा दिया, आपसे पूछेंगे भाई ये करंट दे दिया है, ये पूछेंगे आपसे ये करंट क्या आएगा। तो ऐसे में जब आपको सोल्व करना होता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कॉइल है ये इसके साथ कपल्ड होती है। जो ऐसे टर्न रेशियो दिया होता है ना, वो लाइन वोल्टेज का रेशियो नहीं होता, वो फेज वोल्टेज का रेशियो होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो कॉइल है एक फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये कॉइल इसके साथ कपल्ड है, ये कॉइल इसके साथ कपल्ड है, और ये कॉइल इसके साथ कपल्ड है। सेम ज्योमेट्री देखो ना, मतलब उनका जो इंक्लिनेशन है, जो ओरिएंटेशन है, उसको देख लिया करो कि सेम सेम कौन सा है। ये कॉइल इसके साथ है, ये कॉइल जो है इसके साथ है, और ये कॉइल जो है इसके साथ है, सिंपल। तो इनमें ये टर्न रेशियो अप्लाई करना है। एक तरफ डॉट से करंट निकल रहा है, मान लीजिए आई नॉट, तो दूसरी तरफ से डॉट में करंट मतलब डॉट में एंटर कर रहा है कॉइल करंट, तो दूसरी तरफ डॉट से लीव करेगा। कितना लीव करेगा वो टर्न रेशियो से निकाल लो, ठीक है। जैसे इधर आई नॉट है तो इधर 2 आई नॉट हो जाएगा, सही है। ऐसे ही आपको अगर ये वाला करंट पता चल गया I1, ठीक है, ये डॉट में एंटर कर रहा है इधर, तो इधर डॉट से लीव करेगा, और ये I1 है तो ये हो जाएगा 2I1, टर्न रेशियो से देख लो, और फिर यहाँ पे KCL लगा के ये वाला करंट निकाल लो। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या करना है, आपको डॉट कन्वेंशन को फॉलो करना है। बिना डॉट के आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसमें यही पूछता है कि भाई एक तरफ का ये है तो दूसरी तरफ क्या होगा। दूसरा इसमें एक और चीज़ भी पूछी जाती है, 2 ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में लगा देंगे 3 फेज के, ठीक है। जरा देखिए कैसे, भाई एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो ऐसे है, ठीक है, ये कोई 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है मान लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट निकाल लिया, यहाँ से एक पॉइंट निकाल लिया, और यहाँ से एक पॉइंट निकाल लिया। ऐसे ही एक और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। मतलब एक एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। एक कनेक्शन यहाँ से निकाल दिया, एक कनेक्शन यहाँ से, और मान लीजिए एक कनेक्शन यहाँ से निकाल दिया, और दूसरी तरफ जो है वो स्टार में है, और ये ग्राउंड कर दिया। ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज डिफरेंस पूछ रहा है। इधर की वोल्टेज दे रखी है, जो ये कनेक्शन दे रखे है ना, इनकी वोल्टेज मान लीजिए आपको दे रखी है, ठीक है। ये वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है जी। ये वोल्टेज आपको दे दी है, ये ग्राउंडेड है मान लीजिए, और इन दोनों के बीच की वोल्टेज पूछ ली। तो आप कैसे करोगे भाई, आप ये देखो कि इन कॉइल्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, इनके अक्रॉस निकाल लो। ऐसे ही इन कॉइल्स के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो, और डॉट को फॉलो करो, डॉट से हमें पोलैरिटी पता चलेगी। इनके अक्रॉस वोल्टेज आ गई, इन कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज आ गई, तो आप यहां की वोल्टेज को निकाल सकते हो, ठीक है। ये वोल्टेज आप निकाल सकते हो, ये वोल्टेज आप निकाल सकते हो। पोलैरिटी डॉट पे सेम रखनी पड़ेगी, जो पोलैरिटी इधर होगी डॉट पे वही पोलैरिटी उधर भी रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 है तो 0 के रिस्पेक्ट में आप ऊपर चढ़ो और यहाँ की वोल्टेज निकाल लो, ऐसे KVL लगाते टाइम। फिर 0 से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ जाओ और यहाँ की वोल्टेज निकालो KVL लगाते हुए। तो उन दोनों पॉइंट की वोल्टेज आ जाएगी, और फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। तो एक तरह से 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में भी कहानी जो होती है वो बड़ी सिंपल होती है। वो बस आपको ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस को ध्यान रखना होता है, डॉट को ध्यान रखना होता है। अगर आपको डॉट ध्यान है और कनेक्शंस ध्यान है तो वो आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कपल्ड कैसे देखते एक बार और बताइए प्लीज। कपल्ड के लिए ज्योमेट्री देखा करो। जैसे वर्टिकल कॉइल है ना, ये वर्टिकल का वर्टिकल के साथ कपल्ड होगी। ऐसे है तो ऐसे जो होगी कॉइल, मतलब जो तिरछी इसी एंगल पे होगी उसके साथ कपल्ड होगी। ये जो कॉइल है ये इसके साथ कपल्ड होगी। देखो दोनों पैरेलल है ना, तो इस तरह से देखा करो। अगर ऐसा डायग्राम दे रखा है तो जो ये कॉइल है ये इसके साथ कपल्ड होगी, ये कॉइल जो है इसके साथ कपल्ड होगी, ये कॉइल इसके साथ कपल्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कपल्ड को। तो कपल्ड में तो कुछ है ही नहीं भाई, बोलिए समझ आया? अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ट्रांसफॉर्मर से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर रिवाइज करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सिंक्रोनस मशीन के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। तो देखो सिंक्रोनस मशीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर, मोटर भी और ऑल्टरनेटर भी, ऑल्टरनेटर भी। अब इसका अगर आपको ये सर्किट डायग्राम याद रहेगा ना तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती हैं वो सर्किट डायग्राम पे ही होती हैं। देखिए ये है मेरे पास EF
और यहाँ पे है मेरे पास VT, टर्मिनल वोल्टेज है VT, ये है RA और ये है JXS। आप इसको कंबाइन करके सिंक्रोनस इंपीडेंस बोल सकते हो ZS, बट जनरली RA को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम में आप देखना RA जो है वो नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। क्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लॉक डायग्राम, उनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। डॉट कनेक्शन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अगर वो याद है देन यू कैन ईजिली सोल्व, ठीक है। तो डॉट वाले ध्यान रखना है। अब जरा देखिए सिंक्रोनस मशीन में सिलेंड्रिकल रोटर जो मशीन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन पे होते हैं, मोटर एंड ऑल्टरनेटर बेस। तो अब उनके लिए आपको क्या करना है, ये सर्किट डायग्राम ध्यान रखना है, ठीक है। ये EF है, ये VT है, EF एंगल 0 और VT एंगल डेल्टा। सबसे पहला चीज़ होती है इसमें फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे देखेंगे जरा देखो। अगर मैं ऑल्टरनेटर को दिखा रहा हूँ तो ऑल्टरनेटर मान लीजिए VT है, टर्मिनल वोल्टेज है VT, और इसे करंट लैग कर रहा है IA, ठीक है, कुछ थीटा एंगल लैग कर रहा है। तो VT प्लस JIXS क्या हो जाएगा, EF। ऑल्टरनेटर में हमेशा EF जो है वो VT से एंटी क्लॉकवाइज होता है। हाँ जी सर, सिंक्रोनस के हर सवाल में पर यूनिट के कन्वर्ट करें, फुल लोड रेटेड के केस में तो करके बन जाता है, पर बाकी लोड पर कैसे करें, मैं समझा नहीं। सिंक्रोनस के हर सवाल में पर यूनिट के कन्वर्ट कैसे करें फुल लोड में। पर यूनिट कन्वर्ट करना बहुत आसान है भाई, आपको बस रेटेड उसकी रेटिंग दे रखी होगी, उस रेटिंग पे पर यूनिट में कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। पर यूनिट तो ज़्यादा इश्यू नहीं है। जरा देखो भाई, ये VT है, ये 0 डिग्री पे दिखा दिया, इसको मैं 0 डिग्री बोल रहा हूँ, ये मेरा करंट लैग कर रहा है कुछ थीटा एंगल, ये एंगल क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटर का फेजर डायग्राम होगा, क्योंकि EF जो है वो VT से एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप यहाँ पे KVL लगाओगे तो आप ये कह सकते हो VT प्लस JIXS इज इक्वल टू EF है, ठीक है। ऐसे मोटर में क्या होगा, मोटर में कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। मोटर में करंट क्योंकि उल्टा आता है, बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो मोटर में इधर हम EF दिखाएंगे और उसमें JIXS करके, और फिर हम यहाँ पे VT को दिखाएंगे। ये VT है और इसके 90 डिग्री पे ये IA है, ठीक है। तो EF प्लस JIXS और ये बनेगा VT और ये एंगल डेल्टा बनेगा। मतलब उसमें मोटर में क्या होता है, मोटर में VT आपको फेजर डायग्राम ध्यान है तो आप 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लोगे। इसमें कुछ है ही नहीं, और कुछ इसमें है ही नहीं। आपको बस जो भी सिचुएशन दे रखी होती है उसके हिसाब से फेजर डायग्राम बना लो और उसके बाद उसको सोल्व करो। डेल्टा पावर एंगल है या लोड एंगल है, कुछ भी बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है। पावर और लोड का मतलब पावर ही होता है, ठीक है। तो उसको आप कुछ भी बोलो, लोड एंगल बोलो, पावर एंगल बोलो, अभी के लिए आप उसमें डिफ्रेंशिएट मत करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से करोगे इसको, ठीक है। हाँ जी, फिलहाल बोथ आर सेम लेके चलना है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं, अपने को टेंशन लेनी ही नहीं, वैसे दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। सर डार्क लैंप इंपॉर्टेंट, सिंक्रोनस इंपॉर्टेंट तो है बट कभी कभार पूछा गया, 1-2 बार पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आते हैं वो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन के ऊपर आते हैं, 80% ऑफ प्रॉब्लम यहाँ से आती है, ठीक है। मैं आपको फटाफट जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास 5 ही मिनट है, तो सो दैट आप जो है ना उनको रिवाइज कर सको। मैं इसको शायद सारा रिवाइज ना करा पाऊँ, तो लेकिन आपको मैं टॉपिक बताता हूँ फटाफट कौन कौन से रिवाइज करने सिंक्रोनस मशीन में। एक तो आपको रिवाइज करना है ऑल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऑल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन और मोटर में भी, ठीक है, दोनों को आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ, पोर्टियर ट्रायंगल आपको रिवाइज करना है, पोर्टियर ट्रायंगल, ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ आप, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, हाँ वो है पावर, ठीक है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पावर, ठीक है। तो 1 मिनट, पावर फ्लो ध्यान रखना है भाई, ठीक है, पावर फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर रिएक्शन में क्या रिवाइज करें, आर्मेचर रिएक्शन में बस ये रिवाइज करो कि लोड जो है इंडक्टिव है तो मैग्नेटाइजिंग होगा कि डीमैग्नेटाइजिंग होगा, कैपेसिटिव है तो कैसा होगा, ठीक है, रेजिस्टिव लोड है तो कैसा होगा, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। पावर फ्लो में आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड पे निकालनी आनी चाहिए भाई, वो रिवाइज करना है। दूसरा आपको जो है ना इसमें आपको रिवाइज करना है पावर फैक्टर कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, पावर फैक्टर कंट्रोल जिसमें वी कर्व्स वगैरह बनते हैं, जिसमें हम एक्टिव पावर को कांस्टेंट कर देते हैं,
पावर फैक्टर कंट्रोल, इसको भी करना है भाई, पावर फैक्टर कंट्रोल को, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वी कर्व्स वगैरह बनाएंगे और वी कर्व्स की हेल्प से हम देखेंगे कि भाई किस कंडीशन में कितना पावर फैक्टर आ रहा है और कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद आपकी ये दूसरी मशीन आ जाती है और जिसको हम बोलते हैं सैलिएंट पोल। सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल मशीन में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन एंड रिएक्टिव पावर एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि सैलिएंट पोल में एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, आपको इसका फेजर डायग्राम जरूर ध्यान देना है, उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। इसके फेजर डायग्राम में खासकर इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। सिंक्रोनस मशीन स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं, पैरामीटर को देखते हैं। सिंक्रोनस मशीन स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी का मतलब तो आपने पावर सिस्टम में भी स्टेबिलिटी पढ़ी है, वही स्टेबिलिटी हमारी यहाँ पे भी है सिंक्रोनस मशीन पे। ऑल्टरनेटर बोलो चाहे मोटर बोलो, स्टेबिलिटी तो एक ही चीज़ है ना भाई, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। वैसे आपको अगर स्टेबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए उसमें कई सारी चीज़ें होती है, जैसे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे कितना सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट है वो आपको कैलकुलेट करना होता है। दूसरा, हंटिंग देखनी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है, ठीक है। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको बस आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। और जरा देख लेता हूँ मैं, बाकी इसमें कोई खास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ आप जरूर पढ़ेंगे भाई। आर्मेचर रिएक्शन को कवर कीजिए, पोर्टियर ट्रायंगल को कवर कीजिए, पावर फ्लो को कवर कीजिए। इनको रिवाइज कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं इनको रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, लेकिन इनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए भाई, क्योंकि इन्हीं पे सारी प्रॉब्लम इन्हीं पे बेस्ड है। 95% जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं टॉपिक से आए हैं, ठीक है। हाँ जी, वी कर्व स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। वी कर्व स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, तो पावर फैक्टर कंट्रोल में देखते हैं। उसमें एक्टिव पावर हमारी कांस्टेंट होती है और ईएफ को हम वेरी करते हैं। तो जब आप एक्टिव पावर को कांस्टेंट रखते हुए ईएफ को वेरी करते हो तो आपका जो आईएफ है वो वेरी करता है, ठीक है। तो उस तरह से देखते हैं। प्रखर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। अब 2 मिनट में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको कि ये कैसे देखते हैं, समझ रहे हो। सारी चीज़ें कवर की हैं, आप उनको रिवाइज कर लो, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को रिवाइज कर लो, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी मैं एक बार सर से पूछता हूँ, आशुतोष सर से, क्योंकि मेरा सेशन अभी ओवर हो गया, 1 घंटे का मुझे स्लॉट मिला था, ठीक है। एंड आशुतोष सर से मैं बात करता हूँ एक बार कि सर रेडी है कि नहीं है। 1 मिनट रुकिए भाई। तो ये टॉपिक मैंने बता दिया भाई, और ट्रांसफॉर्मर में भी मैंने फटाफट बता दिया क्या करना है। तो देखो, ज़्यादा फॉर्मूले की कहानी नहीं है, मेन कहानी जो है ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो एक बार सर को थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने ये पूछा, ये वी कर्व्स वाला पूछा, तो यही मैं बता देता हूँ आपको, सो दैट आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ज़रा देखो, जो पावर फैक्टर कंट्रोल होता है, जैसे मान लीजिए मैं मोटर की बात करूँ, ठीक है, या ऑल्टरनेटर की बात करूँ। ज़रा देखिए, ये हमारा वीटी है ऑल्टरनेटर में, और मान लीजिए जो लोड है वो ये लिया जा रहा है आईए, ये हमारा है थीटा, ठीक है। तो आईए इधर है, वीटी इधर है, तो आईए कोस ये जे आई एक्सेस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जे आई एक्सेस इधर आएगा। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ईएफ, ये बनेगा ईएफ, ये एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूंगा तो क्या बनेगा, ईएफ वीटी बाई एक्सेस साइन डेल्टा, ये बनेगा भाई ये हमारा एक्टिव पावर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वीटी इंटू आई ए कोस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। और क्योंकि ये हमें कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ये हमें कांस्टेंट रखना है, वीटी को जनरली हम कांस्टेंट मानते हैं, वीटी हमारा कांस्टेंट है, वीटी हमारा कांस्टेंट है, तो और एक्सेस भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि यहाँ से ईएफ साइन डेल्टा जो है
वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा IA cos थीटा जो होना चाहिए वो भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट रहेंगे तभी आप क्या कर पाओगे बताओ, तभी आप बोल सकते हो कि भाई जो हमारी एक्टिव पावर है वो कांस्टेंट रहेगी। सही है भाई, तभी आप बोलोगे कि एक्टिव पावर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखो IA cos थीटा कहां पे होगा, IA cos थीटा ये होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा IA cos थीटा, ठीक है। IA cos थीटा ये लेंथ बनेगी, ठीक है। और EF साइन डेल्टा क्या होगा बताओ जरा, वो ये प्रोजेक्शन होगा, ये जो लेंथ है ये EF साइन डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा ये एंगल होगा ना, EF साइन डेल्टा ये बनेगी। इसका मतलब EF की जो टिप है वो इस लाइन पे वेरी करेगी, EF की जो टिप है वो इस लाइन पे आप वेरी करोगे, और IA जो है वो IA की जो टिप है वो इस लाइन पे वेरी करेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, सो दैट पावर कांस्टेंट रहे, ठीक है, पावर तो तभी कांस्टेंट रह सकती है ना भाई जब ये कंडीशन होगी। EF जो है, EF की टिप इस लाइन पे मूव करनी चाहिए और IA की टिप इस लाइन पे मूव करनी चाहिए। मान लीजिए मैं EF को वेरी कर रहा हूं, अब ऑल्टरनेटर के अंदर EF को वेरी कर रहा हूं। अब EF को वेरी करना बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना, DC सप्लाई जो है ऑल्टरनेटर में उसको चेंज करना होता है। तो जब आप EF को वेरी करोगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम ज़्यादा होगा। सोचिए वो कम हो गया, हमने उसको कम कर दिया, इतना कर दिया। VT हमारा कांस्टेंट है, EF को हमने कम कर दिया, EF को अगर कम कर दिया तो क्या होगा, ये VT है, ये EF है, VT वहीं पे है, EF हमने कम कर दिया ऑल्टरनेटर का, तो JI एक्सेस इधर आ जाएगा। अगर JI एक्सेस इधर आ गया तो IA किधर आएगा, IA इसका मतलब इधर आएगा, फिर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। IA इसका मतलब किधर आएगा, इस तरफ आएगा, IA यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने देखो पावर फैक्टर को वेरी कर दिया ना, लैगिंग से आप लीडिंग पे आ गए, पहले लैगिंग करंट था, अब करंट क्या हो गया, लीडिंग हो गया। सोचिए आप EF को यहां तक ले आते हो, अगर आपने EF को यहां तक ले आया, कम करके यहां तक ले आया, तो ये फिर JI एक्सेस बनेगा और IA किधर हो जाएगा, IA बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इससे आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी बन जाएगा। इसका मतलब है ऑल्टरनेटर में हम EF को वेरी करके पावर फैक्टर को वेरी कर सकते हैं, अगर हमारी एक्टिव पावर कांस्टेंट है तो। मतलब प्राइम मूवर की जो पावर है वो अगर हम कांस्टेंट रखें तो हम EF को वेरी करके पावर फैक्टर को वेरी कर सकते हैं ऑल्टरनेटर के, ठीक है। और EF को वेरी करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अब इसी से वी कर्व्स बनते हैं, इसी से वी कर्व्स बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो EF को कैसे वेरी करते हैं, फील्ड जो इंड्यूस्ड EMF होता है कॉइल में उसको कैसे वेरी करते हैं भाई, जरा अगर आप ऑल्टरनेटर को देखोगे तो ऑल्टरनेटर में ऐसे होता है, परमानेंट मैग्नेट जो है वो मूव करती है नॉर्थ और साउथ। अगर हम इसकी फील्ड सप्लाई को चेंज कर दें, मतलब हम IF को वेरी कर दें तो EF वेरी करेगा, ठीक है। तो एक तरह से IF को बढ़ाओगे तो EF भी बढ़ेगा भाई। EF का अगर आप एक्सप्रेशन देखते हो तो होता है √2 पाई एफ एन फेज फाई पर पोल KW इज वाइंडिंग फैक्टर। तो ये जो है ये हमारा EF है। इसको वेरी करने के लिए आपको फ्लक्स पर पोल को चेंज करना होगा और फ्लक्स पर पोल को चेंज करने के लिए IF को चेंज करना होगा। तो एक तरह से EF को वेरी करने का मतलब IF को वेरी करना, और जब EF वेरी करेगा तो IA भी वेरी करेगा। तो अगर मैं एक कर्व प्लॉट करूं IA वर्सेस IF तो उससे हमारे पास जो बनते हैं वो V कर्व्स बनते हैं, उससे हमारे पास V कर्व्स बनते हैं। V कर्व्स भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि V कर्व्स से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप पावर फैक्टर को कंट्रोल करते हो, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें पावर फैक्टर को निकालना होता है कि भाई EF को मैंने डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो नया पावर फैक्टर क्या आएगा, कीपिंग पावर कांस्टेंट। तो आपको बस फेजर डायग्राम बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, जिसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया है तो इसको रिवाइज कर लो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पंगे मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है समझना। पहले से पढ़ रखा है तो आप जो है ना अच्छे से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आशुतोष सर रेडी हैं भाई, ठीक है। मैं एक बार सर को फिर से एक बार मैसेज कर देता हूँ। आशुतोष सर आपको रिमेनिंग पार्ट रिवाइज कराएंगे, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन का जो मैंने रिवाइज करवाया है, जितनी चीज़ मैंने बताई है उतना चीज़ आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं सारा नहीं करवा पाया बिकॉज ऑफ इतना कम टाइम में इतना सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार मैं सर से पूछ लेता हूँ।
Now it is audible. So hello friends, welcome again, and I'm going to talk about the rest part of the machines. Ashu sir was discussing transformers and synchronous machines, and before that I was talking about power system. See, before I start and before I continue for the rest of the part of the machine, that is DC and induction machine, it is important to understand what is the agenda, why we are doing this session, and how it is going to be helpful for your gate examination. See, one thing you have to accept as a fact that in 1 hour it is very difficult to complete the whole syllabus of any subject. So definitely we have to pick and choose. But whatever we pick, it is important that we discuss it in such a way so that if you get a question, if you get a related concept, then you are able to handle it. Say yes or no. So let's start with DC machines. First, we are going to talk about DC machines, then we'll talk about induction. So if you talk about DC machine, some basic details first I will discuss, and then we'll talk about some important formulas also. If you talk about any machine, forget about DC machine. If you talk about any machine, machine means any machine. I am talking about electrical machine. So it may act as a generator or it may act as a motor. Generator means we are converting the mechanical power to the electrical power. And motor means we are converting the electrical power to the mechanical power. Now, if you talk about DC machines, out of these machines we can define DC machines and AC machines in general. DC machine and AC machine. How we are defining DC machine and AC machine? If the output terminal, in terms of generator, if we are talking, if the output terminal is having DC voltage and DC current, then it is going to be DC machine. So DC voltage and current at the output terminal, then we are saying it is DC machine. If you are having AC voltage and AC current at the output terminal in terms of generator, then it is AC machine. Now let us come back, one step back. Whether it is DC machine or whether it is AC machine, the voltage or the current in the armature winding is always going to be alternating, okay? So always going to be alternating. It means in general we can say that all machines have AC voltage and current in the armature winding. It means if I want to have a DC machine, this DC machine is going to be a combination of AC machine plus something that is commutator. Sir, what is this commutator? This is important to understand. DC machine, and this is the reason DC machines are also called as commutator machines. So commutator is basically a rotating rectifier, a rotating mechanical rectifier which converts AC to DC and DC to AC. I hope you are getting this. There is one more important function performed by this commutator, and that important function is that it keeps the armature flux stationary in the space. Now, second point may not be clear to all of you. So let me just give you some idea. Suppose this is your armature, and suppose these are field poles. These are field poles.
So these are going to be field poles. Suppose the windings are like this. These are the field windings. These are the field windings. Now suppose the flux of this main field or main field flux is going to be something like this. The main field flux is something like this. So what should be the direction of current in the field winding? What should be the direction of current in the field winding to have this as the field flux? The field flux having direction, suppose this is north and this is south. How we are defining north and south? Simple rule, simple rule. Whenever the magnetic flux is going from core to air, we call it north pole. And when the flux is going from air to core, we call it south pole. So because we are showing the flux is going from core to the air gap, so it is north pole. This side the flux is going from air to the core, so it is south pole. So if you want to have this direction of flux, what should be the direction of current? What should be the direction of current in the field windings? So we'll apply simply the right hand thumb rule. So if you move your fingers in the direction of current, right hand thumb is going to give you the direction of flux. So it means the current must be coming from this side and going into this side. Current is coming from this side out of the plane of the board and going into this side. Apply the right hand thumb rule, you will get the direction of main field flux. Now this armature is going to have brushes. Why brushes are required? Brushes are required to take the armature current to the output terminal or to take the current from the output terminal to the armature. Both the ways in terms of generator and motor. Both the ways in terms of generator and motor. So these are brushes. Okay. Now I am going to show you the armature conductors. Suppose these are armature conductors. These are armature conductors. Okay, randomly I am showing. How to get the direction of induced current? How to get the direction of induced current in the armature? Suppose the armature is rotating in this direction. Suppose the armature is rotating in this direction. If the armature is rotating in this direction, it means if you see the mechanical torque is going to be something like this. The mechanical torque is going to be something like this. Yes or no? This side it is coming down and this side it is coming up. Always remember, whenever you have to find the direction of induced EMF, for the generator, we are interested. For the generator, we are interested in the direction of induced EMF. Direction of induced EMF. Now, in order to get the direction of induced EMF, we use the Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. Sir, what is Fleming's right hand rule? It says if you keep your index finger in the direction of flux, and if you keep your thumb in the direction of force, torque, or the movement, then your middle finger or central finger gives the direction of induced EMF and thereby the induced current. So I am going to use my right hand. Just the direction of main field flux, you have to keep your index finger. What is the direction of movement, torque, for these conductors? Upside. So your right hand middle finger goes into the plane of the board. Into the plane of the board means the direction of current is going to be cross.
Yes or no? If you do this for these conductors under the south pole, I am placing my right hand index finger in the direction of mean field flux, thumb in the direction of movement or the torque, that is downwards. The central finger or the middle finger comes out of the plane of the board. So these are going to have dots. These are going to have dots. So if you see the direction of armature flux in general, the direction of armature flux is going to be downwards. So the direction of armature flux is like this. So this is going to be your direction of armature flux. Now if you see the angle between the direction of main field flux and armature flux, it is always 90 degree. It is always 90 degree. It is always 90 degree. This angle we are calling as load angle. So the load angle is 90 degree always for DC machines. Always for DC machines. It is always 90 degree. Now, if we want to have generator operation or the motor operation, it is important that the main field flux north to south and the armature flux top to bottom, they should be stationary with respect to each other. They should be stationary with respect to each other. Arif, you will get the detail. Karthik, what you are saying, reactive power, you're talking about my session or Ashu Jhangra sir's session? Maybe I think sir was talking about synchronous machines. Yes or no? Everybody just tell me, are you able to follow this? Are you able to follow this? So load angle is going to be 90 degree. So what is the commutator action? The commutator action is that always all the conductors under the north pole, they are having cross polarity, and all the conductors under the south pole, they are having the dot polarity. Whatever conductor is going to come from north pole to south pole, it means under the influence of north pole to under the influence of south pole, automatically its current direction is completely reversed. And this process of complete reversal of current in the armature conductor, we are defining as commutation. Everybody tell me, are you getting this? Yes, reactive power, you have sign. Okay. It is E cos del minus V bracket multiplied by V upon X. Okay. Okay. So let us come back. Otherwise, we will get confused. So we are talking about DC machines. So what I was telling you that in case of DC machines, rotating armature is required. Rotating armature is required. Why rotating armature is required? If armature is not rotating, then commutator action is not possible. If commutator action is not possible, then how your machine is going to function? So for the commutator machine or the DC machine to have the commutator action, it is important to have the rotating armature. And this is the reason in case of DC machines, the field winding is always kept on the stator, and the armature winding is always kept on the rotor. Is it clear for everybody? Tell me yes or no. Is it clear, everybody? Tell me yes or no. Now you see, you got the idea that field winding and armature winding, how it is going to be placed. Now let us talk about the armature winding. If you talk about armature winding, please understand that there are two possibilities. Either it can be a closed winding or it is going to be open winding.
Closed winding is going to look something like this. Closed winding is going to look something like this, where the start and the end point is connected. But if you see the open winding, it may be star, it may be delta, it may be star, it may be delta. Now you don't think that delta is a closed winding because reconnection is always possible. Not closed. Why? Because reconnection is always possible. Reconnection is possible. So all your DC machines, all your commutator machines, they always have the closed winding. They always have the closed winding. Now there are two possibilities of armature winding connections. One is lap winding and another one is wave winding. How you are defining lap winding and wave winding? How you are defining the lap winding and wave winding? When the finishing end of a coil is connected with a starting end of the other coil under the same pole pair. I will show you the diagram also. So when the finishing end of a coil is connected to the starting end of the other coil under the same pole pair, then it is called lap winding. It is called lap winding because windings are overlapping each other. Wave winding, when the finishing end is connected with the starting end of other winding under the next pole pair. I will show you the diagram also, don't worry. We have to be a little faster because time is very less. Under the same pole pair, then it is lap winding. Under the next pole pair, then it is wave winding. Lap winding, always number of parallel paths are equal to number of poles. What is A? Number of parallel path. For wave winding, because of this reason, the number of parallel path A is always 2. There are always 2 parallel paths. Is it clear, everyone? Now, if you talk about the armature winding, you have to understand that in case of winding, if I have to define a coil, so I can define a coil like this. It is a single turn coil. It is a single turn coil. So this is the starting end, this is the finishing end, A, B, C, D. This is called the overhang portion. And AB and CD, these are called conductors. Only the conductors are going to take active part in the energy conversion process. It means this overhang portion is not going to be effective. It is, you can say, almost ignored. It can be ignored. Only this part, AB and CD, they are going to be actively participate in the energy conversion process, whether it is a generator action or motor action. Now, it is a single turn coil. You can also have two turn coil
or this is a two-turn coil. This is a two-turn coil. This is a two-turn coil. Okay. Similarly, you can have a multi-turn coil also. Multi-turn coil is represented like this. This is a multi-turn coil. This is a multi-turn coil. Now, if you see, whether it is a single turn coil, we define this as a coil side. This is the coil side. This is another coil side. This is another coil side. Okay. So whether it is a single turn coil, whether it is a two-turn coil, or whether it is a multi-turn coil, the coil sides are going to be two only. Coil sides are going to be two only. Is it clear, everybody? These are coil side. Always remember the number of turns or number of conductors per coil side is equal to number of turns in the coil. So if you see, if it is a two-turn coil, how many conductors you are getting in one coil side? Equal to the number of turns. No. I'm coming to that, Karthik. Wait. Okay, multiplex windings, they are different. Multiplex windings we are using to have more number of parallel path. That has multiplicity M. Are you getting this? Multiplex winding. Okay. Okay, so please don't interrupt, otherwise flow is going to be broken. Okay. So what I was telling you, that if you count the number of conductors in a coil side, that will be equal to number of turns. So this one formula you can use if they are giving the question like this. If they are telling you the number of conductors in coil side, please understand, actually they are giving you the number of turns. Is it clear for everybody? Tell me yes or no in the comment section. Are you able to follow this? Next thing. Always remember that one turn is formed by using two conductors. If you see this, for one turn, I need two conductors, AB and CD. It means if they are giving you number of conductors, can you tell me the number of turns? Or if you are having the number of turns, can you tell me the number of conductors? So if there are Z conductors, how many number of turns? It is going to be Z by 2. Are you getting this? If Z conductors are there, then how many number of turns? Z by 2. These small details, if you don't understand, then you will not be able to solve the problem. Even if you know all the equations, torque equation, EMF equation, even if you know for DC machines, if you don't understand armature winding, you will not be able to solve the question. Then we have single layer winding. Sir, what is single layer winding? We define single layer winding as one coil side occupying the whole slot area. If this is a slot, then one coil side is going to occupy the whole slot area. This is a single layer winding. Generally, this single layer winding is used for small rating AC machines. Generally, this
single layer winding is used for a small rating. A small rating means less than 5 kilowatt. Less than 5 kilowatt rating AC machines, we are using the single layer winding. Then we have double layer winding. Double layer winding. How we are defining double layer winding? When even number of coil sites are present in one slot. So there are number of possibilities. There are number of possibilities. Suppose this is a slot. This is a slot. Okay. So if two coil sites are present, then also it is a double layer winding. Even number, so after 2 it may be 4. So 4 coil sites may be present in one slot. Now there is one formula which relates number of slots with the number of coils. Number of coils C is 1 by 2 US. This is one important formula. Sir, what is U here? Sir, what is U? So U is number of coil sites in one slot. Number of coil sites in one slot. So for this double layer winding, if you have to calculate the number of coils, it is going to be 1 by 2. And what is S? S is the number of slot. Sir, what is U? U is the number of coil sites present in one slot. So U is going to be 2 here. And this is number of slots. So you can say for this winding, the number of coils is equal to number of slot. For this double layer winding, U value is 4. So it is 1 by 2 into 4 into S. So you can say for this double layer winding, the number of coils are 2 times the number of slot. Everybody tell me in the comment section, are you able to follow this? Everybody just quickly tell me in the comment section, are you able to follow this or not? Say yes or no. Are you able to follow this? Okay. So this double layer winding where we are using. So for all the commutator machines, it means DC machines, all the commutator machines and large rating AC machines, we are using the double layer winding. Is it clear? So now let's talk about the lap winding and wave winding. But before that, we need some important understanding. So let us first talk about back pitch. Sir, what is back pitch? It is the distance between peripheral distance between top coil and bottom coil side at the back of the armature. I will show you in the diagram at the back of the armature. So now let us go to the winding and see how this back pitch is going to be decided. How this back pitch is going to be decided. I have directly taken the picture because time is very less. Otherwise, we are not able to discuss some important points that I want to mention. Okay. Can you see this diagram? Let us first understand this is North Pole. This is the South Pole. These are the slots. And in these slots, we have put some conductors. Yes or no? Now you can see this is the commutator. This is the commutator. Now commutator, you are connecting the coils. This is the starting end of the first coil. This is the starting end of the first coil. This is the finishing end. This is the starting end and this is the finishing end
of this coil. Now the finishing end of this first coil is connected to the starting end of the other coil under the same pole pair. So you keep on adding the coils like this and it becomes a lap winding. Is it clear? Is it clear? Are you able to see this? We have defined the back pitch and we are using the term YB. This is always odd. This is always odd in numbers. It is always odd in numbers. Okay. So if you see in this diagram, this is the top coil. This is the top coil side and this is the top coil side. And for this coil, this is the bottom coil side. So between the top coil side and the bottom coil side, what you are having is the back pitch. What you are having is the back pitch. Say yes or no. Everybody tell me in the comment section, I'm not getting your comments. Karthik, your doubt is cleared or not? Karthik, your doubt is cleared? So I hope you understand the back pitch. Now let's talk about another important term, that is front pitch. Another important term, that is front pitch. How we are defining front pitch? It is the peripheral distance between coil sides connected to the same commutator segment. Same commutator segment. Same commutator segment. Let us try to see. Let us try to see in the diagram. Same commutator segment. Now you see, this is the commutator segment, starting end, finishing end here. Now this finishing end of the first coil and starting end of the second coil. So they are connected to the same commutator segment number 2. So you see the peripheral distance between the coil sides connected to the same commutator segment. So this is that coil sides connected to the same commutator segment. So this is the front pitch. So this is the front pitch. I hope you understand the back pitch and the front pitch. Then we have the winding pitch. Sir, what is winding pitch? Sir, how you are defining the winding pitch? Just see this. Winding pitch. Winding pitch we are defining as the distance or the peripheral distance between adjacent top or bottom coil sides. Top or bottom coil sides. Now just see in the diagram. If you see, after this top coil side, what is the next top coil side? After this coil side, what is the next top coil side? This one. So the distance between consecutive or adjacent top or adjacent bottom coil sides we are defining as winding pitch. So for this lap winding, if you relate back pitch, it is going to be front pitch plus winding pitch. Front pitch plus winding pitch. We are defining the back pitch as 2 times the coil side upon number of pole plus minus K. We are using plus for the progressive winding. I will tell you what is progressive and what is retrogressive. Retrogressive winding. The difference between progressive and the retrogressive winding is, if this is the starting end and this is the finishing end. So if you are putting the finishing end in the direction of rotation, this is the starting end,
You are drawing the coil. If the finishing end is going forward in the direction of rotation, then it is progressive coil. If you are keeping the finishing end opposite to the direction of rotation, then it is retrogressive winding. Is it clear, everybody? Tell me in the comment section. One more term we have to understand before we move forward, that is commutator pitch. Commutator pitch is defined as the distance between top and bottom coil sides in terms of commutator segment. In terms of commutator segment, we are defining as commutator pitch. Now, if you see this lap winding that we are just showing, if you see this lap winding, this is how we are defining the commutator pitch. Can you see this? This distance. This is the starting end of first coil and this is the finishing end of the first coil connected to commutator segment 1 and 2. So, in between commutator segment 1 and 2, what is the distance in terms of commutator segment? It is YC. It is YC, or you can say this is 1. So, this is going to be plus 1. This is going to be plus 1 for progressive winding, and this is going to be minus 1 for the retrogressive winding. Now, all these terms I want you to understand in terms of wave winding also. In terms of wave winding also. So, already you have understood all these terms. Let us apply it to the wave winding. So, let me just show you wave winding. Just a little bit of patience, because if you don't understand this, then even if you know the formula, you will not be able to solve the problems. Because these small details are going to make big differences in solving the question. Okay. So, just see this. First we are defining the back pitch. Top coil side and this is the bottom coil side. So, in between the top coil side and the bottom coil side, what you are having is the back pitch. So, this is back pitch. You are defining the front pitch in terms of coil sides connected to the same commutator segment. Suppose this commutator segment if you are talking about, so the distance between this coil side and this coil side connected to the same commutator segment, this we are defining as front pitch. How you are defining the winding pitch? Distance between adjacent top or adjacent bottom coil sides. So, adjacent top and adjacent bottom coil sides, just see here. Suppose this is the first coil, top coil side. What is the next top coil side? The next top coil side is this red one. So, between these two we are having the winding pitch. So, for the lap winding, if I have to relate, I can relate the winding pitch. The winding pitch is going to be YB plus YF. Important formula, please note it down. Important formula, please note it down. Everybody tell me in the comment section, are you getting this or not? For wave winding, the commutator pitch you can write as C plus minus 1 P by 2. Where C is the number of coils, P is the number of poles, plus you are using for the progressive one and negative one you are using for the retrogressive winding. Now, there was one candidate who was asking about the multiplex windings, yes or no? So, for multiplex winding, instead of 1, it is going to be M for multiplex windings. For multiplex windings. But it is very difficult, very less probable that you are going to get questions related to multiplex winding in your examination. Most of the time they are going to ask you simplex winding. Okay. Is it clear, everybody? Tell me yes or no in the comment section. Are you able to follow this? Are you able to follow this?
Is it clear? So now if I move forward and if I give you a general idea that how your DC machine armature is going to look like. So it is going to be something like this. It is going to be something like this. It is going to be something like this. So these are the number of parallel paths. And each conductor is going to have a small resistance and a small EMF like this. Something like this. So these many parallel paths are going to be there inside your armature. And this is the output terminals coming out of the brush. This is the output terminals coming out of the brush. So if one conductor you have to see, suppose it was AB conductor, so this is going to be represented like this. This is going to be represented like this. So R is going to be the resistance per conductor. And what is E? It is going to be EMF induced per conductor. EMF induced per conductor. So if I have to write the expression for the armature resistance, if I have to write the expression for armature resistance, I have to find the total resistance of one parallel path. So if there are total Z conductors, how many conductors per parallel path? Conductor per parallel path. How many parallel path? A. So it is going to be Z divided by A. This is the number of conductors per parallel path. One conductor is having resistance small r. One conductor is having resistance small r. So this is going to be Z divided by P multiplied by R, small r. So this is going to be the resistance of one such parallel path. How many such parallel path? A. So it is going to be 1 upon A. So the armature resistance you can relate as RZ upon A square. This is one expression for armature resistance. This is one expression for armature resistance. Is it clear? What is the total induced EMF? What is the total induced? If we talk about the generator, what is the total induced EMF? If you are able to find the EMF of or the voltage across one parallel path, that is going to be same for all the parallel paths. So that is going to be the EMF available at the terminals of the DC generator. So it is going to be a small e, that is the EMF induced in one conductor. How many such one conductors in per parallel path? It is Z divided by A. It is Z divided by A. It is Z divided by A. If you see, the expression for this induced EMF is Z phi n upon 60, and this is P by A. This is P by A. There is another expression generally we use when we define the induced EMF. So it is going to be K phi omega. K phi omega, where this K is Pz upon 2 pi A, and this omega is 2 pi n upon 60. This omega is 2 pi n upon 60. Is it clear, everybody? Are you getting this? Karthik, your confusion is cleared or not? Duplex, triplex, you were asking. That is multiplicity. More number of parallel paths you want to generate more power, more torque. Similarly, if you want to write the torque equation, so the torque equation you can write as K phi Ia. Again, K is
machine constant Pz upon 2 pi A. Pz upon 2 pi A. Pz upon 2 pi A. Okay. Suppose I want to know the armature ampere turns per pole. Armature ampere turns per pole. Now please try to understand. Suppose this is your armature winding. Suppose this is your armature winding. Okay. So if the total armature current is IA, if the total armature current is IA, what is the current which is passing through each turn? It is going to be IC, that is IA divided by capital A, that is number of parallel path. It means if I want to have the armature ampere turns, I know what is the current passing in each turn. So it is the current passing in each turn multiplied by number of turns per pole. Number of turns per pole. So if Z is the number of conductors, how many number of turns? 2 conductors are required to make 1 turn. So if there are total Z conductors, how many number of turns you are having? Z by 2. So this is Z by 2. But he is asking number of turns per pole. So divide by P also. Divide by P also. Just put the value of IC. So you can write it as ampere turns of the armature per pole is IAZ upon 2AP. Important formula. You may get a direct question on this. Calculating the armature ampere turns per pole. Okay. Now from here they can ask you some related questions. Suppose we talk about the compensating windings. Compensating windings, why they are used? They are used to compensate the armature flux under the poles. Sir, what does it mean? See this. If this is your field pole, something like this, and this is your armature. This is armature. This is field pole. So where you are placing the compensating windings? Compensating windings, you are making slots in the pole shoe. You are making slots in the pole shoe. In these slots you are placing the compensating windings. Compensating winding is connected in series with the armature winding. In series with armature winding. In series with armature winding. In series with armature winding. Okay. So sometimes they are asking the ampere turns of the compensating winding. How you are defining the ampere turns of the compensating windings? Ampere turns of the compensating windings. Now compensating windings, total ampere turns of the armature per pole IAZ upon 2AP. Now you see the compensating winding is only present in the pole arc. This is defined as pole arc. This region is defined as pole arc. This is what we are calling as pole arc. Okay. And what is pole pitch? The total distance, peripheral distance between two similar points. How you are defining pole pitch? If this is your DC machine, these are field poles. How you are defining the pole pitch? If you take this point, so from this point to this point,
what is the total distance that we are defining as pole pitch? If you are taking this point, suppose you are taking this point, middle point. So from this middle point to this middle point, the total peripheral distance we are defining as pole pitch. Always remember that pole pitch is number of slots divided by number of poles if you are finding it in terms of slots and poles. But if you are writing it in terms of electrical degrees, it is always 180 degree electrical. Sir, what is this electrical degrees? Please remember the electrical theta or theta electrical or electrical degrees is P by 2 times theta mechanical. P by 2 times theta mechanical. Okay. So because the compensating winding is only present in the pole arc, so it can only nullify or compensate only that much ampere turns of the armature flux. Are you getting this or not? So how you are defining the compensating winding ampere turns? Total ampere turns of the armature winding, and rationalize it pole arc upon pole pitch. Pole arc upon pole pitch. Is it clear, everybody? Now there is one more formula out of this particular formula when we talk about the brush shift. Why we do the brush shifting? Why we do the brush shifting? Because of armature reaction. The time is very less, so it is not possible to discuss in detail about the armature reaction, but you must be knowing that the effect of armature flux on the main field flux we are defining as armature reaction. And what happens? There is a distortion of the main field flux. Because of that distortion, what is happening? There is a sparking at the brushes. There is a sparking at the brushes which may damage your brushes. So for that reason, what we are doing, we are shifting the brushes in the direction of rotation. That is called forward brush shift. Are you getting that? Because of forward brush shift, what happens? Your brushes align with the magnetic neutral axis. Because what is armature reaction? The shifting of magnetic neutral axis in the direction of rotation with respect to the geometric neutral axis is called as armature reaction. So actually when you are keeping your brushes along the geometric neutral axis, magnetic neutral axis is getting shifted because of armature reaction. So you are doing forward brush shift to actually align your brushes with the magnetic neutral axis. So for this brush shifting, they are asking the demagnetizing ampere turns of the armature winding. So this is 2 theta electrical upon 180 degree, and this is total ampere turns of the armature winding, IAZ upon 2AP. Sometimes they are also asking about the cross magnetizing ampere turns of the armature winding. This is 180 degrees minus 2 theta electrical divided by 180 degree, and this is IAZ upon 2AP. IAZ upon 2AP. No, Karthik beta, no. You are not distorting the field flux because of sparking at the brushes. Because see, let me tell you. See actually what is happening. If this is your DC machine, okay, how you are defining the geometric neutral axis? Geometric neutral axis is always perpendicular to mean field flux. So if your main field flux is like this, then what is happening?
if your mean field flux is like this, your geometric neutral axis is like this, perpendicular to the mean field flux. This is your geometric neutral axis. If there is no armature current present, if there is no armature flux present, then your geometric neutral axis and magnetic neutral axis, they are going to coincide with each other. If only main field flux is present. But actually what is happening? Actually what is happening? Just see this. Now you will understand. We don't have enough time to discuss in detail, but you will understand. So suppose this is the direction of mean field flux. This is the direction of mean field flux. And suppose this is the direction of armature flux. This is the direction of armature flux. So if this is mean field flux and this is armature flux, this is armature flux and this is mean field flux. So what is going to be the resultant flux? What is going to be the resultant flux? This is going to be the resultant flux. This is going to be the resultant flux. How you are defining magnetic neutral axis? Just see here. Magnetic neutral axis is always perpendicular to the resultant flux. Resultant flux. Resultant flux means the summation of mean field flux and armature flux. So what is happening? Just see here. Your geometric neutral axis is perpendicular to mean field flux. So it is something like this. This is your geometric neutral axis, always perpendicular to the mean field flux. Magnetic neutral axis is always perpendicular to the resultant flux. So for the resultant flux, your magnetic neutral axis is something like this. Are you getting this? This is magnetic neutral axis. And because of this armature reaction, what is happening? You are getting magnetic neutral axis shifted in the direction of rotation. This is the direction of rotation, suppose, shifted in the direction of rotation with some angle theta electrical. So what we are doing, we are moving our brushes in the forward direction, so that they can align with the magnetic neutral axis. Are you getting this? This is called forward brush shift. This is called forward brush shift. So what you are writing here as theta electrical is this, where theta electrical is the brush shift. Theta electrical is the brush shift. Everybody tell me in the comment section, are you able to follow this? Are you able to follow this? Tell me yes or no. Are you getting this? So these were some of the important formulas for DC machines. Let's talk about some, because we don't have enough time to discuss in quite detail, okay, because there are a lot of subjects, lot of faculties. So I will just give you some basic understanding of the induction machine, okay. We are not able to discuss a lot of formulas. I will give you some basic understanding about induction machine. Now if you talk about the induction machine, the DC machine that we have discussed is a doubly excited machine. But the induction machine, generally we call it induction motor, it is singly excited machine. It is a singly excited machine. It works on the induction principle. It works on the induction principle. Okay. It's like a rotating transformer. It's like a rotating transformer. Now, if you compare your induction motor with a transformer,
the no load current that you are getting in case of transformer is very small because it's a static device. So the flux requirement is less. But in case of induction motor, even if it is no load, the no load current requirement is very high, somewhere around 25 to 30%, you can say. Whereas in case of transformer, it was just 2 to 5%. Because in case of transformer, the device was static, only you have to establish the flux in the core. But in case of motor, it is not just establishing the flux, rotation is also there. So more amount of magnetizing current is required or flux is required. So that is why we call it a rotating transformer. Is it clear? Now if you see what is happening in your induction motor is, suppose this is your induction motor, this is the stator. Let me just draw it little correctly. Suppose this is your induction motor. This is what we define as the stator. Suppose this is the stator. This is the stator. Okay. Now for a 3-phase induction motor, suppose you have the stator windings like this. Suppose this is A, this is B, and this is C. Now this, because this is the induction motor, so we are going to connect it. We are going to connect it with a 3-phase balanced supply. 3-phase balanced supply. 3-phase balanced supply. Now you know that when a 3-phase balanced supply is given to a 3-phase winding which is 120 degree displaced in space. 3-phase balanced supply which is time displaced 120 degree, when it is given to a 3-phase 120 degree space displaced winding, a rotating magnetic field is generated. A rotating magnetic field is generated. Let us first draw the rotor also. Let us first draw the rotor also. Okay, let me use another color. Just 5-10 minutes more, then Ashu sir is going to come for power electronics. So suppose this is your rotor. Suppose this is your rotor. So because of this 3-phase balanced supply given to space displaced 3-phase winding, a rotating magnetic field is generated. Now this rotating magnetic field is the rotating magnetic field of the stator. Rotating magnetic field of the stator, and it is rotating at synchronous speed. It is rotating at synchronous speed. You know the synchronous speed is 120 F upon P. 120 F upon P, where F is the supply frequency. Now this rotor is having windings. Okay, it may be a squirrel cage. You know that either you have a squirrel cage or you have, yes, wounded rotor, where windings are there, where windings may be there. So for a small rated machine, generally we are going for a squirrel cage rotor. Otherwise we go for wound rotor. Now please understand, because this magnetic field is rotating in the air gap, that will link with the armature winding. Yes or no? So EMFs are going to be induced and currents are going to be produced in the winding. Now whatever currents this rotor is going to have, that is also going to give rise to a rotating magnetic field of the rotor. 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 And that is also rotating at the synchronous speed. That is also rotating at the synchronous speed. If you take a reference, and this is fixed reference or stationary reference, fixed reference. So from the fixed reference, if you see what is happening, the stator magnetic field is rotating at synchronous speed. For the fixed or the stationary reference, the rotor magnetic field
is rotating at synchronous speed, and when these two fields interact with each other, a torque is developed, and that torque is responsible for rotating the rotor. And that is the reason we say that a three-phase induction motor is a self-starting one. Actually, it does not require any starter. So the rotor is rotating at NR speed. The whole theory of this induction motor revolves around slip or slip speed. Slip speed we are defining as the difference between the synchronous speed and the rotor speed. Synchronous speed and the rotor speed. Slip is defined as the per unit slip speed. Per unit slip speed means ns minus nr upon ns. In general, we call it S. So if you have to relate the rotor speed with the synchronous speed, it is ns1 minus s. It is ns1 minus s. Are you getting that? Now the most beautiful part of your induction motor is that the currents which are present in the rotor, they are not having the supply frequency. They are having the slip frequency. Sir, why they are having the slip frequency? Now please see here. Why they are having the slip frequency? So when you define Ns as 120 F upon P, where this F is the supply frequency, and this supply frequency is present at the stator. So you can write this F as P upon 120, and this is Ns. Are you getting this? So if I am writing the slip frequency, how I am writing the slip frequency, or the frequency at which currents in the rotor circulating. So for that rotor frequency, how I have to write? P upon 120. P upon 120. Now please understand, the stator is stationary, but the rotor is not stationary. Rotor itself is rotating at some speed. So that relative speed you have to take. So this is Ns minus Nr. This is Ns minus Nr. Because the rotor itself is rotating. Okay, Ashish sir is saying he is ready. So just give me 1 minute. Okay, so just 5 minutes I'll discuss some points I want to discuss, and then we'll go to Ashu sir. Okay, he is going to take power electronics. Okay. So now if you relate it, you can say the slip frequency is going to be, or the rotor frequency is going to be slip times the supply frequency. Slip times the supply frequency. Is it clear? Now if we talk about your induction motor, please understand this. Let me take one more example. Suppose this is your stator of your induction motor. Okay, and this is the rotor. This is the rotor. Okay, so this is going to be your stator winding, and stator you are providing balanced three-phase supply. Three-phase balanced supply. Now you have to understand this so that you are able to solve problems. Okay, just few more minutes, maybe 5 minutes I am taking. So you are giving some input power to this stator winding, three-phase stator winding. You are giving some input power. Now this input power, because you are giving it to the stator, there will be some losses in the stator. Yes or no? There will be losses in the rotor winding, and there will be losses in the rotor core, stator core. Yes or no? So after those losses, if you subtract the stator total losses, okay, stator total losses, if you remove this,
then whatever power is going to be transferred from this stator to the rotor, this power we are defining as air gap power. Air gap power. Now this air gap power which is going to the rotor is again going to be divided into two parts. This air gap power is going to give you mechanical power developed plus rotor copper losses in the rotor. Because rotor is either going to be squirrel cage or it is going to have winding. So whatever power is being transferred from stator to the rotor, that will give rise to mechanical power developed plus copper losses in the rotor copper losses. Now this mechanical power developed is going to give you the output mechanical power plus rotational losses. Rotational losses. Okay. So how you are going to write the torque developed? How you are going to write the torque developed? The developed torque you can write as air gap power divided by omega s, or you can write it as air gap power divided by 2 pi ns upon 60. Okay. If you have to find the developed torque or output torque, then you have to write it like this: output power divided by omega r. This omega r is the speed of the rotor. So this is P mechanical power developed minus rotational losses divided by 2 pi nr upon 60. Okay. So actually I wanted to discuss the torque equation, the equivalent circuit diagram, but I think time is not there. Ashu sir is already ready. So let me just call him. If he is ready, then I will switch to Ashu sir. Because there are a lot of other faculties also. So if we just little disturb the slots. Sir, should I stop? Okay, okay. So guys, anyway, so I think whatever we have discussed is definitely going to help you in your gate examination. But still, if you have any doubt, then you can reach out to me in my Telegram channel. Then and there, I will try to resolve your doubts. And don't lose your heart, because whatever faculty, whosoever faculty is coming, they are going to give you at least some important tips which you may see in your examination. So just sit in a very disciplined way, okay? And whatever faculty is going to give you, please try to absorb it, please try to learn it, and definitely it is going to help you in your examination. So let me ask Ashu sir, I am going to stop for a moment, and then Ashu sir is going to come for power electronics. So this is all from my side. See you in some other session. Till then, goodbye, take care, all the best. Thank you so much. Thank you, everybody. Hello guys. Am I audible? Hello guys. Okay. तो मेरी तरफ से ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? आप लोग बताएं अपना. Tell me. Am I audible? Can you hear me? Everyone, please tell me. Now we'll discuss formulas for power electronics, okay? And I hope I'm audible. So let's start the session. Give me 1 minute. Okay. So I'll start from inverter, okay? Inverter से start करते हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनमें एक है इन्वर्टर. इन्वर्टर से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ओके?
ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन दे विल आस्क। उसके बाद है डीसी डीसी कन्वर्टर, डीसी डीसी कन्वर्टर, 1 क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ओके। एंड देन फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एंड यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आने के चांस रहता है, ओके। सो टोटल इसमें मैंने बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, बल्कि कई बार 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट जो मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, ठीक है। कई बार इससे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके। और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स का ये हमारा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो वेटेज है वो बढ़ती जा रही है। मतलब अपकमिंग गेट एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है कि ये और ज़्यादा वेटेज को गेन करेगा। वो इसलिए बिकॉज जब आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो इसी सब्जेक्ट से चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब मेन जो स्कोप रहता है आगे फ्यूचर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, और बस हम मेन कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। देखिए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सिंगल फेज क्या होता है, इसमें 2 तरह का होता है, एक हाफ ब्रिज और एक फुल ब्रिज। एक आपका हाफ ब्रिज होता है और एक आपका होता है फुल ब्रिज, 2 तरह का होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर की बात करूं तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर कुछ इस तरह का है। हमारे पास 2 कैपेसिटर हो गए, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। कई बार 2 अलग अलग वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे VDC है तो ये क्या करेंगे, VDC/2 VDC/2 अपने क्रॉस ले आएंगे। ऊपर वाला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, प्लस VDC/2, और नीचे वाला माइनस VDC/2। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको अलग ऐसे ऐसे कर देते हैं कि प्लस VDC/2 अलग कर दिया एंड माइनस VDC/2 अलग कर दिया, और इसको ग्राउंड कर देते हैं। एक ही बात है भाई। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, VDC/2, एंड नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस VDC/2, क्योंकि प्लस से माइनस जाओगे तो नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से 2 वोल्टेज दिखाते हैं, या फिर आप ऐसे कैपेसिटर लगा के इनको सेपरेट आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा लोड है, ओके, एंड देन वी हैव द स्विच लाइक दिस, ओके, इस तरह से। तो ये हमारे पास S1 स्विच है, ये S2 स्विच है, इसको हम बोलते हैं हाफ ब्रिज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब S1 कनेक्ट होगा तो इसको अगर मैं आउटपुट वोल्टेज बोल दूं तो जब S1 कनेक्ट होगा तो प्लस वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, माइनस वाला पॉइंट इधर आएगा, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो प्लस VDC/2 आ जाएगी। और जब S1 ऑफ होगा, S2 क्लोज होगा तो माइनस VDC/2 आ जाएगी। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरी कर रही है प्लस VDC/2 एंड माइनस VDC/2 के बीच में। ऐसे हम आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, ओके। दिस इज माई V0T, V आउट। तो हाफ ब्रिज जो इन्वर्टर होता है वो ऐसा ही होता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। इसमें आउटपुट प्लस VDC/2 एंड माइनस VDC/2 के बराबर होती है। अब जनरली हमें क्या करना होता है, जनरली हमें इसकी फंडामेंटल की पीक वैल्यू या RMS वैल्यू निकालनी होती है, बिकॉज आपको कई बार लोड दे देते हैं, ठीक है। लोड दे देंगे तो आपको करंट की वैल्यू बतानी होती है, करंट कितना आएगा, और ज़्यादातर केस में फंडामेंटल पूछते हैं। तो अगर आपको इसका हार्मोनिक एनालिसिस पता है तो आप फटाफट कर लोगे। हार्मोनिक एनालिसिस अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा इस केस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर वेव है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है A, ये है मान लीजिए -A। तो इसमें जो फंडामेंटल की पीक वैल्यू होती है वो होती है 4A/π साइन ऑफ ω0t। ये फंडामेंटल हार्मोनिक होता है इसमें, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड हार्मोनिक देखोगे तो 4A/3π साइन ऑफ 3ω0t। अब ये चीज़ अगर आप याद है तो फटाफट कर लोगे। ये हमारे पास, तो यहाँ पे एक ही जगह पे VDC/2 कर दो भाई, एम्पलीट्यूड एक ही जगह VDC/2 है। तो इस तरह से जो आउटपुट वोल्टेज है उसका आप हार्मोनिक एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद अगर आपसे करंट पूछा है तो करंट के लिए आप इसको डिवाइड करो Z1 से, इसको डिवाइड करो Z3 से। अब आप बोलोगे Z1 Z3 क्या है, देखो मान लीजिए लोड के अंदर एक R है और एक L है, तो फंडामेंटल के लिए इसका इंपेडेंस बनेगा R + j⍵0L। थर्ड हार्मोनिक के लिए यहाँ पे 3ω0L हो जाएगा। तो ये Z1 Z3 Z5 ये अलग अलग चीज़ है भाई। आपको मान लीजिए फंडामेंटल करंट पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक करंट पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कहानी बड़ी सिंपल है।
इसको हम बोलते हैं हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब बात करते हैं फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की। फुल ब्रिज में कुछ नहीं होता, ऐसे दो दो पेयर हम बना देते हैं, एक लेग में दो हम स्विच लगा देते हैं। ये हमारे पास लोड है, ठीक है, इस तरह की कहानी है दोस्तों। ये मान लीजिए लेग ए है और ये लेग बी है, ये एस ए प्लस है, ये एस ए माइनस है, ये एस बी प्लस है और ये एस बी माइनस है, ठीक है। ये हमारे पास लोड है और यहाँ पे हमारे पास वेट, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास VDC मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। और हमने दो कैपेसिटर्स ऐसे लगा रखे हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, ये भी C है, और बीच वाला पॉइंट को हमने ग्राउंड कर रखा है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस VDC/2 और नीचे वाला माइनस VDC/2। अब सुनिए, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। तो देखिए अब जरा आउटपुट वोल्टेज को अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, एस ए प्लस एंड एस बी माइनस को एक साथ ऑन करेंगे। एक साथ ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट यहाँ से, नीचे वाला माइनस VDC/2 है, ऊपर वाला प्लस VDC/2 है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो VDC आ जाएगा, VDC। फिर आप इन दोनों को ओपन कर दो, इन दोनों को ओपन कर दो और इन दोनों को क्लोज करो। तो जब आप इन दोनों को क्लोज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस VDC। तो इस तरह से ये प्लस VDC एंड माइनस VDC के बीच वेरी करता है, ये आउटपुट वोल्टेज आएगा। और इसका हार्मोनिक एनालिसिस हमें पता है, फंडामेंटल क्या आएगा, 4 इंटू जो भी इसका एम्पलीट्यूड है विच इज़ VDC बाई पाई साइन ऑफ ओमेगा नोट टी। ओमेगा नोट देख लो, निकाल लो, इसका टाइम पीरियड हमें पता होगा, यहाँ तक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, वहाँ से ओमेगा नोट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्स या 500 हर्ट्स, तो ओमेगा नोट क्या हो जाएगा, 2πf0, ठीक है। f0 दे रखा है, ऐसे आप थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये सारे निकाल सकते हो भाई, ठीक है। तो जरा देखिए, ये बनेगा 4VDC अपॉन पाई साइन ऑफ ओमेगा नोट टी प्लस 4VDC अपॉन 3 पाई साइन ऑफ 3 ओमेगा नोट टी एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसका हार्मोनिक एनालिसिस कर सकते हो। ये हार्मोनिक वोल्टेजेस इस लोड के अक्रॉस आपको देखने को मिलेंगी, और जो इसका इंपीडेंस है वो आप अलग अलग हार्मोनिक के लिए कैलकुलेट करके इनको डिवाइड करते जाओ, आपके पास करंट का भी एनालिसिस आ जाएगा कि करंट क्या फ्लो करेगा, ठीक है, इधर से इधर कैसा करंट होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है PWM, सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब आपको PWM हम लगा देते हैं, खासकर साइनोसॉइडल PWM, तो उससे जो फंडामेंटल की पीक वैल्यू है वो निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। कैसे, हम क्या करते हैं, जो साइनोसॉइडल PWM होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है यूनिलेटरल, एक होती है बाइलेटरल। एक होती है यूनिलेटरल और एक होती है बाइलेटरल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है, हमें फंडामेंटल वोल्टेज की पीक वैल्यू पता होनी चाहिए। साइनोसॉइडल PWM में हम क्या करते हैं, हम इनकी स्विचिंग करने के लिए इनकी स्विचिंग अलग अलग तरह से करते हैं, इनकी बहुत फास्ट स्विचिंग होती है, ठीक है। क्या कर रहे हो, फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। ओके, सो देखिए जरा, तो इसमें हम साइनोसॉइडल PWM में हमारी बहुत फास्ट स्विचिंग होती है। स्विचिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम दो वेव को कंपेयर करते हैं, वन इज ट्रायंगुलर वेव, ओके, और वन इज कंट्रोल सिग्नल लाइक दिस, ओके, दिस इज द कंट्रोल सिग्नल। सो हम क्या करते हैं, इनके एम्पलीट्यूड को कंपेयर करते हैं एंड उससे हम एक टर्म निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ कंट्रोल सिग्नल V कंट्रोल डिवाइड बाई V ट्रायंगुलर, उसके पीक वैल्यू, इससे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं। दूसरी बात, जो फ्रीक्वेंसी होती है कंट्रोल सिग्नल की, वही हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट फंडामेंटल कंपोनेंट। मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कंट्रोल सिग्नल की, वही हमारे आउटपुट सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इस तरह से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे एंड ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नाउ जो आउटपुट वोल्टेज आएगी उसकी जो पीक वैल्यू होगी, फंडामेंटल की जो पीक वैल्यू होगी, दैट इज वेरी सिंपल। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे MA विच इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इनटू
आप ये देखो कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किन दो लेवल के बीच वेरी कर रही है, बस वो लेवल ले लो, बस एसी का लेवल ले लो वो, ठीक है, किन दो लेवल के बीच वो वेरी कर रही है, एसी के लेवल की बात हो रही है मतलब एवरेज वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो एवरेज को जीरो करके जो भी ये लेवल हमें मिल रहा है, जैसे यहाँ पे लेवल आ रहा है VDC और इसकी एवरेज वैल्यू जीरो है, तो VDC से आप मल्टीप्लाई कर दो, बस आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट फंडामेंटल की पीक वैल्यू आ जाएगी, अगर साइनसोइडल PWM हम यूज करते हैं तो। सही है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना इसमें, कोई याद नहीं करना, नथिंग टू मेमोराइज, कुछ नहीं देखना, ठीक है, जस्ट ये रूल फॉलो करो आप। ऐसे ही जरा देखिए, इनकेस अगर मैं इसी सर्किट में आपको ये कर देता, तो देखो PWM बहुत आसान होती है। आई डोंट नो बहुत सारे स्टूडेंट इसको कैसे डिफिकल्ट लेके चलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सोचिए हमारे पास ये है, दिस इज 100 वोल्ट, ओके, एंड दिस इज R प्लस J, मतलब इसमें जो इम्पिडेंस है लोड में वो एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस कुछ भी ले लो, R, और ये L ले लो, ओके, एंड ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, और हम क्या कर रहे हैं, हम साइनसोइडल PWM यूज कर रहे हैं, ओके। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.8, ये देखा है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, ओके, ये दे रखा है आपको। अब सुनिए अगर मैं आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करूंगा, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, वो क्या होगी, और ये ग्राउंड दे रखा है, अब ग्राउंड यहीं पे दे दिया आपको, कैपेसिटर नहीं लगा रखे, ओके। अब सुनिए, अगर तो ग्राउंड यहां ना दे रखा होता तो हम कैपेसिटर लगाते एंड वी विल कनेक्ट द सर्किट लाइक दिस, मिडिल को हम ग्राउंड मानते हैं और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला और नीचे वाला लिखते हैं। बट सिंस द ग्राउंड इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, सो व्हाट वी कैन डू इज, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज 100 volt. Now if S1 and S2 are connect, then the output voltage will be at 100 volt, okay, because this side is 100 and this side is 0, so the difference, I mean the output voltage will be 100, and when S3 S4 are connected, the output voltage will be minus 100, okay. This will be the wave shape of output voltage, right. Since we know that the output voltage varies between plus 100 and minus 100, and this is not the exact output wave shape, okay, this is not the exact output, it depends on the switching, how the switching happens. Whenever the S1 S2 are connect, output is plus 100, whenever S3 S4 are switched, output voltage will be minus 100. It means output voltage जो है वो plus 100 and minus 100 के बीच vary कर रही है. So the fundamental peak value of the output voltage will be 100, whatever this value is, 100 into modulation index 0.8, okay, 80 volt. 80 volt is the peak value of the fundamental component at the output voltage. Now let's say they are asking about current RMS value, fundamental current RMS value. So for that you need to calculate the peak value of the fundamental current, and how to calculate that? That is 80 divided by R plus J omega naught L. Now we need to calculate omega naught. Omega naught is 2 pi F naught. Omega naught is the fundamental frequency, so it come out to be 100 pi, okay. So what you need to do is you need to put omega naught L and R value to calculate the peak value of the current, fundamental component of the current, and then you have to divide it by √2 to calculate the RMS value, okay. So PWM technique is very simple. उससे क्वेश्चन आना है एक, और मैंने आपको सिंगल फेज में बता दिया कि सिंगल फेज में कैसे होता है. नाउ लेट्स कम टू 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. अब 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में मेनली दो हम कंडक्शन मोड इस्तेमाल करते हैं. वन इज 180 डिग्री कंडक्शन मोड एंड अदर वन इज 120 डिग्री कंडक्शन मोड. नाउ व्हाट इज दिस 180 डिग्री कंडक्शन मोड, वो भी हम देखते हैं. थैंक यू रेवनाथ रंजना, thank you. Okay, so 3 phase voltage source inverter. In 3 phase voltage source inverter we have these 3 legs. हमारे पास 3 legs होते हैं and ये हमारे पास DC source है. तो कई बार क्या होता है, आपको ग्राउंड नहीं प्रोवाइड किया होता है. Then what you need to do is you just connect the capacitor on your own and then make the middle point as ground, because ground is not provided to you. Whenever the ground is not provided, what you can do is you can connect these 2 capacitors and then take the middle point as ground. So the upper point will be VDC by 2 and the lower will be minus VDC by 2, right.
This is leg A, this is leg B, and this is leg C. So I can take the output from here, and from here. Okay, so these are the output point. This is A, this is B, and this is C. Okay, let's say the load is balanced and star connected. Okay, let's assume that the load is balanced and star connected. Okay, so this is the load we have, and assume that the neutral point is not grounded. Okay, or you can take it as grounded, nothing to worry. Let's say it is grounded. If it is grounded, then situation will be little different. If it is not grounded, then the analysis will be little different. Okay, we call this point as A, this point is at B, this point as C. First of all, what I need to do is I need to find the voltage of this point with respect to this O point, because every voltage is measured with respect to this O point. Okay, so how to find this voltage? We know that whenever SA plus is on, the voltage at this point will be plus VDC by 2, and whenever this SA minus is on, the voltage of this point will be minus VDC by 2. And since the conduction mode is 180 degree, so for 180 degree this one is on, and for next 180 degree this one is on. So if you draw VA with respect to O, then you will get a voltage like this. Okay, depending on whether SA plus is on or SA minus is on. It is VDC by 2, and this is minus VDC by 2, right? And remember, this neutral point is also equal to this O point. Why? Because it is also grounded. So you can say that the neutral point and this O point are the same. So whatever voltage you have at this point, the same voltage will come across this load, across this load. Okay, the same voltage will appear across this load. Why? Because this point, this lower point is O itself, and you are writing the voltage VAO. It means the voltage between A point and O point. So this will become the phase voltage. If it is grounded, this will become phase voltage. Okay, this is the phase voltage we have. Now let's say the load is R and L. Okay, let's say the load is like this, and let's say they want to ask about power due to the fundamental component. So what you can do is you can first calculate the current. How to calculate the current? You can write the peak value of this. You can write the peak value of the fundamental. Okay, and it will be 4 into VDC by 2 divided by pi. This is the peak value of the fundamental voltage divided by the fundamental impedance. You will get the peak value of the fundamental current. Okay, this is the peak value of the fundamental current. What you can do is you can divide it by root 2 to get the RMS value of the fundamental current, and then I01 RMS square into R. This is the power loss in this resistive load. Since there are 3 such type of loads, so you have to multiply with 3. So this way you can calculate the 3-phase power loss in the circuit. Okay. Also, once you get this VAO, the phase A phase voltage, you can also calculate the B phase voltage. To find the B phase voltage, you don't need to look at this leg. Only thing what you need to do is you just delay it by 120 degree. Okay, just delay this wave by 120 degree. Okay, and you will get the phase voltage of phase B. Similarly, you will get the phase voltage of phase C. Now, how to calculate the line voltage? How to draw the line voltage? This is the phase voltage. Okay, let me remove it. This is the phase voltage of phase A. Now, what is the phase voltage of phase B? These are the 60-60 interval. First draw the phase voltage of phase B. Just delay it by 120 degree. Just delay it by 120 degree. Okay. So we have this as phase B, VB with respect to O. We have VAO, we have VBO. Now we need to find VAB. We need to find VAB, the line voltage. Or you can say simply VAB. VAB is VAO minus VBO. For every 60 degree interval, you can take the difference. For first 60 degree, this is VDC by 2, this is minus VDC by 2. So if you take the difference, you will get VDC.
For next 60 degree, it is VDC by 2 and this is minus VDC by 2. If you take the difference, you will get VDC. For next 60 degree, it is plus VDC and this is also plus VDC. So if you take the difference, you will get the 0. Okay. Next 60 degree, it is minus VDC by 2. This is plus VDC by 2. If you take the difference, you will get minus VDC. So this way you can write the line voltage. Okay. Just find the phase voltage of phase A and then phase B and then take the difference, you will get the line voltage VAB. Similarly, you can calculate the VBC voltage. Okay, just delay it by 120, you will get the VBC and then advance it by 120 degree, you will get VCA voltage. Okay, this is the line voltage. Now, what is the difference between phase and line? Look, the phase voltage, if I look at phase A, the peak value of the phase voltage varies between plus VDC by 2 and minus VDC by 2. But here, the line voltage varies between plus VDC and minus VDC. Okay, remember, it's not directly root 3. Okay, so you have to be very careful. Next thing is there is one more difference in phase and line, and that difference is, if you look carefully, line voltage never contain triplen harmonic. Line voltage never contain any triplen. This has triplen harmonic. What is triplen harmonic? Odd multiple of 3. Odd multiple of 3, like 3rd harmonic, 9th harmonic, 15th harmonic, 21st harmonic. So these are all triplen harmonic. This wave contain triplen harmonic. The phase voltage contain triplen harmonic, but the line voltage does not contain triplen harmonic. Why? Because if you take the difference of these two wave shapes, then the triplen harmonic will cancel each other, because triplen harmonic will always be in the same phase, and if you take the difference, they will cancel out. Line voltage never contain any triplen harmonic. Phase voltage in this situation contain triplen harmonic. Because of those triplen harmonic current will flow in all the phases. And if you add those all those currents, if you add all these triplen harmonic current, they will sum up and they will add algebraically. Why? Because the 3rd harmonic current in this phase, 3rd harmonic current in this phase, and 3rd harmonic current in this phase all are in same phase. So they will come here and they will combine. Whatever the triplen harmonic current will be after addition, that current will flow from this point to ground, IN. Okay, this is the neutral current. It means the neutral current here will not be 0. Neutral current will always contain triplen harmonic component. Fundamental, 3rd, 5th, 7th. Fundamental, not 3rd, fundamental, 5th, 7th. These harmonic current will add up to 0. Because if you look at the fundamental component of the current here and here and here, the fundamental component is 120 degree apart. If you add them, the sum will be 0. But this will not happen in 3rd harmonic or 9th harmonic or 15th harmonic, because 3rd harmonic, 9th harmonic and 15th harmonic, they all are in the same phase. So if you are going to add them, the resultant will not be 0. Whatever the resultant be, that resultant will flow through this to the ground. It means the neutral current will not be 0. IN will not be 0 whenever this point is grounded, and this side is also grounded. Okay, I hope you understood it. Let's move to the next question, guys. Let's say in the same situation, they apply the sinusoidal PWM. If they apply sinusoidal PWM, if the switching happens according to sinusoidal PWM, now first you need to calculate the modulation index MA to calculate the peak value of the fundamental voltage here. The peak value of the fundamental voltage, you just multiply MA into the variation of this voltage. We know that when our upper switch is connected, output voltage will be, the voltage at this point will be plus VDC by 2 and the lower will be minus VDC by 2 whenever the lower switch is connected. It means at this point the output voltage varies between plus VDC by 2 and minus VDC by 2. If you need to calculate the peak value of the fundamental component of this voltage with respect to this ground, then what you need to do is you need to multiply MA with this level. Okay, this is the fundamental peak value of this phase voltage and all the phase voltage, because the system is balanced. Okay, now you can calculate the fundamental peak value of this current and then RMS current, and then you can calculate the power due to fundamental component only, and multiply by 3, you will get the power due to fundamental component in all the three phases. Okay, I hope you understood it. This is again a very classical case. So now next
let's say this is not grounded, then what will happen? Because there are two situations here. तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं, बट इनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है. ओके, and let's say this is the load we have. This point is connected here, this point is connected here, and this point is connected here. Okay, this is leg A, leg B, and leg C. Let's say this point is not grounded. So one point you can assume as ground. Okay, let's say this is the reference I have taken. It was not mentioned in the problem. So what I did is I just connected two capacitors and then grounded it. So with respect to this will be VDC by 2 and this will be minus VDC by 2. Okay, since this point is not grounded this time, first we calculate the voltage of A with respect to O, and A with respect to O in 180 degree conduction mode will be same as before. Okay, this is VAO. Similarly, we can calculate VBO just by delaying it. You just delay it by 120 degree and you will get VBO. Okay, delayed by 120 degree you will get VBO. This is our VBO. Okay, this is our VBO, just delayed by 120 degree you will get VBO, and then VCO, just advance it by 120 degree you will get VCO. This is VBO, this is VCO. Now what you need to do is to find the phase voltage. This is not phase voltage this time. Why? Because the neutral is not grounded. If neutral is not grounded, you cannot say that this voltage is the phase voltage. This is the voltage with respect to this point, O point, but we need to find the phase voltage as VAN. Phase voltage is VAN, and neutral is not grounded this time. Okay, so I have to be very careful. To find the phase voltage, what you need to do is you need to first find the neutral point voltage. How to find the neutral point voltage? For every 60 degree you separate the circuit out like this. Okay, this is the neutral voltage, and this is VAO, this is VBO, and this is VCO. Okay, for every 60 degree you just apply nodal. This is let's say R1, or the load is resistive. Let's say for simplicity I am taking the resistive load. To calculate the Vn, what you need to do is you just apply the nodal analysis, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R. So for every 60 degree, VAO by R plus VBO by R, I have applied nodal and then calculated amplitude of Vn for every 60 degree. And then we will get to know that Vn will be like this. For every 60 degree, we have to calculate the amplitude of Vn with the help of nodal. Once you get this Vn, now you can take the difference of this point voltage and this point voltage with respect to O. This is the neutral voltage with respect to O, remember. Okay, because O is the reference point. So now we have this voltage, we have this voltage. We can take the difference of the two wave shapes and calculate the phase voltage. I hope you understood it. Okay. Now how to calculate the line voltage? Line voltage is very easy. You have to take the difference of VAO and VBO. The difference of VAO and VBO will be the line voltage. So only thing is, take the difference of these two. Line voltage will remain same as this. It will not change. But the phase voltage will change. Okay. In this case, phase voltage will change. Also, the neutral point will contain all the triplen harmonic component. The neutral point will contain all the triplen harmonic component. Okay. I hope you understood this. So these were the main points about voltage source inverter. Now let's come to DC-DC converter. DC-DC converter. In DC-DC converter, we have first one is buck converter, second one is boost converter, and the third one is buck boost converter. Okay.
Now in the buck converter, in every converter there are two modes of conduction. One is continuous conduction and one is discontinuous conduction. First you have to check whether the conduction is continuous or not. To find the conduction where it is continuous, whether it is continuous or discontinuous, what you need to do is you need to check the IL min. First assume that the conduction is continuous. By assuming the conduction continuous, you can calculate the output voltage with this formula in buck converter, and V0 upon Vd is equal to 1 over 1 minus d. This is the formula in boost converter, and in buck boost converter d over 1 minus d. So first assume that the d is T on by T. Once you get the output voltage, now you can calculate IL min, and you have to remember the formula for IL min. Okay, so let me write the formula for IL min in buck converter. So in buck converter, IL min is, you have to remember it, V0 1 by R minus 1 minus d divided by 2 LF. This is the formula for IL min in buck converter. Now let's come to boost converter. In boost converter, the formula is, let me write the formula. Okay, wait, yes, in the boost converter, IL min is, we have the formula, and IL min formula will come out to be, just give me 1 minute, let me check. If you remember this formula, then directly you can say whether the conduction is continuous or discontinuous. Okay, so IL min will be Vd, it is in terms of Vd, you can write it in terms of V0 as well. Okay, so Vd divided by 1 minus d square into R minus Vd into dt divided by 2L. This is IL min in boost converter. Now let's come to buck boost converter. Okay, in buck boost converter, IL min is, let me write IL min. Yes, IL min is Vd into d divided by R into 1 minus d whole square minus Vd into dt divided by 2L. Okay, so this is the formula of IL min in buck boost converter. You can also write this in terms of Vd. It is d into Vd. Okay, so I can write it here, d into Vd. So first you assume that the conduction is continuous. Assuming the conduction is continuous, you have to calculate this IL min. If IL min is greater than 0, then the conduction will continuous. It means whatever your assumptions were, they were correct. Okay, if IL min is greater than 0, then the conduction will be continuous. Continuous conduction. So you have to check this IL min. Okay, if IL min is 0, conduction is just continuous. If IL min is negative, it is discontinuous conduction. Discontinuous conduction. Okay, so you have to be very careful while applying this formula. These formulas are applicable only in conduction continuous conduction mode. Okay, so first you have to assume that the conduction is continuous, apply these formulas, calculate the output voltage or input voltage according to the data given, and then calculate the IL min value. Calculate IL min value. Once you get the IL min value, now check whether the IL min is positive, negative or 0. If it is positive, conduction will be continuous, and whatever formula you have applied, these formulas are correct. Okay, if IL min is 0, conduction is just continuous, and again these formulas are correct for just continuous. But if IL min is negative, then the conduction will be discontinuous and these formulas will not be applicable. Okay, so you have to be very careful while applying these formulas. I hope you understood these points. Okay, now let's come to the next thing.
In buck boost converter, let's say first discuss about buck converter. Buck converter. So this is the circuit diagram for the buck converter. This is VD and this is V naught. Okay. Now what you need to do is, if you can draw the inductor voltage, then everything will be easy. Similarly in boost converter and buck boost converter, let me draw the voltage across inductor. In continuous conduction, whenever the switch is on, this side will be at VD level. Let's assume that the lower point is grounded. So with respect to ground, when the switch is on, this point will be at VD level and this point will be at V naught level. So the output voltage will be VD minus V naught. Okay, during this on time. Whenever the switch is off, whatever current this inductor has, that the current will freewheel through this diode, and this point will be at 0 volt because it is shorted. So this point will be at 0 volt and this point will remain at V naught. So the output voltage will become minus V naught. Okay, so this is the wave shape of voltage across inductor. What about the current? Current will be like this. Current will linearly increase and decrease because constant voltage is applied across the inductor. If constant voltage is applied across inductor, current will rise linearly and fall linearly because the negative voltage is there. Okay, so this is how we draw the current. This is IL min, this is IL max. Now you can calculate the average inductor current as well. This is IL average. Whatever the average inductor current is, that average will flow here. It must be equal to V naught by R. Why? Because under steady state, average current in the capacitor will be 0. DC current through the capacitor will always be 0. Okay, so whatever average current this inductor has, the same current will flow through the resistor. I hope you understood it. So this is the IL average. Now how to calculate this delta IL max minus IL min. IL max minus IL min. To find that, what you need to do is, you just apply the integration formula 1 by L integration 0 to dt, 0 to t on, this is 0 instant, this is dt instant, 0 to dt, and the voltage across inductor is VD minus V naught dt. You just need to solve this equation to get the delta IL. This is delta IL. So delta IL is VD minus V naught into dt by L. Okay, you got delta IL. Now this average value is just in the middle of these two peak value. I mean this lower peak and this higher peak. Okay, in the middle we have the average value. Let's say I want to calculate IL min. So IL min will be this average inductor current minus delta IL by 2. Okay, because this average value is in the middle. Okay, so what you can do is IL min will be IL average, which is V naught by R, minus delta IL by 2. Okay, and delta IL is this, so V naught by R minus VD minus V naught into dt by 2L. Okay, I hope you understood it. This is how we can calculate IL min with the help of inductor. If you forget this formula, okay, let's say you forget this formula, nothing to worry. What you need to do is, you just draw the inductor voltage and then current. Since I am assuming that the conduction is continuous, so this will be the current and the average value will be in the middle of these two peak value, I mean the higher peak and the lower peak. Okay, and calculate delta IL. Once you get the delta IL value, take half of that and subtract this delta IL by 2 from this IL average. You'll get IL min. This is IL min. Similarly, you can calculate IL max. From this IL min, you get to know whether this assumption is correct or not. This continuous conduction assumption is correct or not. If delta IL is positive, it will be continuous. If it is 0, just continuous, and if it is negative, it will be discontinuous. Okay. If the conduction is discontinuous, let's say the conduction is discontinuous, then what will happen? Then this shape will not be there. Okay, let me redraw the voltage across the inductor. Even with the
with the by checking the voltage of the inductor, by checking the wave shape of voltage across inductor, we can understand whether the conduction is continuous or discontinuous. How? We know that during this on period, the switch is on, this side is at Vd, this side is at V0, so the difference voltage across the inductor will be Vd minus V0. Okay, this is the voltage across the inductor. And when the switch is off, the voltage will be minus V0. Okay, but this minus V0 will not up to T. Why? Because the conduction is discontinuous. I mean, it has to be 0 before this T. And how the current will flow? Since the conduction is discontinuous, during this on period, current will rise linearly and then fall linearly to this point, and then it will remain at 0 ampere. Okay, this is the wave shape of current. This is the wave shape of current in discontinuous conduction. Okay, I hope you understood it. So by checking the wave shape of the inductor voltage, we can say that the conduction is discontinuous. In discontinuous conduction, under steady state, the current will be periodic. Remember that. Okay, the current will be periodic and the average voltage across inductor will be 0. Okay, average voltage across this inductor will be 0. It means the area of this positive side and the negative side will be 0. And this happen in all the converters, all the DC-DC converter. I mean, the diagram will be different, but the analysis will remain same. This is how we can calculate IL min, whether the converter is buck or boost or buck boost. If you know the circuit diagram, draw it and assume that the conduction is continuous, draw the current wave shape, draw the inductor voltage wave shape, and then calculate the average inductor current and subtract delta IL by 2 from there. Either you directly remember these IL min, okay, remember these IL min, or you can do the analysis part. It's up to you. Okay, so this is how we solve the buck converter and boost converter and buck boost converter. There is one more important concept here, and that is output voltage ripple. Let me discuss just for 5 minutes, and I hope sir is waiting. So let me check. Give me 1 minute. The next session will be of, I think, Rathi sir is there. Let me check. Analog electronics. Sanjay Rathi sir will start from 2 p.m. But I think Rathi sir is ready. Let me ask Rathi sir. So guys, there is one more important point in this DC-DC converter, and that is output voltage ripple. Okay, it means what is the change in this capacitor voltage. So in continuous conduction mode, whenever you look at the capacitor current, you can see that whatever this total current is, if you subtract the average part from there, you will get the current through the capacitor. So if I subtract this average part, the capacitor current will be like this. Okay, this will be the capacitor current. And you know that in the capacitor, whenever the current is positive, from this point to this point, you can see that the current is positive. If the current is positive, its voltage will rise. And from this point to this point, current is negative. It means the charge is going back. So the voltage will fall down. So from here to here, voltage will rise from Vc min to Vc max. Okay. And then from this point to this point, voltage will fall from Vc max to Vc min. So if I can calculate this difference, if I calculate this delta Vc or delta V0, you will get the output voltage ripple. Okay, I hope you got the point. So this is how we can calculate this output voltage ripple. Okay, so I think Rathi sir is ready. So let me stop the session and Rathi sir will start. Okay.
Hello everyone, very good afternoon. This is Sanjay Rathi. Hello everyone, very good afternoon. This is Sanjay Rathi. Is it audible guys? एक बार जरा बता दीजिएगा साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, एवरीथिंग इज फाइन. तो पंकज, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू व्हाट एनालॉग यू कैन आस्क. तो बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है आप लोगों का. आशु जांगड़ा सर ने काफी फॉर्मूले आप लोगों को बता दिए, साथ में आशुतोष सक्सेना सर ने सुबह के स्टार्ट बहुत अच्छे से लिया. अब मेरी बारी है, दैट इज फॉर्मूला सीरीज फॉर गेट 2026 गाइस. और यहां मैं हूं एनालॉग के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए. तो इलेक्ट्रिकल में याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनालॉग, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. रिलायबल सब्जेक्ट है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को बना सकते हो. जैसा कि आपने देखा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में जो क्वेश्चंस आए, दैट दोस क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक क्वेश्चन आया था, बीजेटी. तो ये सब क्वेश्चंस आराम से बनाए जा सकते थे और बनाया है बच्चों ने. तो आप भी फॉर्मूला रिवाइज कीजिए और एनालॉग के क्वेश्चन जरूर बनाइएगा. तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन. 24 years of teaching experience. These are my ranks in engineering services exam. I worked as deputy director in Ministry of Power and these are my subject guys. Okay. Then अब आते हैं एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. गेट 2027 एंड 2028 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. राइट, सॉरी 23 Feb से स्टार्ट होगी. एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है. याद रखिए ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, साथ में हिंदी में भी अवेलेबल है. तो यू कैन ज्वाइन नाउ. दिस इज द फी स्ट्रक्चर. यू कैन यूज दिस कोड 𝐂𝐤𝐬𝐞 GATE35. और साथ में आज लास्ट दिन है, अप टू 90% ऑफ. दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर. टू गो थ्रू द वेबसाइट यू कैन अवेल दिस ऑफर नाउ. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. अगर सेशन आपको लग रहा है कि वाकई यूजफुल हो रहा है तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा. तो देखते हैं जरा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मूला सीरीज गाइस. सबसे पहले जो आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो है डायोड सर्किट. डायोड सर्किट. ओके, डायोड सर्किट में जो है मैं अभी आप लोगों से फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं. रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर एंड डबलर. राइट, रेक्टिफायर में हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे प्रिसीजन रेक्टिफायर, ये जहां से क्वेश्चन बनते हैं. राइट, क्लिपर में ज्यादातर जो है आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा. 2 लेवल क्लिपर से क्वेश्चन आते हैं. क्लैंपर में 2 क्लैंपर है, एक नेगेटिव एंड एक व्हाट पॉजिटिव क्लैंपर. और डबलर है वोल्टेज डबलर. तो वोल्टेज डबलर में आपको कैसे फॉर्मूला बनाना होता है वो. आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप जरूर पूछिएगा और याद रखिएगा. तो देखिए जरा रेक्टिफायर्स क्या है. रेक्टिफायर्स और क्लिपर, क्लैंपर एंड व्हाट डबलर. देन गिव मी 1 minute. ओके, नाउ रेक्टिफायर्स. सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो ये आपको डायग्राम दिखाई देगा. सिंगल डायोड, 1 रजिस्टर, आउटपुट हियर ट्रांसफॉर्मर. तो अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग एग्जाम. ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा एक तो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा या फिर 2 मार्क क्वेश्चन आएगा. तो सबसे पहले ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मर का स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. नॉर्मली स्टेप डाउन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो यहां पर जो भी होगा, जैसे आपको लिखा होगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज. तो बी केयरफुल, इसको सबसे पहले ये आरएमएस वैल्यू है. अगर जब तक मेंशन नहीं है दिस इज द आरएमएस वैल्यू, तो इसको पीक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना. तो पीक वैल्यू हो जाएगी 230 इंटू √2. पीपी बाई वीएम इज इक्वल टू
N1 by N2. From this you can find what? VM, right? उसके बाद इधर आ जाओ, यहां पर आपको एक हाफ फुल वेव दिखाई देगी, दिस इज द फुल वेव, और यहां आपके पास है एक हाफ वेव। अब फॉर्मूला ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला आएगा, दैट इज व्हाट, इस हाफ वेव की पीक वैल्यू Vm, ऑन द सेकेंडरी साइड जो आपकी वैल्यू आ रही है वही पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू Vm by 2, Vm by रूट 2 मत कर लेना, राइट, डीसी Vm by पाई। अब फॉर्मूला याद रखो, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ये होता है वी आरएमएस अपॉन वीडीसी, ये जनरल फॉर्मूला वी आरएमएस अपॉन वीडीसी। रिपल फैक्टर, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट गाइस, और आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिपल वोल्टेज अपॉन व्हाट, वीडीसी, राइट। तो फॉर्म फैक्टर यहां पर आता है, फॉर्म फैक्टर आपके पास आएगा फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर 1.57, नियरली इक्वल टू रिपल फैक्टर 1.21, और रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में रिलेशन होता है एफ स्क्वायर माइनस 1, एफ स्क्वायर माइनस 1 गाइस। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ये पूछा जा सकता है, और क्रेस्ट फैक्टर पूछा जा सकता है, क्रेस्ट फैक्टर ये होता है पीक अपॉन आरएमएस, पीक अपॉन आरएमएस, पीक वैल्यू है Vm और आरएमएस वैल्यू है Vm by 2, तो क्रेस्ट फैक्टर आएगा 2। तो दो इंपॉर्टेंट है, इससे बाकी सब वैल्यूज निकाली जा सकती है। ओके, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। साथ में आपसे पूछेगा व्हाट इज द पीआईवी, क्या पूछा जाएगा, पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज गाइस, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा व्हाट इज द पीआईवी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर Vm। अब जो स्टूडेंट नए हैं वो थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूं आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा क्या है वो कहानी। Vm का मतलब है जो सेकेंडरी साइड आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज ऑन द सेकेंडरी साइड। आपके प्राइमरी साइड में जो भी होगा उसको स्टेप डाउन करने के बाद सेकेंडरी साइड में लगाओ, और वो होगी आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द डायोड गाइस। ओके, तो ये आपको पूछा जाएगा। फिर ट्रांसफर कर्व अगर निकालना है तो याद रखना, ट्रांसफर कर्व का मतलब है V0 वर्सेस Vi, V0 वर्सेस Vi। तो अगर ये भी आपसे पूछे तो ट्रांसफर कर्व, when the Vi is 0 output is 0, when the Vi is greater than that output is what, this one, output is exactly replica of the input. What is the slope of this line, 1, and that is what ideal operational amplifier, ideal operational amplifier के लिए ये सब फॉर्मूले हैं। ओके, तो आइडियल डायोड के लिए, नॉट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फॉर आइडियल डायोड वी हैव दिस ऑल दिस फॉर्मूला, ये आइडियल सर्किट है, दिस ऑल फॉर्मूला फॉर आइडियल। ओके, तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो मैं यहां पर नहीं, पूरे मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूं, तो ध्यान देते जाना। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में ये आ गया क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू एंड सो ऑन। नाउ अब सेकंड आता है, सेकंड जो है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो है, एक है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप, एक डायोड आपको यहां दिखाई देगा, एक डायोड आपको यहां दिखाई दे रहा है। पहले सबसे पहले डायग्राम, और ये है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप। अब सब आपको मालूम है तो आप सीधा लिख सकते हो फुल वेव यहां आपको दिखाई देगी इस तरीके की। ओके, देन फर्स्ट प्रिकॉशन आपको क्या रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज द Vm एट हाफ साइड, दिस इज द Vm एट अनदर साइड। यहां पर एक डॉट कन्वेंशन होता है, इस डॉट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस तरीके से डॉट्स होने चाहिए। ये भी Vm है, ये भी Vm है, सेंटर टैप है, यहां का टर्न और यहां का टर्न सेम होना चाहिए। अब आपको प्रिकॉशन क्या रखना है, क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर देखिएगा कि ये टोटल टर्न बता रहा है या फिर हाफ टर्न बता रहा है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी साइड में अगर टोटल टर्न दिया हुआ है 1000, तो आप हाफ का निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये हो जाएगा 500। नाउ अगर यहां पर कोई वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, तो ये आपकी आरएमएस वैल्यू है, यहां से पीक वैल्यू निकाल लो 230 √2,
और प्राइमरी साइड अगर टर्न रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी साइड आपको जो भी टर्न रेशियो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10,000, नो प्रॉब्लम। अब आप स्टेप डाउन कीजिए, Vp बाई Vm इज इक्वल टू हो जाएगा N1 बाई N2, तो आप लिखेंगे 10,000 अपॉन 500, that will give you the value of Vm guys, that will give you the value of Vm, तो Vm is equal to Vp by 20. What is this Vp by 20? This is on the single side, ये देखो दो है ना, यहां भी है यहां भी है, तो it is the value of Vm on the this side, upper side और what lower side, बस यही वैल्यू आपको केयरफुली निकालनी है। ओके क्या हुआ, मैंने बोला ट्रांसफार्मर का पूरा टर्न दिया हुआ है, उसको हाफ करो, अगर ऑलरेडी हाफ दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज इसको हाफ कर लीजिए। फिर ऑन द वन साइड आपको क्या निकालना है, Vm। एक बार आपका Vm आ गया, उसके बाद आप निकाल सकते हो Vrms फॉर फुल वेव, Vm बाई रूट 2, VDC 2 Vm बाई पाई, राइट। और उसके बाद है ऑल रिपल फैक्टर 0.48, फॉर्म फैक्टर 1.1, क्रेस्ट फैक्टर रूट 2, ओके, ये सब हो गए फुल वेव रेक्टिफायर में। PIV जो वैल्यू आएगी वो आती है 2 Vm। PIV मतलब है पीक इनवर्स वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द डायोड, दैट इज व्हाट 2 Vm। देन आप देखोगे PIV की वैल्यू आ गई 2 Vm, फुल वेव रेक्टिफायर का ट्रांसफर कर जो है वो ऐसा दिखाई देगा आपको, this is the full wave rectifier V0 versus Vi. Input is positive, then the output is positive, input is negative, again the output is positive guys. This is the transfer curve. अब ये तो मैंने छोटी छोटी आइडियल कंडीशंस आपको बता दी। अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि रेक्टिफायर एफिशिएंसी। रेक्टिफायर एफिशिएंसी, हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर रेक्टिफायर एफिशिएंसी की बात करें तो ईटा इज, जो भी आपको याद नहीं आ रहा है या रिकॉल नहीं हो पाएगा तो मुझे बोलिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या चीज है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ये क्विक रिवीजन है, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है। रेक्टिफायर एफिशिएंसी का मतलब है जितना आपने एसी दिया है उनमें उसमें से कितना परसेंट डीसी में कन्वर्ट हो गया। रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो कितना परसेंट आता है रेक्टिफायर, 0.48, राइट। तो ये नियरली इक्वल टू पॉइंट, आप याद करो, around 406, 40.6%, 40.6% of the AC power is converted into what, DC power. This is for half wave under ideal condition. अगर यही फुल वेव की बात करें तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो है वो है डबल, 81.2%, आइडियल कंडीशन 81.2%। फिर यहां पर हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ट्रांसफार्मर का जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है TUF वो है 0.286, और यहां जो ट्रांसफार्मर लगाया है उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर इससे ज्यादा है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.693 हो गया। इतनी अगर डिटेल आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, चेक कर लीजिएगा, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तीसरा जो है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर देखो, ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ऐसा दिखाई देगा, otherwise you can directly connect the input without transformer। ये this is the turn ratio। इसमें भी आपको प्रिकॉशन रखना है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। यहां आपको आउटपुट लेगा, यहां दिस इज द आरएल एंड वी आर टेकिंग द आउटपुट हियर, तो ये है डायोड्स। यहां भी हमको मिलेगी फुल वेव, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपने सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के लिए लिखा है वही सब फॉर्मूला, यही सब आएगा, आरएमएस वैल्यू, वीडीसी वैल्यू, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर। जो डिफरेंस है वो है पीआईवी, इसका पीआईवी है वीएम। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है दैट इज व्हाट वेरी हाई 0.812, तीनों में से सबसे ज्यादा, और रेक्टिफायर एफिशिएंसी उतनी ही है 81.2%, 81.2%। ओके, अब सबसे बेसिक चीज, क्योंकि एमएसक्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाई ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रिफरेबल ओवर सेंटर टैप्ड, बिकॉज बोथ आर फुल वेव। तो ब्रिज रेक्टिफायर की क्या खास बात है,
तो याद रखिए ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ज्यादा है, दूसरा पीआईवी कम है, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रेफरेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। किसके लिए प्रेफरेबल है? हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें अगर आपको स्टेप डाउन नहीं करना है या स्टेप अप नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द इनपुट। कभी भी आप ट्रांसफार्मर को हटाकर डायरेक्टली इनपुट अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफार्मर हटा दीजिए एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द इनपुट, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ व्हाट सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप। आप यहां डायरेक्ट इनपुट लगा सकते हो विदाउट ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर होता है बल्की एंड हैवी, और अगर आपको ऐसा मिले कि यार ट्रांसफार्मर के बिना भी रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो गाइज आपकी जो उसकी साइज है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, उसका वेट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, आजकल के आप चार्जर्स देखते हो तो उसका वेट बहुत कम रहता है, पहले के अडॉप्टर का जो वेट होता था बहुत ज्यादा होता था, दैट इज द रीजन। तो आप इस तरीके से इसको ट्रांसफार्मर को यहां से निकाल सकते हो, ब्रिज में निकाल सकते हो लेकिन सेंटर टैप में नहीं निकाल सकते। सेंटर टैप में इसको आप ट्रांसफार्मर को नहीं निकाल सकते। और सबसे अच्छे से ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा है। अब बोलेगा प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है कि यहां पर दो डायोड एट अ टाइम कंडक्ट करते हैं, दो डायोड एट अ टाइम कंडक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कट इन वोल्टेज इज हाई। व्हाट इज द वी गामा? कट इन वोल्टेज, और मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड वी कट इन is 2V gamma, right? 2V gamma और 2VD, that is what। अगर 0.71 डायोड के क्रॉस लगता है तो दो डायोड के क्रॉस कितना लगेगा? 1.4 वोल्ट। इसीलिए ये लो वोल्टेज के लिए प्रेफरेबल नहीं है, दिस इज नॉट प्रेफरेबल फॉर लो वोल्टेज, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। अब आते हैं रेक्टिफायर विद फिल्टर। रेक्टिफायर विद फिल्टर गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर विद सी फिल्टर। देखो कैपेसिटर फिल्टर हमेशा इसके पैरेलल में लगेगा, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, दिस इज द कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में, इंडक्टर सीरीज में, राइट? जैसे ही आपने कैपेसिटर फिल्टर लगाया तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रिपल फैक्टर गाइस? रिपल फैक्टर इज 1/2√3 FCRL, 1/2√3 FCRL। Second question, what should be the time constant? The time constant RLC should be very greater than what T, time period of the input। ये जो time constant है that should be very high, बहुत ज्यादा हाई आना चाहिए। ये आपको कंडीशन दे सकता है फॉर कैपेसिटर फिल्टर। तो रजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। RLC should be very हाई। कैपेसिटर आता है इन द रेंज ऑफ व्हाट? 4000 माइक्रोफैराड, that is what 4 millifarad। this is a very high value of the capacitor, it is connected in parallel and that is the reason guys। तो 1/2√3 FCRL, that is the ripple factor। ओके, आपकी रेक्टिफायर, अब देखो रिपल फैक्टर को आप जितनी मर्जी उतना कम कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ RLC। F इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो आपने सप्लाई दी है उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे 50 हर्ट्ज है तो यहां पर आप यूज करोगे व्हाट? 50 हर्ट्ज गाइस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा, व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर? चलिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए रिपल फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड रिपल फ्रीक्वेंसी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर। बोलिए। ये आ गया ये 2√3 FCRL गाइस। अब अगर आप बात करोगे फुल वेव रेक्टिफायर में, whether it is a bridge rectifier or what center tapped transformer type, the ripple factor is 1/4√3 FCRL, 1/4√3 FCRL, remember। तो यहां भी जो कैपेसिटर लगेगा दैट इज पैरेलल टू RL इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, पैरेलल टू RL इन केस ऑफ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप। ओके, तो जो मैंने आपसे पूछा था फुल वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल जो फ्रीक्वेंसी है FR, दैट इज नथिंग बट
2f. 2f means if the supply frequency is 50 hertz, it will be 100 hertz. For half wave rectifier, the ripple frequency is just have f. This is without filter. तो ये है f. Ripple frequency is just half. If the supply frequency is 50 hertz, ripple frequency is also 50 hertz in case of half wave rectifier. तो ये देखो इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आप आराम से आप देख सकते हैं. नाउ अब आते हैं जरा देखो, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर ने इंडक्टर के बारे में बताया, इंडक्टर किस में लगता है? सीरीज में. इंडक्टर किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा विद व्हाट? रेक्टिफायर. ये याद रखिएगा. देन नेक्स्ट है फिर आते हैं दोस्तों क्लैंपर सर्किट पर. क्लैंपर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर एंड पॉजिटिव क्लैंपर. तो आपको बस डायग्राम ध्यान रखना है. अगर ये डायोड है ऐसा, ये है क्लैंपर सर्किट, एक कैपेसिटर, एक डायोड और ये, और यहां अगर एक बैटरी लगी है तो इसको बोलते हैं बायस्ड क्लैंपर. पीआर. दूसरा देखिए, इन दोनों क्लैंपर में यहां आपने इनपुट दिया, यहां आउटपुट लेंगे. बस आपको ध्यान क्या रखना है, मैं ये आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है. क्लैंपर के सभी क्वेश्चन बना लोगे और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्लैंपर आता है. तो देखिए, ये जैसे एरो नीचे जा रहा है, ये नेगेटिव क्लैंपर है. और आपका जो नेगेटिव क्लैंपर है, जो भी वेव फॉर्म दी है, द स्विंग ऑफ द आउटपुट इज इक्वल टू स्विंग ऑफ द इनपुट, शेप ऑफ द आउटपुट इज इक्वल टू द शेप ऑफ द आउटपुट. और ये जो वीआर लगा है इसको बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज. फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव क्लैंपर है और रेफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट है. दिस इज अ पॉजिटिव क्लैंपर एंड रेफरेंस वोल्टेज इज लाइक अगेन 2 वोल्ट. दिस इज आल्सो वीआर बट इट इज अ पॉजिटिव क्लैंपर. अब दोनों केस में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इनपुट दिया हुआ है ये 10 0 एंड -10, तो शेप इज द स्क्वायर वेव, टोटल स्विंग इज 20. सिंस इट इज अ नेगेटिव क्लैंपर तो आपको कुछ नहीं, ये लिया आपने, ये 0 हो गया. व्हाट इज द वोल्टेज हियर? 2 वोल्ट. 2 is the highest reference swing. What is the total swing? 20. 2 minus 20. Lowest value is -18. Now draw the waveform. That will be the output. Finished. Now the average value of this signal is what? Negative. Average value of this signal is negative. Okay? तो simple. डाउनवर्ड करंट कहां से जाएगा? P से N की तरफ. तो आप बोल सकते हो नेगेटिव क्लैंपर, रेफरेंस इज 2 वोल्ट, हाईएस्ट लेवल इज 2 वोल्ट, swing is what? 20. 2 minus 20, lowest level is -18. हो गया, क्वेश्चन खत्म. For this clamper, what is the level? 2 volt. What is the swing of the input? 22 plus 20, 22. This 2 is common. This is a positive clamper. अब draw कर लो. And that is the value 22. राइट हमेशा याद रखना, एवरेज वैल्यू जब भी निकालो तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, दिस विल गिव यू द डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू. 24/2 12 वोल्ट, 12 वोल्ट. ये हमेशा एवरेज याद रखिए, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2. ये होता है क्लैंपर सर्किट. और क्लैंपर में भी आपका जो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, दैट आरएलसी शुड बी वेरी वेरी हाई as compared to time period of the signal guys. Time period of the signal. तो रजिस्टर की वैल्यू, जो लोड रजिस्टर लगेगा, दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, तब ये बेस्ट तरीके से परफॉर्म करता है. नेगेटिव क्लैंपर, पॉजिटिव क्लैंपर का काम है डीसी इंसर्ट करना ओनली. चेंज द डीसी लेवल, इंसर्ट द डीसी लेवल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीसी ट्रांसलेटर, डीसी इंसर्टर, डीसी रिस्टोरर. शेप चेंज नहीं करना चाहिए और स्विंग चेंज नहीं होना चाहिए. Only change in what? DC level, and that is called clamper. There are two types, negative clamper and what? Positive clamper. देखो एक ही बार में अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा.
हाँ ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। तो डायोड सर्किट्स इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल वाले, इसलिए मैंने स्टार्ट किया डायोड सर्किट से, समझ लीजिए। हो गया क्लैम्पर भी। अब आते हैं जरा नेक्स्ट उस पर। कोई भी अगर आपको डाउट आएगा तो आप बताइएगा, इसको दिमाग में एक बार सेट कर लो। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन प्लीज इन्फॉर्म मी। एनीवन? नाउ अब आते हैं क्लीपर पे। देखो क्लीपर जो है, क्लीपर का काम है आउटपुट को लिमिट करना। क्या करना? लिमिट करना, आउटपुट को लिमिट कर देना। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लीपर, वन इज पॉजिटिव क्लीपर, वन इज नेगेटिव क्लीपर, वन इज कॉल्ड व्हाट, टू लेवल क्लीपर। तो क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो पॉजिटिव क्लीपर, नेगेटिव क्लीपर जो भी है, इस तरीके से हम लोग डायोड लगाते हैं। या तो डायोड यहां लगा होगा, ये रजिस्टर लगा है, दिस इज द वे, ये रेफरेंस वोल्टेज, दिस इज द डायोड, हियर इट इज द आउटपुट, हियर इट इज द इनपुट। ओके, इसको बोलते हैं सीरीज क्लीपर। या डायोड यहां लगा होगा, इसे बोला जाएगा शंट क्लीपर, क्योंकि डायोड रजिस्टर जो भी लोड लगने वाला है वो यहां लगेगा। तो लोड के पैरेलल में है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड शंट क्लीपर। लोड के साथ सीरीज में है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सीरीज क्लीपर। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में सीरीज क्लीपर, राइट, वो आउटपुट के पैरेलल में है। तो दो ही क्लीपर यहां पर हो गए, सीरीज एंड व्हाट, शंट क्लीपर। बस अब आपको क्या करना है, डायग्राम को समझते हुए बनाना है। फॉर एग्जाम्पल डायोड है, तो यहां पर देखो जरा, डायोड लगा, डायोड के पॉजिटिव साइड Vi है, नेगेटिव साइड Vr है। तो आप समझ सकते हो जब Vi लेस देन Vr है डायोड ऑफ हो गया, और जब Vi ग्रेटर देन Vr है डायोड इज ऑन। आपको कभी भी क्लिपर में अगर ऐसा क्वेश्चन है समझ में नहीं आया तो डायोड को ऑफ कर दो, आउटपुट इज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ द इनपुट, डायोड को ऑन कर दो, आउटपुट इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाट Vr। Simple, directly apply the network and you can find. So what is the output? Vi. When the input is less than Vr, output is exactly replica of the input. When the Vi is greater than Vr, output is what? Vr, constant. Constant हो गया। बस आपसे फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा, ट्रांसफर करो, ड्रॉ करो। ट्रांसफर करो, ड्रॉ करो। Always write a line. This is the slope is what? 1. This is the reference level Vr. When the input is less than Vr, output will follow the input. When the input is greater than Vr, it is a constant. So this is called positive clipper, क्योंकि इसने पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया। Similarly, you can draw the transfer curve for this diagram also. तो आपको एक डायोड आपको चेक करना है, तो इस तरीके से आप क्लिपर के क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। इस तरीके से आप क्लिपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आप देख सकते हो क्लिपर कैसे बनाना है। नाउ अब आते हैं जरा क्लिपर के बाद क्लैम्पर। कल भी आप लोग, कल भी और भी एनालॉग के और चीजों को रिवाइज करने के लिए, कल आज तो होगा ही एक बार, और फिर और अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से और भी होगा। कल मॉर्निंग में भी 10 AM आप लोग सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा शार्प, क्योंकि आपका परसों है इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर। तो कल मॉर्निंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में एनालॉग कॉमन है, नेटवर्क है ना, सिग्नल एंड सिस्टम है, EMFT कॉमन है, मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, डिजिटल कॉमन सब्जेक्ट है। इन सब का और भी रिवीजन होगा, और अभी भी आप रिवीजन कीजिए एक बार। तो ये हुआ क्लिपर। इसमें एक और क्लिपर जो आएगा, 2 लेवल क्लिपर आता है। तो कभी भी ध्यान देना, 2 लेवल क्लिपर, एक सीरीज रजिस्टर लगा हुआ है, यहां एक डायोड है, ये बैटरी है, एक दूसरा डायोड है, एक और बैटरी है, और ये आउटपुट है, ये इनपुट है। दिस इज द VR1, दिस इज द VR2, राइट। ये डायोड D1 एंड व्हाट D2, D1 एंड व्हाट D2, ओके। देन एक मिनट रुकिएगा। देखो अब क्या करना है, देखो ये आ गया V0 एंड Vi। तो ये 2 लेवल क्लिपर पे आपको यही 2 लेवल है, बस आपको पोजीशन देखनी है कि कब डायोड ऑन है कब डायोड ऑफ है।
तो आपको पता चलेगा व्हेन द इनपुट इज बिटवीन VR एंड VR2 आउटपुट विल फॉलो द इनपुट। इस पर क्या आएगा आपका ट्रांसफर कर्व आएगा। इसको मैंने अपने सेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। तो ये हो गया आपको क्लिपर के बारे में। यही डायग्राम इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है जिस पर मैंने क्वेश्चंस बनवाए हैं। मैं बस ये बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आपने रिवीजन नहीं किया है तो मेरे नोट से आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है, तो डायोड सर्किट्स में से इतना, और एक आता है वोल्टेज डबलर गाइस। वोल्टेज डबलर में यहां देखिएगा, वोल्टेज डबलर में आपको यहां दिखाई देगा एक क्लैंपर, ये है जैसे पॉजिटिव क्लैंपर, और यहां एक लगा होगा पीक डिटेक्टर। पीक डिटेक्टर कई बार यहां पे RL लगा होगा, लेकिन RL की वैल्यू आपको दी होगी इनफाइनाइट। ये इसका तरीका है बनाने का, V0, दिस इज द VI, C1, दिस इज द C2, D2, D1। तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपको ध्यान रखना, यहां पर जो भी सिग्नल दिया है, फॉर एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है 20 sin ओमेगा t, तो इसकी जो वैल्यू है उसका डबल आपको आउटपुट मिलेगा 40 2 Vm, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट गाइस। अगर दोनों डायोड की पोलैरिटी रिवर्स कर दे, इसको भी रिवर्स कर दे, इसको भी रिवर्स कर दे, तो आपको मिलेगा -40 वोल्ट। तो आपको मिलेगा -40 वोल्ट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डबलर। दैट इज कॉल्ड डबलर। इसको भी कर दे और इसे भी रिवर्स कर दे, तो दिस इज अ नेगेटिव क्लैंपर फॉलोड बाय द नेगेटिव पीक डिटेक्टर, देन द आंसर विल बी -2 Vm, -40। तो दिस इज व्हाट? डबलर गाइस। तो ये डबलर पे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर कई बार आपको पूछेगा कि यहां आउटपुट कितना है, तो इस पर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। बस दिस इज द आउटपुट ऑफ क्लैंपर ओनली, दिस इज द आउटपुट ऑफ क्लैंपर। अब आ गए इसके बाद डायोड के बाद अब आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रांजिस्टर गाइस। ट्रांजिस्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। वोल्टेज डिवीजन, जैसे कि अभी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया था, वोल्टेज डिवीजन वाले सर्किट पर। बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ बीजेटी। ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा आपको दिखाई देगा, ये RE, RC, VCC, यहां पे आपको लगा होगा एक पोटेंशियल डिवाइडर R1, R2। आपको क्या करना है, इसको कट करो यहां से, और यहां पर निकालिए आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। इस डायग्राम को आप रीड्रॉ कर सकते हैं। RE, RTH, VTH, right? What is the value of the VTH? R2 upon R1 plus R2 into VCC. And what is the value of the RTH? R1 parallel with R2. इसका आपको ध्यान रखना है। Then वापस रीड्रॉ कीजिए इस डायग्राम को, ये ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए R1 एंड R2, इसमें दो केसेस बनेंगे। एक केस ऐसा जिसमें बीटा दिया हुआ है, और एक केस ऐसा जिसमें बीटा नहीं दिया हुआ है। जैसे अभी इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन आया था तो बीटा गिवन था। अगर बीटा गिवन है तो यहां से आपको रखना है लेट द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, यहां से रखिए IB, यहां से रखो IC, और यहां हो जाएगा I होता है IC प्लस IB, जिसको बोलते हैं हम 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB। यहां पर एक पूरी KVL लगाइए एंड देन फाइंड द IB, जिसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। IB इज इक्वल टू VTH माइनस VB अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE। आप यहां पर KVL लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आएगा। VB यहां का वोल्टेज है। एक बार आपके पास में IB आ गया, देन फाइंड द IC इज इक्वल टू व्हाट? बीटा IB। और आपको लास्ट में क्या निकालना होगा? VCE। तो आप यहां से लेकर यहां तक KVL लिखेंगे तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? VCE। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन पे, जिसको बोलते हैं सेल्फ बायस सर्किट
पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट, तो इस पर यूज कीजिएगा ये फॉर्मूला, और ये होता है एक्टिव रीजन के लिए फॉर्मूला जिसको आपको यूज करना है फॉर एक्टिव रीजन। ओके, तो ये हुआ। एक और क्वेश्चन आता है जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट इफ द बीजेटी इज इन व्हाट सैचुरेशन, तो वो भी ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है बीजेटी इन सैचुरेशन में, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है तो भी आप इस तरीके से डायग्राम में बदल लीजिए। इफ द बीजेटी इज इन सैचुरेशन, ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाता है वीसीई सेट, ये वाला पॉइंट आपको दिया होगा वीबीई और वीबीई सेट, जिसकी वैल्यू 0.6, 0.7, 0.8 जो भी दी हुई है यहां पे रख लीजिए, और यहां पर होगा वीसीई सेट, और ये आपको निकालना है आईसी। अगर ये सैचुरेशन में है तो आईसी सेट हो जाएगा वीसीसी माइनस वीसीई सेट अपॉन आरसी, वीसीसी माइनस वीसीई सेट अपॉन आरसी निकाल लो। उसके बाद याद रखिए आईबी मिनिमम निकालना है, व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन, तो आईसी सेट अपॉन बीटा। उसके बाद निकालिए एग्जैक्ट आईबी, व्हाट इज द एग्जैक्ट आईबी फ्रॉम दिस, व्हाट इज द आईबी फॉर द डायग्राम, आईबी इज इक्वल टू वीबीबी माइनस वीबी सेट, वीबीबी माइनस वीबी सेट अपॉन आरबी। और अगर ये आईबी मिनिमम से ज्यादा है मीन्स बीजेटी इज इन व्हाट सैचुरेशन। बस ये आपको प्रूव करना है बीजेटी इज इन सैचुरेशन। तो ये आपको ये जो इनइक्वालिटी की कंडीशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में सबको मिक्स कर दो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आरसी, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा एंड सो ऑन। तो दीज ऑल फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट सैचुरेशन गाइस। आपको इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू गाइस। ओके, तो लास्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, आईबी की जगह आप लिख दीजिए वीबीबी माइनस व्हाट वीबीई अपॉन आरबी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट इज द आईबी मिनिमम, आईसी सेट अपॉन बीटा, व्हाट इज द आईसी सेट, वीसीसी माइनस वीसीई सेट अपॉन बीटा आरसी। ये जो फॉर्मूला है इससे पूरे सैचुरेशन के क्वेश्चन इस डायग्राम के लिए बन जाएंगे। अगर आपको आरबी निकालना है, आपको आरसी निकालना है, आपको वीबीबी निकालना है, तो आपको याद रखना वीबीई की वैल्यू 0.7 या 0.8 जो क्वेश्चन में दी हुई है, वीसीई सेट 0.2 या जो भी क्वेश्चन में आपको दी हुई है वो यूज कीजिएगा। राइट, ये आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया अबाउट द सैचुरेशन, दिस इज अबाउट द बीजेटी। नाउ गाइस, अब अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑन मॉसफेट, मॉसफेट में भी आपको सेम डायग्राम दिखाई देगा। तो भी आप इसमें क्या लगाइएगा, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। याद रखिएगा ऑप-एम्प में कोई भी करंट नहीं जाता, तो नो नीड टू फाइंड द आरटीएच बिकॉज व्हाट इज द गेट करंट, 0। दिस इज द आरडी, दिस इज द वीडीडी, this is the RS, this voltage is called VGS drain and that is the source guys, this is the gate terminal। तो इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आपका अगर ये फॉर्मूला आ रहा है VGS, तो आप देखिए इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं है, यहां से करंट जाता है ID, यहां से वो करंट जाएगा ID, you can write a KVL and you can find the VGS। VGS is nothing but VTH minus ID into RS। VTH minus ID into RS will give you the value of the VGS। It is in saturation, तो saturation में आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, IDS is equal to half of K and S W by L VGS minus VT the whole square। अब मैं आपको जो बता रहा हूं इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान रखना, आपके दो फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको K एंड S दिया होगा क्वेश्चन में म्यू एन सी ओ एक्स, कई बार ये सब मिलाकर एक साथ दे देता है या फिर पूरे को एक कांस्टेंट बोल देता है, तब भी चलेगा। हाफ ऑफ K एंड S W by L इज अ कांस्टेंट। VGS you can put the value VTH minus ID into RS
और VT that is called threshold voltage, it will be given in the question. You will get a quadratic equation, solve it and you will get the value of the current. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन। ये आप पोटेंशियल डिवाइडर लगाओ यहां। सबसे पहले VTH निकालो, नो नीड टू फाइंड द RTH, नो नीड टू फाइंड द RTH। उसके बाद आप इसका फॉर्मूला यूज कीजिए एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ड्रेन करंट। इसे भी बोला जाता है पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग गाइस, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, गेन अगर आपको निकालना है तो गेन निकालना है तो इस मॉडल का यूज करो, दैट इज कॉल्ड गेट, दिस इज कॉल्ड सोर्स, GM-VGS यहां लगा होता है RD, this is the drain, this is the source, this is the GM-VGS, this is the VGS. This is called small signal model for FET, small signal model for FET. अगर आपको यहां से गेन निकालने बोल रही है इस डायग्राम का, अगर यहां आपको कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आउटपुट है, ये RD है, ये VDD, सिंपल यहां आपको इनपुट लगा दिया। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल वालों का ऐसा क्वेश्चन आता है, इनपुट लगा दिया। आप बोलोगे यहां पे बाइसिंग, ओके नो प्रॉब्लम, बाइसिंग चलेगा। अब आपको बोला गया है फाइंड द गेन ऑफ द आउटपुट। व्हाट इज द गेन ऑफ द आउटपुट? V0 अपॉन VS, V0 अपॉन व्हाट, VS। तो V0 अपॉन VS अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, अब या तो आप मॉडल में लगाइए, तो कैपेसिटर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, व्हाट अबाउट दिस रजिस्टर, शॉर्ट सर्किटेड, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड। Connect a RD here in parallel to that and correct the VS to the gate to the ground. तो ये जो मॉडल बना हुआ है, ये मॉडल आपको बहुत ही इजी से दिखाई देगा। इलेक्ट्रिकल वाले देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। यहां लगाइए VS बिटवीन गेट एंड सोर्स, सोर्स इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये हो गया गेट टर्मिनल, तो यही आपका बन गया VGS। देन दिस इज द GM-VGS, small RD parallel with the capital RD. Always remember during AC analysis this term will act as 0, drain और ground के बीच में RD, source is connected to ground and so on. तो आपका इधर जो करंट जाएगा that is minus GM-VGS, तो आप लिख सकते हो V0 upon VS is equal to minus GM-VGS RD parallel with RD. And what is the VS-VGS? तो आपका गेन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कीजिए, माइनस GM RD पैरेलल विद कैपिटल RD। यहां पर जो भी कैपिटल RD की वैल्यू दी हुई है और स्मॉल RD की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट आप गेन निकालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन यहां पे बन गया, राइट। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ऑन व्हाट, मॉसफेट गाइस। अगर आपको स्मॉल RD नहीं दिया हुआ है, कभी भी अगर क्वेश्चन में स्मॉल RD नहीं है तो टेक इट व्हाट इंफिनिटी, तो फिर आपका गेन हो जाएगा माइनस GM RD। ये आपका गेन हो गया माइनस GM RD विद 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। ये बन गया मॉसफेट पे। जो जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 1 घंटे में मुझे कवर करना था, तो ये हो गया मॉसफेट पर। सिमिलरली आपका जो BJT है, BJT पर भी एक स्मॉल सिग्नल मॉडल याद रखिएगा, और एक ही डायग्राम है सबसे इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल में आपको बिल्कुल सिंपल सा एक डायग्राम देगा, ध्यान रखना। यहां एक कैपेसिटर लगा है, यहां एक कैपेसिटर के साथ RL लगा हुआ है, RC, VCC, ये पोटेंशियल डिवाइडर भी लगा होगा, नो प्रॉब्लम। यहां लगा हुआ है VS, राइट, R1, R2। अब आपको इसका भी गेन जो है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। इसका जो गेन है, अगर यहां पर कैपेसिटर लगा है तो दिस RE इज बाईपास, दिस विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, दिस विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। इसको आपको बनाना होगा 0, और यहां पर लगा हुआ है VS, RS 0 है, तो आप इसका डायरेक्ट गेन निकाल सकते हो V0 by VS विदाउट यूज ऑफ मॉडल। द अप्रोक्सीमेट इज गिवन बाय दीज 2 आर इन पैरेलल, माइनस RC पैरेलल विद द RL। रिमेंबर, अगर दोनों लगा हुआ है तो माइनस RC पैरेलल विद द RL। अगर ये बाईपास है तो आपका जो गेन होगा अपॉन स्मॉल RE। एंड व्हाट इज द RE, आपको क्वेश्चन में दिया होगा या आपको निकालना होगा, VT अपॉन I।
VT अपॉन व्हाट IE, VT अपॉन व्हाट IE। तो ये हो गया RE की वैल्यू। IE कहां से निकालना है? डीसी एनालिसिस से, और VT आपका होता है वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। अब दूसरा जो इलेक्ट्रिकल में जो ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, इसी में से आपको RE को हटा देगा, RE को बाईपास नहीं किया इसने। तो देखो ये क्वेश्चन आपको सीधा, इसमें स्मॉल RE भी नहीं निकालना है, सीधा सीधा आप आंसर लिखेंगे -RC पैरेलल विद RL अपॉन व्हाट कैपिटल RE। लेकिन सबके लिए कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन को चेक कर लीजिएगा, ये क्विक रिवीजन है, इससे आप आंसर चेक कर सकते हो। -RC पैरेलल विद RL अपॉन RE। अगर RL नहीं दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, ओनली RC अपॉन RE, -RC अपॉन RE, दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर गाइस। ये हो गया BJT। अब आते हैं दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। मैं बात करूं तो मैंने बहुत बार ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्लासेस लिए, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड आफ्टरनून सर, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम अ साइड का कोई फास्ट मेथड है तो बताना। मतलब किसका इक्विवेलेंट रजिस्टर? अच्छा, BJT वगैरह का। तो अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर। मॉडल में अगर आपको सॉल्व करना है, मॉडल में अगर सॉल्व करना है तो इफ यू हैव द आइडिया, पहले मुझे बताइए किसका चाहिए, मॉस्फेट और BJT। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आइडियल कंडीशन, कई बार मैंने अपनी चीजों में एक्सप्लेन किया है। और दिस इज नॉट व्हाट प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है मैं बता देता हूं। यहां पर दो चीजें याद रखना है, एक तो स्लीव रेट याद रखो, राइट। एक मिनट रुकिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज द स्लीव रेट, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम, राइट। इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप गेन इनटू व्हाट, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट वोल्टेज, मैक्सिमम। अगर आपको इनपुट दिया हुआ है VM साइन ऑफ ओमेगा एमटी, तो आप इसका मैक्सिमम निकाल सकते हो dVy/dt, डिफरेंशिएट करो VM ओमेगा एम cos of omega mt, what is the maximum value VM omega m, and you can put here, so what is the slew rate will become closed loop gain into VM into what omega m. Now if slew rate is given, closed loop gain is given, VM is given, you can find the maximum frequency of operation and so on. This is a one formula from which you can solve all the questions from the slew rate. Slew rate is basically a maximum rate of change of output voltage. अब ध्यान देना गाइस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाकी जितने फॉर्मूले हैं क्वेश्चंस के साथ मैंने अभी 2 दिन पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपको क्या करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प और डिफरेंशियल एम्पलीफायर नोट कर लो। इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, राइट, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट। सिमेट्रिक ट्रिगर सर्किट के 2 पार्ट है, वो उन दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ में अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मींस स्क्वायर वेव जनरेटर, उसको हम फटाफट कंप्लीट करेंगे तो समझ नहीं आएगी बात। आपको बस वहां पर कहां देखना है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, वहां पर देख लीजिएगा। ओपन से ही मैंने स्टार्ट किया, 2 दिन 3 दिन पहले ही मैंने वो सेशन लिया है। अदरवाइज मैं लिंक अभी कमेंट्स बॉक्स में आपको साथ शेयर कर दूंगा। ये हुआ। अब एक जो बोल रहे हैं कि सर अगर इनपुट रेजिस्टेंस किसी चीज का निकालना है तो कैसे, मैं उसका बस जवाब देता हूं और मैं देख भी लेता हूं कि सर हमारे साथ जुड़े होंगे, राइट। 1 मिनट, अब आपका देखिए, आप लोग जुड़े रहिएगा। भीमा शंकर सर आएंगे नेटवर्क के लिए,
तो स्टे ट्यून विद अस, छोड़ना नहीं है, मैं अब जस्ट आपको एक ट्रांजिस्टर का वो देकर फिर मैं आपको करूंगा। ओके, नाउ अब पॉइंट समझना। देखो, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, अगर ये बाईपास है, ध्यान देना, दिस इज द बाईपास, दिस इज आरसी, दिस इज वीसीसी, if this RS is given, this is the VS. देखो, दो केसेस बनते हैं, इफ द RE इज बाईपास और RE इज नॉट बाईपास, तो दो आपको क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दीज टू रजिस्टर्स are given, VCC, RC, RE और C, RS is given, then guys remember, यहां तक फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉडल है, जो ये मॉडल इस तरीके से बनता है। इसके बाद मैं शॉर्टकट बताता हूं आपको। दिस इज द स्मॉल RE, दिस इज द बेस, दिस इज द अल्फा I, here this is the collector, this is the emitter. Now this, when we are making the AC model, VCC is 0, तो R1 और R2 किस में आ गए, पैरेलल में। Emitter is connected to ground, this is RS and this is what VS. Question is, what is the input resistance seen by the VS? Input resistance seen by the VS, right? Okay, तो इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय द VS, दैट विल बी द क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, देखो यहां पे RE आया है, तो यहां तक का इनपुट रेजिस्टेंस कंफ्यूज हो जाते हैं, ये IB जा रहा है और यहां से जो करंट जा रहा है वो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB जा रहा है। तो इनपुट रेजिस्टेंस सीन अप टू दिस पॉइंट इज व्हाट, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ स्मॉल RE। फिर व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस सीन एट दिस पॉइंट, RI डैश, दिस इज नथिंग बट R1 पैरेलल विद R2, R1 parallel with R2 parallel with what, this 1 plus beta RE, right? And now add RS, this is the total input resistance seen by what, VS। तो इसमें आप क्या ऐड कर दो, RS भी ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस। अब आता है क्वेश्चन कि अगर स्मॉल RE, अगर ये कैपिटल RE बाईपास नहीं है तो क्या होगा। अगर आपका कैपिटल RE बाईपास नहीं है तो हटा दो इसको। अब इतना होगा कि इस मॉडल में एमीटर ग्राउंड नहीं है, ये RE और ये कैपिटल RE साथ में आ गए, तो बस यहां पर इस RE के साथ क्या जोड़ दो, कैपिटल RE भी ऐड कर दो, खत्म। इस RE के साथ क्या ऐड कर दो, कैपिटल RE ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्मॉल RE प्लस कैपिटल RE पैरेलल विद R1 पैरेलल विद R2 प्लस व्हाट, RS। ये आपका बन गया इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय व्हाट। अब आपको ये ध्यान देना है, इफ द RS इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, टेक इट 0। इफ द स्मॉल RE नॉट एबल टू कैलकुलेट, टेक इट व्हाट, 0। तो दैट इज द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला विल बिकम R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद 1 प्लस बीटा कैपिटल RE। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बीजेटी का इनपुट रजिस्टर। जो भी आपको नहीं दिया हुआ है, RS को 0 ले लो, स्मॉल RE नहीं निकाल पा रहे हो, 0 ले लो, इफ द कैपिटल RE इज गिवन, तो दैट विल बी द आंसर, राइट। ओके, देखो अब ये हो गया क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, देखो ऐसे ही आप पूछोगे क्वेश्चन तो जवाब मिलेगा। बहुत बढ़िया, आपने पूछा तो सही कम से कम। ना अब आते हैं, जरा एक और देख लेते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब आते हैं जरा, बीजेटी आप अच्छे से करके जाइएगा। बीजेटी में से क्वेश्चन जो मैंने कहा है कि बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, एक होता है जैसे कि आपका ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे मैंने बताया था जो मैं आपके लिए ले आया हूं, लेकिन फिर भी जैसे आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको क्या करना है, ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको दिया हुआ है गेन दिया हुआ है कोई 100 वगैरह, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, AV बीटा अपॉन 1 प्लस AV बीटा इंटू वॉट माइनस RF बाई R1, और बीटा होगा R1 अपॉन R1 प्लस RF, R1 अपॉन R1 प्लस RF, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इन्वर्टिंग ऑप-एम्प। और अगर आइडियल है तो डायरेक्टली यूज कर लो माइनस RF बाई R1, माइनस RF बाई R1 डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। फिर आते हैं एक अगर हम देखें कि एक और इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो है जहां मैं बात करता हूं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे, दैट इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये RF, ये R1, R3, R2, V1, V2। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द रेशियो, इसको बोलते हैं बैलेंस ब्रिज कंडीशन, RF बाई R1 इज इक्वल टू R3 बाई R2। ऐसे जस्ट ये कंडीशन है, नॉट बैलेंस ब्रिज कंडीशन। अगर RF बाई R1 और R3 बाई R2 इक्वल है तो डायरेक्टली आप याद रखना आपका कॉमन मोड गेन हो गया 0, CMRR हो गया इनफाइनाइट, और आपका आउटपुट हो जाएगा RF बाई R1 इंटू वॉट, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज। आंसर खत्म हो गया है। एक कंडीशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक कंडीशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर यही डायग्राम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर इसी डायग्राम में ये कंडीशन अगर मैच नहीं हो रही है, इफ दिस कंडीशन इज नॉट मैच्ड, तब आपका आउटपुट होगा, याद रखना वो भी इजी है, आप लिखेंगे गेन फॉर द नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प 1 प्लस RF बाई R1 इंटू वोल्टेज एट दिस पॉइंट। What is the voltage at this point? According to voltage division rule, R3 upon R1, R2 plus R3 into V1. This is the voltage at this point multiplied with the 1 plus RF by R1 minus RF by R1. That is the gain of the inverting op-amp into V2. That is the output in second case. Condition नहीं मैच होगी तो ये आएगा। इसको बोलते हैं A1 और ये है A2, तो ये हो जाएगा A1 V1 plus A2 V2। यहां से आप निकाल लो A1, यहां से निकाल लो A2, उसके बाद आप निकालिए AD, A1 माइनस A2 बाई 2, फिर निकाल लीजिए AC, A1 प्लस A2 से, और फिर आप निकाल सकते हो CMRR, मॉड ऑफ AD बाई मॉड ऑफ AC। और DB में अगर CMRR पूछा है तो इसका DB होता है 20 log base to 10 of AD by AC। ये आपके क्वेश्चन बन जाएंगे ऑन व्हाट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर गाइस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये था मेरी तरफ से दोस्तों, आप अच्छे से, तो ऑप-एम्प के मैंने बोला ना, ऑप-एम्प में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप जैसे ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है, इसको मैंने अपने सेशन में डिस्कस किया। ये देखो, ये इसका आधा पोर्शन आपका अभी आया था इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में यही सेम क्वेश्चन आया था जो ऑलरेडी हमारे नोट्स में है, तो आप इन सबको देख सकते हैं। साथ में मैं आपको डायग्राम बता दूं, आप सिमेट्री ट्रिगर सर्किट को जरूर देखकर जाना। सिमेट्री ट्रिगर सर्किट पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है पूरा, आप एक बार देख लीजिएगा। और ये है स्क्वायर वेव और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, इसको आप देख लीजिएगा, जो कि आपको फास्ट फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैंने जो एनालॉग का जो मैंने महा मैराथन लिया है, उस पे आप इसको देख लीजिएगा। और साथ में आप कल भी मॉर्निंग में सेशन अटेंड कीजिएगा, तो वहां भी हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आप सर छोड़िएगा नहीं, भीमा सर अब आने वाले, भीमा शंकर सर, जो कि आपका स्टार्ट करेंगे नेटवर्क गाइस। देन थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू रहिएगा, बहुत सारे सेशन अभी कंटिन्यूएशन में आपकी फॉर्मूला सीरीज चलते रहेगी। ओके देन, I hope I'm audible.
Just I want to check if everything is fine. I can start. Yeah, I think I'm visible. Right. So shall we start? So welcome to the Maha revision session. सुबह से आप लोग classes attend कर रहे हैं सभी चीज you are learning in every subject in a 1 hour. So we can start with the network analysis. So this is about me. You people might know me, so don't want to waste the time here. So quickly let me start. So these are the chapters I'm going to cover in this particular series. That is within 1 hour crisply all the formulas we will be getting revised because हमने already PYQs किया, Maha revision किया. This is like the shortest version of quickest revision possible for you people guys. So you can see the first thing is yeah, we'll be starting with the basics. Basics में जो formula important है सभी चीज discuss करेगा. इसके बाद we will start with the network theorems. And network theorems में बहुत ही important ये होता है maximum power transfer theorem. इसमें भी जो conditions होते हैं ना सभी चीज discuss करेगा. Then two-port network का formulas, transients and AC analysis. I will wrap it up. Okay, so let's start. Someone in the chat, can you confirm my audio is clean, clear, everything is fine from my side? Hope everything is fine from my side. Okay, let's start. Let's continue. So first we'll start with the first chapter, basics. So in basics, what you need to study, what basics means KCL, KVL, node, mesh analysis are very compulsory. I can say इसमें कोई formula नहीं होता है. You need to mug up. There is nothing to skip in the basics, but one formula you should revise is series connection, parallel connection, current division, parallel voltage division formulas you should be clear with. And other than that, star delta. I'll give you what to remember from star delta and what is the common mistake you can commit here. So star delta के अंदर, for example, मेरे पास एक star connected like this ZA, ZB, ZC, and I want to convert it into delta or delta into star. Then how I can handle it? I will give you the formulas quickly revising. So I have Z1 and Z3. So firstly, I have a star. How can I convert into equivalent delta? Z1 is equal to sum of the knowns plus their product by remaining. Okay. Similarly, what is your Z2? Sum of the knowns plus their product upon remaining. Similarly, what is your Z3? Z3 is equal to ZA plus ZC, ZA, ZC upon ZB. Similarly, if you have a delta, how can you convert the delta into equivalent star? So delta to star, how to get ZA here is the product of knowns Z1, Z3 by total sum. So after this session, you will get the PDF in the Telegram channel. You can scan this Telegram channel. You will be joining the Telegram channel. You will be getting the notes. So similarly, what is ZB? ZB equal to Z1, Z2 upon Z1 plus Z2 plus Z3. ZC equal to Z2, Z3 by Z1 plus Z2 plus Z3. So product of knowns by total sum here, and here sum of the knowns plus their product by remaining. Here one thing you should be very careful is for capacitor ZC equal to 1 by J omega C. When capacitor comes, you should take 1 by C, not directly C. For resistor inductor, there is no issue. Same happens with the voltage current division principles also. And when ZA, ZB, ZC are equal, you will get Z1, Z2, Z3 equal to 3 times the individual impedance. So let's move further. So similarly, as I told you, series connection and parallel connection. If the elements are in series, current must be same. Elements are in parallel, voltage must be same. So sometimes they need not look they are in parallel. They need not look they are in series. You should identify current same or not. Or the elements are between same set of nodes. Then I can say they are in parallel. So here for series connection, I should have series current is same. I will be having voltage division principle. So what is the voltage division principle? V1 equal to V into Z1 by Z1 upon Z2
V2 equal to V into Z2 by Z1 plus Z. So V1 by V2 equal to Z1 by Z2. Here also if Z1, Z2 equal, V1, V2 equal to V by 2. Here one more important formula, if you have n number of elements in series, if you want voltage across one particular impedance Zm, V into Zm by Z1 plus Z2 and so on Zm. Total voltage into that particular impedance by total impedance. The same way, if the elements are connected in parallel, we can have current division principle. So you can also comment what you know about current division principle parallelly, so that the class will be more engaging. So what will be the current division principle? When the elements are in parallel, voltage will be same, but the current will get divided. So how the current is getting divided? IZ2 total into opposite by total. If you want I2, total into opposite by total. So what is I1 by I2? Z2 upon Z1. If you want current in one particular element M, total current into that particular admittance upon total admittance. Got it? So this is an important formula. If you have two, no issue, total into opposite by total. But if you have multiple, you must be very careful. Total into that particular admittance by total admittance is the formula if you have multiple elements connected in parallel. So now, sometimes what happens, you can see, just give me a moment. So sometimes what happens, examiner will give you like this, 3 resistors in parallel. 4, 2, 1. Say I have connected current 7 ampere. I want to find currents I1, I2, I3. You can apply the formula, definitely it will take time. So how can you save the time here is, find R equivalent. R equivalent of 4 parallel with 2 parallel with 1 is 8 by 2 parallel with 8 by 4 parallel with 8 by 8, right? Otherwise, right. 4 by 1 parallel with 4 by 2 parallel with 4 by 4. That will give you 4 upon 7. Yes or no? The current, the impedance will be 4 by 7. Then you can also replace this network with 7 amperes series with 4 by 7. Now, current is a 7. 7 into 4 by 7. What is the drop you will get? 7, 7 cancels, you will get 4 as the answer. So one thing I am very sure here is the voltage will be 4. So if you know the voltage, you can directly find the currents. Without current division principle, best way is 4 by 4, 1 ampere, 4 by 2, 2 ampere, 4 by 1, 4 amperes. This will be how current is getting divided. You can say opposite ratio, but when 3 elements are there, total current, if you find by current division principle, it will take more time. So find the equivalent, find the voltage, then voltage by resistance will give you the current easily. So let's move for the next. So that is about your equivalent circuits, series and parallel. Here also be careful with the capacitor. When capacitor comes, it is always ℤ, which is very important. And in the networks, whenever two voltage sources are connected in parallel, they must be same value. Current sources are in series, they must be same value. Otherwise, there is a violation of KVL and KCL. Okay. So similarly, redundant networks in the what we call equivalent circuits is, if you have a resistor parallel with the voltage source, series with the current source, those elements will be neglected in the analysis because the response is independent of value of those resistors. But if you need response outside the element only, if you need input impedance, input voltage, input current, then we should not neglect these elements. Please understand, I'm not here explaining everything in deep. I'm just quickly revising what you have studied already. Please understand that point. So let's move. And we cannot neglect it during the power consumption. And one more important rule we should know is source transformation. Source transformation is applicable for converting voltage source into equivalent current, current into voltage, but only for practical sources, not for ideal. While applying source transformation, whether it is independent or dependent, keep it in your mind. Do not disturb any variable.
And one important shortcut in the source transformation is this one. If you have R1, R2 and V, so this will be V R2 by R1 plus R2 series with R1 R2 upon R1 plus R2 V R2. This is the equivalent which will make my analysis easy in many cases. Whenever R1 R2 are same given by examiner, then you can replace it with V by 2 series with R by 2. इसको हम कर सकते हैं V by 2 और क्या R by 2. So ये वाला भी याद करो. So now the other thing they can ask you, or other than the regular very basic part, they can ask you the questions from capacitors with multiple dielectric. Suppose मेरा पास एक capacitor है. I have a capacitor with a dielectric E1 and E2. Say this is the distance between the plates D1, distance between the plates D2. This is the length of the plate. Backside you can assume the area. So in this case, it is equivalent to two capacitors connected in series C1, C2. What is C1 is epsilon 1. Length of the plate is same, so area of the plate will remain same for both the capacitor by distance D1. C2 equal to epsilon 2 A by distance D2. Here, because it is equivalent to series connection, 1 upon C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C. Okay. Similarly, if it is based on the electric field distribution, if it is like this. Say this is L1 and L2. We can replace this with C1, C. So what is your C1 here is epsilon 1. Now the distance between the plate is same for both of them, but length is changed means area will change. Where epsilon is equal to E naught into ER. So what is the C equivalent in this case? When the capacitors are connected in parallel, C equivalent is C1 plus. Okay. So sometimes when capacitors are given with multiple dielectrics, we can apply this method. You can be able to solve it easily. So let's move for the next part. One more important what we call equivalent circuit is cube equivalent. Just a minute. Now, okay. So again, see here, one more thing, the resistance of a cube. Let me take a cube here. Assume cube is made of resistors. Okay. So let me take this node is A, B, C, D, E, F, G, H. So suppose you want to find resistance between A and G. Resistance between A and G, diagonally opposite corners of the cube. This is most asked by many exams. So REAG is equal to 5 by 6 into resistance of each R. Another question they can ask you is READ, adjacent side to side by side. Adjacent sides is a 7 by 12. Sometimes they ask you REAC, diagonally opposite of same face. That will give you 3 by 4. So similarly, you can say Z also. For capacitor, it will be reversed. So this is also one of the important formula. Better to remember. They have asked in your exam. Current division principle, etc. We can apply symmetry conditions, equipotential modes. We can solve it for sure. But this is what you will be getting it.
So let's move further. So all the different possibilities they can ask you in the resistance of the cube. So that is a quick wrap about your basics of network analysis in less than 10 minutes. So now let's move for the next part, that is network theorems. In theorems, we have superposition. In superposition, there is nothing to remember. Total response equal to sum of individual responses. And Thevenin's and Norton's also, there is not much to remember, but you should understand which particular method to be applied in which particular case. If you have only independent sources, then we can find VTH ISC directly, but RTH is obtained. RTH can also be obtained directly. If you have independent and also dependent, then you can find VTH ISC directly. But while finding RTH, you should not disturb the dependent source. That is the rule. So while finding RTH, what is the difficulty you should face is you cannot directly calculate the RTH of the network. We should apply voltage, assume current flowing. Voltage current ratio will give you RTH. Otherwise, RTH equal to VTH by ISC is the procedure to find your resistance RTH. Similarly, in superposition also, you should take only one source at a time. Total response equal to sum of individual responses. All these theorems are applicable for linear networks only. Network with resistor, inductor, capacitor, and linear dependent sources as your elements. They can be active, passive, but they must be linear. So if you have multiple sources, take one source, make remaining sources equal to 0. How to make remaining sources equal to 0? Voltage source short, current source open, dependent, do not disturb it. Now one more very important in your superposition theorem is applicable for current responses I equal to I1 plus or minus I2, voltage also V1 plus or minus V2, but power is not equal to P1 plus or minus P2. There are some trivial cases when frequencies are different and orthogonal signals, it will satisfy this condition also, but we are not going through that. In general, power equal to root of P1 plus or minus root of P2. Okay, be careful. It is not applicable for power. Okay, let's move. So another important is maximum power transfer theorem. सो आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में दो कंडीशन होता है. आपके इनपुट डीसी हो सकते हैं, एसी भी हो सकते हैं. व्हेन योर इनपुट इज डीसी, when the excitation is DC, what is the condition for maximum power transfer? We will discuss here. And this is examiner's favorite. बहुत सारे बार इससे क्वेश्चंस मिल गए आपको. Even in 2026 also they asked a question from this. So be careful guys. You should not miss this part. So here, what is the maximum power transfer condition for the DC? What is the condition? When load is a variable quantity, then only you should apply it. If load is not variable quantity, never apply this theorem. First condition. So what is the condition required for maximum power transfer theorem? In DC condition is, in DC, RL must be equal to RS. And what is the maximum power you will get in this case is given by V square by 4 RS when RL equal to RS. And what is the efficiency of this theorem in the DC condition is 50%. Now let us do the same analysis for AC also. So when your input is AC, you can have multiple load contains RL, XL, then the load containing different variables can be RL, XL or both of them. So let me give you the different conditions here. When RL is the variable, what is the condition required for maximum power transfer? When XL is variable, what is the condition required for maximum power transfer? When both RL and XL are variables, what is the condition required for maximum power transfer? So you can see here, RL must be equal to root of RL square plus XS plus XL whole square. Here one specific case is when XL equal to 0, then what is the required condition is, RL equal to RS square. RL equal to root of, you can see here if XL is equal to 0 in this condition, substitute XL equal to 0, इस पे क्या होता है? RS square plus XS square. It is nothing but mod ZS. And when XL is variable, what is the required condition for maximum power transfer? XS plus XL equal to 0. When both are variable, both the conditions must be satisfied. If you substitute XS plus XL equal to 0,
RL equal to RS and XS plus XL equal to 0. So you can see here load must be complex conjugate of source impedance. This is the required condition for maximum power transfer. याद करो ये बहुत 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 important है. इसके अलावा they can ask you to calculate the power. Formula will be equal to sources voltage whole square into RMS into RL. RL value will be according to the variable upon RS plus RL whole square plus XS plus XL whole square. So that is about your maximum power transfer theorem and what you need to remember from this particular theorem. So let's move further. Guys, is it clear so far? कोई भी आपको जेनरिक डाउट है तो और यू फील एनी पर्टिकुलर टॉपिक का स्ट्रेटजी चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं. यू कैन कमेंट इफ यू नीड एनी जेनरिक व्हाट वी कॉल generic suggestion or any particular topic strategy. If you want, I can help you, but at the end of the session, not in the middle of the session. So here my target is in 1 hour I want to revise everything. So let's move here. So the next one is reciprocity theorem. So in reciprocity theorem, what is the examiner given? What is the condition for reciprocity theorem? The ratio of response to excitation always remains constant even though your input and output are interchanged. Suppose you have a network, you have applied V1, you got current I1. This is for linear passive bilateral network. It must be linear and also passive. बाकी तो only linear होना पड़ेगा, active भी चलेगा. But here, if you interchange your input here, so reciprocity theorem आपको ये दे रहा है. Ratio of I1 to V1 is equal to, actually you should not say I1, otherwise you can say I2. Trans resistance originally. This I2 by V1 equal to your I1 by V2. You can here you can also apply current, but in that case you should replace the load with an open circuit. I will show you. Linear passive bilateral network. If your excitation is a current source, this many people don't discuss. Still, you can apply the reciprocity theorem, and you are measuring here voltage V2, and here I want to measure the voltage V1 with applying the current here I2. Again, the ratio will be same, V2 by I1 equal to V1 by I. So this is a reciprocity theorem for current input and also voltage as the input. We should replace here, when you replace current source, you should have a open circuit at the other end. That is very important. Okay, shall we proceed? Right, so let's move here for the next part. So here one important formula is, if your network is linear and reciprocal, Thevenin's voltage of the network is given by K times Vn. That is, if your input is 10 volt, you got VTH is 7. If input is 100, VTH will be 60. Like that, if input is multiplied by a constant K, my VTH is also multiplied by the same constant K. That is for linear and reciprocal. But if your network is linear, because if it is a resistor network, current multiplies, voltage will also multiply. And non-reciprocal network, VTH equal to K1 into Vn plus K. K1 into Vn plus K2. Okay. So that is about reciprocity theorem. Here extra K2 will come into picture. So the next one is Milliman's theorem. If you have n number of Thevenin's equivalents connected in parallel, we can replace them with a single Thevenin's equivalent. By just applying source transformation, we can prove this condition by applying the source transformation. If you have n number of practical sources, we can replace them with a single practical source, where V dash equal to V1, G1, V2, G2 and so on, Vn, Gn, where R dash is equal to 1 upon G1 plus G2 and Gn is equal to 1 by
Rn. Conductance, Gn is equal to 1 by Rn. Okay. So this is Millman's theorem. The last one, according to duality principle, every network will be having its dual. You can replace the network with its dual, find the response, find its dual, you will get the original response. So these are the basic dual pairs. Similarly, series connection, parallel connection. Suppose if you have a resistor of 10 ohms in the dual, you should replace it with a conductance of 10 ohms, not 1 by 10. Similarly, inductor will be replaced by capacitor, capacitor will be replaced by inductor and vice versa. I into R, here it will be V of t into G. We have L dA by dt. In the dual, it will be C dV by dt. So 1 by C integral I dt. If you have this equation in the dual, it will be 1 by L integral V of t dt. Got it? So suppose you have a series RLC circuit with 10 ohm, 3 Henry, 2 Farad, say 10 angle 0 degrees. What is the equivalent you will get here? Will be the same current source, and this resistor will be replaced by not 1 by 10, 10 mohs, and inductor will be, because it is not equivalent to dual, inductor will be replaced by capacitor, capacitor will be replaced by inductor of 2 inductor. That's it. Be careful. Here it is not 1 by 10. So that is about your duality principle. Similar to that, very rarely there is no question. They have asked from substitution theorem, and there is one compensation theorem. Compensation theorem is important. I mean, in ESC exam they asked one time. Compensation is very simple. If you have a Z and current, now by due to some condition, my Z is replaced with Z plus delta Z, then I can reconnect this network with, say, my impedance is replaced with Z plus delta Z. But I don't want to disturb other branches, then I should connect here a negative or opposing source of I delta Z. If I connect I delta Z here, still my current will remains I delta Z minus I delta Z cancels, this will be IZ. Whatever you have here, it will be IZ. So normally if it is I dash, okay. So this is what we call compensation. If impedance is not as you are expected, currents will be disturbed. To overcome that and to get back your original currents, you should keep a compensating voltage of opposing polarity, which is equal to your original current into change in the impedance in series. Substitution also more or less similar. That is, if you have Z into I, you can replace it with a source of IZ. Now, two chapters are done. Now we are moving for the two-port network analysis. In two-port network analysis, this is the chapter where you have more number of formulas to remember. बहुत ज़्यादा formulas है याद करने के लिए भी बहुत क्या बोलते हैं conditions होता है, series connection, parallel connection, Z parameters, Y parameters. But if you remember few conditions, most of them you can remember very easily. For example, you see here Z parameters. So Z parameters में क्या होता है ना, it is relating voltage and current with respect. Why it is called Z parameters, I will show you. For example, see. You see here, these are called Z parameters or open circuit impedance parameters. Why do we call it as a open circuit impedance parameters? If I make I2 0 here or I1 0, V1 by, sorry, what is Z11? If you make I2 0, it is V1 upon I1. It is voltage current ratio when other current is 0. That's why open circuit impedance parameters. What is the utility of the two-port network parameters? It can help you to find the response like Thevenin's equivalent, input impedance, output impedance, voltage gain, current gain of the network without knowing the original network. Just we can assume it like a black box. You know V1, I1, V2, I2. Using these elements, using these relations, using the parameters, I can find the response of the network. So you can see here, in this case, V1, V2 are dependent on I1, I2. You can also write it in the matrix form. V1, V2 equal to Z parameters of the network into I1, I2. Here, if your Z12 equal to Z21,
my network is reciprocal. If Z11 equal to Z22, it is symmetrical. If Z11 equal to Z22, that is V1 by I1 equal to V2 by I2. And reciprocal V1 by I2 equal to V2 by I1. We call it as a transfer impedance, because we are finding voltage at one point and current at another point. If you find voltage current at the same, it is called driving point impedance. So the next one is its inverse. Y parameters are short circuit admittance parameters. Short circuit admittance parameters. You can see here. Here we are finding I2V ratio at voltage 0. Voltage 0 means a short circuit. That's why they are called admittance parameters. Just its inverse only. The next one is transmission parameters, or we can also call it as a ABCD parameters. Transmission parameters are ABCD parameters. You can see here we are relating complete input port with the complete output port, V1, I1 in terms of V2, I2. You can see here. Minus is represented because in two-port current is entering, load current is leaving. To represent that load current, we can have minus here, and transmission line analysis, etc., or generating side, receiving side relations we can find using these T parameters. If your network is reciprocal, remember this formula, very important. Determinant must be equal to 1. These conditions are better to remember. And symmetrical, A equal to D. So the next one is just its inverse. So if you remember the top part, bottom you need not remember. And how can I remember here easily, sir? Impedance, V to I ratio. So V left side, I right side. Here complete input port with respect to complete output port. The next one is hybrid, input voltage and output current. Hybrid, both. So voltage, current, input and output, V1, I2 is related with H11 I1 plus H12 I2, H21 I1 plus H22 V2. So here V1 and I2 in this case are the dependent variable with respect to I1. So you can observe, we can use this for transistor analysis, etc. What is H11? V1 by I1 at V2 0, output 0, it is input impedance. What is H12? V1 by V2, reverse voltage gain with current 0. What is I1 by, what is H21? I2 by I1, current gain with voltage 0. What is H22? I2 by V2, that is reverse, output admittance with input equal to 0. So here for a symmetrical network, H12 equal to minus H21. For a reciprocal symmetrical, determinant H12 H21, sorry for this mistake, H21 into H12 must be equal to 1. Right. So inverse of H parameters are G parameters. You can see the same way. So one important relation here is relation between various two-port network parameters. Y parameters is equal to Z inverse. T dash parameters is equal to T inverse, and G parameters is equal to H inverse. That is a relation between various. So please don't think inverse means Z12 is not 1 by Y12. That is the mistake. Overall matrix will be inverse to each other. So there is one formula for input impedance of a network with respect to Z parameters is Z11 minus Z12, Z21 by Z22 plus ZL. Same way, ZTH can also be obtained. Very important. This is here also they have given Z22 for instrumentation they have given Z21, Z12 by Z11 plus ZS, where ZS is the source impedance. For example, we have like this VS and this is ZS. So these are my Z parameters, and here I am connecting some load ZL. This is my V2, I2 and V1, I1.
Okay, many times they asked the questions based on this model. They have asked many number of times. You can find VTH by making V2 at I2 0. That is another. But once you know input impedance, you can find input current, output current, everything using the Z parameters. Similarly, you can do it for H parameters also. H11 minus H12, H21 by H22 plus this will be your Z. Okay. Similarly, Yin is equal to, but I don't remember ask you to remember these things, but this is important. Most, at least 3-4 times they asked the questions based on this. YL means 1 upon ZL. Okay. Here units must be matched. These are unitless, right? 1 by, here it is admittance plus admittance. 1 by admittance will give you impedance. That is the logic. If you don't remember the formula also, at least you should check units are matching or. And one more important rule is in two-port networks, interconnection. When the networks are in series, overall Z parameters equal to sum of individual Z parameters. Series current will be same. For parallel, overall Y parameters is equal to sum of individual Y parameters. Another one is cascade, tandem, output of one network connected as input to the another network. In this case, T parameters is equal to TA plus T. And there is a possibility like series parallel. Here H parameters will be getting added. Series parallel means input is connected in series, output is connected in parallel. And parallel series G parameters will be added. In parallel, input voltage, output current are same. Those are the dependent variables of the G parameters. Same way here also. Series parallel input में current is same. Here input voltage, output current same. Here input current and output voltage are same. Those are the dependent variables of H parameters. Same parallel connection voltages are same, which are dependent variables of Y. And two important networks we should know. For a T network, Z parameters, you should remember. What are the Z parameters? ZA plus ZC. I hope you people knows this formula, but very, 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 very important. For pi network, assume these are Y parameters. Overall Y parameters is equal to YA plus YC minus YC minus YC YB plus YC, where Y is the admittance here, please understand. And there is one inverted L section. This is also we should remember. T parameters is equal to 1 plus ZA by ZB, ZA 1 by ZB. So that is about inverted L section T parameter. So that is about your total two-port networks, the formulas you need to remember from this particular chapter. So that finishes your third chapter. So we are entering into the last two chapters of our discussion. I will be covering transients for 10 minutes, AC analysis for 10 minutes, and iske baad, the next subject will be starting. 𝐂𝐤𝐬𝐤 sir will be coming, I think, for EMFT. Prakash Sharma, that is nothing but parallel connection. You are asking, sir, I have a network, ऐसा एक network है, इसका parallel में एक resistor connect किया तो you can take this as one network parallel with this network like this. Yeah, TA into TB, I have given wrong something. Oh, sorry. Thank you. It is TA into TB. Sorry for that. Thanks for correcting Hussein.
Thank you very much. So let's start with the next, what we call the last second chapter is transients. So transient में दो तरह का होता है, DC और AC. You have two types in transients, that is the DC transient and AC transient. 90% they can ask you questions from DC transients only. So in source-free circuits, the first thing they can ask you is RL, RC. Circuit, what is your current? RL means a source-free RL circuit. Up to time t equal to 0, you have a source in the network. At time t equal to 0, source is removed from the network. Then what do you get as IL? I naught into e power minus t by tau, where tau is equal to L equivalent by R equivalent. Then what is voltage across the inductor is L di by dt, that is minus R equivalent into I naught e power minus t by tau. And energy in the inductor EL equal to E naught e power minus t by tau E for t greater than equal to 0, where tau E equal to tau by 2. Energy time constant is less than current and voltage time constant, and E naught equal to half L I naught square. Inductor current cannot change instantaneously, capacitor voltage cannot change instantaneously. IL of 0 plus always equal to IL of 0 minus. For inductor, current cannot change instantaneously. Remember this. Similarly, for RC circuit, Vc equal to V naught, initial voltage of the capacitor e power minus t by tau. That is, after 0, source is removed. Before removing the source, we should find initial voltage in the capacitor. And here Vc of 0 minus always equal to Vc of 0 plus, except for impulse. Tau is equal to R equivalent into C equivalent. And here current in the IC is minus V naught. Here they will be negative only because they are discharging or delivering the energy. Current direction changes here, voltage polarity changes here. And energy in the capacitor is E naught e power minus t by tau, where tau E equal to tau by 2 and E naught is half CV naught square. So if you have inductor, the equivalent of the inductor will be like this. And this is parallel with I naught. If you time t equal to 0 plus, inductor acts as a open circuit with I naught. I naught can be 0 also. And time t equal to infinity or steady state, we just replace inductor with a short circuit. We don't consider the initial value in the steady state. Steady state inductor will be replaced by short at 0 plus, inductor replaced by open with I naught. I naught can be any value. I naught can be 0 also, we don't know. This is the equivalent for capacitor also. Capacitor V naught series with a capacitance. Okay, this is the equivalent. If you substitute t equal to 0 plus, capacitor, sorry, I'm very sorry. जल्दी करने के लिए गलत था. So capacitor, if you take, it is like this. Initial voltage V naught series with a capacitance. So I can draw this as at time t equal to 0 plus, my capacitor is initial voltage series with a short circuit. So V naught can be 0 also, we don't know. V naught can be any value. Can be. At time t equal to infinity, steady state for a DC excitation, capacitor acts as a open circuit. Okay. Sometimes they will ask you Laplace equivalents also. Laplace equivalent of inductor is SL parallel with I naught upon S, or you can see L I naught series with SL. Similarly here also V naught by, because for t greater than equal to 0 this circuit, U of t series with 1 by S. Depending on the problem, we apply any of these methods. So this is first condition, source free RLRC circuits. Next, they can ask you network with source and initial final values. For that, few relations we should know. For initial final, at time t equal to, I have shown you already equivalents, right? Other than that, you should know
Sometimes they ask you what is dIL by dt at time t equal to 0 plus. It is given by VL of 0 plus upon L, because VL equal to L di by dt. Sometimes they ask you what is dIL by dt square at time t equal to 0 plus. So this will give you 1 by L dVL by dt. So similarly, sometimes they ask dV, this is also another important, dVc by dt, IC of 0 plus upon C. They don't ask this at infinity, because at infinity anyway it becomes constant, no d by dt. So this will be 1 by C dic by dt. So these are the cases, these are the questions, they can appear from the model 2, that is initial final conditions of the transient. The last model I will be discussing is network with sources for any time. This is most frequently occurred model. I will be showing you that. Okay. Passive network में कोई active element नहीं होना, even dependent source should not be present. Okay, network with sources. Here, total response, ये formula याद करना, equal to final value plus initial value minus final value into e power minus t by tau. So suppose if you take RL circuit, IL of t equal to IL of infinity plus IL of 0 minus IL of infinity e power minus t by tau. Similarly, if you have a RC circuit, what is VC of t? It is VC of infinity plus VC of 0 minus VC of infinity into e power minus t by tau for t greater than equal to 0. That is your IL of t and VC of t. And if you have RLC, RLC is a second order system solved by Laplace transforms. In RLC, you will have damping conditions. So for series RLC, RCR equal 2 times root of L by C, critical resistance. Okay, when R is less than RCR, it is under damped. R greater than RCR, it is over damped. R equal to RCR, it is critical damped. R equal to 0, it is undamped oscillating. Okay, this is what we call series RLC analysis. So there is a special case, like sometimes they give you pulse as excitation. Our network contains multiple switches. One method is to find Laplace response here by using time shifting property. It is equal to u of t minus u of t minus capital T. Okay, so this is one method. Or assume network with source, find up to t naught. For t greater than equal to t naught, source free, okay, with the initial value at t naught. Here, replace t with the t minus t naught in the equation. So I'll tell you. Suppose pulse is given as excitation for your input. First you assume the network is input is DC only. Find the response. In that substitute t equal to t naught just before. Find the initial value. After t naught, because source is removed all of a sudden, your network will become source free. But because the switch is not operated at origin, you can find I naught e power minus t by tau or V naught e power minus t by tau. But in place of t, you should replace with t minus t naught. And I naught is the initial value obtained at t naught. So whenever switch is not operated at 0, we should replace t with t minus t naught. Whenever switch operated
at E equal to T naught, replace, okay, E with T minus T, or you can go by Laplace. Laplace से कर सकते, नहीं है तो ऐसा भी. Okay, चलो, let's move further. So the next AC case is, if you have a RL circuit, the condition for transient precondition is omega t plus phi equal to tan inverse of omega L by R plus X. X equal to 0 if excitation is equal to sine. X equal to pi by 2 if excitation equal to cos. Similarly, for RC circuit, what is the condition for transient pre equal to tan inverse omega RC plus X. These are called transient free conditions. What is the meaning of transient free condition? If you have a AC circuit, there is a possibility. Whenever generally transient free condition is here also possible, but if a final value and initial value are same, no transients will occur here. The same way, for AC circuit, while closing the switch, if you satisfy the condition omega t plus phi equal to, at the time of closing the switch, at the time t equal to T naught, should be tan inverse omega L by R or tan inverse omega RC plus X, where X is equal to 0 for sine wave and pi by 2 for cosinusoidal. Then there will not be any transient. For RLC, there is no possibility of transientary conditions. Okay, just give me one moment. I'm updating to next. Okay, let's move. The next part is AC analysis. So AC analysis में बहुत important basic क्या होता है, phasor representation. If you have Vm cos omega t plus phi, you can write here root 2 into Vrms cos omega t plus phi. You can represent it as a phasor V, which is equal to Vrms e power j phi, or Vrms angle phi, or Vrms e power j phi is cos phi plus j sin phi. So this is called phasor representation of the given signal, because you can write cos theta as a real part of e power jx equal to cos x plus j sin x using this concept. Okay. Let's move. So there is one concept, phasor diagram. इस साल में भी एक क्वेश्चन आ गया इससे. You take a series RL circuit. This is how you will be getting the phasor diagram. VR, VL, and V. This is current. Series current is same, na? What is this phi? Tan inverse omega L by R. Similarly, there is a angle between V and VR. Okay. And also your current angle between voltage and current originally. Similarly, if you have a series RC circuit, it will be like this: current, VR, and this will be your VC and V. What is here phi? Tan inverse of tan inverse of opposite by adjacent. Okay. So this is the phi. And series RLC, you have multiple possibilities. First, XL greater than XC. In that case, you get I, VR, and in this case, VL is more than VC. You get like this. So your V equal to root of VR square plus VL minus VC whole square, and phi equal to tan inverse of VL minus VC by VR. Okay. So here, if XC is greater than XL,
in this case, your power factor equal to cos phi is lagging, and here you get leading, and Xc equal to XL, you get unity power factor. Okay, here Vc minus VL, you'll get like this. Here you get unity power factor. So similarly, you can analyze for the parallel also. So the next important topic of our discussion is series resonance. In series resonance, you can see it is also called one important formula is quality factor omega naught L by R, or 1 by omega naught RC, or 1 by R root of L by C. Q equal to 1 upon 2 zeta. So all important formulas in the series I am giving you. Omega naught is equal to 1 by root LC, radians per second. And here Q is also equal to omega naught upon bandwidth, omega H minus omega L, radians per second. What is bandwidth? Omega naught by Q, where Q equal to omega naught L by R. That will give you R upon L, radians per second. And another important formula, omega naught is root of omega H into omega L, F geometric mean of center frequencies, and omega H comma omega L equal to plus or minus bandwidth by 2 plus root of bandwidth by 2 whole square plus omega naught square. So that will be plus or minus. What is bandwidth here? Bandwidth is R by 2L plus root of R square by 4L plus 1 by L. This is the omega H and omega L. At omega H and omega L, current I will be I max by 2, and Z will be current I equal to V by Z equal to Z will be root 2 into R. At omega equal to omega naught, Z will be equal to R. Voltage across the resistor is V, voltage across the inductor is JQV, voltage across the capacitor is minus JQV. Okay. So this is about series resonance. Same analysis we can do for parallel also. What I will do is I will just modify the same content for parallel. So here IR is equal to I, IL equal to minus JQI, and IC equal to plus JQI. Current magnification circuit, you can say. R upon omega naught L, omega naught RC, and R times root of C by L. All this stuff is same, but one by RC radians per second is the same here also. Here at omega H and omega L, Z will be equal to R by root 2, because voltage V equal to V max by L. And one more important formula in the series resonance is if you have RL, L, RC and C, omega naught is equal to 1 by root LC, root of RL square minus L by C by RC square minus L by C. This way you can substitute RL 0, RC 0, what happens, everything. And also if RL equal to RC equal to R and R square equal to L by C, then omega naught is all frequencies. Circuit will be at resonant for all frequencies. So another important condition is if you have R plus or minus Jx, the complex power P equal to, you can see this is the relation P, Q,
and S. Power factor is equal to cos phi and P by S. What is P equal to? VRMS, IRMS cos phi, or VR RMS whole square by R, or IR RMS whole square into R. Units are watts. And Q will be VRMS IRMS sin phi. Okay. Vx square by x. Every time you should take RMS only. Volt ampere reactive. Here units are watts. Mod S equal to root of P square plus Q square. S equal to P plus or minus check. Where plus for lag, minus for lead. So there are two important topics, that is coupled circuits. If you have a series connection like this, L equivalent is L1 plus L2 plus, sorry, minus 2M. If you have like this is aiding. In this case, what is the L equivalent? L1 plus L2 plus 2M. Now, one more important rule in the transformer is, if you have N1, N2, and it is loaded with some load ZL. Okay, so what is the input impedance is given by N1 upon N2 whole square into ZL. V1 upon V2 equal to I2 upon I1 equal to N1 upon N2 is the relation in the any transformer. Few things you should, both सारे बार questions इससे ही आ रहे हैं. Parallel connection है, transformer connection, everything is there. Similarly, if you have like this, current is entering, and EM. What is the equivalent? T equivalent of this is L1 minus M, EM, and EL2 minus. So the last one is the three-phase circuits. In this, please remember star connection, IL equal to IPH and VL equal to root 3 into VPH. Similarly, for delta connection, VL equal to VPH, IL equal to root 3 into IPH. And power P equal to 3 times VPH, IPH cos phi, where phi is the angle between VPH and IPH only. Okay. You can also write this as root 3 VLIL cos. Please understand here, instantaneous power will be constant in this case, and here phi is always angle between phase voltage and phase current. So that is about from my side, and now Ashu Jangra sir will continue with the EMFT. Okay. All the very best, guys. Within limited time, I have covered everything for you. Thank you.
Okay, I think now I am audible. Now I am audible. Okay. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Tell me, am I audible? Can you hear me? Okay, I think now I am audible. Yes. From my side, it's clear. From my side, sound is clear. Okay. Okay, let's start with EMFT, electromagnetic field theory, and then after EMFT we'll cover instrumentation. Okay. I think it's audible now. So first let's start with EMFT because EMFT has more weightage than instrumentation. So in EMFT there are 4 chapters which are very important, 3 to 4 chapters you can say. First one is vector calculus. In vector calculus we have del operator, which is very important, del operator, and divergence theorem, Stokes theorem. These 3 things are very important. Okay. Next is electrostatics. In electrostatics, the important thing is Gauss's law. Okay. Electric flux calculation, capacitance calculation. Okay, and then we have method of image. Okay, so these 3-4 things are very important in electrostatics. After that, in magnetostatics we have Biot-Savart's law, Ampere-Circuital law, okay. So these 2 things are very important, one question from here. And then magnetic flux. After that we'll have Maxwell's equations. In Maxwell equation chapter there is one law, Faraday's law of electromagnetic induction, EMI. It is very important, one question from here. Okay, so these are the most important topic from EMFT. Total it will be around 6 to 7 marks. Okay, there will be around 4 to 5 questions from this subject. Okay, so I think it's time to start now. Okay guys, let's start. First let's start with the vector calculus. So in vector calculus, first of all we should know about the coordinate systems. There are 3 coordinate systems which we generally use. One is Cartesian coordinate system. This is x cap, this is y cap, and this is z cap. Okay, to show a point in Cartesian coordinate system you have to tell the position in x and then position in y and position in z with respect to this origin. Then we have cylindrical coordinate system. In cylindrical coordinate system, to show a point again 3 things are required. And what are those three things? R, phi, z. R is the distance from the central axis. Okay, I mean the perpendicular distance from the z axis. Okay, central axis. Phi is angle with
x cap and z is the height. Okay, let's say there is some point P. Now this point P is the perpendicular distance of this point P from this axis is r, and how much angle, I mean if I connect the line from this line to this point P, how much angle this line is making with the x-axis, that is phi, and the height is z. So these three things should be known to us to show a point in cylindrical coordinate system. In spherical coordinate system, to represent any point, to show a point, we need r, theta, phi. So there are three directions: x cap, y cap, z cap in Cartesian, r cap, phi cap and z cap in cylindrical coordinate system, and r cap, theta cap, phi cap in spherical coordinate system. Now if you write small length dl in Cartesian coordinate system, then that will be dx I cap, dy j cap and dz k cap. In cylindrical coordinate system, dl will be dr r cap plus r d phi cap plus dz z cap. In spherical coordinate system, dl will be dr r cap plus r d theta cap plus r sin theta d phi cap. Okay, this dl should be known to us, otherwise it will be difficult to solve the problem related to del operator. Okay, so this dl should be known to us in all these coordinate systems. Let's say there is a cuboid, okay, or let's say there is a small volume I need to write, small volume in Cartesian coordinate system I need to write. Then to write the small volume, what you need to do is you need to multiply all these three components of dl in Cartesian coordinate system. In Cartesian coordinate system, small volume dv can be represented like this: dx, dy, dz. In cylindrical coordinate system, dv can be represented by the product of these three things: dr, r, d phi and dz. This is dv. In spherical coordinate system, small volume dv is product of these three things. Okay, so it will become r square sin theta, dr, d theta, d phi. Okay, so this is the small volume in spherical coordinate system. Similarly, let's say we want to calculate small surface area. To write the small surface area, what you need to do is you have to check that on that surface which quantity is constant, whether x is constant or y is constant or z is constant. Let's say I have taken one cuboid. Okay, let's say there is a small cuboid. I want to calculate the surface area of this part, this small surface area of this part. Okay, how to write it? If you look at this carefully, this is x cap, this is y cap and this is z cap. This surface is in horizontal plane. Okay, on this surface z is not changing, so for this surface the small surface area will be dx and dy. If you look at this surface, the front surface, on the front surface you can see that x is not changing. On this front surface x is same everywhere. So to write the small surface area of this front surface, you have to write dy and dz, because x is not changing, so dx has to be 0. Okay, only dy and dz I have to take. Okay, I hope you understood how to write the surface, small surface. Now let's say there is a cylinder. Okay, let's say there is a cylindrical surface. On this curved surface I want to write the small surface area. On this curved surface I want to write small surface area. Now you can see that on this curved surface r is not changing, r remains constant on the curved surface. So what you need to do is to write this small surface area, you have to leave this dr part, only r, d phi and dz you have to take. Okay, this is the small surface area. Similarly, on the upper surface, let's say this circular surface, if I want to write the small surface area on the upper surface, then you can see that on this upper surface z is not changing, z remains constant because it's a flat surface. Okay, height is not changing for this surface, so you can leave this dz part and multiply the other two, so it will become r, dr and d phi. This is the small surface area on this circular surface. Okay, similarly in spherical coordinate system, let's say we want to write the small surface area on spherical surface. You can see that on this spherical surface r is not changing, so you can leave this part and multiply these two things. This will be the small surface area on this surface, on this spherical surface. Okay, I hope you understood it. Now
if you remember this DL, then we can compare this DL with a generalized small length DL. Okay, now what is that generalized small length DL? Generalized small length DL is H1 D U1 U1 cap, H2 D U2 U2 cap, H3 D U3 U3 cap. Okay, this is the small length DL. If I compare this with the Cartesian coordinate system, or a cylindrical coordinate system or spherical coordinate system, then I can easily find H1, H2, H3 and U1, U2, U3. Let's say first I am comparing it with the Cartesian coordinate system. In Cartesian coordinate system, DL is dx I cap plus dy y cap plus dz z cap. So if I compare it, I can see that H1 is equal to 1, H2 equal to 1 and H3 equal to 1. U1 is x, U2 is y and U3 is z. Okay. In cylindrical coordinate system, we know that DL is dr r cap plus r d phi cap plus dz z cap. Okay. So in cylindrical coordinate system, you can see that H1 is 1, H2 is r and H3 is 1. Okay. U1 is r, U2 is phi and U3 is z. Similarly, in spherical coordinate system, DL is equal to dr r cap plus r d theta theta cap plus r sin theta d phi cap. Okay. So if I compare this DL with this DL, I can say that H1 is equal to 1, H2 is equal to r and H3 is equal to r sin theta. U1 is r, U2 is theta and U3 is phi. Okay. So this is the generalized DL which you need to remember, and these are the small length in all coordinate system, and then with the help of comparison I can write H1, H2, H3 and U1, U2, U3. Now why should you remember this? I mean, there is no need to remember these things. Only thing is you should remember this DL and you should remember this small length in all coordinate systems, so that you can easily compare and you can write H1, H2, H3 and U1, U2, U3. Now the need for this is for the del operator. In del operator, we need to find divergence, gradient, first gradient, then divergence, then curl, and then Laplacian. These are the four operators. Okay. And to find these four operators, what we need to know is these H1, H2, H3 and U1, U2, U3. Okay, first of all, let's find the gradient. How to find the gradient? Gradient is for the scalar field. I mean, you can calculate the gradient of a scalar field only, and the answer will be a vector field. Now how to find this? To find this, we have this f in there is no direction for this f. F is a scalar field. Like potential field or temperature field. Okay. So to find the gradient of this, what we need to do is 1 by H1 del f by del U1 cap, 1 by H2 del f by del U2 cap, 1 by H3 del f by del U3 cap. Okay. This is the expression for gradient of f. Right. This is the expression for gradient of f. In this, what is H1, H2, H3? That depend on the f. Whether f is in Cartesian coordinate system or cylindrical or spherical. Depending on that, we will take H1, H2, H3. Okay. Let's say f is equal to 4x square y z. We need to find gradient of f at 2, 3, 1. At this position, we need to find gradient of f. So what we need to do is, since f is given in Cartesian coordinate system, so H1, H2, H3 and U1, U2, U3 are known to us in Cartesian coordinate system. We can put these values and we can easily solve. Similarly, let's say f is given as 4r sin theta cos phi. Okay, let's say this is f. And we need to find the gradient of f at 230 degree
40 degree. Now how to find the gradient of f? It's easy. This is given in spherical coordinate system because r, theta and phi are in spherical coordinate system. So what we can do is we can put the value of h1 and u1, h2, u2 and s3, u3 in spherical coordinate system, okay? And then we can solve it. We have to take the derivative and easily we can solve it. So this you have to remember, okay? This you have to remember. How to find the gradient of f. What is the meaning of gradient of f? Nothing to worry, okay? Okay, let's come to the divergence. Divergence is applicable on vector field and the result will be a scalar field. Result will be a scalar field. It is applicable on vector field and result will be scalar field. Now how to find gradient of f? To find look, this f has three component, f u1 u1 cap plus f u2 u2 cap plus f u3 u3 cap. This is my f. It's a vector field. It has component. So it has three component, f u1, f u2 and f u3. Now how to find gradient? To find the gradient, the expression is 1 upon h1 h2 h3 del by del u1 of h2 h3 f of u1 plus del by del u2 of h1 h3 f of u2 plus del by del u3 of h1 h2 f of u3. Okay, you can see that in the denominator, I am taking the derivative with respect to u1. Subscript is 1. So in h1 h2 h3 you have to left h1 part because subscript 1 is there, na? 1 is already in the, with respect to u1 I have to take derivative. It means one subscript is already there. So I have to leave h1 part. And in the place of h1 I have to write f of u1. F u1. Similarly, here I am taking derivative with respect to u2. Subscript is 2, u2. So I have to miss that h2 part here, okay? And then you can easily write, okay? I hope you remember this formula. This is the formula for divergence, okay? Let's come to curl. Let's come to curl. Curl of this vector field. Now again, curl is applicable only on a vector field and the answer will be a vector. Answer will be a vector field again. Okay, f has three component, f u1 u1 cap, f u2 u2 cap, f u3 u3 cap. Okay, this is f. Now how to find curl? 1 upon h1 h2 h3 determinant of h1 u1 cap, h2 u2 cap, h3 u3 cap, del by del u1, del by del u2, del by del u3, h1 f u1, h2 f u2, h3 f u3. Okay, so this is the way we have to find the curl. Okay, but remember, you cannot change rows and columns. That matrix method, the matrix properties you cannot apply. This is the standard way. You just have to first write the component of this by taking derivative of this minus taking the derivative of this with respect to u3. Okay, the way we find the determinant, the same way we have to apply this. Okay, so this is the way to for the calculation of curl. Okay, I hope you can apply these methods. Let's take one problem also so that you can understand it well. Let's say there is a vector field f and that vector field is 4r sine theta r cap plus 4 cos phi sine theta theta cap. This is the vector field. Find curl of f at 230 degree 45 degree. At this position we need to find the value of the curl of f. In which coordinate system this f is given? There is a component of r, there is a term of r, theta and phi. R, theta, phi is in spherical coordinate system. So in spherical coordinate system we know h1 h2 h3 and u1 u2 u3 just by comparing these two things. This dl in spherical coordinate system and the generalized dl. By comparing these two we can find h1 h2 h3 and u1 u2 u3. What you need to do is you need to put all these things in this formula. So curl of f will be
1 upon H1 is 1, H2 is R, H3 is R sin theta. So it will become R square sin theta. H1 is 1, 1 R cap, H2 is R, R theta cap, H3 is R sin theta phi cap. Del by del R, del by del theta, del by del phi. Now H1 FU1, this is FU1, okay. So H1 is 1, FU1 is this 4R sin theta. H2 FU2, U2 means theta cap component. So this is FU2, okay. H2 is R, so R into this term. So 4R cos phi sin theta. And this is 0. Why it is 0? Because FU3 is not given, phi cap component is not there. No? Okay, so FU3 component has to be 0. Now from here what we can do is we can open this determinant part. So curl of F will be equal to 1 upon R square sin theta. Now tell me, what is the coefficient of this term? Take the derivative of 0 with respect to theta, it will be 0, minus take the derivative of this term with respect to phi. So if we take the derivative of this term with respect to phi, it will become 4R sin theta. This term will come out 4R sin theta. Derivative of cos phi is minus sin phi. Okay, so it will become plus. I hope you understood it. Now come to this term, minus R theta cap. Minus R theta cap. What is the coefficient of this? Take derivative of 0 with respect to with respect to R. So this is 0, minus take the derivative of this term with respect to take the derivative of this term with respect to phi. Okay, we have to leave this column now. Okay, so if I take the derivative of this term with respect to phi, then again it will be 0. So 0. Next is coefficient of this term, R sin theta phi cap. Tell me. So derivative of this term with respect to R, so it will become 4 cos phi sin theta, minus derivative of this term with respect to theta, so it will become 4R cos theta. Okay, I hope you understood it. So this term is gone, and now you can simplify this and take the R square sin theta in the denominator, and then you can easily find curl of F. I hope you understood it. Let's move to the next. Next is Laplacian. Laplacian of F. Again, Laplacian is applicable only on scalar field, but on vector also we can apply. Okay, let me tell you what is the meaning of this Laplacian. So divergence of gradient of scalar field, this is called Laplacian. Remember, when we take divergence of gradient of any scalar field, simply you can write it as Laplacian of that scalar field. Okay, now how to do that? For the calculation, first you have to take the gradient of F. So 1 upon H1 del F by del U1 plus 1 upon H2 del F by del U2 plus 1 upon H3 del F by del U3. This is the gradient. This is the gradient part. Obviously U1 cap, U2 cap and U3 cap. So this is the gradient part. Now I have to take the divergence of this. So 1 upon H1, H2, H3 del by del U1 of H2, H3 into this part. So by H1 del F by del U1 plus del by del U2 of H1, H3 by H2 F of U2 H1, H3 by H2 del F by del U2, okay, plus del by del U3 of H1, H2 by H3 del F by del U3. Okay, so this is the expression for Laplacian of any scalar field. I don't know how many of you remember this, but it's very easy to memorize. I mean, 1 upon H2, H1, H2, H3 is there. This U1 subscript 1 is there. Na? So in this H2, H3, in the denominator you have to take 1, and here you have del F by del U1 with respect to U1 itself. You have to take the derivative with respect to U1. Similarly, the 2 subscript is there. So H2 will be in denominator and you have to take derivative with respect to U2. Okay.
So it's very easy to memorize. So these are the 4 operators that you need to know. Now next one is divergence theorem. No divergence, first let's discuss about other things. If we say that divergence of any field, any vector field is 0, let's say if divergence of any vector field is 0, we call this F field as solenoidal field. F is solenoidal field. F is solenoidal. If curl of any vector field is 0, if curl of any vector field is 0, we call it, tell me, conservative field. F is conservative or cyclic field. Okay, F is conservative or cyclic field. Okay, so you have to remember all these things. Now let's move to gradient theorem. Before gradient theorem, let's first understand null operator, null identities. Null identities. Now what are those null identities? If you take curl of gradient of any scalar field, then it has to be 0 always. Always. Okay, curl of gradient of any scalar field will always be 0. Remember this. Okay, because there are some questions, I mean there are I think 2 or 3 years, maybe in 2016, I don't remember, I mean 2 times this null identities were asked in the exam. Okay, next is a divergence of curl of any vector field will always be 0 again. These are the 2 null identities. These 2 things will always be 0. Okay, remember this. Now let's come to theorems. First one is gradient theorem. Gradient theorem. What is this gradient theorem? If you have gradient of any scalar field, and if you take surface integral of that, okay, not surface, line integral of that. Okay, if you take the line integral of that from position A to position B, then it will be FB minus FA. FB minus FA. Okay, it will be FB minus FA. Just remember it. Okay, next is divergence theorem. If you take the surface integral of any vector field, if you take the surface integral of any vector field, then you can write it as, no, if you take the volume integral, excuse me, if you take the volume integral of any field, or rather I should write it like this. Let's say there is some vector field F and I want to calculate the closed surface integral of that vector field. Then you can convert this closed surface integral into volume integral just by replacing F with divergence of F. Okay, closed surface integral can be converted into volume integral with the help of this divergence theorem. Closed surface integral of any vector field F can be represented as divergence of F dV, and take the volume integral of that. Okay, so this is the divergence theorem. Next one is Stokes theorem. Stokes theorem. Okay, Stokes theorem says if we calculate the closed line integral of any vector field, then we can write it surface integral of curl of that field. Okay, open surface integral of curl of that field. Okay, so this is the Stokes theorem. For any vector field, if you want to calculate the closed line integral, then you can write it like this. Okay, I hope you understood it. If the field is conservative, then this will be 0. It means this will also be 0. Okay, for conservative field, the closed line integral on any closed contour, the closed line integral will be 0 for conservative field. Okay, remember this. I hope you understood all these theorems. Now let's come to electrostats. Electrostatics. So this is all from vector calculus. Tell me guys, are you enjoying?
Tell me everyone, are you enjoying or not? I mean, do you find these things difficult or it's easy to remember? I think it's easy to remember if you have studied this subject. Tell me. Okay, let's proceed. Let's proceed. Electrostatics. In electrostatics, we know that if there are two charges Q1 and Q2 and they are of same polarity, then they will repel each other. Okay, and there will be some force on both of these charges. One charge will repel the other charge. Let's say we want to calculate this force F on 2 due to 1. So it's a vector quantity. It will be Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught r square, and the direction is R12 cap. This direction is R12 cap. Okay, let's call this direction as R12 cap. So you can write it like this. Even you can write this direction as R21 cap. So here you replace R21 cap. Okay, nothing to worry. Similarly, you can calculate this force. So this force magnitude will remain same. Magnitude of this force will remain same. The only thing is direction will be opposite to this previous one. So two positive charges will repel each other with the same force. Similarly, two opposite charges will attract each other with the same force. It's easy peasy. Next is electric field. So electric field, what is electric field? Electric field is the force per unit charge. Force per unit charge. It means, let's say there is some point charge Q and you want to calculate the electric field due to this point charge Q at this position. So at this position you place 1 coulomb and calculate the force value. So the force on 1 coulomb will be Q divided by 4 pi epsilon naught r square. Direction is radially outward, away from that. Okay, so this is the direction. So this is the expression for electric field. Electric field is force per unit charge. It means at any position where you want to find the value of electric field intensity, at that point you place 1 coulomb and calculate the force value. So electric field is just a force. I hope you understood. Now you have to remember that the electric field due to infinite surface charge, let's say surface charge density is rho s, okay, and this sheet is of infinite charge. Okay, I mean the dimension of the sheet is infinite and it's a conducting sheet. Surface charge density is rho s coulomb per meter square. Now above this sheet the electric field will be independent of the height. Okay, above this sheet the electric field will be rho s upon 2 epsilon naught and direction will be away from that, away from the sheet. Okay, similarly below from this sheet again electric field will remain same and away from this charge. Okay, I hope you understood and you will remember this electric field. Similarly, let's say there is some line charge and the charge on this line is lambda coulomb per meter. At distance r we need to find electric field. So electric field will be lambda upon 2 pi epsilon naught r cap, radially outward in cylindrical coordinate system. Okay, so this will be the electric field. Just remember these two things because it will help you to solve many problems. Okay, now let's come to Gauss law. Gauss's law. Gauss law says that when the medium is homogeneous isotropic, then closed surface integral of E will be Q enclosed by epsilon naught. Okay, in any closed surface, the closed surface integral of electric field will always be Q enclosed. Q enclosed means that closed surface must have enclosed some charge divided by that epsilon naught, or rather epsilon. Okay, for homogeneous and isotropic medium. Homogeneous and isotropic medium. But there is one more way we can represent Gauss law, and that is closed surface integral of D. D is electric field density. This is electric field intensity. This is electric field density, and this will be Q enclosed, and it is applicable everywhere. It is applicable everywhere. Okay, there is no exception for this law, but this is applicable only for homogeneous isotropic medium. What is the difference actually? Actually the difference is D and E. If you see D, then D will be epsilon E. So if I place epsilon E in place of D,
you will get like this. Okay, you will get like this. Now in non-homogeneous anisotropic medium, this epsilon is function of xyz. It means with ds its epsilon is changing, so you cannot take it out. You cannot take it out and then take in the denominator. You cannot do if the medium is non-homogeneous and anisotropic. But if the medium is homogeneous and isotropic, then you can take this out because epsilon is independent of direction and position. So you can say that this epsilon come out from this integral and it will go in the denominator of this Q enclosed. Okay, it means this is a Gauss law, but it is applicable only for homogeneous isotropic medium, and this is the actual Gauss law. This is applicable everywhere. Okay, now with the help of divergence theorem, I can say from here that if the medium is homogeneous, I can write this closed surface integral as volume integral, divergence of E dV. Okay, and Q enclosed I can write rho v dV, and again volume integral divided by epsilon. Okay, the charge enclosed I need to write. So whatever closed surface you have taken, in that closed surface there must be some volume of that surface, that because closed surface always has the volume. So the charge enclosed in that closed surface can be written as the volume charge density inside that closed surface times dV, and take the volume integral of that. This is the charge enclosed in that closed surface divided by epsilon. Now if I compare these two things, then I can say that divergence of E is equal to rho v by epsilon. This is the Gauss law for homogeneous isotropic medium. Okay, from there you can say that if I apply divergence theorem, you can say that divergence of D, closed surface integral I have written in volume integral, okay, equal to Q enclosed. Q enclosed is rho v dV, and again volume integral. So if I compare these two things, dV cancel, and you can say that divergence of D will be rho v. This is the actual Gauss law. It is applicable everywhere, and this is applicable only in homogeneous isotropic medium. I hope you will remember this. So guys, this is about Gauss law. Now let's come to gradient theorem. We know that if I take gradient of V dot dl, and if I move from A to B, then you can say that it will be VB minus VA. You can write it as VB minus VA. And gradient of V is minus E actually. E is equal to minus of gradient of V. Remember this. I am not proving this, but you have to remember this. So what I can do is I can replace this place with minus E. So you can say that from A to B, E dot dl, E is electrostatic field, then it will become VB minus VA. Okay, or you can say that this term is dV. E dot dl, rather minus E dot dl is written as dV. Okay, this is VB minus VA. Fine, dV is small volume, small voltage, small potential. Okay, so what you can do is you can say that dV is equal to minus E dot dl. Remember this, small change in potential will be equal to minus E dot dl. Okay, remember this and these three things. Let's move to the next part. So we know that divergence of E is equal to rho v by epsilon in homogeneous isotropic medium. Okay? And E is equal to minus of grad V. V is the electrostatic potential, E is electric field. Now if I place this E here in this term, here in this expression, so you'll get divergence of minus of gradient of V, and that is rho v by epsilon. Take this minus out, so you'll get divergence of gradient of V will be minus rho v by epsilon. Fine. And what is this value? This is Laplacian. So Laplacian of V will become minus rho v by epsilon. I hope you understood. This is the Poisson equation. Poisson equation. Remember this. Laplacian of V is equal to minus rho v by epsilon. If the medium is charge free, for charge free medium, if the medium is charge free, then rho v will be 0 and Laplacian of V will become 0. This is known as Laplace's equation. This is known as Laplace's equation. Okay, these Laplace's equation and Poisson equation, they are used to find the value of the capacitance. Okay,
So these two theorems are very important. You must know these things. Okay. Okay, guys. Let's move to the next thing. And next thing is, what is D? And the next thing is polarization. Polarization. Okay. Whenever you have some dielectric slab, let's say there is some dielectric slab, and you place the dielectric slab inside electric field. Okay, let's say there is some electric field applied in this region, and in this region you place some dielectric. Then because of polarization, what will happen is, on the surface you will see the charges. Okay, on the surface you will see the charges. I mean, there will be some polarization that will happen. On this surface you'll have some charges, negative charge, and on this surface you'll have the positive charges. So you can say that just by applying electric field on some dielectric, we did the polarization of dielectric. It means the dielectric must have some surface charges on this. This is surface bound surface charge density. Bound surface. Bound means it's not free, it cannot move. Okay, it cannot flow. So it's a bound surface charge density. Moreover, we have not placed this charge. It is actually appearing because of polarization. Because of applied electric field, these surface charge densities are appearing. If you remove the applied electric field, these surface charge density will be gone, will disappear. Okay. So we have the surface charge density on the surface. Moreover, if the polarization is not uniform, which will happen in an isotropic medium or non-homogeneous medium, we will also have the bound volume charge density as well. We'll also have the bound volume charge density. Now, what is this bound surface charge density and bound volume charge density? These are related with the polarization vector P. Polarization vector P. Okay. Now, what is this polarization vector P? It is the net dipole moment. Polarization vector P is net dipole moment per unit volume. Net dipole moment per unit volume. Okay. So this is the polarization vector P. Remember this. And let's say we want to calculate the surface charge density, bound surface charge density. Then that will be P dot n cap. P dot n cap. P is polarization vector dot n cap. Now, what is this net dipole moment? Net dipole moment is, let's say there is one atom. For that atom, the dipole moment is P, or let's say Pi. Pi is for ith atom, and the volume is, let's say, total volume is V. Okay. So in that V, let's say there are n atoms. In that delta V, let's say volume is delta V. In that delta V, n atoms are there. N atoms are there. So for those all n atoms, I need to add the net dipole moment. I have to find the net dipole moment. I from 1 to n. So I am writing P1 plus P2 plus P3 up to Pn. It means I am adding all the dipole moments to find the net dipole moment. Divide by the volume. Volume is delta V. Volume is delta V. So this is the polarization vector P. This is how we can calculate the polarization vector P. Okay. Total dipole moment, or you can say net dipole moment per unit volume. Okay. Whatever volume we have taken, for that volume you just have to add the dipole moment of all the atoms, divide by that volume. Okay. This is our polarization vector P. Now to find the surface charge density, you need to take P dot n cap, and to find the bound volume charge density, you have to take minus of divergence of P. Okay. This is the bound volume charge density. Okay guys, I hope you will remember it. Now let's find the electric field inside the dielectric. Let's find the electric field inside. Let's say we have this dielectric slab. We have this dielectric slab, and there is some applied electric field. Because of applied electric field, there is a buildup of surface charge. Okay, there is a buildup of surface charge and the volume charge rho V, rho BV, bound volume charge density. Now we know that according to Gauss law, what I can do is I can write that divergence of E is equal to rho V free, because there are two charge densities. One is bound volume charge density and one is free charge density. Because of that, that's applied electric field is there. Okay, so rho V free plus rho V bound
divided by epsilon. This is the net electric field inside this dielectric slab. Okay. Now this volume charge density I can write, this bound volume charge density I can write minus of divergence of P upon epsilon naught. Okay, upon epsilon naught. Whenever you are separating this bound volume charge density, you have to write it in terms of epsilon naught. Okay. Now what you can do is you can take this epsilon naught on this side. So divergence of epsilon naught E plus divergence of P is equal to rho V free. Take this divergence out, so you will get P plus epsilon naught E is equal to rho V. Okay, so this is the volume charge density. P plus epsilon naught E is equal to rho V. I hope you understood it. Fine. Okay. Okay. Now what is this? We call this quantity as D because it's a Gauss law. So D will be equal to P plus epsilon naught E. This P is proportional to this E itself. So I can write P as, this polarization vector P as epsilon naught 𝐿𝐸. Okay. So if I replace, it will become epsilon naught 𝐿𝐸 plus epsilon naught E. Okay. Now what you can do is to take this epsilon naught out, 1 plus 𝐿𝐸 into E. This is D. And 1 plus 𝐿𝐸 is epsilon R. So you can say that epsilon naught epsilon R E. This is our D. Okay. So all these formulas are very important. You have to remember these things. Okay guys, so let's move to the next thing, and next thing is boundary conditions. Boundary conditions. Just remember one thing. Let's say there are dielectric interface. There is a dielectric interface. On this side we have medium 1, dielectric 1 you can say, and this is medium 2, dielectric 2. Okay. The permittivity is, relative permittivity of this medium is epsilon R1, and relative permittivity of this medium is epsilon R2, and this is normal to this media interface. There is some electric field on this medium, let's call it E1, and there is other electric field E2 in this medium. Let's say this is theta 1 and this is theta 2. Okay, this is theta 2, this is theta 1. This E1 has two components. This E1 has two components. One is tangential to this interface, one is normal to this interface. Similarly, this E2 has two components. One is tangential and one is normal. Okay. One is tangential component of this electric field and one is normal. E2T, E2N. Okay. This is E1N, E1T. Okay. This is the tangential component, this is the normal component. This is tangential component and this is normal component. Now we know that the tangential component of electric field in both the medium has to be same. Tangential component will remain same in both the medium, E1T and E2T. In both the medium, tangential component will be same. Normal component of D will remain same. Remember, normal component of D will remain same only if there is no free charge. There is no free charge or movable charge. There is no free charge on media interface. If there is no free charge on the media interface, then you can say the normal component of D will remain same. Okay. So these are the boundary condition, and on the basis of these boundary condition, questions may come. Okay. So you have to remember. Now let's move to the next thing, and next thing is method of image. Method of image. Rather, I have to tell you about the capacitance calculation. Capacitance. We know that whenever we have two parallel plates, and if area of the plates is A and distance between the plates is D, then the capacitance of these two plates will be epsilon A by D. Epsilon is the permittivity of the medium. Epsilon is epsilon naught into epsilon R.
So this is the capacitance between these two parallel plates. Now what you can do is you can also calculate the capacitance of a sphere. Okay, the capacitance of a sphere. The other, I mean, for the capacitance we need two conducting plate. One is this spherical surface, other one is the spherical surface at infinity. Okay, so single sphere will also store the charge. Let's say in the medium nothing is there, we have this sphere, okay, spherical sphere, and other is that infinity. Okay, other sphere, other side is at infinity. So there are two spherical cells, you can say, and we can calculate the capacitance of these two spherical cells. Let's say the radius is a and the other radius is infinity. Okay, now how to calculate the capacitance? For that we need to find C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. V is the voltage difference between surface A and B. Let's call this surface as A and the infinity surface as B. So what we can do is we can apply some voltage between these two things, I mean the infinity and this, or you can say, oh, that's a good thing, we can apply some voltage difference between these two surfaces, or you can say this is at 0 volt and let's say this is at V volt. We have applied some V volt. So what is the charge on this surface? That charge divided by voltage difference. Okay, that charge divided by, or you can say, let's say there is some charge Q on this surface. Now if there is some surface charge Q, then what is the potential on this surface? Potential will be Q upon 4 pi epsilon naught R. This is the potential on this surface, and the potential on this surface is 0 because it's infinite distance away. So now what you can do is you can calculate the potential difference between this surface and this surface. So potential difference will be this itself, and the charge is Q, potential difference is this, potential difference is this, R is A. Okay, so you can place this VAB here and calculate the capacitance of single spherical cell. Now if let's say there are two spherical cells, one has radius A and other has radius B. Okay, one has radius A and other has radius B. Now how to calculate the capacitance of this geometry? These are the conducting spherical cells. Okay, so what you can do is we can apply a voltage difference. Let's say I am giving V volt here and I am grounding this. If you do like this, you will have surface charges. They will store some surface charge, positive on this side and negative on this side. If somehow we can calculate this charge value Q, then divide by the potential difference V will be our capacitance. Okay, so how to find this Q value? How to find this Q value? So for that we can apply Gauss law. We can apply the Gauss law, and with the help of electric field you can find this Q. So do it yourself and find the value of capacitance here. The next thing is, whenever two capacitance are connected in series, let's say this is C1, this is C2, then C equivalent will be C1 C2 divided by C1 plus C2. Whenever two capacitance are connected in parallel, C1 C2, then the equivalent capacitance will be C1 plus C2. C equivalent will be C1 plus C2. Okay, this is the equivalent capacitance. Remember this. Okay, whenever two capacitances are in parallel, then equivalent capacitance is C1 plus C2. Now there is one more thing, and that thing is, sometime what happens is, let's say there is a parallel plate capacitor and there are two medium, let's call it epsilon R1, epsilon R2. I mean dielectric is there, but there are two different dielectrics between these two plates. Then what you can do is you can break this entire thing with two capacitances connected in series. One capacitance has the medium epsilon R1 and other has epsilon R2. Okay, now what is the capacitance of this? It is epsilon naught epsilon R1, area of the plates A, and the distance between the plates is d by 2. This is d by 2, this is d by 2. Okay, so area distance between the plate is d by 2. So this is the capacitance C1 between this and this. What is the capacitance C2 between this plate and this? That is again 2 epsilon naught epsilon R2 A by D. This is C2. So you can
replace this with these two capacitance connected in series, and then find the equivalent capacitance. Easy peasy. Similarly, what you can do is you can separate this region with this type of dielectric. This is epsilon R1, this is epsilon R2. Now if you have dielectric like this, then you can break this into two again. You can break this into two again. Okay, this is C1, this is C2. What is C1? C1 is epsilon naught epsilon R1. Area of the plate is A by 2 and divided by the D. D is the distance. Okay, this is D. And now these two capacitance are in parallel. Remember this. Okay, so this is the combination that you need to remember, and I hope you understood it. Let's move to the next thing. Next thing is method of image. Method of image. Now what is this method of image? What is this method of image? In method of image, what we have is, let's say we have a conducting surface. Okay, and let's assume that the potential of this surface is maintained at 0 volt, and we have a charge here. It can be line charge or point charge or whatever. Let's say this is the point charge we have, and we want to calculate the electric field or potential due to this conducting sheet and this charge. Okay, the distance between these two things is h, and let's say at some r distance here at this position P, I want to find electric field. I want to find electric field, or you can say I want to find electric potential due to both of these two things, Q and this infinite surface sheet. Okay, so we want to calculate the electric field or maybe electric potential, whatever. Okay, so how to calculate that? To calculate that, we have to take care of this infinite sheet as well. Okay, we cannot separate this out. There is only one way to remove this infinite sheet, and what is that way? We have this H. We have this H. What we can do is, without disturbing the electric field, we can create an image charge. Okay, at the same height. I mean, this height is H. Below this, we will take H again, and here we will replace minus Q. This is Q. This will be minus Q. And now we can remove this infinite sheet. Now this infinite sheet can be removed because the infinite sheet consideration has been taken care if I take this minus Q charge here. So with the help of these two charges, one is plus Q and one is minus Q, we can find the electric field here, and that electric field will be the electric field due to this charge and the infinite sheet, because this image charge is just a method. It's a method for considering the effect of this infinite sheet. Since we have created image charge, we can now remove that infinite sheet from this picture, and we can consider this Q and this minus Q and calculate the electric field at this position. So it's easy peasy now. Okay, so this is the way to find the method of image, I mean to apply the method of image and calculate the electric field or electric potential or whatever. Okay, now it's not necessary that the infinite sheet is of, I mean the flat type. I mean it can be like this, 90 degree. It is infinite here. Okay, the surface is infinite. It is in the xy plane and the surface is infinite, and this is in the yz plane. This is again surface is infinite. And let's say I maintain the potential at 0 volt on this entire sheet. Okay, now what I need to do is, I have placed a charge Q here. I have placed a charge Q here, and the distance of this charge is, let's say, h1 from here and h2 from here, and I need to calculate the electric field of this charge and this sheet at, let's say, this point, or electric potential I need to find. So to incorporate the effect of this infinite sheet, what I need to do is I need to create image charges. How to create image charges? At the same distance, this is the distance h1, at the same distance we have minus Q. This is the image charge of this plus Q charge. Similarly, we have to place minus Q here. This is the image charge of this Q, okay, at the distance h2. Now what I need to do is, since these two charges will maintain 0 volt here, these two charges will maintain 0 volt here, but because of the presence of this minus Q,
the voltage of this seat will not be 0. So what I need to do is I need to create one more image charge. Okay, I need to create one more image charge. Since the height of this is h1, so h1 below here I need to create one more image charge, that is plus q. Okay, this charge is plus q, and this image charge will also act the image charge of this minus q as well. Okay, now you can see that because of all these four charges, the potential of this seat or this seat will remain at 0 at any point. Let's say at this point, if you look at this, if you see this point, then the distance of this point from these two charges will same. So since one is positive, one is negative, the potential will be 0. And again, from these two charges, the distance of this p point is 0. I mean the distance of this p point from these two charges is again same. So the potential of this charge and this charge at this point will cancel each other. So the net potential at this point will be 0. Similarly, the potential on this seat will also be 0 because of these four charges. So I can say that since we have maintained 0 volt here at this seat, now I can remove this seat. Now I can remove this seat, and we have taken the effect of that infinite seat in these image charges. So we have one real charge and three image charges. Now we can find the electric field at this point, or the potential at this point. Whatever is asked, we can easily calculate. Whatever that electric field will come out, that electric field will be due to this point charge and due to that infinite seat. Okay, the image charges are the effect of that infinite seat. Remember that. Okay, I hope you understood it. Okay, let's move to the next thing. So this is about method of image. Now let's move to magnetostat. Magnetostatics. Okay, in magnetostatics we have to apply, we have to understand first Biot-Savart's law. What is this Biot-Savart's law? Let's say there is a current carrying wire, and at some point P, I want to calculate the magnetic field density. So what you can do is you can take this current element dl, idl, this is the current element, and let's say this is r, this is r vector. Okay, so what you can do is you can write small magnetic field density due to this small current element as mu naught upon 4 pi idl cross r cap divided by r square. Okay, r cap is this direction and r square is the distance between this current element and this point. Okay, so this is the small magnetic field density because of this small current element. Now what I can do is I can integrate it to find the total magnetic field density at this point. This is my Biot-Savart's law. Okay, also there is Ampere-Circuital law. With the help of Ampere-Circuital law we can calculate the magnetic field, but in some situation, not all situation. Biot-Savart's law is applicable everywhere. Okay, now let's say there is a current carrying wire and we want to calculate the magnetic field density at the point P. To calculate the magnetic field density at the point P, what we will do, we will create an Amperian loop like this. Okay, and the distance of this Amperian loop is A. On this Amperian loop, you can see that this Amperian loop is symmetric about this current distribution. On this Amperian loop, we have constant magnetic field density. The magnitude of B will remain same on this loop. So what you can do is we can apply the closed line integral of this B will be equal to mu naught into I penetrate. This is the Ampere-Circuital law. Okay, since B is constant, so you can take this B out, and closed line integral of dl is 2 pi a will be equal to mu naught into I penetrate. How much current will penetrate through the surface of this? We have this closed loop, and this closed loop will make a open surface, and from that open surface the current is penetrating. So how much current is penetrating? I itself. So we'll write I here. Okay, and now you can calculate B as mu naught I divided by 2 pi a. So this is the magnetic field density at this point P, and the direction of B is tangential, phi cap. Okay, so that you should know how to apply Ampere-Circuital law. So Ampere-Circuital law is not applicable everywhere. Where it is applicable? It is applicable if the current is DC, steady current should be there, and the wire is of infinite length. Then only we can apply Ampere-Circuital law. Okay, so this was Biot-Savart's law, this is Ampere-Circuital law, and let me tell you guys,
that, I mean, both the laws are used to find the magnetic field density B. Okay. Now there is one more thing, H, magnetic field intensity. H and B are related. B is equal to mu H. B is equal to mu H. Okay. B is equal to mu H. H and mu are related like this. So ampere circuital law, I can write it like this: H dot dl is equal to I penetrate. This is also an ampere circuital law. Okay. This is also ampere circuital law. And I can replace this closed line integral like this: curl of H dot ds, open surface integral I have written. Okay. And this will be I penetrate. I penetrate can be written as J dot ds. J is current density dot ds, like this. Now from here you can see that curl of H is equal to J. This is ampere circuital law. You can replace H with B. So curl of B will be equal to mu J for homogeneous isotropic medium. This is also ampere circuital law. Okay. Remember this. This is ampere circuital law. Now, if I take the closed surface integral of B, always remember this will be equal to 0. Okay. Closed surface integral of B will always be 0, because B is a cyclic field, a closed solenoidal field. What you can write is, a closed surface integral can be written as divergence of B and take the volume integral of that dV, and this is equal to 0 always. What does it mean? It means divergence of B will always be 0. Divergence of B will always be 0. Remember this point. Okay, this is very powerful relation. Divergence of B, this is you can say Gauss law. Okay, this is Gauss law. This is the flux of magnetic field density through the closed surface. Whenever you have vector field and you take the surface integral of that vector field from any surface, let's say through the surface, through any surface, you are calculating this F dot ds, then this will represent flux of F through the surface, whatever the surface on which you are calculating this integral, through that surface the flux of F can be represented like this. Now if I take the closed surface integral of this F field, what does this mean? This means that we are calculating the flux of F through the closed surface. And if this F field is magnetic field, then flux of this magnetic field through the closed surface will always be 0. Remember this. Okay. And I can write it like this, and then divergence of B will be 0. So these are the formulas for magnetostats. Now let's move next, and I can say there is one more equation, we call it continuity equation. Continuity equation. What this continuity equation says? This continuity equation says that divergence of J will be equal to minus del rho V by del T. J is conduction current density. This is our continuity equation. I am not going into the depth of this, but you should know this continuity equation. And ampere circuital law says that curl of H equal to J, right? Curl of H equal to J. Now what I can do is I can take the divergence on both sides. So divergence of curl of H is equal to divergence of J. Rather you can write it B also. I mean here you can write B. Then this will be mu J. Okay. Divergence of mu J. Right. Now what is this? How to find this? Okay, we have, let's say, A cross B cross C. We need to find this value. Okay. So how to write it? This is back cap BAC CAB, BAC minus CAB. Okay. So B dot B into A dot C. Okay, this is not dot here. Okay, minus C into A dot B. This is how we write vector triple product. Okay, this is how we write the vector triple product. So now in the place of A I have this divergence, and then
curl and then B. Okay, in the place of C we have B, in the place of B we have this curl operator, and in the place of A we have divergence operator. So here we have B, B means curl, okay, and then A dot C, A dot C, A is again del operator and C is B, okay, and we have to write dot here, okay, and we have to write curl here, minus C, C means B into del dot del, this is del dot del, right? Tell me guys. And moreover, this has to be gradient, this cannot be curl, this has to be gradient. Why gradient? Because whenever you take divergence of any vector field, you will get the scalar answer, and on the scalar field you can only apply gradient. So this has to be, I mean, in the place of B we have to write this del, not this curl, okay, we have to write this del only. In the place of C we have to write B, in the place of A again we have to write del operator. So this is the way we can open this this formula. Now you can see that divergence of B is always 0, and this is del square. Del square is an operator, we call it Laplacian operator, and operator always comes before the field, okay. So I can write it minus del square B, okay. Is it correct guys? BAC CAB. Tell me, is it correct or not? Is it correct or not? I think it is correct. Yes. So it will become minus del square B. Okay. So this side I can write as minus del square B, and on this side I have mu divergence of J. Okay. Divergence of J. Is it clear, everyone? Tell me whether it is clear or not. Okay. Sir, I want to study physics and maths for GATE 2027. Can you share the playlist? Physics, I mean, you can send me a message on my number so that I can send you. My number is 750-8211-721. Okay. On this number, I'll send you the playlist. Okay. So, guys, so I told you how to write this. Okay. How to write this. But there is one more interesting thing. And that thing is, what is that thing? Let's come to Ampere circuital law first. This is Ampere circuital law. Okay. What I can do is, I can say that if I take divergence on both sides, wait. There is one more interesting point that I need to tell you. And what is that point? We know that according to Ampere circuital law, curl of B is equal to mu J. If I take divergence on both sides, let's say, then this side has to be 0 always. Why it is 0 always? Why this side has to be 0? Remember the null identities. The null identity says that divergence of curl of any vector field has to be 0. Now what we have done here is, I think we have done some mistakes here. What is that mistake? If you take the divergence of this, I mean, this cannot be, this is wrong. Actually, this formula is wrong. Why this formula is wrong? By mistake I have written like this. Actually, this is formula for curl of any vector field. Okay. Let's say we have curl of any vector field F. Okay. So if you have this, then we have to apply that formula. Okay. Mistakenly I have taken dot here. So this is not vector triple product. I mean, I cannot apply vector triple product here. So that was my mistake. It has to be 0 always. Okay. This has to be 0 always, and this will be mu into divergence of J. Okay. This is mu into divergence of J. So from here you can say that, I mean, this was the Ampere circuital law. I have taken divergence on both sides. We know that this is a null identity, so it has to be 0. So from here divergence of J has to be 0 always. Okay. Divergence of J has to be 0 always. But we know that divergence of J cannot be 0. Divergence of J has to be equal to minus of del rho V by del T. Divergence of J has to be minus del rho V by del T.
Okay, this cannot be equal to 0. It means this ampere circuital law is not valid. I mean, there is some correction required in this ampere circuital law. There must be some correction required. How to find those correction? What is the correction required? What is that correction? Let me repeat this again. We know that this is the continuity equation. Divergence of J will always be minus del rho V by del T. Okay, and this is ampere circuital law. So what I can do is I am taking divergence on both sides. So if you take the divergence on both sides, this will become this and this will become this. Okay. Now, if you look at this, you will get 0 here, because divergence of curl of any vector field will always be 0. And on this side you will have this. So from here I can say that divergence of J will be 0. Okay. But we know that divergence of J cannot be 0. It has to be minus del rho V by del T. This is charge conservation equation. This is always true. Charge conservation equation. This is charge conservation equation. So what I need to do is I need to modify this equation. Okay, I need to modify this equation, and for that I need to write mu J plus some quantity K. That K I have to write. Now what is this K? To find this K, what I can do is I can take the divergence on both sides. So divergence of curl of B is equal to mu into divergence of J plus divergence of K. I can write it like this. We know that this is 0. Mu times of what is divergence of J? It is minus del rho V by del T plus divergence of K. Okay. So from here I can say that divergence of K will be mu times del rho V by del T. Okay. Now what is this rho V? Rho V is divergence of D. I can write that this is divergence of D. Now take this divergence out, so you can say that K will be equal to mu times of del D by del T. Okay, take divergence on both sides, na? So remove that divergence operator, and you will say you can say that K will be mu times of divergence of D plus del D by del T. So the modified ampere circuital law will be curl of B will be equal to mu times of J plus del D by del T. And this del D by del T is known as displacement current density. This is known as displacement current density. This is conduction current density. Okay. So this is now my ampere circuital law, modified ampere circuital law, or you can say Maxwell's equation. Maxwell did this. Okay. If you write this in terms of H, you can write it as, you can write this as if you want to take this in terms of, if you want to write this in terms of H, then you remove this mu. So curl of H will be J plus del D by del T. This is Maxwell's equation, or you can say modified ampere circuital law, right? So till now we have divergence of B 0. This is always true in any medium, any situation. Divergence of D is equal to rho V. This is always true in any situation. Okay. There is one more law that we need to consider, and that law is Faraday's electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction. What this law says, it says that if I take, this law says if we have time varying magnetic field in any medium, if we have time varying magnetic field in any medium, this B is changing with time. So because of this time varying magnetic field, we have induced electric field in this medium. We have some induced electric field in this medium, ET. And in any closed path, let's say, if in any closed path, we want to calculate the line integral of E in any closed path. We want to calculate the line integral of E. Then this will not be 0. It means this induced electric field due to this time varying magnetic field, because of this time varying magnetic field, there is some induced electric field in the medium. This induced electric field is non-conservative. It will be non-conservative. Okay. And if you take the line closed line integral of this electric field, then that will not be 0.
Okay, that will be equal to minus of d phi by dt, minus of n d phi by dt rather. Okay, this you can write. Okay, this is the closed line integral of this E. So it will be minus n d phi by dt. Phi is the flux of this magnetic field passing through this surface area of this closed loop. Okay, so this is our Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, so from here I can say that if you apply Stokes theorem, you can say that curl of E, closed line integral, can be written in open surface integral, is equal to minus n. N you can take 1. Let's say it's a one loop, single loop. Okay, so minus d by dt of flux, you can say it's b dot ds in an open surface. In closed surface it is always 0, but in open surface the flux is b dot ds. Now on the both side you have surface integral, so from here I can say that curl of E will be equal to minus of del B by del T. Okay, so this is Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, so this is one more law. Curl of E is equal to minus del B by del T. You can see that whenever there is no magnetic field present, or you can say static magnetic field is there, then curl of E will be 0. It means in static magnetic field, if there is some electric field, that electric field will be conservative in nature. Okay, in static magnetic field region, if there is some electric field, that electric field will always be conservative. Okay, remember. But if there is some time varying magnetic field, then curl of E will not be 0. Matlab electric field will be non-conservative. The voltage difference between 2 points will depend on path, because with the help of electric field we can calculate the voltage difference from A to B. Let's say we want to calculate this E dot dl, then this will be VA minus VB minus VA. Okay, now if this E is induced electric field due to time varying magnetic field, if this is not electrostatic field, let's say this is the induced electric field due to time varying magnetic field, then this voltage difference will depend on the path between A and B, which path you are taking. If you change the path, the voltage difference between these 2 points will also change. Okay, I hope you understood this law, Faraday's law of electromagnetic induction. So ultimately we have reached 4 Maxwell's equation. Now we have reached to this point, and divergence of D is equal to rho V. Next one is closed line integral of E is equal to minus n d phi by dt, or you can say curl of E will be equal to minus del B by del T. Okay, this is Faraday's law of electromagnetic induction. 1, 2, number 3, divergence of B is equal to 0. Number 4, curl of H will be equal to J plus del D by del T. Okay, okay, so these are the 4 equations. These are the 4 equations, and we call them Maxwell's equations. With the help of these 4 equations, every electromagnetic phenomena can be observed and can be analyzed. Okay, so these are the 4 Maxwell's equations. So I think for EMFT we have to stop here. We have revised almost entire electric field, all the important formulas we have revised. Okay, let's move to measurement now. So guys, tell me, are you ready? Are you ready for the next subject? That is measurement. Okay, so in measurement, the first thing is power measurement. Power measurement. There is some mistake. Please tell me which mistake is there. In Saab Ali Ahmed Saab. Tell me, Ali Ahmed Saab. Please, I will be very happy. So let's come to power measurement. So for power measurement, especially for 3-phase, we use 2 wattmeter method. 2 wattmeter method. We use 2 wattmeter method, and this is very important.
let's say the load is star or delta and the load is balanced, and we use 2 wattmeter to measure the power. So the connection has to be like this. This is W1, wattmeter W1, and this is wattmeter W2, let's say. Okay, so this potential coil, this is the common point for these 2 potential coils. Okay, this is W1, this is W2. Now the reading of W1 will be VL cos of 30 plus phi, let's say. Then W2 reading will be VL cos of 30 minus phi. Just remember this. One is 30 minus phi, other one is 30 plus phi. Okay. If you can add these 2 things, then you will get the total power of 3-phase load, total active power of 3-phase load. Okay. And that total active power will be W1 plus W2. This will be root 3 VL cos phi. Okay. So this is the total active power if you add these 2 things. But if you subtract W2 W1 from W2, okay, then you will get, I think, VL sin phi. You can check, open it and then subtract it. If you open it, then you'll get cos A into cos B plus sin A into sin B, and minus this you will do, so you'll get twice of this, and then sin 30 will cancel this with this 2. I think this is the value W2 minus W1. Okay, so if you add these W1 and W2, you'll get this. If you subtract, you'll get this. Now if I take the ratio, let's say I calculate, take this W2 minus W1 divide by W2 plus W1. What will you get? You'll get 1 by root 3 tan phi. Okay. Now from here you can calculate tan phi as root 3 into W2 minus W1 divided by W2 plus W1. Okay. And from here we can calculate phi value. So phi will be tan inverse of root 3. This is the load power factor angle. Okay. This is load power factor angle. W2 minus W1 divided by W2 plus W1. Okay. This is how we can calculate the load power factor angle. Okay. And total 3-phase power is this. So this is applicable for balanced load. If the load is unbalanced, let's say, then also you can apply 2 wattmeter method. But then we have to remember one more point. If the neutral is grounded, then we cannot apply this method for unbalanced load. For unbalanced load, we can apply 2 wattmeter method to find the total power consumed by the load, total active power consumed by the load, only if the neutral is ungrounded for unbalanced load. If the neutral is grounded and the load is unbalanced, then we cannot find the power W1 plus W2 as, we cannot find the total active power taken by the load. Okay, we cannot find that. So this method is applicable for balanced load, that's for sure. For balanced load, whether it is grounded or ungrounded doesn't matter. Okay, so for balanced load this method is applicable. For unbalanced load this method is applicable only if the neutral is not grounded. Okay, remember this point. In delta there is no neutral, so in delta whether the load is balanced or unbalanced, everywhere it is applicable. Okay, so for delta there is no point of there is no such point for delta connected load, but for star connected load the neutral point should be under consideration. Okay, I hope you understood it. So this is for the power measurement. Now let's move to okay, there are some special cases also. Okay, let me also revise those special cases. First one is, if you take phi as 60 degree, let's say phi is 60 degree. If phi is 60 degree, then it will become 90 and it will become minus 30. Okay, so 1 wattmeter reading will be 0 and the entire power will be taken by other wattmeter.
if phi is 60 degree, the entire three phase power is measured by W2, because W1 is 0. If phi is 60, this will become 90 and it will be 0. Okay, so the entire power will be measured by this wattmeter W2, right? Number 2, if phi is 0, it means unity power factor, then W1 will be equal to W2. Okay, then in that case W1 and W2 will be equal, right? If phi is 0, then W1 and W2 will be equal. Okay, because this phi will be gone and this is 30, this is 30, so W1 will be W2. Number 3, if phi is equal to 30 degree, if phi is 30 degree, it will become cos 0, cos 0 is 1, and this is cos 60, cos 60 is half. So you can say that W2 will twice of W1, matlab one wattmeter will read double of the other wattmeter. Okay, if phi is 30 degree, power factor angle, load power factor angle is 30 degree. Okay, I hope you understood all these three things. Let's move to the number 4 point. Number 4 point is, let's say phi is 90. Phi is 90. Then W1 and W2 will be negative of each other. Okay, and the total three phase power will be 0. Because load power factor angle is 90, it means the load is either inductive or capacitive. Whether you take is plus 90 or minus 90 doesn't matter. Okay, if you take plus 90 or minus 90, then the load will be either inductive or capacitive, and if the load is inductive or capacitive, then the total active power has to be 0. So you can say that W1 and W2 will read negative of each other. Okay, so this is about the power measurement. You have to be very careful because there will be one question on that. Okay, so you should know how to solve it. Okay, let's move to the next is voltage and current measurement. Voltage and current measurement. Voltage and current measurement. Okay, to measure the voltage and current, we use multiple instruments. The most important instruments are PMMC, moving iron, electrodynamometer. Okay, moving iron. So these are the main instruments which we generally use for measurement of voltage and current. PMMC is used only for DC. Moving iron will measure the RMS value. Will measure the RMS value of AC. It's only for AC. It works on AC. Okay, and this is for AC and DC. AC and DC, both. Electrodynamometer. Okay. PMMC is permanent magnet moving coil instrument. It is used to measure the average value of the function. Whatever function is there or whatever voltage is there, the average component is measured by the PMMC instrument. For moving iron instrument, it will measure the RMS value of the AC component. Okay, and this is again RMS measurement. Okay, so let's move to the next thing, and the next thing is how to increase the range of these instruments. How to increase the range. So range, let's come to range part. Range improvement. Range improvement. Okay, let's say there is some instrument and let's call it voltmeter, and it shows full scale of 10 volt. Whenever you apply 10 volt here, it shows full scale deflection, and the current through this instrument is, let's say, 0.01 ampere. When you apply 10 volt across it, it will take 0.01 ampere and it will read full scale reading, and full scale reading is 10 volt. Okay, this is given. Now for the same instrument, I want to use this same instrument, but I want to increase its range to 100 volt. It means we want that on 100 volt it shows full deflection. On 100 volt it shows full deflection. What should I do? For that I need to add some series resistance to it.
I need to add some series resistance to it. Let's call it RV. So we have added this RV resistance. Okay. And we know that whenever I apply this 100 volt, now it will show full scale. It means the current through it will be 0.01 ampere. Then only it will show full scale. Na? So in the presence of RV, if I apply 100 volt, then this current has to be this value so that it shows full scale deflection. Right? Now what is this RV? How to calculate RV? First we need to calculate resistance of this instrument. How to calculate resistance of this instrument? In the first case, it is given that when we apply 10 volt, it will show full scale reading of 10 volt itself, and the current is this. It is reading 10 volt. When we apply 10 volt, it is reading 10 volt and the current through this is this. So we can calculate R0 as 10 divided by 0.01. So it will become 1000 ohm, right? So this R0 will remain same at 1000 ohm. This R0 will remain same as 1000 ohm, okay? Now what we have done is we have connected this resistance RV in series with this. If you connect RV in series with this, and if you want that on 100 volt it shows full scale deflection, it means the current has to be at 0.01. Now what we can do is we can apply KVL. So 100 divided by 1000 plus, we can apply Ohm's law. 100 divided by 1000 plus RV, and it has to be equal to 0.01. So from here you can say that 100 plus RV will be equal to 100 divided by 0.01. Okay, so it will become 10,000. So 1000 plus RV equal to 10,000. RV comes out to be 9,000. I hope you understood it. Okay, so this way we can calculate the extra resistance that we have to add so that we can increase the range up to 100 volt. Okay, let's move to the current source. Whenever some instrument is used to measure the current, let's say this is the instrument and we are using this instrument, we are making ammeter. Okay, ammeter. And let's say full scale reading is 5 ampere. Full scale reading is 5 ampere. Whenever the deflection is on full scale, it shows 5 ampere. And the full scale current is 0.01 ampere. And this current flows whenever there is a voltage of 5 volt. Whenever there is a voltage of 5 volt across it, this current will flow through it. The needle will show on the full scale, okay, and the full scale reading is 5 ampere. Now how it is possible? You may say that, sir, full scale reading is 5 ampere, then this current has to be 5 ampere, na? Obviously, what I did is I have connected a resistance here. If I connect a resistance here, then whenever this current is 5 ampere, out of this 5 ampere, 0.01 ampere will flow here and the remaining current will flow here. Okay. So now from external point, you can see that whenever 5 current is there, it is showing full scale. Whenever 5 ampere is there, it is showing full scale because the current through this instrument is this. On this current, it shows full scale reading. But we have made this ammeter as 5 ampere ammeter. It means on 5 ampere it has to show full scale reading. So how to make it 5 ampere ammeter? The only way is we have to connect a shunt resistance. Whenever there is 5 ampere from this external connection, okay, whatever this external connection is, whenever the 5 current is flowing here, 0.01 ampere current should flow here so that it will show full scale. So when this current is 5, it is showing full scale. But actually it is taking this much of current. While flowing, it is showing full scale. It means this instrument demands this current. Okay, and the voltage across this instrument is 5 volt. So the same voltage will appear across this resistance as well. Okay, and how much current will flow through this resistance? The current through this resistance will be 5 minus 0.01. So R shunt we can calculate as 5 minus 0.01 divided by R shunt will be equal to the voltage across this, which is 5 volt, divided by the current through this.
current through this will be 5 minus 0.01. So this much of ohm should be connected in shunt so that we can make it an emitter of 5 ampere, because actually it is taking 0.01 ampere. Okay, if it takes 0.01 ampere, it will show full scale reading, but we want to make it as a 5 ampere emitter. It means externally, if 5 ampere is coming, it should show full scale. The only way to make it as a 5 ampere emitter is shunt resistance. We have to connect some shunt resistance here, so that when 5 ampere comes from there, 0.01 ampere will flow in this instrument, so that it can show full scale, and the remaining current will bypass through this resistance R shunt. Okay, and this R shunt can be calculated easily. I hope you understood it. Tell me guys, so this is the way we can enhance the range of these instruments. Okay, tell me everyone, have you understood all this? Let's move to the next question. Let's say, so I told you how to enhance the range. Now let's say we have a signal, we have a voltage signal which is like this. This is 10 volt. What I'm doing is I'm putting this voltage signal Vt in a PMMC instrument, and a moving iron instrument, okay, a PMMC instrument and a moving iron instrument. What will be the reading of PMMC and moving iron? Moving iron will read RMS value and PMMC will read average value. Okay, and there is one more thing I have done. Moving iron is AC plus DC. Okay, it is RMS value. Okay, but RMS of AC and DC everything. Okay, the entire signal RMS it will read. So moving iron will read RMS value and PMMC will read average value. Now tell me, what is the average value of this signal? What is the average value of this signal? Average value of this signal is 5. You can calculate area under 1 period divided by time period. Let's say this length is T. So this length is T by 2. So what is the average value? Average is area under 1 period divided by time period. So you can calculate the area. Area is 1 by 2 into 10. 1 by 2 into this peak value 10 into T. This is the area divided by time period T. So it will cancel. You will get 5. So the average value is 5. Okay. So the PMMC instrument will read 5 volt. What about the moving iron instrument? Moving iron instrument will read the RMS value. Okay. Moving iron will read RMS value, and RMS of this signal will be 10 by root 3. You can calculate the RMS value itself by yourself. Okay. So RMS value will be 10 by root 3. So you can see which type of instrument is applied here and what is the reading of the instrument. Okay. So I hope you understood all these things. Since the time is over, so we have revised almost entire EMFT and some part of the measurement and instrumentation. Okay. So guys, I think it's time to stop now. Ankur sir will continue. Let me ask Ankur sir whether he is ready or not. You can ask me your doubt if you have any. No. I think the next class is of Chandan sir. So from here, Chandan Jha sir will continue with the digital electronics, I suppose. Let me check it again. Yes, Chandan sir. From 6 to 7 p.m. Chandan Jha sir will continue. So let me ask Chandan sir whether okay guys, give me 1 minute. Okay, till then what we can do is we can solve some problem. Let's try to solve some problem. Let's say
we have an ammeter. We have an ammeter like this. Okay, and full scale current is 0.1 ampere. Whenever full scale current, this current is 0.1 ampere, it shows full scale reading. This resistance is of 1 ohm. Okay, this resistance is of 1 ohm. Now tell me, what is this current? It is showing full scale reading. It is showing full scale reading, and when it is showing full scale reading, it demands this much of current. It is given that one more resistance is connected here, and that resistance is of 1 ohm, shunt resistance, and obviously its resistance R naught is given as 0.5 ohm. This is 0.5 ohm. When this much of current is flowing through this ammeter, it shows full scale reading. It shows full deflection. We want to calculate this current. What is this current? What is this current? We want to calculate this current. So tell me guys, what is I? Obviously, when I is coming from this side, this current has to be 0.1 ampere. This current is 0.1 ampere, and this ammeter is showing full scale reading. Okay, we want to calculate this current. So how to calculate? First you calculate this voltage, and the same voltage will be available here. Okay, you can calculate this current by using Ohm's law. Since you know this current and this current, just add them to calculate this current I. Now tell me, what is the correct answer? Tell me, what is the answer for I? Tell me guys. Tell me everyone. Sir, ready? Hello? Ji sir, ready? Okay guys, I think Bhima sir will continue from here. So let me ask Bhima sir whether he is ready or not. Till then you can solve this problem. Try to solve this problem guys, and then we'll take one more problem from electromagnetic field theory, and I hope by then Shankar sir will be ready. So for this question, first let's calculate the voltage across this instrument. The voltage across this instrument will be 0.5 into 0.1. Okay, and the same voltage will appear across this resistance. What is this voltage? 0.05 volt. Same voltage will appear across this. Now what is this current I naught? This I naught will be 0.05 divided by this resistance 1 ohm. So this much of ampere will flow through this, and this much of current will flow through this. What is this I now? Apply KCL and we can calculate 0.05 plus 0.1. Okay, so it will become 0.15 ampere. 0.15 ampere. Tell me guys, is it correct or not? Have you understood it? Tell me. 0.15 ampere is correct answer. Okay, let's move to the next question. Next question is from, let's say, EMFT. EMFT. There is a capacitor, a parallel plate capacitor, and let's say the distance between them is D and the area of the plates is A.
area of plates is equal to A, and D is much less than area of the plates. Okay, D is much less than area between the plates, area of the plates. So what I do is I have introduced a dielectric here, and the width of this dielectric is D by 3, or rather call it D by 4, maybe D by 2, let's say. Okay, D by 2, and the permittivity epsilon R is 1.5. Relative permittivity of this dielectric is 1.5. We need to calculate C equivalent. What is this equivalent capacitance between these two plates? Tell me, guys, tell me what is the correct answer. Let me ask Bhima sir whether he is ready or not. Hello, ji sir, you ready? Sir, for digital you have to take, na? No, I called him and he told me that you are continuing with digital electronics. Okay, I think Bhima sir will join in 2 to 5 minutes. Till then we can solve this problem. Okay, let's try to solve this problem, everyone. Wait. Okay, for this problem what we can do is we can break this into 3 parts. One is this C1, let's say this upper part is C1, and then dielectric part C2, and then this lower part C3. Okay, and all these 3 capacitors are connected in series, right? Now C1, C2, C3, we need to find C1. What is C1? C1 will be epsilon naught, area of the plate is A, and distance between the plate is D by 4. Why D by 4? Why D by 4? Because this is D by 2, remaining D by 2 part is separated into two parts again, D by 4 and D by 4. Okay, and then this is D by 2. So if you add all these 3 distances, you will get D. Now the capacitance of this upper part is epsilon naught A divided by D by 4. Okay, what about C2? C2 is epsilon naught into epsilon R into area of the plates is A divided by the distance of this dielectric is D by 2. So I can write it like this. So it will become 3 epsilon naught A by D. Okay, what about C3? C3 will be epsilon naught A divided by this distance D by 4. Okay, this is my C3. So we have C1, C2 and C3. Now what we can do is we can take the parallel combination of these capacitances. So the parallel combination will be 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. I mean you can, and 1 upon this value. Okay, so this is C equivalent. Is it fine, everyone? So what you need to do is you need to first separate them in 3 parts like this. There is one more interesting problem, and let's say we have the dielectric like this. Epsilon R1 is 2, epsilon R2 is let's say 3, and epsilon R3 is let's say 5, and we need to find the equivalent capacitance. So can we break it like this? There are 2 capacitance on this side and 1 capacitance on this side. Can we break like this? Let's say C1, C2, C3. C1
is of epsilon R2, C2 is of epsilon R2 which is 3, and C3 is of epsilon R3 which is 5. So can we break this capacitance like this and then calculate the equivalent capacitor? Answer is no. This is wrong. Why it is wrong? Why it is wrong? Because it is not satisfying the boundary conditions. It is not satisfying the boundary conditions. You cannot separate, you cannot say that this is the separate plate. You cannot break it like this, because it is violating the boundary condition. If you separate it like this, then the boundary condition will be violated. This is not an equipotential surface. So we cannot assume that this is a single plate. I mean, here you can break it only if the potential on this interface is same everywhere. Then only you can break it. Since the potential is not same everywhere, why it is not same? Because electric field is not perpendicular. Electric field is not perpendicular here like this. No, it is not like this. Electric field is little bit bending is there because of this interface, because of this vertical interface. So we cannot break it like this, and this is wrong. So keep this into your mind. This is wrong. Okay. So how to solve this problem? We cannot solve this problem because there are some mathematical limitations to us. Okay. So in some book, this problem is mentioned and they are solving like this. I mean, they break the capacitance like this and then try to solve it. They take the series of C1 and C2, and then whatever the combination is, they take C3 in parallel with that and calculate the C equivalent. But this is wrong. You cannot do that. Okay. So let me ask Bhima sir whether he is ready or not. Okay, so this is the problem that you should know. Okay, because sometimes this is asked in for JEE Advanced. It's been asked for like 2 or 3 times, and everybody is solving like this, but this is wrong. Okay, you cannot do it like this. So guys, I think we should solve one more question. Tell me if you are ready. We can solve one more question. Let's take this question from instrumentation. Okay. And let's say we have a circuit like this, and a voltmeter is connected. The current coil is connected here, and the potential coil is connected between these 2 points. Okay, this is the potential coil and this is the current coil, and we have this voltmeter W. Let's say this is 10 plus, or maybe 30 plus J40. Okay, this is 30 plus J40 ohm, and load is balanced. This is A, and let's call it B, or maybe this is B and this is C. Okay, so this is the connection of the voltmeter. Let's say that VAN, I mean this voltage with respect to the neutral point. Neutral point is, let's say, grounded. This side we have source. Okay, and let's say this is grounded. Let's call it C, and this is B. This is neutral point N. Okay, let's say VAN. This is VAN. VAN is 100 sine of omega t. Okay, and the phase sequence is ABC. This is the phase sequence. We need to find the reading of wattmeter. Reading of wattmeter. Now, how to solve this problem? What is the reading of wattmeter? Tell me, guys. What is the reading of wattmeter? So let me give you some hint. The current coil will read this current, and the potential coil will read the voltage difference between these 2 points. This point is B and this point is C. So the potential coil will read VBC and the current coil will read IA. Okay. So using this voltage and this current, we have to calculate the active power. Tell me what will be the active power. Do it yourself. Now Shankar sir will come, and Shankar sir will join us, and he will continue with digital electronics.
So I hope sir is ready. So let me call him. Okay, so from now Shankar sir will continue. Welcome back. So the next part, like we have discussed for the network analysis, let's continue our discussion on digital circuits. So let's move. So coming to the digital circuits, let's have a detailed discussion about the digital circuits. I hope I'm audible. Everything is fine from my side. So digital circuits. Yes, right. So coming to the digital circuits, these are the topics we have in the digital circuits part. The first one is number systems, and the second one is Boolean algebra and K-maps, combinational circuits, sequential circuits, data converters, logic family, and semiconductor memories, and lastly, computer organization basics. Okay, this is what you will be having in the digital circuits. In that, uh, because it is an electrical session, this is for EC. Tomorrow we can discuss. Okay, this is also for EC only. We can discuss it tomorrow. Now, this part we are going to discuss. So, because it is only for electrical engineering, so we skip this part. But one thing you understand, last year 2025 GATE electrical engineering, there is a question from KMAP. There is a question from Boolean algebra. So I don't suggest you to leave this topic, even it is not in the syllabus also, but I suggest you that basic, at least very basic of Boolean algebra, you must be knowing it for sure. Now we will be discussing combinational, sequential and data converters quickly in these three topics, whatever the formulas available, all of them we will be discussing. So first we are dealing with combinational circuits. So combinational circuits, what we will be discussing here. First we will discuss adders, half adder, half subtractor, full adder, full subtractor. Then multiplier, comparator. So this will finish arithmetic and logic. Then switching circuits, mux, demux, decoder, encoder. And sometimes we can also discuss PLD, but electrical engineering we don't need. So this is what we have in the combinational circuits. So firstly, sorry for that. So coming to
half adder. Quickly, I can wrap. Half adder is nothing but you have A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So you will be having half adder will have output two outputs, sum and difference. Sum is like this, and the difference is sum and carry. Sorry. So sum is equal to A XOR P, and the carry is equal to A into B. So this is your half adder. It contains two inputs and two outputs. The next one is half subtractor. You have A, B. Your AB can be 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Your output contains again two parts, difference and borrow. Subtraction of these two and borrow you require. What is the borrow to be taken to do this subtraction? So the difference is given by again AX or B, and borrow is given by A bar into B. So that is about your half adder and half subtractor. But in general, if you do multi-bit addition, you need to add at least 3 bits, because when you do multi-bit additions, the addition of the result will come to the next. So that is to be considered. So considering 3 bits, we require full adder. So let's have a discussion of full adder. In full adder, you have 3 inputs, A, B, and Cn. So you will have sum and carry. So if you do, the sum will be this one, carry this one. So I'm not explaining the logic behind this. Quickly, we are discussing that sum is equal, just you add them, you get the sum and carry. Sum of the minterms, 1, 2, 4, 7. Carry equal to sum of the minterms, 3, 5, 6, 7. Here you should remember them. Compulsory, you should remember the sum and carry formulas. And also here sum is equal to A XOR B XOR with C. Carry equal to AB plus BC plus AC. Or it can also be done as A XOR B into C plus. So that is your carry, right? So that is about your sum and carry of the full adder. So you can implement full adder by taking two half adders. You can take a half adder, apply A and B here. You will get A XOR B and give it here, and take a half adder, apply the carry. Then you get the sum A XOR B, something A XOR B XOR C. What will be the carry? Just multiply these two. What is that? Here you get AB. Here multiplication of these two will give you A XOR B into C. Then take a OR gate. You get the carry. So one full adder is equal to two half adders plus one OR gate. This is one of the important rule we should know. The same way, let's have a discussion of full subtractor. Let's have a discussion of full subtractor. Here I have A, B, C. They can be all zeros too. All ones. And you have difference and borrow. So you can see here, if there is actually this C is the borrow given to lower order. It is borrowed to be taken. So the difference will be just, you can see here, I have, this is what you have, this is, these two are together your expenses. This is the borrow already given, this is what you need to subtract.
So in this case, I have 0. I need to give a borrow means first I need to get borrow. I'll get 2. 2 minus 1 is 1. Same way here. I need to subtract 1 from 0. I need to get a borrow. I'll get a 2. 2 minus 1. Because every time you take a borrow, you'll get 2. Same way, if you take a, I need to subtract this. I need to take a borrow. 1 minus 2 is 0. So again, your difference will be sum of the minterms 1 to 4, 7. It is same as AX or BX or C. Same as your sum, whatever you got. Borrow will be sum of the minterms 1, 2, 3, 7. That will give you A bar B plus A bar C plus BC. Or you can also say A X nor B into C plus AB. So A bar B. Just same as previous case, but instead of A, you will be getting A bar. Here also 1 full subtractor equal to 2 half subtractors plus OR gate. The same rule. So these are very basic individually half adder, full adder, half subtractor and full subtractor. Now if we cascade them, it will give you the different kind of adders like parallel adder. We also call it as a ripple carry adder. So let's discuss that part. Okay. Just give me a moment. Just one moment, please. Oh, something wrong happened. Just 1 minute. Sorry for that. Because that file got corrupted, I'm not able to write or right. Let's continue now. Now, the next concept is ripple carry adder. So, n-bit ripple carry adder. For example, if you take a 4-bit ripple carry adder, you need to take a full adder and its output is connected to another full adder and its output is connected to another full adder and its output connected to another full adder. Here, initial carry is 0. Here we give A1, A0 and B0. We give here A1, B1, A2, B2 and A3, B3 and the carry output is here carry input. So if you connect like this,
Okay, so if you connect like this, it will become a parallel ripple carry adder or parallel adder. Carry is propagated like a ripple. Here the total delay is equal to, very important formula, n minus 1 times carry plus maximum of sum and carry. Here n is number of bits. What is TD here? Total delay. TD is the total delay, n is the number of bits I can say, and TC is the propagation delay of carry in the full adder, and TS is the propagation delay is the of the sum in the full adder. Okay, TC is propagation delay of carry in each full adder, and TS is propagation delay of sum in each full adder. TC is the propagation delay of the carry in each full adder, and TS is the propagation delay of sum in each full adder. Now, listen carefully. We can apply this formula. We can apply when input not specified, because when input is specified, depending on the input the delay might be varying, because if input is 0 0 0 0 if you want to add, इसके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा ना इससे, सो उस केस में डिले अलग हो सकते. अगर कोई भी इनपुट नहीं दिया तो जनरलाइज्ड केस में, एंड इंटरनल सर्क्यूट नहीं दिया, internal circuit not given. Why internal circuit not given? Because if you make half adder with two, sorry, full adder with two half adders, one OR gate, उस वाला condition में, और XOR is implemented with three input XOR is implemented with two input XOR gates. उस केस में क्या होता है ना, half of the input is already ready. उस केस में the delay will not be same as what we are getting like this. 2017 gate में एक question दिया ऐसा वाला circuit में, and one more time also they have given. So be careful when internal circuit is given. We should do individual analysis. We should not apply the formula directly. And in place of adder, if you connect subtractor, it can make you the parallel subtractor also. But subtraction के लिए हम लोग adder subtractor दोनों cases. So for adder and subtractor, we don't use different circuits. Computer point of view, subtractor can also be implemented using adder only by using 2's complement arithmetic. So what is 2's complement arithmetic? You can see here in 2's complement arithmetic. 2's complement arithmetic. According to the 2's complement arithmetic, A minus B can be run with A plus 2's complement of B. What is 2's complement of B? 2's complement of B equal to, it is equal to B bar plus 1. We should add 1 at the LS. That is 2's complement of B. Now, if you take this circuit, got it? So same circuit only. Now, what I will do is I'll connect A3, A2, A1, A0, and in place of B, we will be connecting XOR gate like this. Okay. B3, B2, B1, B0. This is the control. So जब भी control 0 हुआ तो XOR gate का एक input 0 हुआ तो क्या होता है? You can see here when control input is 0, you will get here 0, 0, 0. Then you will get B3, B2, B1
and B naught. So when control input equal to 0, you get A plus B. What happens when control is equal to 1? So when control input here is 1, one of the input to the XOR gate is 1, it will work like a complement. So you will be getting B3 bar, B2 bar, B1 bar and B0 bar plus 1. So A plus B bar plus 1. This is 2's complement. So it will do A minus B. So this circuit will work like a universal adder and subtractor which can do both the jobs using a single circuit. एक ही circuit use करके दोनों काम करेगा, addition और subtraction. So let's move here. Next one, carry look ahead adder. What is the next one? You have carry look ahead adder. In the carry look ahead adder, you can see the formula for carry look ahead adder is generate carry is given by AI into BI. Propagate carry is AI XOR with BI or A plus B also sometimes. Sum is equal to A XOR B. So P XOR with the CI. And carry in the next state will be generated when you have A and B both are ones, or any one of them is 1 with the carry in the previous state. So this is the condition to generate the carry. So here observe carefully. So what is the implementation is here we take AI and BI. It will give you GI and PI. And now we have carry generator circuit. Why we go for carry look ahead adder? Because to eliminate the delay. Because previously n increases, delay increases. To overcome that delay, we will use here. And here, in the previous case, here you can also use a half adder also. Half adder also, okay, you can keep half adder also because carry input is, I mean, not here. I can say here. You can take a full adder or half adder. Sometimes examiner asks you how many number of half adders are required. It is 2 into n minus 1 plus 1, 2n minus 1. For this, 2 half adders will give you 1 full adder. Okay, so here then you will get carry in the next state and carry, and this one will give you sum. Okay. CI XOR with PI will give you yes. This is how we will be implementing. Okay. So listen please. This is called carry look ahead adder. Here we will generate carry at each and every stage by using this formula which can save the delay. Here the questions can be asked as what is the propagation delay is 4 times gate delay, and what is the propagation delay of sum is 3 times gate delay. Number of OR gates in carry generator. Assume each gate is having any number of inputs, no restriction. In that case will be equal to n. Number of AND gates is equal to n into n plus 1 by inside this we are speaking. Okay, these are the formulas which are important from this. So that finishes your adders topic, and the next one is comparator. Comparator. So when will you get A greater than B is given by A is 1, B is 0. A less than B is given by A0, B1. A equal to B is given by A XNOR with B. When both are equal, दोनों same है तो आपका XNOR का output 1 हो पाएगा. That indicates equality. Now, if you have a 2-bit comparator, A1, A0, B1, B0. When will you get A1, A0 equal to B1, B0 is given by 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. 4 times you will get. Similarly, when will you get
Here A equal to B. Here A greater than B is 0100, 1000, 1001, 11, 000110. So you understand this is A and this is B. 2-bit comparator. How many times it is happening? 6 times. Less. Next one is A less than B. How many times A less than B will happen is 0, 0, like this 6 times. Okay. So similar question asked in instrumentation for 8 number of bits. How many times A equal to B happens? Okay. So the next one is as I told you earlier, mux switching circuit. We can also discuss multiplier, but important part ही discuss कर रहा हूँ. Mux में क्या होता है ना? If you want to make 2 power n by 1 mux using 2 by 1 mux, how many number of muxes required? Number of mux 2 power n minus 1. This is one important question they can ask. Similarly, you have 2 power m by 1 using 2 power n by 1. How do you do this? Is 2 power m by 2 power n. Say this is k. Again, divide k with 2 power n and so on, you end up with 1. This is the process. And they can ask you how to implement the logic function of the mux. Suppose you have a 2 by 1 mux. What is the characteristic equation of the mux is y equal to s bar I naught plus s into I1. This is very important. And other than that, they will ask you implementation. Implement sigma m of 1237 using 4 by 1 mux. Okay. So what do you do? You take here, say A, B and C. It is not a K map. Okay. So sum of the A, B, C 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now sum of the minterms 1, 2, 3, 4. This will be C bar and C. You can see C, 1, C bar. Nothing is selected means 0. So you can take 4 by 1 marks. C, 1, C bar and 0. Sometimes they give you reverse also. They will give you this and they will ask you what is F. That also we can find by just drawing the K map also. We can do the reverse job also. Sometimes, mostly frequently in gate, they will ask you to do the reverse job. They will give this function. They ask you to find F. Directly we can find F from the K map. Suppose what is F? How can I find? Very simple. Take a K map. Okay. With AB as the selection inputs, right? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Here you should take 1, 0, 1, 1 only. I want to find what is the function implemented here. Okay. So here when AB is 0, 0, we are giving C as the input, 1, C bar, 0, 1, 2, 3. Okay. So C, 1, C bar and 0. Now you fill this with 1, fill this with 0, fill this with C bar. C bar means C0, 1, C1, 0. Fill this with C. Okay. So you can, this is how you can get the function. What is your function F? It is sum of the minterms. I did a reverse engineering. 1, 2, 4, 1, 2, something wrong. 1, 2, 3, 4, right? C, okay, 1, 0, C bar, perfect. 1, 2, 4, 5 क्यों आ रहा है? Just one moment, I have committed some mistake. 1,
2, 3, 4 is my function. Okay. See, I think is both are selected. One is the input. And top one is selected C bar, bottom nothing is selected one. So both are selected. I will give here I should fill with C. One thing I made a wrong AB 000 001 010 011. Perfect. सही है. Sorry for that. So this is ABC we should read, right? 010. I'm sorry, confused. So 010 is here you see ABC. That is the format you should read. AB is 00, C is 1, 1. ABC 2. ABC 0113, and here also ABC 1004. Or if you want to write the function, it is one pair, and individual term. You can get what is that? C into A bar plus B bar C plus A B bar C bar. Like that you can, because sometimes examiner will give you this and he will ask you to find reverse. So you can do it. Or if he has given this is the most important part they can ask you from the multiplexer. Similarly, DMUX से ज़्यादा पूछने के लायक नहीं, but you should understand DMUX will have reverse chop, one input and 2 power n output lines and n selection lines. But DMUX can be converted into decoder, then it will be more useful. This is about your DMUX. The other one is decoder. Decoder will have n input lines and 2 power n output lines and one enable input. Okay. And DMUX, decoder, internal circuit, same. The last one is encoder. To power n and will have n output lines and enable. There is one thing called priority encoder. Here, more than one input equal to 1, it will consider only high priority. So that is about your combinational circuits from the digital circuits. Okay, now we will move for the next part, sequential circuits. Chalo. So the next chapter of our discussion is sequential circuits. Sequential circuits के अंदर आपको flip flop मिलेगा, resistors, counters, बहुत सारे. I think out of all your chapters in the digital circuit, this is the chapter which requires more time, more effort. So if you see here, the first one is SR latch using NAND. So it is also called as active low latch. So when it is 0001 1011, here 00 is invalid, and when S is 0 it will set, R is 0 it will reset, when both are 1 it will be in the no change condition. Similarly, if you make SR NOR latch, SR QN plus 1 0001 1011, you can get QN 01 invalid.
And this is the disadvantage with the here. If you have one thing we should remember for NOR latch is, if you draw the internal circuit, S will be here, Q will be here. But for NAND latch, Q are directly connected. Okay. So now SR flip-flop, का क्या होता है ना, extra clock input मिलेगा. Whether you made it with NAND or NOR, both the cases, clock is 0, it will be, input can be anything, no change. When clock is 1, SR 0001 1011, you get no change, 0 1 invalid. Okay, here itself I will give you the other truth tables also, then I will discuss all characteristic tables one side. Then JK flip-flop, because of this invalid state, we can overcome this invalid state with the help of JK flip-flop. In JK, we are not drawing the internal circuit, but it will be in the no change condition, 0001 1011. Here 11 is not invalid, 11 we can get QN bar. But here race condition can happen if your propagation, very important question they can ask you, race condition means it will toggle more than once. Then when it happens is the propagation delay is less than the pulse width of the clock. Okay, what is this? Propagation delay is less than pulse width of the clock. Okay, when propagation delay is less than the pulse width of the clock, race condition can occur in the JK flip-flop. We can overcome by master-slave JK flip-flop. The another one we have is a D flip-flop, and D flip-flop with clock, you have only one input, and clock 0, it will be no change. When clock is 1, its output is same as your input. Another flip-flop is a T flip-flop, clock T and Qn plus 1. When clock is 0, no change. Clock 1, you will give 0, you get no change. 1, you get complement. Here, Qn plus 1 is T XOR with Qn. Here, Qn plus 1 is D. Here, Qn plus 1 is JQn bar plus K bar Qn. And here, Qn plus 1 is S plus R bar Qn. Characteristic equation, we call it. Characteristic equation, we will call it. Now, similarly, the next one is characteristic table. Characteristic table of SR. Okay, so here you get no change, 0, 1, invalid. Similarly for JK also, for JK flip-flop, what is the characteristic equation is for 0, 0 to up to here both are same only. For 1, 1 condition only it will change. For 1, 1 here you will get toggle condition, remaining all will be 1, 1 may previous value will become 0 will become 1, 1 will become 0. Otherwise it is the same. Right. For D flip-flop, here all possibilities we will write based on input and present state, what could be the next state. For D flip-flop, output is same as your input. And for T flip-flop, from here only we will derive the characteristic equation in fact. If both are in, if you want complement, you need to, suppose your input is 1, it will be complemented. If input is 0, it will be no change. So this is about your characteristic table of all the flip-flops. The next one is
excitation tables. So excitation table. Okay. So present state, next state, what are the inputs you should give? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. What are the inputs to be given to achieve this condition is given by 0 cross 1, 0, 0, 1 cross 0. You can read from top to bottom, bottom to top, it will be same. For GK, 0 cross 1 cross cross 1 cross 0. For T flip-flop, always remember whatever you want in the next state, that is to be input. For T flip-flop, if you both are same, you should give 0, otherwise you should give 1. So these are the excitation table of all flip-flops I have compared. Conversions also, please remember, for conversion, one simple formula is present, whatever characteristic table of desired followed by excitation table of available. Now, you have resistors, right? In resistors, we have 4 types: SISO, SIPO, PISO, PIPO. Serial input, serial output. Your input requires how many clock pulses? N. Here also N. Here only 1 clock pulse to give the input. But here how many clock pulses are required for taking the output? For serial input, serial output, first N clocks are required to give the input. First bit is already there, remaining N minus 1. For parallel output, already when you apply the input itself, all are applied, you take the output parallel. Parallel input, serial output, and parallel input, parallel output. So this is a storage register, and all of them are shift registers. Okay, so that is about your shift registers. And here in the register, okay, I will come to the next page. If you have a register circuit, okay, Q3, Q2, Q1, Q0, if you connect this as a bag, this is called ring counter. If you have a n bit ring counter, you have n states and 2 power n minus n unused states, because if you have n bits, you can make 2 power n states. But if you are using only n states here, and your output frequency f not equal to Vf clock by n, and relative phase shift is 360 degrees by n. So it can generate the signals of same frequency with some relative phase shift of 360 degrees by n. Similarly, you have a shift register, and here output is connected through inverter. This is called Johnson or twisted tail ring count. In the Johnson counter, you have n bit, you will have 2n states and 2 power n minus 2n unused states. F not equal to f clock by 2n and phi equal to 360 degrees on. Right, that is about your ring counter and the Johnson counter. And coming to counters, okay, if you have mod n counter, how many flip-flops are required? Log to the base 2 n, okay, or log to the base 2 maximum count plus 1. This is the number of counters you require it, okay. And f naught of a modern counter is f clock by n. Counter can be used for pulse width measurement, frequency measurement, those are specific cases. But generic case, if you take a counter, we can convert into asynchronous, that is also called as ripple counter, and synchronous. In asynchronous counter, the case is, see here, we clock positive edge and negative edge. Okay.
output of one flip-flop is given as a clock input is a Q, then down counter, Q bar, in that case up counter. Please remember this is very important. Q, up counter, Q bar, down counter. You can remember like positive and Q or negative and Q bar. Same is down, opposite is up. Means output of one, firstly triggering is positive and output of Q bar is given. Q as given as clock input to the next flip-flop. Then it in the synchronous case, it will be, asynchronous case, it will be down counter. So what is the total delay is equal to n times propagation delay of each flip-flop. Here, synchronous case, what is the propagation delay is only one flip-flop, or sometimes you can say propagation delay of the flip-flop plus T setup plus T input. This is very okay. So that is about synchronous. So when you analyze the synchronous, how do you analyze synchronous design? Is present state input, what could be the next state? If you design it, how do you design the synchronous design is present state, what is the next state, and what are the inputs to be applied. Got it? Okay. So that is about your synchronous design. I'm not going through FSM part and all because that is not a part of your electrical engineering syllabus. So it depends, it changes every year, Pankaj. I cannot comment on that. But the number of opportunities are not reducing. If you identify there are very good number of opportunities will be there. Vacancies, don't think only PSU into consideration. So the last chapter of our discussion is data converters. Last chapter of our discussion, data converters. Let's start. Just give me one moment. Okay, now the next part is data converters. That is the last part of our discussion. So in the data converters, again, you have DAC and ADC. The first important part is specs. Specifications are important in both the cases. Then here you have R2R and weighted resistor. We are discussing only formulas here, not the concept. And here counter, SAR, flash type ADC and dual slope. These are the things we have in this. Okay, so let's see. Just a minute.
So guys, listen here. I'm saying it is a quick revision session, so I'm not going through each and every detail. But one thing I want to say is a very important part of the data converters is specification. So let's have a quick look on the specifications. The specifications here will be, first one is resolution. So resolution is equal to V reference by 2 power n minus 1. Sometimes you can also take 2 power n. It depends on the design originally. Some textbooks will follow 2 power n, some textbooks will follow 2 power n minus 1. According to the examiner, you can follow that. Resolution, step size, output when LSB is 1, that is also same. What is the resolution is equal to here? V range by 2 power n minus 1. This is for ADC specifically. Okay. Now, see here. You can approximate this to 2 power n. I am saying that. Okay. The next one is percentage resolution. Percentage resolution is 1 upon 2 power n minus 1 into 100%. That is resolution by V reference into 100%. Next one is full scale output. Full scale output for DAC, I can say analog output also. Analog output is equal to resolution into decimal equivalent of input. So output for maximum input. This is what we call full scale output. So FSO is also equal to reference voltage. The next one is settling time. Settling time is the time required to settle within plus or minus half LSB. Every ADC or every DAC must satisfy the monotonicity and the linearity. But for ADC, one more important rule is signal to noise ratio. Signal to noise ratio, very important exam point of 6.02 into n plus 1.76 in decibels. They have last 2025 they asked the question. 26 instrumentation also there is a question appeared based on this signal to noise ratio. So if you see here, if you take weighted resistor, you need to have resistors R, 2R and so on 2 power n minus 1 R. This is for MSB and this is for LSB. Okay, in R2R we will use only two types, in that you have voltage switched and current switched. Now come to ADC part. In ADC, what are the different ADCs we have? Counter type, flash type, or the next one is successive approximation resistor and dual slope. So dual slope is the most accurate and slowest. SAR is having uniform conversion time. That is the conversion time independent of magnitude of the input. Flash is the fastest. And counter type is the other case. So what is the conversion time here is 2 power n minus 1. It is in clock pulses I am speaking. Or you can also say 2 power n. Flash type no clock pulse, or if you save the data in the register 1 clock pulse. Here n, or if you consider SOC and the end of the conversion n plus 2. It will be 2 power n plus 1 or 2 power. So here one more thing, they ask most important question of this is number of comparators. How many comparators are in the flash type ADC? 2 power n minus 1. Okay, this is a dual slope is having most accurate, and it will be having power supply, noise rejection if integration time is integer multiple of the time period of the input, time period of input.
n must be integer. And in dual slope integrator, there is one formula V in into Ti equal to V reference into T. This is very important. There can be questions based on this. Got it? So here they can give you op-amp based question. You can do V by 2, V by 4, V by 6. Like that we can do. There is nothing to remember in this. But this formula is very important. Dual slope integrator. And flash type, this is important. 2 power n minus 1. And here analog output equal to ceiling function of digital input by step size. What is this called? Ceiling function. Ceiling means round off. 2.1 is there. Ceiling function is 3. Ceiling function. Okay. So that's it, electrical point of view, because if it is easy, I will discuss logic families, CO, everything. For electrical, this is the part you need to study from the digital circuits. So we'll continue. Ankur sir will be coming next and he will be continuing with the next subject. Thank you guys. So hello everyone. Yes guys, so good evening to all of you. Just confirm audio and video so that we can start the session. Sorry. I think audio video is clear. So guys, welcome to you all in this series. Start the session. Yes, I think audio video crystal clear. Yes guys. So let's start. Let's start our today's session. And as you can see of the thumbnail, this is a formula series for all the subjects. So here, for electronics and communication student, we will have tomorrow the formula series, and this session is dedicated for EE student. So let's have a discussion on control system and followed by signal sense system. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम के ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एज वेल एज उसके जस्ट बाद हम सिग्नल सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. As you all know, control system is related to each and every aspect of our daily life. So if I talk about in a control system, we can control the actual output according to our requirement, because if the output is not controllable, then we will not get the desired output from the system. तो अगर आप किसी भी सिस्टम से desired output चाहते हैं, then output should be controllable. Without control, we cannot get the desired output. These all are the applications of control system. And if I talk about the basic configuration, control system, तो बच्चों अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या क्या हम रिवाइज करने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूला. सो एज यू ऑल नो, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, देन आफ्टर टाइम डोमेन एनालिसिस, राउथ-हर्विच मेथड, रूट लोकस, ओके, पोलर प्लॉट, नाइक्यूज प्लॉट, बॉडी प्लॉट, कंपनसेटर कंट्रोलर एंड द स्टेट वेरिएबल. तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है आज के सेशन का. सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम के विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट द सिग्नल सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, so open loop, closed loop, the major difference here, we don't have feedback, here we have the feedback. So in the open loop, controller action is totally independent to actual output. It means actual output पे जो कुछ हो रहा है वो आपके
जो है कंट्रोलर को पता नहीं चलेगा, जबकि क्लोज लूप में फीडबैक लगा होगा. इट मींस व्हाटएवर इज हैपनिंग एट द एक्चुअल आउटपुट, योर कंट्रोलर एक्शन इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल आउटपुट. तो यहाँ से ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, हियर फ्रॉम हियर यू कैन सी द स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे. यहाँ से आपको कुछ स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पे नेगेटिव फीडबैक एडवांटेज इज व्हाट गाइस. सो यू कैन सी दैट नेगेटिव फीडबैक ऑफ कोर्स डिक्रीजेस द गेन, पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस द गेन. अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करेंगे. नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम. नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिस्टम. स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम आपका डिक्रीज होने वाला है. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द नॉइज एज वेल. अब बताओ, राइज टाइम डिक्रीज हुआ है तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली सेंसिटिविटी आल्सो डिक्रीजेस बाय द नेगेटिव फीडबैक. और इसी का उल्टा हो जाने वाला है यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, guys. Okay, so just confirm. Okay. So student, whatever is here, you just need to do a reverse here. So bandwidth is increasing, it means bandwidth decreasing here. Stability increasing, stability decreasing here. Speed increasing, speed decreasing here. Okay. Sensitivity decrease, so this is increasing here. Rise time decrease, so it is increasing here. And noise part, positive feedback increase. Okay, guys. So now, if I talk about the open loop transfer function denoted by OLTF, जिसको हम बोलेंगे, which is nothing but G of S. Or even in the sum time, the loop transfer function we can also write as OLTF can be G of S H of S. But in this loop transfer function, this HS is not connecting to the feedback. मान लीजिए यहाँ कोई HS है पर वो कनेक्ट नहीं है, तो loop transfer function we can also write as a GSHS, and the open loop transfer function G of S. Now student, here this is nothing but the standard closed loop transfer function. For the negative feedback, of course we know that it is nothing but GS upon 1 plus G of S H of S. This is the closed loop transfer function for a negative feedback system. And if we talk about the positive feedback system, then it will be GS upon 1 minus GSHS. This is the closed loop transfer function for positive feedback system. This is for the positive feedback system. I hope this is clear to everyone. Yes? One minus GSHS. Okay, guys. So I think perfectly clear. Okay. Now next student, transfer function for the electrical network. How to calculate the transfer function in the form of इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. सो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आ जाए और एग्जामिनर आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, फर्स्ट यू नीड टू राइट द formulate the equation, means you can write the KVL equation or sometime voltage division rule. Okay, take the Laplace transform of the system. It means जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, अगर उसमें इंडक्टर और कैपेसिटेंस है, then इंडक्टर्स we need to write it as a LS, और इंडक्टर को लिखना पड़ेगा हमको 1/CS. Then specify the output and input, and finally take the ratio of. What about the transfer function concept? It is nothing but the Laplace transform of output upon Laplace transform of input. Okay, so we have seen that sometime directly transfer function based questions also has been asked in the GATE exam. So in the transfer function, you just need to take Laplace of output upon Laplace of input. अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे कि आपको examiner can give you the OLTF, GOF, open loop transfer function GOF of S for the unity feedback system, and examiner can ask that find the response of a system with respect to step input. तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ओवरऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना, दैट इज G अपॉन 1 प्लस G, और वहां से फिर आपको इनपुट, अगर स्टेप इनपुट दिया है तो R of S को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एंड फाइनली यू विल गेट द Y of S. देन वी नीड टू डू पार्शियल फ्रैक्शन एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म to get the YT value. Similarly guys, if any system is represented by the differential equation, then we need to take Laplace transform both sides, specify the output and input, and take the ratio of output and take the ratio of Laplace of output and Laplace of input to get the transfer function. So it means अगर ट्रांसफर फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वी हैव ए 3 स्कोप ऑफ क्वेश्चंस. वन इज सिग्नल रेस्पॉन्स, जहां पे आपको YS अपॉन R of S इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, Y of S पूछ ले, या फिर आपको एग्जामिनर Y of S और Y of T और R of T दे दे और आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछ ले, तो उस समय तो केवल आपको रेशियो लेना है लाप्लास का.
है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसा आ जाए जहां डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन as far as transfer function is concerned: signal response, electrical network, as well as differential equation. Okay guys, now coming to this block diagram reduction technique. So student, just have a quick revision. So whenever two and more blocks are in cascade, whenever two or more blocks are in cascade, then how to simplify? We have to take the product of this. Suppose that यहाँ G1 G2 G3 होता तो यहाँ G1 G2 G3 आ जाता. Now student, whenever two and more blocks are in parallel, then we have to add or subtract according to the sign, because we are having both sign plus plus, so that is why G1 plus G2. So rule number 1, rule number 2, these all are the BDRT, block diagram reduction technique. Acha, whenever any takeoff point moving after a block, then we need to divide whatever is mentioned in the box, we need to divide with that particular gain. So student, यहाँ पे आप देखोगे, so this is your takeoff point. So whenever we shift this takeoff point after a block, whenever we are shifting a takeoff point after a block, जब भी हम takeoff point को after a block लेके जाएंगे, तो हमको divide करना है. किसका divide करना है? We need to divide whatever is available in the box. So here is G, so we can write as a 1 by G. Similarly guys, moving a takeoff point before a block. So whenever is shifting or moving a takeoff point before a block, it means this time we need to multiply whatever is inside the box, we need to multiply like this G. Rule number 3 and 4 also clear. So the next rule is, whenever we will shift the shifting or moving a summing point after a block. Shifting and moving a summing point after a block. So whenever you will shift a summing point after a block, then you need to multiply whatever is inside this box. So यहाँ पे G है, then we have to multiply with G. Now student, we can write here कि shifting or moving a summing point before the block. So whenever summing point moving before a block, then we have to divide whatever is inside the box. Here is the G, so we need to divide like G. Now the next rule is eliminating a feedback loop. It means if we have the positive feedback, then of course G upon 1 minus GH. If we have a negative feedback, then we have G upon 1 plus GH. This is very clear, sir, very easy. Now guys, you can also reply parallelly if you are listening to me, if you are attending the class. So here student, you can see if unity feedback, then of course G upon 1 plus G or G upon 1 minus G, depending on the positive or negative feedback. Okay, whenever two takeoff points are neighbor, अगर दो टेको पॉइंट आपस में नेबर है, then we can interchange their position. And whenever two summing points are also neighbor, then we can also interchange their position irrespective to the input. What we never want, we don't want to shift a takeoff point after a summing point, because it will make our circuit more complex rather than simplification. It means if I will shift this takeoff point after a block, then I need to add one more summing point here, because if here I am using summing point, here I am considering plus sign, then here I need to take minus sign. So अगर आप एक shift, when you will shift the takeoff point after a summing point, then you need to add summing point or differencing point, and that will make your circuit more complex. So that we never want. Now coming to the very important part, which is SFG, signal flow graph, है ना. फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 अगर हम बोले कि जहां से क्वेश्चन आने का चांस है, तो वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ. एनीवे अगर क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम से भी आता है ना, तो हम उसको किससे सॉल्व करेंगे? वी विल ऑलवेज यूज द ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चंस आल्सो बाय यूजिंग द एसएफजी ओनली, बिकॉज दैट अलाउ अस टू सेव द टाइम. यस और नो? सो बच्चों, अगर मैं बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला, विल टॉक अबाउट द बेसिक फॉर्मूला of the SFG. So SFG formula is nothing but very easy formula. So SFG formula will give you the transfer function Ys upon Rs. We can write the formula like this: P1 del 1, P2 del 2, and so on upon del. Here the numerator term is depending on the number of P1, P2. P stands for forward path. What do you mean by forward path? The number of interconnected branches from input node to output node. इन आसान लैंग्वेज, इनपुट नोड से आउटपुट नोड पे जाने के वेज, द नंबर ऑफ वेज टू रीच एट आउटपुट नोड फ्रॉम द इनपुट नोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ. बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, while traveling to the input node, we cannot repeat any node. एक भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर नोड रिपीट होगा, then it will be a invalid forward path. Okay, so आपको ये देखना पड़ेगा how many valid forward path that is representing by P1, P2, और जितने P1, P2 पॉसिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर टर्म लिखा जाएगा. मान लीजिए किसी ट्रांसफर फंक्शन में किसी एसएफजी में दो ही फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है,
then our formula will limit to P1 del 1 plus P2 del 2 upon del. Here del is very important. Del is nothing but 1 minus ka sum of all the individual loop gain. The sign will be alternate, 1 minus, then again plus sum of gain products of two non-touching loop gain. So here 1 minus plus, then again up is minus, sum of gain products of three non-touching loop gain and so on. And what is important, del 1, del 2? Del 1 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. तो अगर आपको P1 नहीं पता तो आप del 1 नहीं फाइंड कर सकते. मतलब del 1 और del 2 तभी निकाले जाएंगे जब यू ऑलरेडी हैव P1 एंड P2. तो del 1 कैसे निकालेंगे? del 1 del से ही निकाला जाएगा. मतलब जो del लिखोगे उसमें से ही आप del 1 को निकालोगे. कैसे निकालोगे? आप del में चेक करोगे कि कौन कौन से लूप गेन फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं. जो भी लूप गेन फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, we should remove all. So whatever left in the del, that will become del 1. So again I am repeating in the English, del 1 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the first forward path, del 1. Del 2 is what? Del 2 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the second forward path. So this is how we can calculate the P1 del 1, del 1 del 2, and we can arrange like in the form of numerator and denominator to find the ultimate transfer function. मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम का भी आ जाए ना तो हमको डायरेक्ट एसएफजी को विजुलाइज करना आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू विजुलाइज द एसएफजी डायग्राम. सो व्हाइल मेकिंग द एसएफजी फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम, each and every summing point and differencing point will be represent as a node. It means आपको जो भी समिंग पॉइंट डिफरेंसिंग पॉइंट दिख रहे हैं, टेको पॉइंट दिख रहे हैं, आप सभी को एज ए नोड मान लीजिए और फिर आप चेक करिए कि हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल, हाउ मेनी लूप गेन्स आर पॉसिबल. सो बाय डूइंग दिस यू कैन सेव योर टाइम इन द गेट एग्जाम. नाउ so student, next if I talk about the sensitivity analysis, says that S alpha beta is nothing but beta upon alpha and del alpha upon del beta. So here this is the sensitivity formula where beta is a parameter that can change the value of a alpha and alpha is a parameter that will change its value. So student, if I talk about this is the basic formula of sensitivity. Now if I talk about the sensitivity of OLTF, open loop transfer function. So beta upon alpha del alpha. What is the sensitivity of the open loop transfer function for the OLTF? If you will check the sensitivity, you will get 1. 1 means in the form of percentage, we can say that 100%. And that is the drawback of the open loop system, that open loop system is highly sensitive toward the noise and disturbance. So student, if due to the noise or disturbance, if there is any variation in the G of S, it will affect the overall transfer function in the open loop transfer function. So that is why open loop transfer function is more sensitive, or it is highly sensitive. It is 100% sensitive towards noise and disturbance. So that is why we are always preferring closed loop system, because we have an advantage. The closed loop system, the sensitivity decreases. And if I will tell you by what factor the sensitivity going to decrease, then you can write this and you can remember this. So this S of T of S and G of S in the closed loop transfer function, in the closed loop system की बात हम कर रहे हैं. So TS upon GS is nothing but actual formula is look like this: the G of S upon T of S and del T of S upon del G of S. And when we will apply this formula for the standard closed loop transfer function, we will get this result: S T of S, the G of S is nothing but 1 upon 1 plus G of S and H of S. So this is the final formula that you should remember, that is 1 upon 1 plus GSHS. Okay, so what we can say that in the closed loop system, the sensitivity of a closed loop system is decreased by how much factor? Then is decreased by the factor of 1 plus GSHS. तो हम बोल सकते हैं कि क्लोज लूप का सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम. द सेंसिटिविटी ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज डिक्रीजेज, एंड दैट इज व्हाई द क्लोज लूप सिस्टम वी हैव दिस एडवांटेज दैट इट डिक्रीजेज द सेंसिटिविटी. ओके, बाय विच फैक्टर? 1 प्लस GSHS. और अगर अब यहीं पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर ऑफ H of S, देन HT of S with respect to H of S, the formula will become minus 1 upon 1 plus G of S H of S. Minus 1 dot, even we can write G of S H of S like this. So minus G of S H of S upon 1 plus GSHS. So this is the final expression
और दैट और एच ऑफ एस। तो बताइए बच्चों किस पैरामीटर से होगा? अब आपके सामने दोनों इक्वेशन से तो आप बोल सकते हो कि सर एज कंपेयर टू जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस द क्लोज लूप सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द वेरिएशन इन एच एस एज कंपेयर टू वेरिएशन इन जी ऑफ एस. Yes or no? Because here you can say that the sensitivity increased by the factor of GSH. It means the manufacturer should be more rigid about the specification of HS as compared to specification of G. I hope this is crystal clear to everyone. Yes, guys, do reply. Shall we go for next? Okay. So now let's discuss the chapter number 2, that is time domain analysis. So अगर मैं बात करता हूँ सेंसिटिविटी का, तो एग्जामिनर कैन फ्रेम ए सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द सेंसिटिविटी वेयर द पैरामीटर फैक्टर कैन बी के, कैन बी टी, ओके, वॉट एवर द पैरामीटर. But you should be ready because sometime engineering services, even in the gate also, one time gate question has been asked from sensitivity concept. So you need to remember the formula of sensitivity. Now, in the chapter number 2, time domain analysis, we have divided two parts, transient and steady state. So if I talk about transient and steady state, let's make this diagram. So student, transient and steady state, this is the transient response and steady state response. So if I will provide the unit step input, then we'll get the response like this, and this response is known as second order system underdamped response. So student, this is nothing but the transient response. This is nothing but your transient response. Transient response. And after transient, steady state response will come into picture. Steady state response. So student, for any time domain response, time response is divided into two parts. CT can be, we can write as a CT transient, and we can also write as a CT steady state. So which part of the response is working as a transient? So we can say that in the time domain analysis, in the actual output, the response of the part of the response which will become eventually zero as time t tends to infinity, that particular part of the response is known as transient response. आप खुद सोचो, t टेंस टू इंफिनिटी पे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स अवेलेबल होगा क्या? नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स विल नॉट अवेलेबल एट द स्टेडी स्टेट. t टेंस टू इंफिनिटी पे तो क्यों स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होगा, तो ट्रांजिएंट पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो. तो हम बोलेंगे, अगर आपको ये पहचानना हो इक्वेशन में कि भाई ये आउटपुट का इक्वेशन है, इस आउटपुट की इक्वेशन में से कौन सा वाला पार्ट, विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांजिएंट, which part is representing steady state, then we can say that the part of the response which will eventually become zero as soon as t tends to infinity, that particular part of the response is known as transient part. And after putting t tends to infinity, the part of the response which will remain exist will known as steady state response. Okay, how to comment on the type and order? So student, the number of open loop poles that lie at origin, you can write the important part here. So if the open loop transfer function or loop transfer function is represented by g of s, h of s, then we can write here in the form of time constant if you wish to write. So we can write s to the power p upon 1 plus t1s, t2s, like this, whatever it is. So here p, if p equal to 0, the system will have type 0. P equal to 1, the system will become type 1, like that. So we can say that the number of open loop poles lie at origin decide the type of a system. Subject to impulse input, step input and parabolic input, we should directly remember the result as well. So student, impulse response for the first order system, if I talk about the standard first order system, then for the standard first order system, your transfer function Cs upon Rs is nothing but 1 upon 1 plus Ts, okay, for the first order system. So the impulse response CT, impulse response for this is nothing but 1 upon t, e to the power minus t upon capital T, and where capital T is time constant, where capital T is nothing but time constant. And time constant definition, of course, in the step response, we can say that the time required for the response to reach 63.2% of the final value is known as time constant, and the formula will become 1 minus e to the power minus t upon t. Okay, you can also multiply with ut because in the control system we are always talking about t is greater than 0 reason, और अगर t greater than 0 पे अगर ut मतलब 1 है तो something into 1 is always something, तो किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही तो रहेगा.
तो इसलिए हम UT से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. रैंप सिग्नल इक्वेशन, इम्पल्स यूनिट रैंप रेस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विल बी लाइक दिस, T माइनस का कैपिटल T, and it is 1 minus e to the power minus t upon capital T and whole bracket u of t. So student, as far as the response result is concerned, you need to remember this. एक बार डायरेक्टली गेट क्वेश्चन डायरेक्ट भी यहाँ से पूछा गया. गेट क्वेश्चन, दिस इज इटसेल्फ गेट क्वेश्चन, जहां आपको PQRS को 1 2 3 से मैच करना था. तो टेबल बना के एग्जामिनर मैचिंग वाले क्वेश्चन डायरेक्टली रिजल्ट से पूछ सकता है. ओके, सो रिजल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके बेटा, ओके चलो, चलिए रिप्लाई भी करते रहिए और है ना. चलिए तो बात करते हैं बच्चों डोमिनेंट पोल, इनसिग्निफिकेंट पोल. यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं. तो जब भी एग्जामिनर, या तो एग्जामिनर ये टर्म यूज करे कि अप्रोक्सीमेटली बताओ, या फिर यूज करे कि डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से बताओ, तो हमेशा याद रखेंगे इन द अप्रोक्सीमेशन, whenever suppose that we have a two poles like this, one pole is at -1, one pole is at -10, then this pole can be behave as a insignificant pole and this pole can be behave as a dominant pole. Which pole we can neglect? So in the S plane sigma j omega, we can neglect the insignificant pole because insignificant pole is the best pole. It provide very quick response to the system as well as provide more relative stability to a system. Still we are neglecting because the major contribution of time constant is provided by the dominant pole. अच्छा, यहाँ से भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट माइनस का 1 अपॉन, जब भी ऐसा पूछ ले अप्रोक्सीमेट टाइम कांस्टेंट, तो आप बोलोगे विच इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ डोमिनेंट पोल. Okay, so by using the dominant pole concept, examiner can ask two type of question. One is approximate time constant that you can find by using -1 upon real part of the dominant pole, and the second is approximate transfer function. To find the approximate transfer function, always remember we can neglect the insignificant pole but always in the time constant form. So let me take an example. Suppose that the transfer function is given like this, 1 upon s plus 1 10 s plus 10. So now you can clearly see that -10 wala pole jo hai, that is insignificant. So of course we can neglect this, but we cannot directly neglect this because first we need to convert into time constant form. And what is the time constant form? 1 plus ts. So we need to take 10 outside the bracket in denominator and we need to shift in numerator. So it should be 0.1 upon s plus 1, and here we will left with 1 plus s upon 10. And now we can neglect this. So now we can neglect this. It means the approximate transfer function can be 0.1 upon s plus 1. I hope this is crystal clear to all of you guys. And when we can say that it is working as an insignificant, so for that also we have one condition. Insignificant pole upon dominant pole ratio should be greater than equal to 5. So if here you will check, the insignificant pole is -10 and the dominant pole is at -1, so the ratio is 10, which is of course greater than equal to 5, satisfy the condition. Hence, we can apply here the dominant pole concept in the approximate analysis. Is this crystal clear, guys? I think audio, video, everything is clear. So let's start now the next part. चलिए बताइएगा. So next for the second order system, this is the standard second order system, which is nothing but type 1 order 2. So type 1 and order 2 है type 1 क्यों? Because we have a one pole at origin. Okay, so for the standard second order system, if examiner will ask about the pole equation, then we should remember S1 S2 is nothing but minus zeta omega n plus minus ka j omega n root of 1 minus zeta square. Root of 1 minus zeta square. So this is nothing but the closed loop pole equation, and in this closed loop pole equation, when we will take the different values of zeta, we will get the different values of pole. So आप देखिए कि इस equation में when zeta equal to 0, then poles will be available here, that is complex, that is conjugate pole plus minus j omega n. Because zeta 0 होने से ये 0 हो जाएगा plus minus. When zeta is greater than 0 less than 1, then pole can be here complex conjugate, which is having the real part also, imaginary part also, and that imaginary part is known as omega d. So here the omega d formula is, this entire part is representing omega d. So omega d is nothing but omega n under root of 1 minus zeta square. And student, if my zeta value is 1, then both the poles will be repeated negative and real, and in this case we have the zeta equal to 1 and critically damped system.
And student, when zeta is greater than 1, then we will have the real poles but negative poles, and it will make the damping ratio zeta greater than 1. Okay guys, so here you can see that effect of zeta. So as I told you, zeta equal to 0, the poles will be pure imaginary. The poles will be pure imaginary, and the response is known as undamped response. Similarly guys, if I talk about zeta greater than 0, less than 1, then of course we have complex conjugate pole. We'll have complex conjugate pole. It means you can say that minus A plus minus JB form will come, and which is nothing but underdamped response, and that is the most practical case, because to get the best result practically, zeta value should be between 0.4 to 0.7. It means it is occurring in the underdamped case when zeta greater than 0, less than 1. Is it clear? Very important case, और यहीं से गेट क्वेश्चन बनते हैं. zeta equal to 1, of course the poles are negative plus real. नेगेटिव भी होगा, है ना, नेगेटिव एंड रियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड, तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड. एंड हियर वी आर हैविंग ओवर डैम्प्ड, पोल्स आर नेगेटिव रियल but not repeated poles. Okay guys, so now you can see here in the control system, because we are always talking about causal system, so that is why we can say that in the control system the RHS part is always the unstable region. It means what we can say that in a control system, to make the system stable, all the poles must exist in the left hand side of the S plane. No pole should jump in the RHS region. Similarly guys, अगर हम बात करें entire LHS region is a stable region, so this is underdamped region, this is overdamped and critical damped. अगर दोनों repeated है तो critical damped है, और ऐसा है तो overdamped है, and this is of course your undamped region. अच्छा, we have some important formulas that also we should remember. So formula, we can say that formula, important formula between theta and cos theta. So student, cos theta is nothing but zeta. Okay, sin theta is nothing but root of 1 minus zeta square. So of course theta and zeta will be reciprocal, and we can say that theta equal to cos inverse zeta. So as soon as your theta value increases, your damping ratio zeta going to be decreased. So here you can see, कि sir, if your this is nothing but the angle of theta. तो अगर आप इस पोल को इस साइड लेके जा रहे हो, then of course your theta value increasing, hence your zeta decreasing, less damping. और अगर यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, if pole is shifting like this, then of course theta value decreases, hence the damping ratio zeta value increases, means more damping. Similarly guys, for the second order system, if we talk about the time constant formula, which is nothing but time constant formula 1 upon zeta omega n, real part of the poles minus minus get cancelled. That is why we should write 1 upon zeta omega n. This is the formula of the time constant. In this time constant formula, so this is the real part minus zeta omega. तो अगर आप इस पोल को पकड़ के केवल इस साइड में लेके जाओगे, then it will increase the zeta omega n value, which will decrease your time constant. और अगर टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होगा, सिस्टम का स्पीड बढ़ेगा, तो सिस्टम स्पीड गोइंग टू बी इंक्रीजेस एंड फास्टर रेस्पॉन्स. अगर ऐसे ही पोल को इधर लेके जाएंगे, देन टाइम कांस्टेंट गोइंग टू बी इंक्रीजेस बिकॉज जीटा ओमेगा एन डिक्रीजेस, हेंस योर स्पीड गोइंग टू बी डिक्रीजेस. स्पीड डिक्रीज होगा मतलब सिस्टम स्लो और स्लगिश बन जाएगा. तो जो इसका रियल पार्ट होता है वो होता है माइनस जीटा ओमेगा एन, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो जे ओमेगा डी होता है. तो अगर हम इस पोल को केवल ऊपर की तरफ बढ़ाएं, तो इट मींस ओमेगा डी गोइंग टू बी इंक्रीजेस, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन इंक्रीजेस, एंड हियर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेशन डिक्रीजेस. दिस क्लियर? चलिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो वी हैव टू रिमेंबर फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, दैट इज नथिंग बट अंडरडैम्प्ड रेस्पॉन्स ऑफ द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स. So a unit step response in the case of underdamped second order system, you have to remember the standard form e to the power minus zeta omega nt upon root of 1 minus zeta square dot sine of omega dt plus theta. And here theta is nothing but cos inverse zeta, or omega d is nothing but omega n root of 1 minus zeta square. Okay, you can also multiply this. Sometimes this is a standard form, but examiner can trap you, or examiner can make you confuse here by putting the value of k. So always remember, in the second order system, the unit step response in the case of underdamped, the final value is depending on only two parameter, which is k and a, and where k is nothing but the DC gain of closed loop transfer function,
DC gain of closed loop transfer function, and where A is the amplitude of step signal. Amplitude of step signal. Okay, प्यारे बच्चों, I think this is crystal clear to everyone. Those who are sincerely listening ना, अगर कोई बड़े ध्यान से शिद्दत से केवल सुन रहा है ना, तो उसको बड़ा मजा आ जाने वाला है, क्योंकि लगभग 1 घंटे में और 1.25 घंटे में हम पूरे कंट्रोल सिस्टम को रिवाइज करने वाले हैं. फॉर्मूला, एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न, ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम फटाफट से यहाँ पे क्विकली फास्ट ट्रैक फॉर्म में रिवाइज करने वाले. तो स्टूडेंट, यू कैन सी हियर व्हेन जीटा 0 मतलब ये अनडैम्प्ड, ये वाला केस अनडैम्प्ड है. जीटा 0.1 से लेके, लेट मी टेक रेड पेन हियर, जीटा 0.1 से लेके 0.9 तक आपको अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स मिलेगा. एग्जैक्टली जीटा 1 पे दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल डैम्प्ड, एंड व्हेन जीटा ग्रेटर देन 2 दिस इज ओडी. So this is all about the response question, response type of questions. Okay. Now, student, from here also examiner can frame a question. So let me make a different diagram for you here, and where we will discuss this entire things. So second order system, or suppose that this is your final value, steady state values like this, then the diagram is look like this. This is the standard second order system unit step response like this. So the time required for the response to settle 98% of the final value is known as settling time. अच्छा, कभी कभी 95% कर देगा तो आप 3 into time constant बोलोगे. Is this clear? Now the time required for the response to reach at the, let me take this, the time required for the response to reach maximum value in the first attempt is known as TP. The time required for the response to reach the maximum value in the second attempt is TP2. The time required for the response to reach the final value in the first attempt is known as rise time. So we can write here this is rise time. This is TP1. Formula is nothing but pi upon omega d. अच्छा, TP2 पे क्वेश्चंस अभी तक नहीं बना, लेकिन बन सकता है फ्यूचर में. बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ TP2 बोलेंगे तो 2 पाई कर देंगे, जबकि फॉर्मूला आएगा 3 पाई बाई ओमेगा. So all these formulas you need to remember. Similarly, the time required for the response to reach at the first undershoot, this formula will become 2 pi by omega d. And this is nothing but actually TU1. The time required for the response to achieve the second undershoot, it means it is nothing but again 4 pi by omega d. So like that we will have the different formulas that you need to remember. The time required for the response to achieve the 50% of the final value is known as delay time. Known as delay time. Always remember the formulas of rise time. If I talk about rise time formula, it is nothing but pi minus theta upon omega d. तो अगर मैं यही लिख दूं फटाफट से आपके लिए, तो pi minus theta upon omega d. Now the difference, this difference, the positive deviation, the maximum positive deviation with respect to the final value is nothing but MP. And MP formula is very much important. MP formula is e to the power minus zeta pi upon root of 1 minus zeta square. यहाँ से 100% चांसेस है कि अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट से क्वेश्चन बनना चाहिए. So there is a high probability that examiner you will get the question in W और EC. किसी भी ब्रांच में आपको शायद ओवरशूट से क्वेश्चन पक्का मिलने के चांसेस रहेंगे. तो these are the high scoreable topic, और जहां से क्वेश्चंस बन सकता है, मल्टीपल टाइम बना है PYQs में, आप देख सकते हो. तो MP, so some important fact about the maximum peak overshoot, if zeta value increases then maximum peak overshoot going to be decreases. चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों. So all these formulas we already discussed. Now overshoot, undershoot also we discussed. Time constant for the second order system is 1 upon zeta omega n. So settling time for the 2% criteria or 98% of the final value, it will be 4 by zeta omega n. And for the 95% of the final value, the settling time formula will be 3t or 3 upon zeta omega n. Is this crystal clear? Now student, if we talk about the initial value theorem and final value theorem. So initial value theorem says that in the time domain, if limit t tends to 0, then in the frequency domain we are having limit s tends to infinity sfs. Similarly, the final value theorem is only applicable for the stable systems, and to make the system stable, the poles of s of s should exist only in the left hand side of the s plane. मतलब we cannot apply the final value theorem if the poles of this term s of s exist in the right hand side or even on the imaginary axis. तो अगर फाइनल वैल्यू अप्लाई करना है तो SFS का पोल जो है वो RHS में भी नहीं हो सकता और इमेजिनरी एक्सेस पे भी नहीं हो सकता. To apply the final value theorem,
the poles of the term SFS should exist in left hand side of the S plane, and then limit S tends to 0 SFS. This is final value theorem or steady state value. So now student, if I talk about the steady state error formula, so steady state error formula in the case of unity feedback system, we can always remember limit S tends to 0 SRS upon 1 plus G of S, and where H of S is equal to 1, then only this formula provide you the steady state error. अगर इस फॉर्मूले में एच ऑफ एस नॉन यूनिटी फीडबैक है, देन दिस फॉर्मूला विल प्रोवाइड यू एक्चुएटिंग एरर एट स्टेडी स्टेट. दिस इज क्लियर? तो ये सारा फॉर्मूला ऑलवेज remember this table is very much important as far as gate is concerned. So type 0, type 1, it means kp has only significance with respect to step input. तो अगर step input के रेस्पेक्ट में एरर निकालना है तो हम हमेशा 1/1 plus kp का यूज करेंगे. अगर इनपुट रैंप दिया है तो ESS इक्वल टू 1/kV, और अगर इनपुट पैराबोलिक दिया है तो ESS इक्वल टू 1/k. Now it depends on type 0, type 1, type 2. तो टेबल डायरेक्टली याद रखेंगे. For type 0 step input 1/1 plus kp, type 0 ramp infinity, parabolic infinity. Type 1 step input 0, type 1 ramp input 1/kV, parabolic infinity. Type 2 step input 0, ramp input 0, as well as parabolic 1/k. And where kp is limit s tends to 0 GS HS, but very important condition here, note the steady state error unity feedback system. It means यहाँ पे हर एक में HS क्या है? 1 है. यहाँ भी HS यूनिटी फीडबैक. अगर ये HS नॉन यूनिटी बन जाएगा तो ये सारा फॉर्मूला जो है, ये कंप्लीट टेबल जो है, दैट विल रिप्रेजेंट एक्चुएटिंग एरर. क्लियर? तो अब सर अगर नॉन यूनिटी फीडबैक पे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे? तो जरा बताइए. अगर हमने आपको और भी फॉर्मूलाज बताए थे मैंने, है ना, तो अगर हम बात करें ESS इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, एक और फॉर्मूला जब डायरेक्ट CLTF आ जाए तो लिमिट S टेंड्स टू 0 SRS upon 1 minus का closed loop transfer function. So this is the formula, and I told you both the approaches, like nice approach as well as Kuo approach. So this is the nice approach, and this is the normal nice approach, and this is the Kuo approach. So ESS equal to limit. So both the formulas we need to remember. Limit S tends to 0 SRS, and here it is 1 upon KH minus का CLTF. In the classroom, we'll have the detailed discussion on this. Hai na? So, what is KH here? The DC gain of H of S, where KH is nothing but the DC gain of H of S. तो हमने क्लासरूम के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया है इन सभी फॉर्मुलाज पे, बिकॉज ये फॉर्मुला रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक फॉर्म में चलेंगे ताकि हम एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है हमारा आज की क्लास का वो पर्पस सोल्व हो जाए. तो हम फटाफट से बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का. So by using the impulse response approach, we can comment on the stability of a system. Okay guys, so how you can comment कि अगर कोई system, if the impulse response of the system is decreasing with respect to time, then the system is always stable. So in this case, the system is stable. Whenever the impulse response of the system is having a constant value or even having a constant oscillations as time t tends to infinity, then that will make the system marginally stable. And if the impulse response of a system is growing as soon as t tends to infinity, then that will make the system unstable. Then it will make the system what guys? Unstable. Okay guys, so this is all already we discussed. Now Raut-Hurwitz method is given by A. Hurwitz, E. J. Raut. The main application of RH method is it is used to identify the location of roots. Okay, indirectly it provides the stability because by observing the location of poles, ये तो roots की information देता है, मतलब ये तो जीरो की information भी देगा, पोल का information भी देगा. लेकिन अगर roots poles हैं तो by observing the location of poles we can comment on the stability of a system, क्योंकि we know that in the S-plane criteria, if any single pole lie in RHS will make the system unstable. एक भी सिंगल पोल अगर RHS में जाएगा ना तो सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा. Is this clear? Now student, so stability, it is also used to find gain K value or range of K for the closed loop stability, frequency of oscillations and the relative stability. So all these are some application, these all are the applications of the closed loop systems. These all are the applications of the Raut-Hurwitz method. Okay guys, not close. So in the Raut-Hurwitz method, we are having the 3 cases. No element in the first column is 0.
Okay, 0 in the first column, but the other row elements are not equal to 0. Similarly, 0 in the first column, other row elements are also 0. तो हमारे पास तीन केस है. पहला केस तो ये कि आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर एक भी जीरो ना आए. सेकंड में फर्स्ट कॉलम में जीरो आ जाए बट अदर रो एलिमेंट्स नॉन जीरो. और थर्ड मतलब रो ऑफ जीरोज आ जाए. ठीक है बच्चों. तो देखो पहला वाला केस जो है, थोड़ा सा बात करें राउथ-हर्विच मेथड का. तो व्हाइल मेकिंग द राउथ-हर्विच मेथड, the number of sign change in the first column is equal to the number of roots those are located in RHS of the S plane. जब भी आप राउथ-हर्विच बनाओगे, अगर केस नंबर 1 है तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, केस नंबर 1 में तो एक भी जीरो नहीं आएगा फर्स्ट कॉलम में. केस नंबर 2 में क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा बट अदर रो एलिमेंट्स आर नॉन जीरो. तो हमेशा याद रखेंगे, in case number 1 or in case number 2 we have only two possibility कि either poles or roots lie in LHS or RHS. Poles never exist on the imaginary axis. Always remember this. Imaginary axis पे अगर roots आ रहा है तो वो symmetrical आएगा, conjugate आएगा, और वो roots केवल तब आएगा जब राउथ टेबल में रो ऑफ जीरोज आएगा. ओके गाइस, तो बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की. और एग्जामिनर ये पूछता है, कोई ट्रांसफर फंक्शन आपको दे दिया और आपसे पूछ लेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स लाई इन आरएचएस, तो आप राउथ-हर्विच बनाओगे और क्या लिखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, the number of sign change in the first column of route table is equal to the number of roots those are located in RHS. Now coming to this, so student अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ROZ से, तो मैंने बताया था कि जब भी ROZ से आपको एस प्लेन बनाना हो, then you have to follow the three steps. First step is power of auxiliary that will provide the information about poles, symmetrical poles. So यहाँ power of auxiliary 4 है. It means total roots तो कितने हैं, 5 है, क्योंकि highest power 5 है. Out of 5, 4 roots are symmetrical. Those symmetrical roots can be on imaginary, can be on real. Now the next is the number of sign change from auxiliary equation to below is equal to the number of symmetrical roots lie in RHS. Because यहाँ एक भी sign change नहीं है auxiliary से below, it means एक भी symmetrical root RHS में नहीं होगा. But symmetrical तो है ना, कितने symmetrical है, 4 symmetrical है. It means all the 4 symmetrical roots should come on the imaginary axis. I am talking about in this particular case. And then the last case, the number of sign change above auxiliary equation is equal to the number of roots those are located in RHS. तो यहाँ देखो, above this auxiliary equation, again there is no sign change. No sign change means no further root lie in RHS, so single root lie in LHS only. टोटल कितने रूट्स हो गए आपके, 5, और सिस्टम हो गया आपका मार्जिनली स्टेबल. जरा बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग ट्राई करना चाहिए इसमें. देखिए फटाफट से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं. बताइए ऑक्सिलरी का पावर कितना है, 4, मतलब 4 रूट्स कैन बी सिमेट्रिकल. द नंबर ऑफ साइन चेंज फ्रॉम ऑक्सिलरी टू बिलो, कितने साइन चेंज है, नो साइन चेंज, 1 साइन चेंज, 1 + 1 2 साइन चेंज. two sign change indicate that two symmetrical roots lie in RHS. मतलब ये दो symmetrical roots RHS में होंगे. And to make it symmetrical, यहाँ और यहाँ इक्वी डिस्टेंस पे भी पोल होंगे. तो टोटल पोल कितने थे, 5, में से 4 symmetrical कवर्ड हो चुके सर. Now the number of sign change above auxiliary equation कोई भी नहीं है. It means no further root lie in RHS. तो रिमेनिंग रूट कहाँ हो जाएगा, LHS में. तो यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल हो गया और इस तरह से हमने पोल 0 बना दिया. ठीक है, चलो इससे सिमिलरली आप ये दोनों भी कर सकते हो, जस्ट लाइक टू द लास्ट जो मैंने 2 एग्जांपल बताया उसके लिए. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द राउथ-हर्विच इज रिलेटिव स्टेबिलिटी. टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम हमको क्या पुट करना पड़ता है, S = -σ इन द गिवन पॉलिनोमियल, एंड देन वी नीड टू simplify that, and we need to write the ultimate equation, characteristics equation, in form of Z, or finally we need to construct the route table in the form of Z, like Z3, Z2, Z1, Z0, जो भी हाईएस्ट पावर, अगर स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है. नाउ बिकॉज नाउ हमने क्या किया, हमने पूरे एस प्लेन को जेड प्लेन से शिफ्ट कर दिया. तो इसमें हम रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या देख रहे हैं, हम रिलेटिव स्टेबिलिटी में ये सिग्मा जे ओमेगा था, ये एस प्लेन था, और यहाँ एग्जामिनर बोल रहा है S = -σ के रेस्पेक्ट में बताओ कि कितने पोल LHS में, RHS में. तो ये डॉट डॉट लाइन को हमने जेड प्लेन बोल दिया. And now when you will construct the route table in form of Z, then we can comment that the number of sign change in the first column of route table is equal to the number of roots those are locating RHS about Z plane. About Z plane. Is this clear, beta? Yes.
सिमिलरली बच्चों अगर बात करते हैं रूट लोकस का, सो क्या है रूट लोकस? रूट लोकस इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स वेयर गेन के वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर? अब बताइए, रूट लोकस में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड कंडीशन एंड एंगल कंडीशन। तो अगर हम बात करें यहाँ, so what is the magnitude condition? That is very important formula, जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, के निकालने को पूछेगा आपको। So magnitude condition is 1 and this condition is used to find the value of gain k at a point which exists on the root. तो एग्जामिनर बहुत सी बार गेट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है अपकमिंग गेट एग्जाम में, जहाँ एग्जामिनर आपको गेन के पूछ लेगा एट पर्टिकुलर पॉइंट विच एग्जिस्ट ऑन द रूट लोकस। कभी बोल देगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेन के एट ब्रेक अवे पॉइंट, तो पहले ब्रेक अवे निकालेंगे और उस ब्रेक अवे पे मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड कंडीशन and the angle condition, angle of g of s h of s at this s equal to point, when you will put, you will get the angle condition is nothing but twice q plus 1 into 180 degree. So this is nothing but the angle condition and where q starting from 0 1 2 3 and so on. This is clear बच्चों? So you can say that here odd multiple of 180 is the angle condition. चलिए बताएंगे। नाउ स्टूडेंट, रूट लोकस कंस्ट्रक्शन रूल। रूट लोकस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स बट इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स। तो रूट लोकस किससे स्टार्ट होगा? ओपन लूप पोल से। सो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ओपन लूप पोल्स। रूट लोकस ऑलवेज टर्मिनेटिंग एट, आप बोल सकते हो ओपन लूप जीरोस। सो रूट लोकस टर्मिनेट होगा ओपन लूप जीरोस पे, एंड इफ देयर इज नो ओपन लूप जीरोस देन ऑल द पोल्स विल टर्मिनेट टू इंफिनिटी टू मीट एट वर्चुअल जीरोस। Is clear? Now number of root locus branches that terminate to infinite, terminate infinite की बात हो रही है, branches terminate to infinity अगर बात करें तो वो होगा n equal to p minus z, otherwise आप n equal to b बोल सकते हो, and b is depending on p and z. Okay, so for the proper transfer function p should always be greater than z, so n will be the number of root locus branches terminate to infinite. Now rule number 4 says that existence of root locus on real axis. How to identify? A point is said to be on the root locus if the right side of that point sum of open loop poles and zeros are in odd number. यहाँ odd होता है और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में इवन होता है, दैट इज द ओनली चेंज। ओके, तो 180 डिग्री रूल है मतलब odd। सिमिलरली अगर हम 180 डिग्री रूल की बात करें रूट लोकस में और एंगल ऑफ एजम्प्टोस की बात करेंगे, देन डायरेक्टली वी शुड रिमेंबर फॉर n equal to 1 एंगल ऑफ एजम्प्टोस विल बी 180 डिग्री। Okay, for n equal to 2, the angle of asymptotes can be, sir, 90 and 270 degree. For n equal to 3, sir, the angle of asymptotes can be 60, 180, 300. So like that we are having all the angle of asymptotes. If I talk about the centroid, then centroid values can be sigma of poles minus sigma of zeros upon p minus z. Okay, sigma of poles minus sigma of zeros upon p minus z. Now guys, breakaway point we have to follow 3 steps. The step number 1 is we should write the kinetics equation. Step number 2 is we can arrange the value of gain k. And step number 3 is we need to put dk upon ds equal to 0. dk upon ds equal to 0. Okay guys, now intersection point of imaginary axis on, देखिए अगर कोई भी आपका रूट लोकस, if you want to find the intersection of root locus on imaginary axis, it means how you can find by using the Rautherwich. Okay, so the intersection point कैसे निकालोगे? auxiliary equation का root. So the roots of auxiliary equation at k equal to k marginal, the roots of auxiliary equation at k equal to k marginal gives the intersection point of root locus on imaginary axis. Now the important formula, angle of departure formula, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टार मार्क। angle of departure formula can be 180 plus phi and the angle of arrival formula can be 180 minus phi, and where phi is nothing but sigma of phi z minus sigma of phi p. Very much important. Now student, if I talk about the frequency domain analysis basic concept, so in the LTI system whenever any sinusoidal input is applied to the system, the output can also be sinusoidal. Suppose that the transfer function is T of s, and if the input is R of s and the output is C of s. So student, अगर हम बात करें sin t, अगर मेरा input sinusoidal है मतलब sin ओमेगा t है, then output अगर मैं CT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ
आउटपुट अगर हम CT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then output should also be sinusoidal but having different magnitude and phase. तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे A और phi एक्स्ट्रा आ जाएगा, and that A depends on the magnitude of this transfer function. Mode of Tj omega at omega input gives you A, and the angle of Tj omega at omega input gives you the phi. So you will get A and phi value like this. Similarly, guys, if I talk about the frequency domain behavior of a second order system, then when you will make the curve, you'll get a curve like this, and it means here the frequency at which the magnitude of a second order system having the maximum value, that frequency is known as omega r, resonant frequency. This is known as resonant peak MR. Formula is 1 upon twice zeta root of 1 minus zeta square, and omega r formula is omega n root of 1 minus twice zeta omega. So this is the simple formula. Resonant frequency, resonant peak formula based question भी गेट में आए हैं. You have to remember these two formulas. यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है. अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड 1 ना हो के k है, इन जनरल ये 1 होता है. अगर k है तो mr का फॉर्मूला भी फिर लिखा जाएगा k अपॉन ट्वाइस जीटा रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर. यहाँ k क्या है? यहाँ k है DC गेन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, DC गेन ऑफ CLTF. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का DC गेन हो जाएगा सर. चलिए बच्चों, ये सात फॉर्मूला ने बता दिए. MR इज ओनली पॉसिबल व्हेन डैम्पिंग रेशियो वैल्यू इज लेस देन 0.707. अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपका जीटा का वैल्यू मान लीजिए 0.07 से ज्यादा है ना, तो फिर MR वैलिड नहीं होगा, बिकॉज उस केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल ही नहीं होगी. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस के लिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर एग्जिस्ट करेगा तो रेजोनेंट पीक एग्जिस्ट करेगा. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एग्जिस्ट करने के लिए आपको जीटा का वैल्यू इतना होना चाहिए. जीटा वैल्यू इक्वल टू 0.707 है तो एमआर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर जीटा का वैल्यू इससे ज्यादा है तो एमआर होगा ही नहीं. So if we talk about the characteristics equation, guys, so if we talk about the characteristics equation, then the characteristics equation is nothing but 1 plus G of S, H of S equal to 0. Gain crossover frequency, it is a frequency omega GC. Gain crossover frequency is nothing but omega GC. So omega GC is a frequency at which the magnitude of GJ omega HJ omega, the magnitude of GJ omega HJ omega at omega equal to omega GC will always equal to 1. Similarly, you can write the angle of GJ omega HJ omega at omega equal to omega PC equal to minus 180 degree. तो हम क्या बोलेंगे? वो मैग्नीट्यूड, वो फ्रीक्वेंसी जहां मैग्नीट्यूड 1 हो जाए ओमेगा जीसी है. द फ्रीक्वेंसी एट विच द एंगल ऑफ जीएसएचएस विल बिकम माइनस 180 ओमेगा पीसी है. गेन मार्जिन, टू फाइंड द गेन मार्जिन यू शुड फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा एट ओमेगा पीसी gives you x, and the gain margin is nothing but 1 by x. And if you wish to find dB value, you can take 20 log 10 1 by x. Similarly, if I talk about the phase margin, before finding the phase margin, you should have omega GC. So angle of GJ omega HJ omega, angle of GJ omega HJ omega at omega GC gives you phi, and the phase margin is nothing but 180 plus phi. And the phase margin is nothing but 180 plus phi. Is this clear, bachcho? So you should remember this also. This is the important note. The stability criteria: a system should be stable when gain margin, phase margin both are positive. Gain margin, phase margin क्या होने चाहिए? Positive होने चाहिए sir. So if gain margin, phase margin both positive, that will be only positive when omega GC is less than omega PC. अच्छा, marginally stable के लिए क्या हो जाएंगे? 0 डिग्री, 0 dB और 0 डिग्री. It will happen when omega GC equal to omega PC. It can be unstable when both are negative, GM, PM both negative, and it can only be happen when omega GC greater than omega PC. Okay, प्यारे बच्चों, so always remember, for the second order system, standard rule omega PC is always infinity and the gain margin is also infinity. तो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम दे दे और आपसे उसका ओमेगा जीसी पूछ ले, ओमेगा पीसी पूछ ले सॉरी, तो ओमेगा पीसी हमेशा इंफिनिटी होगा और उसका गेन मार्जिन भी इंफिनिटी होगा. इज इट क्लियर?
तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बेटा ओमेगा पीसी। अगर बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो डायरेक्ट ये आपके लिए एज ए शॉर्ट ट्रिक काम करेगा गेट एग्जाम में। जब भी कोई ऐसा फॉर्म दे रखा है, इफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन इन दिस फॉर्म, देन डायरेक्ट ओमेगा पीसी इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 T2, 1 upon under root of T1 T2. This is nothing but your omega PC. This is nothing but your, you have to remember this, okay? चलिए, सो टाइप 0 टाइप 1 एक डायग्राम बनाएंगे, बाकी डायग्राम आप डायरेक्टली देख सकते हो, या चारों डायग्राम को मैं समरी बनाते हुए एक ही में बनाता हूँ। अगर मैं चारों डायग्राम को एक ही के अंदर बना के बताऊँ आपको, तो टाइप 0, तो अगर ये डायग्राम ऐसा कुछ है, तो अगर हम टाइप 0 ऑर्डर 1 बनाए, so student type 0 order 1 diagram will be look like this, type 0 order 1, type 0 order 2 like this, type 0 order 3 like this, and type 0 order 4 like this। ना तो मैं बोलते जा रहा हूँ साथ साथ, दिस इज टाइप 0 ऑर्डर 1, ये सारे टाइप 0 है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4, लाइक दिस वी कैन बी। सिमिलरली स्टूडेंट अगर टाइप 1 देखो आप यहाँ पे, टाइप 1 ऑर्डर 1, देखो टाइप 1 ऑर्डर 1 पता है क्या होगा, टाइप 1 ऑर्डर 1 मतलब ये पूरा, टाइप 1 ऑर्डर 1 मतलब लेट मी टेक दिस कलर ऑफ पेन, ब्लू कलर। टाइप 1 ऑर्डर 1 मतलब ये लाइन ही टाइप 1 ऑर्डर 1 का पोलर प्लॉट होगा, ये लाइन, ये टाइप 1 ऑर्डर 1 का बात कर रहा हूं। टाइप 1 ऑर्डर 2 मतलब ये, टाइप 1 ऑर्डर 2 मतलब ये, टाइप 1 ऑर्डर 3 मतलब ये पूरा, ये टाइप 1 ऑर्डर 4 मतलब ये पूरा घूम के जाएगा ऐसे, देखो ना आप, टाइप 1 ऑर्डर 4, ये सारे टाइप 1 है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4। सिमिलरली गाइस अगर हम टाइप 2 की बात कर लें, तो टाइप 2 ऑर्डर 2 कैसा होगा, सर टाइप 2 ऑर्डर 2 मतलब एंगल लाइन इज नथिंग बट द पोलर प्लॉट, ये टाइप 2 ऑर्डर 2 का हो गया। टाइप 2 ऑर्डर 3 का कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड टाइप 2 ऑर्डर 4 का कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह, ये टाइप 2 ऑर्डर 3, ये टाइप 2 ऑर्डर 4। सिमिलरली अगर लास्ट बात कर लें टाइप 3 ऑर्डर 3, तो टाइप 3 ऑर्डर 3 मतलब ये जो एंगल लाइन है, एंगल लाइन, ये वाला टाइप 3 ऑर्डर 3 का पोलर प्लॉट बनेगा, डायरेक्शन ये होगा। और टाइप 3 ऑर्डर 4 मतलब ये टाइप 3 ऑर्डर। दिस इज ऑल अबाउट द पोलर प्लॉट गाइस। अगर हम बात करते थे, अच्छा स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्लोजमेंट, ऑलवेज याद रखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्लोजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्लोजमेंट क्या बोलता है आप याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इनक्लोजमेंट का मतलब, ए पॉइंट इज सेड टू बी इनक्लोज्ड बाय ए कर्व इफ इट इज एग्जिस्ट इन, if the point is exist inside if the point is exist in the right hand side to the direction of curve। हमेशा स्टेटमेंट याद रखेंगे, अगर कोई पोलर प्लॉट दे रखा है और आपको डायरेक्ट क्लोज्ड लूप स्टेबिलिटी पूछ रहा है, देन हम डायरेक्ट बोलेंगे इफ द क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कंट्रोल सिस्टम, क्रिटिकल पॉइंट इज -1 + j0। so if the critical point -1 + j0 is enclosed by the polar plot, अगर क्रिटिकल पॉइंट पोलर प्लॉट से इनक्लोज्ड है, मतलब अगर क्रिटिकल पॉइंट पोलर प्लॉट के राइट साइड में आ रहा है, then the closed loop system is always unstable, then the closed loop system is always unstable। is this clear beta? then the closed loop system is always unstable। बात करते हैं नाइक्यू स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का, जहां n = p - z इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे पहले अगर आप प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की बात कर लो, तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट नाइक्यू स्टेबिलिटी से आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट POA का जो फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, वो होता है प्यारे बच्चों n = p - z। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के अंदर हम बात करेंगे, p इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, number of OL poles, number of open loop poles, and where Z is nothing but number of OL zeros। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट का, और यहाँ पे n है बेटा नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट, with respect to origin in GH plane, and is nothing but number of encirclement with respect to origin in GH plane। This is POA, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट। और यहाँ नोटेशन चेंज हो जाएगा, n = p - z में p है नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट, p है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स लाई इन RHS, z है नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स लाई इन RHS, which is very important, number of closed loop poles lie in RHS। and यहाँ important, सबसे important n is nothing but number of encirclement with respect to critical point in GH plane। तो याद रखो n जो है नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्रिटिकल पॉइंट इन GS प्लेन, और यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इन GS/HS प्लेन। तो ये POA है, ये आपका नाइक्यू स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। और नाइक्यू प्लॉट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप,
S1 मतलब step number S1 we need to make a polar plot. We need to draw the polar plot. To draw the Nyquist plot, we need to put what we need to put. We need to put S equal to limit R tends to infinite R e to the power j theta, and where theta vary from plus pi by 2 to minus pi by 2. Step number 3, we have to draw inverse polar plot. And step number 4, which is only applicable if the open loop transfer function having poles at origin. अगर OLTF का पोल ओरिजिन पे होगा then only S4 step is valid, otherwise S4 step is not valid. तो अगर ये valid है तो कैसे निकलेगा? S equal to limit, this time put R equal to 0 R e to the power j theta, and where theta vary from minus pi by 2 to plus pi by 2. Where theta vary from minus pi by 2 to plus pi. अगर हम बात करें बॉडी प्लॉट का, तो हाउ टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी? सो हियर यू कैन प्रूव व्हेन ओमेगा GC is less than omega PC, then only the system is stable, or in this case your GM and PM will be positive. Gain margin positive in dB and phase margin will be positive in degree. Is this clear? Similarly, अगर GM देखो ओमेगा GC इस केस में क्या हो गया? ओमेगा GC is greater than omega P. It means your GM PM negative and the closed loop system is unstable. और अगर दोनों इक्वल हो जाए, देखो यहाँ ओमेगा GC इक्वल टू ओमेगा PC, तो डेफिनेटली GM PM 0 and that will make the system marginally stable. ओके अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो गेट क्वेश्चन आ गया, हमको गेट क्वेश्चन नहीं करना है। हम आज की क्लास में फॉर्मूला रिवीजन है, ये फॉर्मूला रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है इनवर्स बॉडी प्लॉट से। इनवर्स बॉडी प्लॉट में आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप होगा ऑब्जर्व द स्टार्टिंग पॉइंट दैट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट पोल्स एंड जीरो एट ओरिजिन। सेकंड स्टेप हो जाएगा at every corner frequency we need to check the slope change. Okay, so we need to check the slope changes. Okay, so observe the slope change at each and every corner frequency. It will provide the information about poles and zeros of first order factor and second order factor. And finally we have to find the value of gain k. Gain k का वैल्यू कैसे निकलेगा? y equal to mx plus c, and where c equal to, यहाँ पे c क्या हो जाएगा? Where c equal to 20 log 10k, जहां पे c जो है वो 20 log 10k। अगर बात करें प्यारे बच्चों कंपनसेटर क्या है, तो कंपनसेटर इन ए कंट्रोल सिस्टम विच इज यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सिस्टम और टू कंपनसेट द डेफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो कंपनसेटर और कंट्रोलर को हम इंटेंशनली एडिशनली सर्किट में ऐड करते हैं टू इंप्रूव द ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट और स्टेबिलिटी। ओके, तो अब बात करें अगर कंपनसेटर का फटाफट क्विकली, तो लीड कंपनसेटर की अगर बात की जाए, तो this is the standard form for the lead compensator, and what are the important formulas to be remembered? This is the lead compensator is used to improve the transient state. It means it is used to improve the speed of a system. Speed को बढ़ा देगा, and it is also used to increase the stability of a system. Stability को भी बढ़ा देगा। और how to identify, तो always remember lead compensator मतलब poles value is greater than Z। तो अगर आप S plane बनाओगे ना, तो in the lead compensator pole value should be leading, value should be leading to 0. So this is nothing but the lead compensator, and this is the standard electrical network. Now student, lead compensator, always remember the damping ratio zeta going to be increases because MP decreases and hence stability increases. Because अगर stability बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब oscillations कम हो रहा है। Oscillations कम हो रहा है मतलब damping ratio बढ़ रहा है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें लैग कंपनसेटर का, तो लैग कंपनसेटर में जीरो ज्यादा होगा पोल से, जीरो ज्यादा हो जाएगा पोल से। ओके सर। अच्छा, लीड कंपनसेटर में एक और फॉर्मूला जिस पर 100% क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम फेज लीड अकर ओमेगा एम इज नथिंग बट 1 अपॉन T1 रूट अल्फा, और एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा एम इज नथिंग बट रूट ए बी। बट ये रूट ए बी कब लगाना है? अगर ट्रांसफर फंक्शन ऐसा दिया हो k इंटू एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। अगर ऐसा दिया है और b ग्रेटर देन a है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? अगर आपको स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा दिया है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीड कंपनसेटर का, वो होता है अल्फा 1 प्लस T1s अपॉन 1 प्लस अल्फा T1s।
बट हमेशा याद रखेंगे जब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े तो T1 और अल्फा का वैल्यू S के कोफिशिएंट से निकालोगे आप न्यूमरेटर, ये बार वाले अल्फा से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट गेन के कभी कभी आपकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे। तो अभी बात करते हैं प्यारे बच्चों लैग कंपनसेटर। देखो फटाफट से बता दिए, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? So I think it's clear, guys. Shall we go for next? Okay, so I think audio video clear. So in the lag compensator, we know that Z is greater than P. And for the lag compensator, the important formula, it is used to improve the steady state response of a system. It means it is decreasing the steady state error. It will increase your accuracy of a system. For the phase lag compensator, you can also, if suppose that the lag compensator is given in this form, S plus A upon S plus B, then to make it lag compensator, A value should be greater than B, and the maximum phase lag occur at this frequency omega m equal to under root of AB. Similarly, अगर यहाँ maximum phase lead compensator, in the lead compensator, the maximum phase lead occur at phi m equal to sin inverse 1 minus alpha upon 1 plus alpha, and where alpha is R2 upon R1 plus R2. Remember this, no? Beta value is here. Here you can say that the maximum phase lag phi m is nothing but sin inverse 1 minus beta upon 1 plus beta, and where the beta value is R1 plus R2 upon R2. So beta value is greater than 1, alpha value is less than 1. Similarly guys, if we talk about the lag lead compensator, then पहले lag network आएगा फिर lead आएगा, और अगर lead lag network की बात करें तो पहले lead आएगा फिर lag आएगा. अच्छा, स्टेट इक्वेशंस की अगर हम बात कर लें तो स्टेट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज योर स्टेट इक्वेशन. Always remember, very important for the gate point of view, x dot t is nothing but axt plus but, axt plus but, and here yt is equal to cx of t plus du of t, where A is the system matrix, B is the input matrix, C is the output matrix, and D is the feed forward matrix. Generally D matrix 0 given होता है questions में. xt is the state variable, x dot is the first derivative of state variable, ut is the input, and yt is the output. अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपको ए मैट्रिक्स पूछ लेगा. सो व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and you can decide the last row in the A. अच्छा, highest power in the differential equation में जो highest power है D2, that define the A matrix order 2 cross 2. अगर यहाँ power 3 होता तो 3 cross 3 बन जाता, highest power 5 होता तो 5 cross 5 बन जाता, और last row यहाँ से लिखा जाएगा we should travel from right to left but change the sign. change sign मतलब ये हो जाएगा -8 -4 और ये हो जाएगा 0 0. Similarly guys, if I talk about the B matrix, then B matrix will be 0 10. And if I talk about the C matrix, in this case, C matrix will be 1 0. So this is the simplest form. Similarly, guys, from the transfer function, if you want to write ABC matrix directly, then A matrix, the highest power of S in denominator of a transfer function gives the order of the matrix 2 cross 2. मान लीजिए यहाँ highest power 3 होता, then the order should be 3 cross 3. And the last row, how it can be? It can be, sir, x1 dot equal to x1 dot equal to x2 or x2 dot equal to this. So it will be 0 1 actually. Okay, not 0 0. It will be 0 1. Sorry, 0 1. Similarly, guys, here it should be last row. मतलब right to left we need to travel. So we should write here -9 and -7. And x1 dot equal to x2 मतलब 0 1. Similarly, guys, B matrix is what? B matrix is nothing but whatever is common here. What is common? 1 only. So we should write 0 1. And directly the short trick for the C matrix is we should travel from right to left here. But this time we have to change the sign. यहाँ sign change किया था, but here no need to change the sign, so it will be 1 2. So this is how you can make ABC. You can make ABC.
Similarly, guys, to find the transfer function from the state matrix, very important formula. The transfer function is nothing but C dot Si minus A inverse C dot Si minus A inverse dot B. जनरली आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एबीसी मैट्रिक्स ही गिवन होता है गेट क्वेश्चन. डी जनरली 0 होता है. अगर डी गिवन हो तो इस तरह से आप ऐड कर देंगे. Controllability, to check the controllability, we should check B, AB, A square B and so on like that. To make the system controllable, the determinant of B, AB, A square B should not equal to 0. Should not equal to 0, it means it is controllable. If it is equal to 0, then it means it is uncontrollable or not controllable. For the observability, it should be CT, AT, CT, AT whole square CT like that. So to make the system observable, the determinant of this CT, AT, CT, if the matrix order is 2 cross 2, then formula will limit here only. If matrix order is 3 cross 3, then formula can be like this. So to make the system observable, the determinant of this should not equal to 0. और अगर determinant इसका, अगर observability QO का determinant 0 आ रहा है, then it will make the system unobservable. Then it will make the system unobservable. Very important, STM, state transition matrix, is also important. STM is nothing but Laplace inverse of SI minus A inverse. Laplace inverse of SI. So student, if you will write XT, solution of state equation, then XT is nothing but STM into X0. Okay, and so STM into X0 मतलब Laplace inverse of SI minus A inverse. और ये है आपका, इसको आप बोल सकते हो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ZIR. सिमिलरली अगर ZSR की बात करें, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स इज नथिंग बट XT equal to state transition matrix into B into U of S, and here you can see that Laplace inverse also. So Laplace inverse of what? SI minus A inverse and multiple with BUS, which is give you ZSR. और अगर फोर्स रेस्पॉन्स दिया हो जहां x0 भी गिवन हो इनिशियल वैल्यू और इनपुट ut भी गिवन है, तो आपको दोनों को ऐड करके बनाना पड़ेगा. ZIR plus ZSR will give you the force response. Okay प्यारे बच्चों, so that's all from the control system formula revision. So in the last I think 1 घंटा 15 मिनट हमने ये कंट्रोल सिस्टम को कवर किया है, लगभग सवा घंटे के अंदर. तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट में हमने कंट्रोल सिस्टम को फिनिश किया. और इसी तरह लगभग अगेन 1 घंटा 15 मिनट में हम बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम का. ओके, सो विल ट्राई, बिकॉज सिग्नल सिस्टम का थोड़ा सिलेबस बड़ा वास्ट है. तो सिग्नल्स एंड सिस्टम टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डबल ई स्टूडेंट्स, है ना. तो केवल डबल ई वाले बच्चों के लिए बात होगी. ओके, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों जस्ट आफ्टर ए 2 मिनट ब्रेक, है ना. 2 से 3 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक का मतलब ये कि आई नीड टू सेव दिस PDF and I need to upload the next PDF. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम फॉर्मूला रिवीजन, और दैट विल बी द लास्ट सब्जेक्ट फॉर टुडेज क्लास. ओके, फिर हम मिलेंगे टुमारो अगेन फॉर द EC. ओके गाइस, सो जस्ट वेट.
So I think am I audible? Hello everyone. Yes, guys. So I think audio video is clear. So let's start, guys. Now signal sense system. Okay. So let's have a discussion on signal sense system. So student, before the break, we have seen about the control system, all the formulas. So here we'll see all the important formulas and properties for the signal system. So now student, again, time shifting, time scaling, time reversal, all the operation we need to perform on the time axis, and amplitude reversal scaling we need to perform on the y axis. If I will show you the example, time shifting means either right side shift or left side shift. So if t, it is time reversal, by the way. Time reversal means having a mirror image with respect to y axis. इस सिग्नल को मिरर इमेज बना दिया तो देखो टाइम रिवर्सल हो गया. अगर टाइम स्केलिंग की बात की जाए, then the time scaling, the signal going to be compress or expand. So अगर ये x of t है, then x of 2t will be compressed version of this because in the time domain. So let's start, guys. Now signal sense system. Yes, guys. So here you can see the time scaling operation. Time scaling मतलब signal compression and time. If I talk about time scaling, and if a value is 0.5, then the signal going to be expand because that time you need to divide. Suppose that if I will take x of half t value, then we need to divide with half. So when you will divide with half, you will get the signal expansion that time. Okay. So the new location will be 024. The new location will be 024. Is this clear? कहाँ अप्लाई करना है? There is no option for apply. बड़ा रैंक इम्प्रूवमेंट बैच एवरीथिंग यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट एंड वहाँ पे आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा या चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप चैट करके पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है, डिटेल में वो आपको बता देंगे. ओके प्यारे बच्चों. नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें टाइम शिफ्टिंग का, सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग. सबसे पहले टी प्लस टी नोट, इट मीन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट, मतलब इसको सिग्नल को लेफ्ट लेके जाना है. कितना लेके जाना है? टी नोट डिस्टेंस जितना. अगर शिफ्टिंग ऐसा लिखा है टी माइनस टी नोट, मतलब राइट साइड शिफ्टिंग, जितना भी टी नोट लिखा है उतना राइट में लेके जाना है. क्लियर है? बताइए, एम्पलीट्यूड रिवर्सल मींस वी नीड टू मेक ए मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, मतलब ये अगर सिग्नल है इसको एक्स एक्सेस में आप मिरर इमेज बना दीजिए इस तरह से. जनरली अगर बात करें टाइम स्केलिंग का, दिस इज एक्स ऑफ टी, सो हाउ टू मेक ट्वाइस ऑफ एक्स टी, एम्पलीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स टी बन जाएगा. If I talk about the amplitude shifting, then this entire signal we need to shift in the amplitude, upward shift और downward shift. तो अगर ये xt है तो xt प्लस 1 क्या हो जाएगा? सिग्नल अपवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा. तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच इज इम्पल्स प्रॉपर्टीज. तो फटाफट से एक बार इम्पल्स का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. So these are some important properties of impulse signal. Okay, so here we are having some important properties of impulse. Okay, okay, okay guys. Yes, so important properties of the impulse. So let's see. So students, some important, very important property जहाँ से डायरेक्ट गेट क्वेश्चन बनता है. x of t del t is nothing but x0 into del t. Okay, similarly guys, x of t
dot del of t minus का t naught is nothing but actually x t naught into del of t minus का t naught. Clear है sir. Now student, tell me the next important properties can be. So you can say that the next important property is x of t, okay, minus infinity to infinity x of t dot del t dt. अगर इंटीग्रेशन लगा दिया तो फिर del का फंक्शन नहीं आएगा, ओनली x0 आ जाएगा. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of t dot del of t minus का t naught into dt, it should be only x t naught. अगर आपको बात करें del of at, then we will reply del at is nothing but sir 1 upon mod of a into del of t, 1 upon mod of a del t. So these are some important property from which directly you can see the questions. Okay, here you can see the properties. Even if I talk about some doublet signal, so one more important property, the area of the impulse signal del t will always be 1. The area of doublet signal मतलब होता है del dash t into dt, always equal to 0. तो डबलेट सिग्नल का एरिया आपका हमेशा 0 हो जाएगा और इम्पल्स सिग्नल का एरिया विल ऑलवेज बी 1. तो अगर सिग्नल डबलेट है, ये तो इम्पल्स वाला है, अगर डबलेट सिग्नल है x of t dot del dash t into dt, then it will directly give you minus का x dash 0, माइनस का x dash 0, x dash का मतलब डेरिवेटिव पार्ट and 0. सिमिलरली अगर del dash मतलब डबलेट सिग्नल डैश टी माइनस टी नॉट, तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस का x डैश टी नॉट लाइक दिस. Okay, so this is again important property. Periodic, non-periodic, how to decide if a signal satisfied this property xt equal to xt plus minus t naught, where t naught is the fundamental time period. So capital T is nothing but प्यारे बच्चों 2 pi by omega. Okay, and if the signal is the addition of two or more periodic signals, then to find the ultimate the signal fundamental time period capital T, first we need to check whether the signal is periodic or not. How to check and how to hence prove whether the signal is periodic or not? We have to take the ratio of T1, T2, T1, T3 like this. So if T1 upon T2 ratio or T1 upon T3 ratio is all these ratios are the ratio of integer or P upon Q, then the ratio of integer is known as rational number. So if the ratio of T1 upon T2 is a rational number or the ratio of integer, then we can comment that the overall signal xt is periodic, and to find the fundamental time period, we can take the LCM of T1, T2 and so on. Like this. Okay guys. So if I talk about even odd signal, a signal is even, it means it should symmetrical about y-axis and it must satisfy this condition xt equal to x of minus t. And if the signal is odd, then it must satisfy this equation xt equal to minus x of minus t. And if the signal is nano, it means neither even nor odd, then we have a scope to find the even component and odd component. The even component is xt plus x of minus t upon 2, and the odd component is nothing but x of t minus ka x of minus t upon 2. So this is how we can comment on the even component and odd component. And as I already told you, if the signals, how to decide? Even plus even will always be even. Even, both are even minus even also even into even also even, or even upon even is also even. If both the signals are odd, then the sum odd plus odd is odd minus odd is also odd, but odd into odd will become even, and odd upon odd will also become even. If one signal is even, other is odd, then we can say that the even plus odd will be nano, sir. Nano means neither even nor odd. Here also difference again nano. And if one is even, other is odd, then product odd will dominate. So odd into even is nothing but odd. Odd upon even is also odd. So this table is very much important sometime to identify the signals in the Fourier series symmetrical condition. You should know the even and odd nature. Okay. Okay guys, so let's discuss the next, which is very important, energy or power. So let's have a discussion on the energy, some important direct standard signals for energy and power. So let's discuss. अगर एनर्जी पूछ ले आपसे, e to the power minus at ut energy will always be equal to 1 upon twice a, its area will be 1 by a. अगर कोई इसका एनर्जी पूछ ले e to the power at u minus t, then again the energy will be 1 upon 2a,
बट हियर द कंडीशन इज ए शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, और यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे जो आपका ए का वैल्यू है, यहाँ पे तो ए का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव। देखो दोनों ही केस में जो ए का वैल्यू है आपके वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इन दोनों ही केस में ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग बनेगा, लेकिन ये नीचे तो दोनों बाउंडेड बनेंगे। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव लेना तो चेंज हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर e की पावर माइनस का ए मोड ऑफ टी है, तो इसका मतलब ये कर्व कैसा बनाएगा, ये कर्व कुछ ऐसा बनाएगा सर, ये ऐसा। तो इसका एनर्जी क्या होता है, इसका एनर्जी 1/2 है प्लस 1/2 है मिलके क्या बना देगा 1/, अच्छा इसका एरिया होता है 1/a, इसका एरिया 1/a, एरिया अगर पूछे e की पावर माइनस ए मोड ऑफ टी का एरिया पूछे तो ट्वाइस अपॉन ए हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एज फार एज एनर्जी एंड पावर। अब कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जहां कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, e टू द पावर माइनस AT UT प्लस e टू द पावर माइनस BT UT का एनर्जी निकालिए। तो इसका एनर्जी अगर पूछेगा तो काफी लोग केवल क्या कर देंगे, काफी लोग केवल लिख देंगे एनर्जी इज नथिंग बट 1/2a प्लस 1/2। बट इस केस में एक चीज मिस कर दोगे, दैट इज ट्वाइस अपॉन a प्लस b। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वाइस अपॉन a। ये टर्म क्यों आया, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, अगर हम एनर्जी के फॉर्मूले की बात कर ले, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ xt का होल स्क्वायर dt। दिस इज योर एनर्जी फॉर्मूला प्यारे बच्चों, एंड बिकॉज दिस इज द एनर्जी फॉर्मूला, सो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये ट्वाइस ऑफ ab देगा। ट्वाइस ऑफ ab मतलब एक्सपोनेंशियल में कॉमन लोगे तो a प्लस बी मल्टीपल बनेगा t। नाउ स्टूडेंट, ये तो हो गया सिंपल एनर्जी पावर के बारे में। अगर हम बात करें चलो पावर के लिए भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम पावर के लिए भी एक टेबल बना लें, तो स्टैंडर्ड दीज ऑल टेबल्स आर वर्किंग एज ए शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट नोट फॉर यू। ओके, दिस इज द फॉर्मूला सीरीज। So this all the boxes, whatever boxes I am making here, very much important for the gate point of view. So UT direct power is 1/2. Even if it is AUT, then power will be a square by 2. A sin omega 0 t UT, the power will be again a square by 2. Similarly, a cos omega 0 t is also power. A e to the power j omega 0 t. फटाफट a is the DC power is always a square only. And a e to the power j omega 0 t power is also a square, because when you will take the magnitude of this, e की power j magnitude is always 1. Okay guys, so these are the basic signals. And one more important condition, energy calculation is only depending on the time scaling factor and amplitude scaling factor like this. अगर x of t का सिग्नल का एनर्जी कैपिटल E है, then the energy for minus का k x of minus at plus b, x ऑफ माइनस का AT प्लस B का जो एनर्जी होगा दैट इज नथिंग बट E अपॉन मोड ऑफ A, और यहाँ पे जो ये K है माइनस K का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका K स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द एनर्जी कैलकुलेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपसे पूछ ले रेक्टेंगुलर का एनर्जी और ट्रायंगुलर का एनर्जी, तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था पहले भी, अभी बता देते हैं वापस से फॉर्मूला रिविजन में। सो सपोज दैट वी हैव ए स्क्वायर वेव फॉर्म। For the rectangular pulse or for the triangular pulse, what will be the energy, sir? So for the rectangular pulse, the energy will be a square into b, and for the triangular pulse, the energy will be like this triangular pulse. Yes. So you can say that here the magnitude a and the width is b. Here also the magnitude a and the width is b. The energy for this rectangular pulse is nothing but a square into b. And the energy for this triangular pulse will be a square by 3 into b. A square by 3 into b. Here only a square into b. Here a square by 3 into b. Similarly, student, the energy for the sinusoidal lobe. Energy of a sinusoidal lobe will be what? For any sinusoidal lobe, energy will be for sinusoidal lobe. Suppose that this is a sinusoidal lobe. So 0 से लेके b. If here is the amplitude a, then its energy is nothing but directly you can say that a square by 2 into b. A square by 2 into b, guys. Clear? Now जब भी इस तरह का सिग्नल आ जाए, then also we can directly comment on the power. ये सिग्नल हमेशा पावर होंगे, because whenever the signal is having infinite time duration but having a constant value, infinite time duration and having a constant value. Are you getting my point? Infinite, sir. गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर, पोलर कैसे एंड अदर ऑपरेशंस। बेटा इसके लिए भी हम डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए बना लेंगे, वर्चुअल हाउ टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर। काफ़ी आसान है वैसे,
आप डायरेक्टली वर्चुअल कर, क्योंकि अभी इस फॉर्मूला सीरीज में हम ब्रेक नहीं कर सकते, इन बिटवीन में आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। आप गूगल पे लिखोगे वर्चुअल कैलकुलेटर, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, वहाँ सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो जब भी ऐसा कोई सिग्नल्स आ जाए जिसमें कांस्टेंट वैल्यू है इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन पे, तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक है पावर निकालने का, a²/2। तो यू कैन से दैट पावर इज नथिंग बट a²/2 इन दिस केस। Similarly, a cos omega 0t, already I told you power is nothing but a²/2. And what about the RMS? So RMS value is nothing but under root of power, guys. So RMS हमेशा क्या हो जाएगा? Under root of power. So like that you can say a/√2. This is very much important for the gate point of view. Whenever the examiner is asking, if the examiner is asking the signal wave, this signal power, then how you can find the power? Whenever ω1 is not equal to ω2, अगर frequency different है ना, then power should be very much easy, which is a²/2 plus b²/2. And when frequencies are same, अगर frequency same है प्यारे बच्चों, तो आपका पावर आ जाएगा ये a²/2 plus b²/2 and plus ab cos of phi1 minus phi2. Very much important. अभी तक जो गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग था, तो डायरेक्टली स्टूडेंट a²/2 b²/2 करते हैं, चल जाता है। बट अपकमिंग क्वेश्चन में आ जाए तो याद रखिए, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। कोजल नॉन कोजल, अगर कोई सिग्नल ft इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन 0, मतलब t लेस देन 0 पे सिग्नल 0 होना चाहिए, तो कोजल होगा, अदरवाइज नॉन कोजल। यहाँ c है और यहाँ nc है। अच्छा, लीनियरिटी क्या होती है आपको बताया था पहले। A system is said to be linear if it satisfies superposition and homogeneous property together, then it will be a linear. अच्छा, how to decide? तब मैंने बताया था, quickly understand, whenever any operation directly applied on the input signal, if yt representing output, xt representing input, then yt equal to x²t, x cube of t, mod of xt, exponential of xt, log of xt, sin of xt। डायरेक्टली साइन ऑपरेशन x पे अप्लाई हो गया है ना, मॉड ऑपरेशन x पे अप्लाई हो गया, लॉग ऑपरेशन अप्लाई हो गया, कोई भी डायरेक्ट ऑपरेशन अगर log ऑफ x ऑफ t, देन दैट विल मेक द सिस्टम नॉन लीनियर। ये सभी पक्का क्या होंगे? नॉन लीनियर। ऑल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑलवेज लीनियर। whenever any constant term present in system equation, suppose that yt equal to कुछ ऐसा आ जाए, a of xt plus b, whenever any constant term present in system equation, that will make the system non-linear। तो यहाँ बात करो x², बिकॉज स्क्वायर ऑपरेशन है तो ये नॉन लीनियर हो गया, ये नॉन लीनियर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन डायरेक्टली अप्लाइड ऑन xt, तो ये नॉन लीनियर हो गया। जबकि यहाँ पे स्क्वायर तो है बट ये फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x ऑफ t पे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो x ऑफ t एज इट इज है, तो फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीपल ऑफ xt 100% लीनियर ओनली। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन लीनियर हो जाएगा, बाकी दोनों नॉन लीनियर हो जाएंगे। अच्छा, हाउ टू डिसाइड टीवी टीआईवी टाइम इनवेरिएंट? ए सिस्टम इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब हमको कैसे प्रूव करना होता है कन्वेंशनली, वाई टी कोमा टी नॉट शुड इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। अगर ऐसा है देन वी कैन से दैट द सिस्टम इज, अगर ऐसा है then we can say that the system is time invariant. So the output due to delayed input, or if the output is delayed by t naught, okay। अच्छा, इसके लिए ट्रिक क्या है सर? अगर कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम, if yt equal to, यहाँ लिख रहा हूं मैं फंक्शन ऑफ टाइम, if function of time is multiple of xt, अगर कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम xt से मल्टीपल है, then that will make the system time variant। अच्छा, x पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दे वो लीनियरिटी को अफेक्ट करेगा बट टीआईवी को अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली बच्चों, टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग ऑलवेज टाइम वेरिंग ऑपरेशन, एंड प्योर टाइम शिफ्टिंग इज टाइम इनवेरिएंट ऑपरेशन। ओके, तो अगर हमको यहाँ कमेंट करना हो तो ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो आप बोल दोगे टीवी हो गया सर। यहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट इंडिपेंडेंट पे कोई भी ऑपरेशन आएगा दैट विल मेक टीवी। अच्छा, यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई है तो ये नॉन लीनियर तो है बट ये टीआईवी है, टाइम इनवेरिएंट है सर, नो प्रॉब्लम। टाइम रिवर्सल ऑलवेज टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव में लिमिट देखनी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी से t है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ t की जगह 80 होता या माइनस t होता तो टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल चाहे लिमिट में आ जाए चाहे x के साथ आ जाए, वो सिस्टम को टीवी कर देगा। यहाँ टाइम रिवर्सल भी नहीं है और टाइम स्केलिंग भी नहीं है, सिंपल t है तो ये टाइम इनवेरिएंट रहेगा, टाइम इनवेरिएंट।
Similarly, a system is said to be causal if the output is depends on the past and present values of input. If output of a system is depending on the future values of input, then the system will be non-causal. Otherwise, system is causal. तो यहाँ देख सकते हो प्रेजेंट एंड पास्ट मतलब causal है सर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मीन्स नॉन causal है सर. Clear? Now student tell me yt equal to x2t, it means 100% non-causal sir. Here x of minus t means again non-causal sir. This is what? This is simple expression, but always remember ये causal non-causal को decide नहीं करेगा. Causal non-causal को जो x के बाद bracket होता है ना उसके अंदर जो लिखा है that will decide whether the system is causal or non-causal. तो ये देखो t minus 1 है मतलब past पे depend कर रहा है and it will make the system non-causal. बताइए मेमोरी लेस और मेमोरी. सो ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक और मेमोरी लेस इफ द आउटपुट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक सिस्टम स्टैटिक है मतलब वो आउटपुट केवल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा. मतलब ऑल द मेमोरी लेस सिस्टम्स आर ऑलवेज कॉजल. क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, सारे मेमोरी लेस सिस्टम हमेशा कॉजल होंगे बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू. Similarly, dynamic system, if output depends on the present or future, then it will be memory system. Okay. So student देखिए, always integral or derivative function will be dynamic system, memory system. This is again the memory less system or static system. How to decide stability? By using the BIBO concept. BIBO मतलब क्या हो गया? By bounded input, bounded output. अगर आपको किसी भी सिस्टम इक्वेशन में ये चेक करना, यहाँ से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया था इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसी डबल में भी आ सकता है. कैसे करेंगे सर? whenever tx of t, it means we can say that कि सर BIBO stands for स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सिस्टम इक्वेशन में इनपुट को बाउंडेड इनपुट से रिप्रेजेंट करिए. अगर आउटपुट बाउंडेड आ रहा है ना तो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम इज नॉट स्टेबल. तो ये सिस्टम अगर आप xt की जगह ut पुट करोगे TUT बनेगा, मतलब अनबाउंडेड बन गया तो अनस्टेबल हो गया. जब xt की जगह ut पुट किया ut+2 मतलब स्टेबल बन गया. अच्छा माइनस इन्फिनिटी टू टी x2 की जगह आपने u2 पुट किया तो स्टेप को इंटीग्रेट करोगे तो रैम बन जाएगा और रैम सिग्नल को क्या कर देगा? अनस्टेबल कर देगा. नाउ बताइए इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल. ए सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज पॉसिबल टू जनरेट द इनपुट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम. एक वो सिस्टम इन्वर्टिबल कहलाता है जिसके अंदर आउटपुट से हम इनपुट को जनरेट कर सकते हैं. So a system is said to be invertible if it is possible to generate the input of a system from the output. Okay, कैसे चेक करेंगे सर क्वेश्चंस के अंदर? So whenever we have a one-to-one mapping in the input and output, if one-to-one mapping is possible always, then it will be then it will be invertible. And many-to-one it means non-invertible. Many-to-one means non-invertible. So yt equal to 2xt. अगर आप एक और इन्वर्टिबल सिस्टम लगा दोगे जिसको आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पक्का इन्वर्टिबल बन जाएगा. लेकिन x²t, अब देखो मैनी टू वन कैसे हुआ? -1 इनपुट देने पे भी आउटपुट 1 देगा और +1 इनपुट देने पे भी आउटपुट 1 देगा. तो फॉर बोथ द इनपुट्स -1 and +1 your output will be +1 only and means the system is non-invertible. It means the system is non-invertible. Now CT LTI system, कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम के अगर फॉर्मूला की बात कर लें पहले, कन्वोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट. तो कन्वोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है सर? yt इक्वल टू -infinity to infinity x dot of ht minus का tau d tau. Okay, so x dot ht minus tau d tau. This is nothing but the simple convolution formula, and the standard table also we need to remember the standard result. So in the formula series we'll also discuss some important result that you have to remember for the competition exam. Like ut और ut का convolution वहाँ एग्जाम में निकालना नहीं है, आपको पता होना चाहिए. ut and ut convolution is nothing but tut sir. Similarly प्यारे बच्चों tut convolution with ut, रैम्प को स्टेप से कन्वॉल्व करोगे you will get t²/2 ut. Similarly guys tut convolution with tut is nothing but t³ upon factorial 3 मतलब 6 into u of t. टेबल you have to remember guys. Similarly guys अगर हम एक और बॉक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स e to the power. सपोज यदि e to the power -80 ut convolution with e to the power, यहाँ से भी डायरेक्ट गेट क्वेश्चन बना है.
is always is nothing but e to the power minus at minus e to the power minus vt upon b minus a. Very much important for the gate point of view. यहाँ मान लीजिए a या b में से किसी को भी आप जीरो करोगे ना तो e की पावर 0 1 हो जाएगा. तो ऐसा भी याद कर लीजिए e की पावर माइनस at ut कन्वोल्यूशन विथ ut. यहाँ से डायरेक्ट गेट क्वेश्चन बने लास्ट 3-4 ईयर में 2 या 3 बार क्वेश्चन बने डब्ल्यू और ईसी में. डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा सर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 80. अब देखो जिसको ये टेबल याद है ना वो तो इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में कर लेगा और टेबल याद नहीं है तो लगेगा इसमें 3-4 मिनट टाइम आपको. ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखें इस तरह से. और अगर ए और सेम हो जाए e टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, ये सब का डेरिवेशन भी हमने देखते हैं क्लास में, बड़ा कंप्रेहेंसिव में पढ़ते हैं हम. यहाँ फास्ट ट्रैक में हम फटाफट रिविजन कर रहे हैं. तो इट विल बी टी ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी. So these are some standard results that we have to remember as far as convolution is concerned, and very important also result whenever the convolution of two rectangular pulse having different time duration is always a trapezoidal pulse. Convolution of two rectangular pulse having different time duration will always be a trapezoidal pulse, and the convolution of two rectangular pulse having same time duration is always be a triangular pulse. यहाँ बनेगा ट्रेपेजोइडल और यहाँ बन जाएगा आपका ट्रायंगुलर. क्लियर है गाइस? दिस इज क्रिस्टल क्लियर? सब लोग सर यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर पल्स, इफ दिस इज टू रेक्टेंगुलर पल्स देन दिस इज आल्सो टू रेक्टेंगुलर पल्स. द कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू रेक्टेंगुलर पल्स, सपोज दैट हियर टाइम ड्यूरेशन इज t1 t2 and suppose that the amplitude is here a1 a2, then the final result will be a trapezoidal pulse which will going to be start from 0 and it will be end at upper limit t1 plus t2. This is simple convolution properties. तो ये बड़ा important है, and the amplitude will be a1 a2 t1. Similarly guys, if the time duration is same 0 से लेके t, 0 से लेके t, if the amplitude is a1 here, amplitude is a2 here, then we will have a triangular pulse and the final answer will be 0 t 2 t and the amplitude will be a1 a2 t. Always remember the convolution of two rectangular pulse having different time duration will be a trapezoidal pulse and the convolution of two rectangular pulse having same time duration will be a triangular. तो यूटी कन्वोल्यूशन, यूटी हमने पहले बता दिया आपको, टी यूटी होता है रैंप फंक्शन बनता है जिसको हम आरटी बोल देते हैं. यहाँ बताइए आर यूटी माइनस 2 यूटी माइनस 4 इज नथिंग बट एक्चुअली आर ऑफ टी माइनस का 6 यूटी और यहाँ बन जाएगा आपका आर ऑफ टी प्लस 2. नहीं बच्चों, आर टी और यूटी का कन्वोल्यूशन करोगे तो आप बनेगा पैराबोलिक नेचर, मतलब टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यूटी. सिमिलरली हियर ऑल्सो टी माइनस का 4 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू यूटी माइनस का 4. डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो. आर टी कन्वोल्यूशन विथ रैम्प का, रैम्प के साथ कन्वोल्यूशन बनाएगा टी क्यूब अपॉन 6 इंटू यूटी. और अगर शिफ्टिंग लगा है तो शिफ्टिंग रिफ्लेक्ट होगा, -2 -4 मिलके क्या बना देगा -6 का होल क्यूब अपॉन 6 इंटू यू ऑफ टी माइनस. इस तरह डायरेक्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए. कन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्स हैविंग डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, ट्रैपेजॉइडल पल्स. यस और नो गाइस? सेम होता तो इसका बताओ यार, अभी बताया तो थोड़ी देर पहले. e की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी अपॉन बी माइनस ए. सर चलिए आगे चलो, अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज है ना, पोलर फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल. पोलर से कभी क्वेश्चन आते नहीं है गेट में, तो आपको ये पता होना चाहिए. फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, a0 का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 अपॉन टी इंटीग्रल ऑफ माइनस टी बाई 2 से लेके प्लस टी बाई 2 एफ एक्स टी या एफ टी. यहाँ अगर एफ टी लिया तो एफ टी ले लेते हैं, तो एफ ऑफ टी डी टी. सो दिस इज द एवरेज वैल्यू. ए एन फॉर्मूला क्या होता है सर? ट्वाइस अपॉन टी इंटरवल ऑफ माइनस टी बाई 2 से लेके प्लस टी बाई 2 एंड हियर इट विल बी एफ टी डॉट cos of n omega 0 t dot dt. And similarly bn is nothing but what? So you will reply bn is twice upon t. Again same कुछ रहेगा, यहाँ आ जाएगा sin of n omega 0 t. केवल cos का साइन आ गया, आप देख सकते हो, मैं पूरा लिख नहीं रहा. Now these all are the formulas of that trigonometric Fourier series. Similarly guys, d0 is equal to a0, dn is under root of an square plus bn square. और अगर आप ओपन करोगे तो लिख भी सकते हो, और phi n is nothing but आप बोल सकते हो tan inverse bn upon a. So this is the relation between the trigonometric and polar Fourier series, and this is nothing but very important exponential Fourier series, where Cn formula is very important. Cn is 1 upon t minus t by 2 to plus t by 2
okay, and here is f of t dot e to the power minus j n omega 0 t dt. So this is nothing but exponential Fourier series coefficient formula, and it satisfy always this conjugate symmetric condition. It means Cn conjugate of C conjugate of minus n. अच्छा, रिलेशन पूछ लेगा कोई आपसे तो याद रखें, रिलेशन इज नथिंग बट Cn इज नथिंग बट हाफ ऑफ a ऑफ n माइनस का j bn. अगर यहाँ से बात करूं मैं C माइनस n का, तो Cn कॉन्जुगेट होता है C माइनस n, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ an प्लस j bn. दिस इज द रिलेशन प्यारे बच्चों. अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे ना, तो आपको an मिल जाएगा Cn प्लस C माइनस n. सिमिलरली आप bn निकाल सकते हो. तो अच्छा, इवन फंक्शन में क्या होगा, तो देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट, अगर कोई सिग्नल डायरेक्टली इवन सिमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन इट a0 कैन नॉट इक्वल टू 0, an कैन आल्सो नॉट इक्वल टू 0, बट bn फॉर श्योर इक्वल टू 0, because the signal satisfied the even condition, and the Fourier series will contain all harmonics of आप बोल सकते हो cos term. अगर वो केवल इवन है तो, अगर केवल ऑड सिमेट्रिकल कंडीशन है तो हम बोलेंगे केवल ऑड है सर, ओनली ऑड है तो ऑड का एवरेज वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा, और ऑड है तो an भी 0 हो जाएगा, और केवल bn नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो हम बोलेंगे फॉर द ऑड फंक्शन Fourier series will contain all harmonics of sine term, all harmonics of sine term. Is this clear? Yes. Now अगर हम बात करें half wave symmetric, a signal is said to be half wave symmetric अगर वो फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा है t प्लस माइनस का t by 2. अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई किया है xt इक्वल टू माइनस का x t प्लस माइनस का t by 2, then your signal is half wave symmetric condition. That is HWO भी बोलते हैं हम, half wave symmetric odd. तो अगर कोई सिग्नल ऐसा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन इन दिस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल इवन हार्मोनिक्स विल ऑलवेज बी 0. इट मींस Fourier series will contain only odd harmonics. Fourier series will contain only odd harmonics. अब अगर कोई सिग्नल मान लीजिए HWS भी है और इवन भी है, ये समझना आप इंपॉर्टेंट है, ये समझना आप इंपॉर्टेंट. अगर कोई सिग्नल सेटिस्फाई करता है HWS प्लस इवन कंडीशन, तो सिग्नल इवन सिमेट्रिकल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, HWS भी कर रहा है, तो उस केस में क्या क्या होगा, आप बोलोगे A0 तो पक्का 0 होगा. अच्छा, AN भी 0 हो जाएगा जबकि इवन है, बट कब 0 होगा, व्हेन n इक्वल टू इवन. सो AN इज नॉट इक्वल टू 0 सर, ओनली इफ n इक्वल टू ऑड, और BN शुड बी 0 बिकॉज ये इवन सिमेट्रिकल कंडीशन थी ना, इसलिए. तो Fourier सीरीज क्या लेगा, आप बोलोगे Fourier सीरीज विल कंटेन ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑफ cos टर्म. ऐसा क्यों हुआ सर, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ cos टर्म क्यों हुआ, क्योंकि वो HWS भी था और इवन भी था. बात समझ में आया. और अगर मान लीजिए HWS और ऑड है, तो HWS अगर ऑड है, साथ में ऑड सिमेट्रिकल कंडीशन है, HWS है मतलब एवरेज वैल्यू 0 हो गया. अच्छा, ऑड है इसका मतलब AN को 0 कर दिया, और क्योंकि HWS है तो BN के भी उस पार्ट को 0 कर दिया व्हेन n इक्वल टू इवन. मतलब BN इज नॉट ओनली इक्वल टू 0 इफ n इक्वल टू ऑड. इसका मतलब क्या, द Fourier series contain only odd harmonics of Fourier series will contain only odd harmonics of sine term, only odd harmonics of sine term. मतलब ये कि सर HWS भी है, ऑड है मतलब साइन टर्म करेगा, HWS है मतलब. अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर HWS कैसे पहचान ले, तो अगर कोई सिग्नल t इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 1 कैरी करता है, तो प्लस माइनस t पे माइनस 1 कैरी करेगा, तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है और ये सिग्नल HWS है. अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए होना चाहिए. एज क्राइटेरिया, अगर यहाँ राइजिंग एज है तो यहाँ फॉलिंग एज होना चाहिए, यहाँ फॉलिंग एज है तो यहाँ राइजिंग एज होना चाहिए. स्लोप, अगर यहाँ पे स्लोप प्लस के है तो यहाँ माइनस के होना चाहिए, और यहाँ माइनस के तो यहाँ प्लस के. अगर ऐसा है तो आपका सिग्नल HWS होगा. चलो प्रॉपर्टीज की बात कर ले, तो लीनियर प्रॉपर्टी बड़ी आसान है. अगर होमोजेनियस और ये, तो लीनियर प्रॉपर्टी बोलेगा ax1t प्लस ax2t का Fourier सीरीज हो जाएगा ac1n प्लस ac2n. a और b लिया है, a1 a2 लिया है, a2 लिया है तो a2 ले लो, a2 c2. तो अगर x1t का c1 था Fourier सीरीज, इसका c2n था, तो इसका ये हो जाएगा सिंपल प्रॉपर्टी सर. टाइम रिवर्सल, अगर xt का cn है तो इसका हो जाएगा c माइनस n. प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट बन सकता है ना. सम टाइम डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो हैज बीन आस्क्ड. टाइम शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी सेम साइन. तो अगर xt का cn है तो यहाँ हो जाएगा cn डॉट लिख रहा हूँ मैं, e टू द पावर माइनस का jn ओमेगा t नॉट.
सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस साइन होता, मान लीजिए ये होता है एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, एंड इट विल बिकम सी एन ई टू द पावर प्लस जे एन ओमेगा टी। ओके, नाउ स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां से गेट क्वेश्चन ऑलरेडी 2 या 3 बार आ चुके हैं, वो है ये स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगर एक्स टी का फोरियर सीरीज सी एन है तो एक्स ऑफ ए टी का भी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट तो सी एन ही रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, अगर एक्स टी का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी था ना, तो एक्स ऑफ ए टी का टी बाई ए हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ए ओमेगा हो जाएगी। तो टाइम में तो ए का डिवाइड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी अपोजिट साइन। तो अगर एक्स टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है तो ई की पावर जे एम ओमेगा जीरो टी का फोरियर सीरीज हो जाएगा सी एन माइनस एन। अगर यहाँ ई की पावर प्लस ना होके ई की पावर माइनस जे एम ओमेगा जीरो टी एक्स टी होता तो उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अपोजिट साइन हो जाता सी एन प्लस एन। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली गाइस, अगर एक्स टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है तो डी एक्स टी अपॉन डी टी का फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा, तो बोलोगे डी एक्स टी अपॉन डी टी सीरीज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इज जे एन ओमेगा जीरो सी। और अगर मैं इसके पावर में कर दूं m और यहाँ m, तो जे एन ओमेगा जीरो की पावर m। इंटीग्रेशन, अगर एक्स टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टी डी टी, द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इज सी एन अपॉन जे एन ओमेगा जीरो, सी एन अपॉन जे एन ओमेगा। नाउ गाइस, फोरियर ट्रांसफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ओके, याद होने चाहिए आपको फॉर्मूला, डायरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक्स ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डॉट ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा टी डी। और इफ वी टॉक अबाउट द आईडीएफटी फॉर्मूला, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, देन इट विल बी 1 अपॉन 2 पाई सर, 1 अपॉन 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा टी ओमेगा। Is it clear? This is the Fourier transform formula. This is the inverse Fourier transform. And ft is absolutely integrable. This is the condition to for the possibility of Fourier transform. So Fourier transform of any signal is only possible if the signal is absolutely integrable or it is a stable signal. Is this clear बेटा? चलिए आगे चलते हैं। तो e to the power minus at ut का अगर कोई फोरियर पूछ ले आज, डायरेक्ट याद रखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। e to the power minus at ut Fourier transform directly we have to remember 1 upon a plus j omega, 1 upon a plus j omega. तो लीनियर प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर f1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर f1 ओमेगा है एंड इफ f2t फोरियर ट्रांसफॉर्म इज f2 ओमेगा, देन a1 f1t plus a2 f2t Fourier will be this a1 f1 omega a2 f2। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी सेज दैट कि अगर ft का फोरियर अगर आप कैपिटल f ओमेगा बोल रहे हो, then f of at will be 1 upon mod of a f of omega by a। Very important scaling property। टाइम शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी सेम साइन। तो अगर टाइम रिवर्सल है तो देखो, अगर ft का फोरियर f ओमेगा है तो अगर आप t को, अगर यहाँ पे आप t को माइनस t से रिप्लेस कर रहे हो, then here your omega should replace with minus omega। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग क्या बोलता है, अगर if ft Fourier transform is f omega, if ft Fourier transform is f omega, then ft minus t naught, time shifting always carries same sign, so that is why e to the power minus j omega t naught। और अगर यहाँ होता f of t plus t naught, then the Fourier transform will be e to the power plus j omega t naught into f omega। So always remember, time shifting always carries same sign, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी अपोजिट साइन। यहाँ एफ टी भी आएगा, यहाँ टी भी आएगा। तो अगर एफ टी का फोरियर एफ ओमेगा है तो एफ टी डॉट ई टू द पावर जे ओमेगा जीरो टी फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटल एफ ओमेगा माइनस ओमेगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी अपोजिट साइन, मतलब क्या कि अगर यहाँ प्लस जे है तो यहाँ प्लस ओमेगा जीरो है तो माइनस ओमेगा जीरो, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। सिमिलरली गाइस, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी सेज दैट अगर ft का फोरियर f ओमेगा है सर, तो dft अपॉन dt फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट j ओमेगा f ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस। सिमिलरली अगर हम बात करें dmft अपॉन dtm, देन इट विल बी j ओमेगा की पावर m f ओमेगा। n ले लो चाहे m ले लो। सिमिलरली गाइस, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अगेन इंपॉर्टेंट। अगर x ऑफ t का, मान लीजिए x ऑफ t लिखा है, x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ ओमेगा है, चाहे ft ले लो चाहे xt ले लो,
तो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स टी डी टी का फोरियर हो जाएगा एक्स ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई एक्स जीरो डेल ओमेगा प्लस पाई एक्स जीरो डेल ओमेगा। सिमिलरली गाइस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अगर एक्स टी का फोरियर एक्स ओमेगा है तो टी एक्स टी फोरियर ट्रांसफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट टी एक्स टी फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी जे डी एक्स ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। एंड सिमिलरली बच्चों टी की पावर एन एक्स टी की पावर एन एक्स टी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट जे डी एन एक्स ओमेगा अपॉन डी ओमेगा एन ये डी एन एक्स ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। कन्वोल्यूशन इन टाइम इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स प्यारे बच्चों अगर एक्स टी का फोरियर एक्स ओमेगा है एक्स वन टी कन्वोल्यूशन विद एक्स टू टी द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट एक्स वन ओमेगा डॉट एक्स टू ओमेगा। Convolution in time is nothing but multiplication in frequency. And multiplication in time is nothing but 1 upon 2 pi. So this is also very important property. अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन है x1t डॉट x2t मल्टीप्लीकेशन इन टाइम इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ओमेगा like that. Now guys tell me if the Fourier transform x omega Fourier transform formula is minus infinity to infinity xt e to the power minus का j omega t dt. So what is the area under time domain? अगर हम x omega को omega equal to 0 कर दें then it will be capital X 0 and which is equivalent to minus infinity to infinity xt dt. So always remember area under time domain is nothing but capital X 0. एरिया अंडर टाइम डोमेन कैपिटल एक्स जीरो। तो एक्स ओमेगा में जब ओमेगा जीरो कर दोगे ना एक्स टी का एरिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डी टी एरिया अंडर टाइम डोमेन विल बी कैपिटल एक्स जीरो। सिमिलरली गाइस एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन विल बी 2 पाई एक्स जीरो। ये कहाँ से आया? सिंपल हमने इनवर्स जो फॉर्मूला था इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म उसमें हमने टी को जीरो कर दिया इस बार। यहाँ फॉर्मूला था ये एक्स ओमेगा ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा टी डी ओ। इस फॉर्मूले में केवल आप ओमेगा को टी को जीरो करेंगे स्मॉल टी को तो ये बन जाएगा एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस whenever in the time domain signal is real plus even then frequency domain it should be real plus even. Imaginary plus even will also imaginary plus even but real plus odd will become imaginary plus odd or imaginary plus odd will become what? Real plus. Now guys tell me अगर यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया जाए तो del t का फोरियर ट्रांसफॉर्म will always be 1 e to the power minus at ut फोरियर will be 1 upon a plus j omega e to the power at u minus t फोरियर ट्रांसफॉर्म will be 1 upon a minus j omega e to the power minus a mod of t इंजीनियरिंग सर्विस में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म will be twice a upon डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद रखने हैं ये सब फॉर्मूला शीट दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे आपको फॉर्मूला शीट मिल रही है ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीडीएफ में फॉर्मूला शीट e to the power 2t a ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉट पॉसिबल why not possible because unbounded signal 1 by del ओमेगा का इनवर्स फोरियर देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉक्स देता हूँ एक और आपको हमेशा याद रखेंगे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी 2 पाई del ओमेगा 1 फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी 2 पाई del ओमेगा अगर आपको कोई यहाँ से 1 अपॉन 2 पाई का फोरियर पूछ ले then it will be del ओमेगा okay guys remember this cos omega 0 t फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी पाई कॉमन ले लीजिए डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा 0 माइनस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा। अगर साइन की बात करें तो ऊपर जे पाई लिख दीजिए अंदर वाला पार्ट सेम टू सेम रह जाए। सिग्नम फंक्शन ऑफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी ट्वाइस अपॉन जे ओमेगा वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूटी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। इस तरह से आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखने हैं एज फार एज गेट इज कंसर्न। रेक्टेंगुलर का फोरियर ट्रांसफॉर्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है अगर ये रेक्टेंगुलर में a है और यहाँ माइनस 2/2 से लेके प्लस 2/2 है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट a टॉ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा 2/2 वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सैम्पलिंग रेक्टेंगुलर पर। सिमिलरली गाइस ट्रायंगुलर फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अगेन a sampling form but here this time squared so a tau sampling square omega tau by 2. So the Fourier transform of a rectangular pulse is a tau sampling of omega tau by 2 and the Fourier transform of a triangular pulse is a tau sampling square omega tau. Now guys Gaussian pulse Fourier transform is what? So e to the power minus pi t square
द फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी ई टू द पावर माइनस का पाई एफ स्क्वायर। अगर ओमेगा में याद रखना है तो ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ओमेगा का लिखोगे आप 2 पाई एफ तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, सेम मिल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां रिसेंटली स्पेशली फॉर ईसी के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नीड टू रिमेंबर रूट पाई बाई ए ई टू द पावर माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 e to the power minus omega square by 4. Similarly guys, duality principle very much important. Again मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ आपको. Small x of t having the Fourier transform x of omega, after duality here omega should replace with t, so it should be x of t, and the Fourier transform will be 2 pi x of t should replace with minus omega. तो आप बोल सकते हो अगर xt का Fourier x omega है तो ओमेगा रिप्लेस विथ टी, सो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई x माइनस ओमेगा हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट टेल मी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ at अपॉन पाई t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा. तो वी कैन राइट हियर साइन ऑफ at अपॉन पाई t, साइन ऑफ at अपॉन पाई t, द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट a rectangular pulse sir, and the rectangular pulse should have the duration of माइनस a से लेके प्लस a, and the magnitude will be 1. So sin 80 pi t Fourier transform will be minus a2 plus a, magnitude will be 1. Always remember sin 80 upon pi t convolution with sin 80 upon pi t is nothing but sin of 80 upon pi t. Is nothing but sin of 80 upon pi t. Very important. Similarly guys, very important property Parseval theorem, minus infinity to infinity जहाँ से question बन सकता है, minus infinity to infinity mod of xt whole square dt is nothing but 1 upon 2 pi minus infinity to infinity mod of x omega whole square. Very very important properties of Parseval theorem. Now student, if I talk about, नहीं इसका एक और फॉर्म हमको याद था, okay guys, so I think it is clear. So guys, Fourier transform minus infinity to infinity x of t, the actual, the one more form of the Parseval theorem जो कि जिस पे बात नहीं होती है, जो स्टूडेंट को शायद याद नहीं रहती है, वो ये वाला फॉर्म है. इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. सो 1 अपॉन 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ ओमेगा डॉट h ऑफ माइनस ओमेगा डी ओमेगा. और एक और फॉर्म है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t डॉट h कॉन्जुगेट ऑफ t dt is equal to 1 upon 2 pi minus infinity to infinity x of omega conjugate of omega. अब दोनों का अगर आप मोड ले लोगे तो वापस से ये बन जाएगा. तो इंपॉर्टेंट हो गया सर. सैम्पलिंग ऑफ टी का कोई एनर्जी पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा, सैम्पलिंग ऑफ टी का एनर्जी होता है पाई. द सैम्पलिंग ऑफ पाई टी का कोई एनर्जी पूछ ले आपसे तो याद रखेंगे 1. सैम्पलिंग ऑफ पाई टी पता है क्या होता है, सिंक ऑफ टी होता है. तो सिंक ऑफ टी का एनर्जी डायरेक्ट पूछ ले तो 1 होता है. सिमिलरली कोई SINC सिंक ऑफ AT का एनर्जी पूछ ले, जो कि पूछा गया गेट में, आंसर होगा 1/a. और अगर k से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले में स्क्वायर होता है. बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. इंपल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इंपल्स ट्रेन होता है, पता है. इंपल्स ट्रेन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट इंपल्स ट्रेन. कैसे सर? तो अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ t टेंस टू, सिग्मा ऑफ, अगर बात करूं यहाँ पे इस तरह से, सिग्मा ऑफ n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मान लेते हैं एम्पलीट्यूड a है, a ऑफ डेल t माइनस का n कैपिटल T. अगर ये इंपल्स ट्रेन है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 पाई सिग्मा ऑफ n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
2 पाई a अपॉन कैपिटल T एंड डेल ऑफ ओमेगा माइनस का n ओमेगा जी। इट मीन्स अगर यहाँ टाइम डोमेन में अगर इम्पल्स ट्रेन है, टाइम डोमेन में अगर आपके पास एक इम्पल्स ट्रेन है जिसका एम्पलीट्यूड a है और फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो इम्पल्स ट्रेन ही बनेगी ओमेगा में। केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ओमेगा 0, यहाँ 2 ओमेगा 0 और एम्पलीट्यूड जो है ना वो हो जाएगा आपका 2 पाई a बाई कैपिटल T, वो हो जाएगा आपका 2 पाई a अपॉन कैपिटल T। इज दिस क्लियर बच्चों? चलिए, मैच फिल्टर क्या होता है? इफ इनपुट इज x ऑफ t देन द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ht इज नथिंग बट x ऑफ माइनस का t प्लस कैपिटल T, जिसको कि आप और बोल सकते हो x ऑफ कैपिटल T माइनस स्मॉल t। इज दिस क्लियर? नाउ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जस्ट प्रोवाइड द माइनस पाई बाई 2 फेज शिफ्ट टू द इनपुट सिग्नल, इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। मतलब इनपुट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, केवल माइनस पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। अगर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के लिए कोई इम्पल्स रेस्पॉन्स पूछ ले तो 1 अपॉन पाई टी होता है, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस का, क्योंकि अगर आपको सिग्नम ओमेगा का पता है, सिग्नम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म सबको पता है, तो अभी निकाला था ट्वाइस अपॉन जे ओमेगा। तो सिग्नम ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे अपॉन पाई टी। तो जे अपॉन पाई टी, जे उल्टा मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस जे सिग्नम ओमेगा हो जाएगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस का जे सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो याद रखें बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंपल फॉर्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो xt e to the power minus st dt, where s is nothing but sigma plus j omega, where s is nothing but sigma plus j। अच्छा, आरओसी के लिए अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बता दें आपको, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आरओसी है तो बस के लिए बॉक्स याद रखना है, उससे काम हो जाएगा। e to the power minus at ut, the Laplace transform is nothing but sir 1 upon s plus a, and the ROC sigma will be greater than sigma e to the power minus at ut है ना, तो ut मतलब ROC किसके ग्रेटर, तो एक्सपोनेंशियल में t के मल्टीपल के ग्रेटर, तो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए हो गया। और अगर आपको यहाँ एस प्लेन भी बनाना है तो देखो एस प्लेन डायग्राम के अंदर माइनस ए लाइन समवेयर हियर एंड आरओसी इज ग्रेटर देन माइनस ए, मतलब ये इट इंक्लूड द इमेजिनरी एक्सिस। Similarly, guys, you can see here e to the power plus at u of minus t. So the Laplace transform is nothing but 1 upon minus s plus a. And in this case, again, the ROC is, because this is left-sided, so ROC is sigma is less than, किसके less than? t के coefficient के sigma less than a. तो यहाँ अगर आपने a लिखा है तो ये less than a हो जाएगा। Is this crystal clear प्यारे बच्चों? Yes. बताइए, आरओसी की सिंपल आरओसी के बारे में हमने बात कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर लिया। इसका बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? सर 1 अपॉन एस प्लस, अभी बताया था मैंने, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। e टू द पावर प्लस ए टी यू माइनस टी, लाप्लास विल बी माइनस एस प्लस ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा ना मैंने, यहाँ सर राइट साइड ही लिखा, लेफ्ट साइड लिखा ना, 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए लिखा ना ये। तो आरओसी क्या हो जाएगा? आप बोलोगे लेफ्ट साइडेड है, किसके लेस देन? सिग्मा लेस देन ए हो गया सर ये। अब देखो यहाँ माइनस साइन भी है, लेकिन माइनस साइन एज इट इज रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस एस प्लस ए। सिग्मा यहाँ लेस होगा क्योंकि यू माइनस टी, सिग्मा लेस होगा, किसके लेस होगा? टी के कोएफिशिएंट के, सिग्मा लेस देन माइनस ए हो जाएगा। तो यू माइनस टी का लाप्लास हो जाएगा यहाँ, इसमें ए को माइनस ए को जीरो कर दो बस, तो 1 अपॉन माइनस ए सिग्मा लेस देन जीरो हो जाएगा ये। अच्छा, these are some important properties of the ROC कि ROC does not contain any pole, ROC कभी भी पोल को इंक्लूड नहीं करेगा। For right-sided signals, ROC must be right-sided to the rightmost pole. For the left-sided signal, ROC can be the left-sided to the leftmost pole. For both the sided signals, either ROC cannot exist, or if ROC exists, then ROC must contain a rectangular strip in the S-plane. For the both sided signals or two-sided signal, for the finite duration of signal, ROC can be entire S-plane, and for the causality, ROC must be right side to the rightmost pole, because causality मतलब टाइम डोमेन में UT का मल्टीपल होना चाहिए सर। और स्टेबिलिटी के लिए, for the stability ROC must include imaginary axis। चलिए, सो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। लीनियर प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, स्केलिंग से शुरुआत करते हैं। अगर ft का fs है तो f ऑफ at का 1 अपॉन मोड ऑफ है x ऑफ s बाई ए होगा। टाइम शिफ्टिंग वी ऑल नो, सेम साइन विल रिफ्लेक्ट, माइनस टी नॉट तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर प्लस होता तो प्लस आता। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी अपोजिट साइन, e टू द पावर माइनस ए है तो यहाँ s प्लस ए हुआ। अगर यहाँ e की पावर प्लस ए होता तो यहाँ f
एस माइनस से हो जाता, यहाँ एफ ऑफ एस माइनस से हो जाता। तो दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर कम्स इन द फॉर्मूला ओनली। जैसे हमको फॉर्मूला याद होने चाहिए, वैसे ही सिग्नल्स एंड सिस्टम में ऑल द प्रॉपर्टी यू नीड टू रिमेंबर एज ए बॉक्स। एक बॉक्स बना लो फटाफट, फॉर्मूला शीट, ये सब कुछ आपको याद रखने हैं। इज क्लियर? नाउ गाइस, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी सेज दैट अगर ft का फोरियर fs है तो tft का फोरियर fs है तो tft का सॉरी लाप्लास, tft का लाप्लास हो जाएगा माइनस का dfs अपॉन ds। अगर t की पावर n है, t की पावर n इंटू ft, देन इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी माइनस 1 की पावर n और dnfs अपॉन ds है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। Now tell me guys, dft upon dt. So अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of s है, if ft लाप्लास ट्रांसफॉर्म is f of s, then the dft upon dt लाप्लास ट्रांसफॉर्म will be, dft upon dt लाप्लास ट्रांसफॉर्म will be s fs माइनस का f0। अगर डबल आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का s स्क्वायर fs माइनस s f0 माइनस का f डैश 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, ft अगर fs है तो इंटीग्रेशन विल बी fs अपॉन s। इस पे डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर xt का लाप्लास x ऑफ s है तो xt अपॉन कैपिटल T का लाप्लास हो जाएगा s टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ s d ऑफ s। अगेन कन्वोल्यूशन इन टाइम इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी ओनली। अच्छा, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कॉजल पीरियोडिक सिग्नल। डायरेक्ट मैंने एक्सप्रेशन बताया था, ys विल बी f ऑफ s अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस s t नॉट e। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों सैम्पलिंग थ्योरम का, व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम? For the perfect reconstruction of a continuous time signal from its samples, the sampling frequency must be greater than or equal to twice of fm or twice of omega m। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी, ये नाइक्यूस रेट जो बच्चा याद रखता है मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो नाइक्यूस रेट का बच्चा मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी याद रख लेता है ट्वाइस एफएम। अब कभी कभी ये फेल हो जाता है, कब? जब आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर अगर दिया हो, तो इस केस में वी ऑल नो दैट फॉर द परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन अगर आपके पास लो पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो एफसी है तो ये एफएम माइनस एफएम होगा, और ये जो टर्म है ये होगा एफएस, तो ये टर्म आएगा आपका एफएस माइनस का एफएम, और ये टर्म आ जाएगा आपका एफएस प्लस एफएम, क्योंकि ये अलग अलग सैंपल्स होते हैं। अगर आपको लो पास फिल्टर यहाँ लगाना है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ये ओरिजिनल सिग्नल कब मिलेगा आपको पता है? जब एक और कंडीशन आएगा एफसी एफएस माइनस एफएम, एफसी शुड इक्वल टू एफएस माइनस। तो प्यारे बच्चों याद रखो, मिनिमम सैम्पलिंग रेट हमेशा नाइक्यूस रेट से नहीं मिलेगा। मिनिमम सैम्पलिंग रेट या मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत सी बार स्टूडेंट केवल इसी को रख लेते हैं कि ट्वाइस एफएम ट्वाइस एफएम ट्वाइस एफएम। गेट में क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का, जहाँ पे ट्वाइस एफएम से काम नहीं होगा, ट्वाइस एफएम फेल हो जाएगा। वहां पे आपको यहाँ से भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ से एफएस क्या आएगा बेटा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसको राइट साइड में लेफ्ट में शिफ्ट करो राइट से, ये हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम। इस मीन्स आपके लिए अभी 2 फॉर्मूला हो गया, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक तो ये वाला फॉर्मूला। तो मिनिमम नाइक्यूस मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन, या तो बोलोगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ एस इक्वल टू ट्वाइस एफ एम होगा, और या तो ये। सो आउट ऑफ दिस 2 बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर ये दोनों स्टार मार्क किए, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, वट एवर द मैक्सिमम ऑफ दिस fs1 एंड fs2, दैट विल बी योर नाइक्यूस रेट, दैट विल बी योर नाइक्यूस रेट, मिनिमम सैम्पलिंग रेट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी वर्किंग एज, मैंने लिखा है fs1 और fs2। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे गेट क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट नोट, एग्जामिनर बहुत सी बार गेट क्वेश्चन पूछा है, while performing the sampling, the number of sample present at the output is nothing but nfs plus minus fm। इस पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में बना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट n का वैल्यू पुट करना है और रखते जाना है। मान लीजिए n पुट आपने 0 किया तो ये बन जाएगा प्लस माइनस का fm। सिमिलरली प्यारे बच्चों, अगर आपने n का वैल्यू 1 पुट किया तो ये बन जाएगा आपका fs प्लस माइनस का fm, है ना। n का वैल्यू 2 पुट किया तो 2fs प्लस माइनस का fm, लाइक दिस बनता जाएगा। चलो ऑपरेशन ऑफ बात करें डिस्क्रीट का, तो टाइम शिफ्टिंग वैसे ही जैसा टाइम में था, टाइम शिफ्टिंग मतलब राइट या लेफ्ट। अगर t प्लस टी नॉट है तो लेफ्ट शिफ्ट, t माइनस टी नॉट है तो राइट शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे ये टाइम रिवर्सल है तो ये इधर से बन जाएगा टाइम रिवर्सल होके। सुनो, सारे ऑपरेशन हमने देखे हैं। 2n मतलब ये डेसिमेशन, ये इंटरपोलेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल का, अगर ये एरो है यहाँ, ये एरो है यहाँ, इसको अगर आपको इंटरपोलेशन करना है, मान लीजिए इसको, या 2n मतलब ये डेसिमेशन करना है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, केवल 2 और -1 बच जाएगा।
सिमिलरली यहाँ भी अगर हमको इंटरपोलेशन करना है तो ये -3 है और ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये -3 और 2 और 6 रह जाएगा। सिमिलरली ये x ऑफ x n/2 करना है, मतलब इंटरपोलेशन, मतलब ये 1 0 -1 0 और 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली ये टाइम स्केलिंग हो गया, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक मैग्नीट्यूड को। व्हाट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है, वहां होता है कंटिन्यूस टाइम में t इक्वल टू 2π/ω0, यहाँ होता है n इक्वल टू होता है यहाँ 2π/ω0 इनटू स्मॉल m। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम बात करें अगेन इवन ऑड कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, केवल t की जगह यहाँ n हो जाएगा और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक कंडीशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा ये x ऑफ cs इक्वल टू, यहाँ से गेट क्वेश्चन चलने का बहुत रेयर चांसेस, नहीं बनता है बट स्टिल अगर बन जाए तो पता होना चाहिए, x ऑफ n प्लस कॉन्जुगेट ऑफ n माइनस अपॉन 2 और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक मतलब x ऑफ n माइनस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n। तो एनर्जी फॉर्मूला एंड पावर फॉर्मूला अगेन थोड़ा इसके लिए भी आपको ट्रिक दे देते हैं फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट। एनर्जी का फॉर्मूला सिग्मा ऑफ मोड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल N आउटसाइड और अच्छा 1 अपॉन यहाँ लिमिट जाता है, यहाँ जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, पावर के फॉर्मूले में अगर आपने सिग्मा में लिमिट -n से +n लिया है ना, तो डिवाइड होगा 1 अपॉन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, तो 2n+1 और फिर आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ आ जाएगा मोड ऑफ xn का होल स्क्वायर। दिस इज द पावर फॉर्मूला। हम बात करें तो बेसिक सिग्नल्स का एनर्जी अगर पता हो आपको, अगर an un, अब an un इसका एनर्जी केवल कब निकलेगा जब a लेस देन 1, अगर a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना तो ये अनबाउंडेड बन जाएगा, अभी ये बाउंडेड है, इसका एनर्जी आएगा 1 अपॉन 1 माइनस का a का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए a की पावर n u ऑफ माइनस है, तो इस केस में एनर्जी कब निकलेगा पता है, जब a ग्रेटर देन 1 हो, देन ओनली इट विल बाउंडेड, तो उसका एनर्जी हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस का a स्क्वायर। इस तरह से आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो है ना वो याद रखने हैं प्यारे बच्चों। सिमिलरली जो जहां तक कंफ्यूजन, देखो ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे। अगर मान लो एग्जामिनर ये पूछ ले कि an un प्लस b की पावर n un का एनर्जी बताओ भैया, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस का a स्क्वायर, यहाँ से लिख लेंगे और प्लस लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस का b स्क्वायर। यहाँ तक बच्चा जनरली कर लेता है, बट वो क्या गलती करेगा, क्योंकि यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर होता है तो ये एक और टर्म आएगा ट्वाइस अपॉन 1 माइनस का a, ट्वाइस अपॉन 1 माइनस का a भी टर्म मिस कर दोगे। अच्छा एनर्जी के बारे में बात कर लिया, पावर के बारे में बात करेंगे, जैसे ये दोनों के बारे में बात कर लिया, ठीक है। बताओ पावर के बारे में भी एक बॉक्स बना देते हैं वापस, वही ऑलरेडी लास्ट में बनाया ना मैंने बॉक्स लास्ट लाइन में। अगर जैसे un का पावर पूछ ले, un का पावर अगेन 1/2, a un का पावर पूछ ले तो a²/2, केवल dc का पावर पूछ ले तो ये a²। अच्छा a e की पावर j⍵0 n का कोई पावर पूछ ले अगेन a², क्योंकि ये इसका मोड जो होगा ना वो a ही होगा, इसलिए really guys important result, un convolution with un will always be n plus 1 into un, important। Really रैम्प को अगर आप डिस्क्रीट टाइम के अंदर रैम्प को कन्वॉल्व करोगे आप स्टेप से, then you will get n into n plus 1 upon 2 into। अच्छा ये याद रख लीजिए an un, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a की पावर n un कन्वोल्यूशन विथ b की पावर n un is nothing but a की पावर n plus 1 माइनस b की पावर n plus 1 अपॉन a minus 1 into un, यही तो होगा। अब बताइए यहाँ पे अगर मैं b का वैल्यू 0 कर दूं तो पता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये a की पावर n un, ये कम्यूटेटिव भी होता है, a की पावर n un कन्वोल्यूशन विथ un इज नथिंग बट, क्या लिखोगे आप 1 माइनस a की पावर n plus 1 अपॉन 1 माइनस, अगर अपर लिमिट n है तो भाई स्मॉल n भी लिख सकते हो, स्मॉल n plus 1, और अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो माइनस कॉमन ले लो, इसमें कोई दिक्कत, ऐसा कुछ बन जाएगा सर। सिमिलरली अगर बच्चों यहाँ पे ना एक कॉमन भी आ सकता है, एक कभी a सेम हो जाए तो क्या होगा, तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट गेट में आया हुआ है, an कन्वोल्यूशन विथ an un। देखो अगर an un का सिग्नल इटसेल्फ के साथ कन्वॉल्व हो जाए ना तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे n plus 1 into an un, n plus 1 into an un। दिस क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों Z ट्रांसफॉर्म। तो देखो Z ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर x ऑफ Z इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ n टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस n, where z is nothing but r e की पावर j ओमेगा। अच्छा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Z ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो z इक्वल टू e टू द पावर st, और अगर आप z को लिखोगे r e की पावर j ओमेगा
और s को लिख दोगे सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू कैपिटल टी। व्हेन यू विल ओपन दोनों तरफ मोड लोगे ना तो r इक्वल टू आ जाएगा e की पावर सिग्मा टी, और यहीं से आपको रिलेशन मिलेगा, मैपिंग मिलेगा। सो इमेजिनरी एक्सेस विल मैप इनटू, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, इमेजिनरी एक्सेस विल मैप इनटू यूनिटी सर्कल, है ना। अगर हम यहाँ पे बॉक्स बनाए, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सेस जो होगा ना, इमेजिनरी एक्सेस वो क्या बन जाएगा पता है? अगर मैं यहाँ बनाता हूँ ये इमेजिनरी एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस यहाँ बन जाएगा प्यारे बच्चों यूनिटी सर्कल। Similarly, left hand side of the S plane, left hand side of the S plane will mapped into inside the unity circle, मतलब ये पूरा inside, and right side of the S plane will mapped into outside the unity circle, outside the unity circle. This is clear प्यारे बच्चों? तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं वापस से, राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फॉर द राइट साइडेड फॉर्म AN Z ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट 1/1 माइनस का A Z इनवर्स, and the Z transform is nothing but mod of Z is greater than mod of A. And what is the ROC? You can say that you should have a circle of A radius, very much important. But माइनस साइन को कवर करना है यहाँ पे। Is clear बेटा? देखो वही आ गया, AN UN को हम क्या बोलते हैं 1/1 माइनस Z इनवर्स, Z इनवर्स को कॉमन लोगे तो Z/Z माइनस A, और ये जो शेडेड एरिया है that is nothing but the ROC region. Similarly for the left hand side, this is the shaded area inside the circle of A radius. प्रॉपर्टी की बात करें तो कुछ सिमिलर है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट द सिमिलर ओनली, बट यहाँ पे आप बात करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का तो आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल, यहाँ भी वही है। फॉर द राइट साइडेड सिग्नल्स लाप्लास में था आरओसी मस्ट बी राइट साइड टू द राइट मोस्ट पोल, यहाँ हो जाएगा आरओसी मस्ट बी आउटसाइड टू द आउटर मोस्ट सर्कल। फॉर द लेफ्ट साइडेड सिग्नल्स इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म आरओसी इज लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, यहाँ हो जाएगा ROC must be inside to the innermost circle. For the both sided signals in the Laplace transform, ROC must contain rectangular strip in the S plane. और यहाँ Z में हो जाएगा for the both sided signals, ROC must contain a ring in the Z plane. Is it clear? For the finite duration of signal, ROC can be entire Z plane, but excluding Z equal to 0 or infinity, it depends. And for the causality, ROC must be outside to the outermost circle. And for the stability, ROC must include unity circle. Similarly, in the Laplace, ROC must include imaginary axis. Linearity क्या बोलता है? अगर x1 का z ट्रांसफॉर्म xz है तो ax1 and bx2 and z ट्रांसफॉर्म will be ax1z plus bx2z. अगर हम बात करें टाइम शिफ्टिंग का तो if x of n is having the z transform x of z, then x of n minus n naught will become z to the power minus n naught into x. तो टाइम शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी सेम साइन, एंड अगर टाइम शिफ्टिंग के अंदर यहाँ n प्लस n नॉट होता है तो यहाँ भी हो जाता है z की पावर प्लस n, देख रहे हो, टाइम शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी सेम। तो an xn तो यहाँ पे हो जाएगा x ऑफ a इनवर्स z, या फिर x z बाई a बोल दीजिए आप। सिमिलरली x ऑफ n को अगर माइनस n से रिप्लेस करोगे तो z हो जाएगा माइनस z, बस z हो जाएगा z इनवर्स नॉट माइनस z इनवर्स, मतलब ये बोलोगे x ऑफ z इनवर्स को बोल सकते हैं 1/z। अच्छा, डिफरेंशिएशन मतलब होता है यहाँ एक्यूमुलेशन इन द टाइम डोमेन, तो x ऑफ n माइनस और सक्सेसिव डिफरेंस, नॉट एक्यूमुलेशन। डिफरेंशिएशन मतलब सक्सेसिव डिफरेंस, इंटीग्रेशन मतलब एक्यूमुलेशन और समेशन। डिफरेंशिएशन मतलब सक्सेसिव डिफरेंस x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n, सो इट विल बी 1 माइनस का z इनवर्स x ऑफ z, यू कैन सी हियर। एंड इंटीग्रेशन इन टाइम इन द z ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट इंटीग्रेशन शुड रिप्लेस विद समेशन और एक्यूमुलेशन, तो समेशन विल बी x ऑफ n अपॉन 1 माइनस का z। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां से डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में बना है। x ऑफ n का अगर z ट्रांसफॉर्म xz है देन n xn z ट्रांसफॉर्म विल बी माइनस का z dxz अपॉन dz। और अगर कन्वोल्यूशन इन टाइम है तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी होगा, पता है हमको। अच्छा, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम गेट में केवल 1-2 बार ही आया है, और वो भी फाइनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। लिमिट z टेंड्स टू 1 z minus 1 xz, but very important condition, the final value theorem is only applicable if the poles of this term z minus 1 xz should only inside the unity circle, should not be on the unity circle and should not be outside the unity circle. Clear है? अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जिससे गेट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले डबल ई में शायद पूछा गया था। कंटिन्यूअस प्लस एपीरियोडिक का फोरियर ट्रांसफॉर्म विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस प्लस एपीरियोडिक। शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो कंटिन्यूअस प्लस नॉन पीरियोडिक, कंटिन्यूअस प्लस नॉन पीरियोडिक ही रहेगा। अच्छा, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा डिस्क्रीट प्लस नॉन पीरियोडिक, या एपीरियोडिक बोल दो, मैं इसको नॉन पीरियोडिक बोल। डिस्क्रीट प्लस एपीरियोडिक, डिस्क्रीट प्लस नॉन पीरियोडिक जो होता है ना वो हो जाता है कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक,
और डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक विल रिमेन सेम डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक। तो आपको इस तरह से जो मैंने रेड में लिखा है इस तरह से आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्टली गेट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, अगर मैं DTFS की बात करूं, ये कॉमन पार्ट है। ये DTFS जो है ना, ये इस डबल ई वाले बच्चे छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहिए इसको, डबल ई वाले बच्चे छोड़ देते हैं इसको, डबल ई वाले बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, ये आता है गेट में। DTFS और DFT आप छोड़ सकते हो, DFT हम कल की क्लास में देखेंगे, आज देखेंगे भी नहीं। देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है DTFS का, सिग्मा ऑफ n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी Cn e to the power plus Jn omega 0 t, and where Cn is equal to 1 by t, sigma of k tends to minus, अगर आप Ck ले रहे हो तो मैं n ले रहा हूँ, खुद भी ले लो आप, अगर मैं n लिया हूँ मान लीजिए, तो यहाँ लिख लेते हैं n tends to minus infinity to infinity x of n e to the power माइनस का Jn omega 0 t। अगर आपको k में लेना है आप k में ले सकते हो, n में लिखना है n लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, क्योंकि मैंने डिस्क्रीट टाइम DTFS लिखना है तो आइडियली हम k में लिखेंगे, क्योंकि Cn जो है ना हम CTFS के लिए यूज कर लेते हैं, तो मैं C क्या बोल देता हूँ, यहाँ लिखा है e की पावर j 2 पाई अपॉन कैपिटल n इंटू k। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में ओमेगा 0 जो होता है ना वो 2 पाई अपॉन कैपिटल n इंटू k होता है, इंटीजर भी मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली यहाँ C क्या होता है, क्या बन जाएगा यहाँ C के, तो ये लिमिट भी k इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और k टेंड्स टू 0 से लेके n माइनस 1, वापस से कर देता हूँ इसको। तो ये x ऑफ n इक्वल टू, वैसे इधर फॉर्मूला लिखा भी था, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 चलेगा, और c के इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 बाई n, यहाँ लिखा भी है 1 बाई n, यहाँ लग जाएगा सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 0 से n माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा आपका x ऑफ n डॉट e की पावर माइनस का j 2 पाई अपॉन कैपिटल n इंटू k। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां से क्वेश्चन बना है वो है Ck इंटू सी प्लस एन। ये 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, एक बार डबल ई में और 2 बार EC में, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं याद रखेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ DTFT। DTFT का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओहो हो क्या हो गया सर, ये से क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n e की पावर माइनस j ओमेगा n। और अगर IDTFT का फॉर्मूला बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाता है, ये फंक्शन कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक है, और उसका लोकेशन, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा माइनस पाई से लेके पाई, फ्रीक्वेंसी का ड्यूरेशन 1 अपॉन ओमेगा x e की पावर j ओमेगा प्लस e की पावर j ओमेगा n। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज x of t is discrete plus non-periodic, and in the Fourier it will be continuous plus periodic, sorry see discrete plus non-periodic, continuous plus periodic बन गया for the period of माइनस पाई से पाई। तो ये सिग्नल एपीरियोडिक होगा और एब्सोल्युटली समेबल होगा, देन ओनली DTFT इज पॉसिबल। तो अगर आपसे कोई ये पूछ लेना कि भाई 2n का फोरियर ट्रांसफॉर्म बताओ, तो आप बोलोगे नहीं होगा, 2 की पावर n का फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल। प्यारे बच्चों, तो an का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है केवल कब होगा, जब a लेस देन 1 होगा। हाफ की पावर n का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर माइनस j, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी वही, लीनियरिटी तो वापस वही है, सेम है। टाइम रिवर्सल मतलब सेम, मतलब अगर n रिप्लेस होगा माइनस n से तो ओमेगा रिप्लेस होगा माइनस ओमेगा से। टाइम शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी सेम साइन, माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस जाता। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी अपोजिट साइन, अगर n बाई k है स्केलिंग में तो ऊपर चला जाएगा, j ओमेगा k हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑलवेज कैरी अपोजिट साइन, यहाँ प्लस j ओमेगा तो माइनस हुआ, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। सिमिलर प्रॉपर्टी है। एनएक्शन, अगर xn का x e की पावर j ओमेगा है तो एनएक्शन मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साथ में j मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर n की पावर m है तो j की पावर m हो जाएगा, और d ओमेगा m हो जाएगा। कन्वोल्यूशन इन टाइम इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पार्ट्सविल थ्योरम पे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वेश्चन आते हैं। जनरली बच्चा केवल ये याद रखता है, एक और फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, सिग्मा ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मोड ऑफ xn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म होता है, ये लिखा भी है यहाँ 1 अपॉन 2 पाई, ये माइनस पाई से लेके पाई, और मोड ऑफ x ओमेगा, या इसको आप x e की पावर j ओमेगा बोल दो, मोड ऑफ x e की पावर j ओमेगा का होल स्क्वायर डी। तो अगर यहाँ पे एक और फॉर्म जो आपको याद रखना चाहिए वो ये कि सिग्मा ऑफ n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n डॉट h ऑफ n will become actually 1 upon 2 pi, and here from minus pi से pi will be x e की पावर j ओमेगा डॉट h e की पावर माइनस का j ओमेगा। अगर यहाँ कन्वोल्यूशन कर दोगे तो माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा कन्वोल्यूशन, यहाँ भी कन्वोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली गाइस साइन 80 अपॉन पाई टी फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, CTFT है ये, CTFT, और ये है DTFT।
साइन AT अपन पाई टी फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस A2 प्लस से मैग्नीट्यूड 1 साइन ओमेगा CN अपन पाई n। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन है तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो माइनस पाई से लेके प्लस पाई, माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये DFT वाला पार्ट जो है ये हम कल देखेंगे बिकॉज दिस इज ओनली फॉर EC स्टूडेंट्स। ओके गाइस, चलिए। हो किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? तो ROC का क्या होगा सर? ROC किसका? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके बेटा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जेट ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों में पूछा जा सकता है बेटा। तो याद रखें e टू द पावर माइनस AT UT लाप्लास 1 अपॉन S प्लस A, और इसका ROC क्या है? अगर कोई चीज UT से मल्टीप्लाई है तो ROC हमेशा ग्रेटर होगा, और किसके ग्रेटर? एक्सपोनेंशियल के कोफिशिएंट के, e की पावर माइनस AT बोला था मैंने, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस A हो जाएगा। सिमिलरली AN UN का जेट ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन 1 माइनस का AZ इनवर्स मोड ऑफ जेट। थोड़ा सा इसको रिवर्स करके देखो, सब मैंने करवाया है यहाँ पे, और अगर डिटेल में देखना है तो महा रिवीजन में रखा है। ये फॉर्मूला रिवीजन था, तो यहाँ हमने फटाफट से सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज किया है। लगभग 1 घंटा 15 मिनट लगा है हमको, थोड़ा सब्जेक्ट बड़ा है तो इसलिए। ओके प्यारे बच्चों, चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। टुमारो हम मिलते हैं फॉर्मूला रिवीजन फॉर EC। तक के लिए प्यारे बच्चों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना पूरा अच्छा एफर्ट करते रहें। सेशन सुबह मॉर्निंग में शायद 10 o'clock स्टार्ट हुआ था और अभी इवनिंग में शायद 10 o'clock एंड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, सारे फैकल्टीज ने, पूरी टीम ने आपको यहाँ पूरा हर एक फॉर्मूलेज को रिवाइज कराया है फॉर डबल स्टूडेंट। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन गाइस, थैंक यू।